व्हाट इज जनता, क्या हालचाल? वी आर लाइव बैक अगेन। पैंदिशी की क्या हालचाल जनता? गाइस आर्केड बाबू की ओ बाई निकल गई, चीखें निकल गई गाइस आर्केड बाबू की। चीका कढ़ा देंगे गाइस, चीका। कूलर धो रहा था उसका पंप खराब हो गया, ऊपर से वो ठीक करने वाला, बिजली ठीक करने वाला बंदा आ गया, फिर उसके साथ लग गया। वाओ, गर्मी में मौत ही पड़ गई मेरे को। क्या लड़का है, कूलर ठीक करता है। वाओ या वाओ। कल मैं इतना बोर हो गया उस मैच में, सो ही गया फोन हाथ में पकड़ के। हाँ, कौन सा वाला? टीएच वाला। टीएच तो बाहर होगी ना शायद, मैंने तो देखा ही नहीं वुल्फ और टीएच वाला। वुल्फ जीत गई, तभी तो मैं सुबह बजा था टीरेक्स से आगे। अच्छा अच्छा, हाँ हो गया। इजी टीम। स्क्रीन देख। स्क्रीन अबे अबे हिमाचल कुछ भी हक देते हैं यूआई का, हर बार का हो गया इनका। ये अंडर जैसे अब आके बोलेंगे कि भाई सही तो लग रहा है, यूआई चेंज किया, रिवैम्प हुआ है। अगुस अब देख आवाज वाला देख लेफ्ट पे। ओह नाइस भाई, दिस इज गुड, दिस इज गुड। हाँ ये अच्छा है, आवाज वाला अच्छा लग रहा है, शार्प दिखता है। हाँ, और क्योंकि एटलीस्ट मेरे को पता लग रहा है कि तू बोल रहा है, वो टीम में नहीं बोल रहा है। इफ आई टॉक इन टीम hey guys, oh भाई नाइस नाइस नाइस, दैट्स कूल, दैट्स कूल, दैट्स कूल, दैट्स कूल। हेलो। ओ भाई हेलो। won't happen again, ठीक है भाई। चलो ये लैंड। ओ लमाउ डेड हो गया भाई, जेट भाई। स्पीक मत करना। रेना ले लेता हूँ। Spike planted. Both then. One enemy remaining. भाई नन शॉट तो था भाई, जेट कंफ्यूज होगी इसके टीपी की वजह से। मैं पहले सोच रहा था ये वाला स्मोक डालूं, फिर मेरे को वो हुआ कि मेरे को पुश करना है तो रहने देता हूँ। रिवील देखा कितना क्यूट था। क्यूट रिवील था, क्यूट रिवील था। अरे मैं पता क्या सोच रहा था, मेरे दिमाग में वो था कि मैं यहाँ पे स्मोक डालूं, जंप करके ऊपर चढ़ूं जेनी पे और यहाँ टीपी कर दूं कहीं आके। फिर मेरे को वो हुआ कि अगर मेरा जंप मिस हुआ तो पिल जाऊंगा। तो जंप मुश्किल है साला, बिल्कुल एंड पे करना पड़ता है। हाँ नहीं मुश्किल तो नहीं है, पर ठीक है। हाँ मतलब प्रैक्टिस लगती है, मेरे को आता है, मैं कैसे बता रहा हूँ। नहीं मैंने अब जस्ट मिस किया जंप। बी फिर से मिस हो गया, पर ठीक है। ओ लैग हो गया मैं। और स्टेज ऊपर मार्केट। ओए पुश्ड भाई, मार्केट पुश्ड। बोला मैंने। अरे मार्केट के अंदर पर मैंने बोला ओमन बहुत गलत मारा भाई टीम। फ्रंट साइड लेन एएफके योर बंद मैंने लेफ्ट देख लो। कूदने दे साइड, कूदने दे जान दे पैंच। लेफ्ट देख अंदर कूदे, राइट में पता लग जाएगा। सांस मेली आगे से। ओ भाई आराम से, बढ़िया गार्डन पड़ी स्टेज। बड़ी जल्दी बोलता साढ़े। रिपोर्ट करो इसे। अरे सामने तो मरा हूं। अबे तो बोलना जोर से। सांस नहीं अब छोड़। सांस नहीं है, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सोरा आया। मुझे सौरा आया। सोरियस टाइम भाई, सोरियस का नहीं हो गया लैपटॉप सही अभी तक? हो गया ना सोरियस टाइम। बी। अरे क्या हो रहा है, जीरो है क्या? बी रिपोर्ट भाई, रिपोर्ट। अरे डाल दिया इसने मारा था मेरे को। कभी ओ सॉरी
अरे यार निकल जाओ बाहर। मार दिया हाँ बढ़िया बढ़िया, गन पड़ी है, वैंडल है मेरी बॉडी पे। Remaining. Spike down बढ़िया। B. B-main. कर लो भाई कर लो। चढ़ दे स्पाइक है तुम्हारे पास। अरे हाँ B-main. होल्डिंग ना, रिवीलिंग 10। नाइस नाइस शॉट। टीपी की जो चिल्ली उठती है ना एकदम ऐसे, बंदा मारते मैंने टीपी जो करता शेरिफ से ब्लाइंड तोड़ा ना उसका स्पैम ही मार दिया था मैंने ठुस 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 ठुस। हूँ। ये तो मेरे वाला स्टाइल है। मैं बहुत स्पैम करता हूँ भाई शेरिफ। देखा ही है तूने। या पर तेरा स्पैम लग भी जाता, मेरा नहीं लगता। मैं स्पैम करना स्टार्ट हुआ नहीं वो फिर मैं उस हिसाब से करता हूँ ना कि 2 गोली निकले स्पैम में, तीसरी पे एडजस्ट होके फिर गोली निकले। 1 में डाल रहा हूँ। वेट आउटला यार वेट बड़ा करते हैं। अबे हटा ले यार बंदे यार। अरे हटाले क्या होता है भाई, रुक जाओ। Spike down A. One enemy remaining. Mid. अरे जाओ ना फाइट लो ना, 4v1 है। आ जाओ भाई। कौन करता है मेरे? ट्री तो नहीं घुस गया। या नो ये स्पॉन को सो गया क्या? तो बेंच मेरी बेंच वायर अटक रही है। वो मैं लैग हो रहा हूँ। ये कहाँ घूम रहा है भाई? भाई पूरा तो घूम के आ गया, स्पॉन देख लिया कहीं भी नहीं है। सच में भाई। चीचा गायब हो गए भाई। मरेगा अभी, मरेगा होगा कैंपर से। मैं हिलूंगा ही नहीं यहाँ से इसके। कहीं तो हो रहा। 30 seconds left. पता ही था भाई। भाग दिया 120। यहाँ देख लिया मैं। Last player standing. 1 HP वाओ गाइस 1v4 हेलो। अभी हारना थे भाई। 1v4 भाई 1v4। अब मैं चलाएगा। ओ शुभ भाई अरे का यार, मैसेज मैं आया, तो रुको भाई। शुभ भाई रुक जाया कर भाई। और पाजी कितना कौन खेल रहा है? मैं और आर्केड बाबू। यू आर आल्सो अस्कांडे। यस सही बता। खाना खाया कि नहीं? पाजी खा लेंगे यार, शुभ जी अभी खाया नहीं, खाएंगे। बताओ ना खाना खाया कि नहीं? शुभ जी आपने खाना खाया ये बताओ। चलो खा लो हैं, खेलो। अच्छा खेलोगे ना, क्या ही दिक्कत है क्या भाई? पूकी वाली बैंड। अरे आए शुभ जी, ऐसी है भाजी शुभ जी। जेट मिड थी। Spike down B. बेंच ये क्या टाइमिंग बना के निकली यार। जेट मिड है। अबे यार जेट मिड बॉटम। ये निकल जाएगी। ये 31 है। I know exactly आपने खरीदी है क्या? अबे कब की खरीदी हुई है भाई शुभ भाई? पूकी अब की थोड़ी खरीदी है, हो गए 6-7 महीने हो गए भाई खरीदे को। B. One enemy remaining. Spotted thieves. नाइस यार, वेल प्लेड बॉय। Let me just swipe those biometrics. My ultimate is ready. We get a ऑफ pick. मार We दी move ना in. बंदे नु Got it? को मार दी। ड्रॉप देना यार। मौत मार दी ना बंदे नु ताई गो मार दी, मौत मार दी ना। खत्म हो गया। हक दे। अरे हाँ माय बैड, मैं भी खेला था। वाह यार शिव बाजी। टीरेक्स बाजी का क्या सीन? टीरेक्स बाजी का बाजी अभी लैपटॉप का भी थोड़ा सिस्टम पता ही है आपको। 1 वे चाहिए भाई। यूर भाई से नहीं। बुरी हालत है। ओके नहीं हो रहा भाई, नहीं कर दिया। नाइस। Multiple enemies mid. एक एचपी सोवा। ये ले फेंक रो। अरे
Spike down mid. Fake teleport. maybe inside it. नो स्कोप नो स्कोप Careful. उधर ही है। Charges. भाई हक दिया है। ये भी मार गया। Reloading. स्पाइक उसी पे है क्या? नहीं ये पड़ा, उठा लेगा बस। अल्ट है, उठाएगा स्पाइक। आना खड़े होते हैं। आजा स्पाइक पे नहीं खड़े होते छोड़ना। हैं। ऊने मेरा की सवारे आ जो दम है सवारा। इजी उधर से आओ। एक्सो में थी भाई, एक्सो में थी। On my intel. Don't give them time to reposition. इतना महंगा लैपटॉप होने के बावजूद खराब हो जाए तो क्या ही बोला जाए। पाजी लैपटॉप ही कह दे। अलग गलत जगह लिया। देखो मैंने जब उसने लैपटॉप लिया था ना, मैंने उसको बोला था मेरे को एसर बिल्कुल प्रेडेटर वगैरह मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़े से पैसे ज्यादा एमएसआई वगैरह ज्यादा बेटर है उससे, अगर इस इतने महंगे सेगमेंट पे जाए है ना। क्या चीज? लैपटॉप अगर इतने महंगे सेगमेंट पे जाए, एमएसआई वगैरह ज्यादा बेटर नहीं है। Get out of my ROG way. हाँ HP नहीं सॉरी अपना Lenovo Cover going out. Nowhere to run. बता ले भाई। भाई 2 भरे हैं जो क्रेजी स्पैमर तो हूँ भाई मैं। Shadows Reloading. मरना नहीं ठीक है। तू भी फके आरती हो मौत मारती। One enemy remaining. Spike down A. अरे यार मेरे में थोड़ा सा बाहर निकल गया। अरे यार भाई मैं तो थोड़ा सा बाहर निकल गया केज से। खड़े टीपी करता फ्री किल था। Hold an area pretty well यार मेरे पास myself. तो आ ही नहीं Make sure to cover the रहे। angles. भाई बहुत क्रेजी मचा रखा वहां पे। जेट भाई यहाँ वेट कर रहे थे, मैं निकला लेट, मस्त 2 किल उठाए। सैक्स पाजी से मिले। सैक्स पाजी यार अभी थोड़ा सेटल हो जाए बैंगलोर में, अभी मिलूंगा उनसे। पाजी आर्केड पाजी से पूछो कि क्या किया दिन में, कहाँ बिजी थे। आर्केड पाजी क्या किया दिन में, कहाँ बिजी थे, शुभ पाजी पूछ रहे हैं। वही कूलर धो रहा था सामान का। पाजी कुल्लड़ धो रहे थे। कूलर नाइस मैच भाई, नाइस वन। दोनों मेन जाओ मिड जाओ। One enemy remaining. अरे जेट भाई एक किल तो लेने थे। गिल्ट बैक भाई। I need a drop. भाई जेट भाई ने सब प्यारे मारे ना दोनों पर। लाल टमाटर, आह टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। आर्केड बाबू मैंने सोच लिया, मैं वो नहीं लगा रहा अब। पहले मैं वो लगा रहा था ना, खुद की स्ट्रीम लगा के छोड़ दे रहा था। क्या मैं लेजेंड बंदे आएंगे नहीं आएंगे ना। वाओ जब नहीं लगाता आप तो कितनी देर में नहीं लगाता। तेरी तो साले जा रही होती 15 की वॉचिंग। पता नहीं कैसे जाती है। cover going out. बिल्डिंग डाउन है। अरे मरवा दिया ने मेरे को। Cover going out. चिल One enemy ओह भाई remaining. क्रेजी। ऑफ उठाइए ऑफ। भाई मैं ब्लाइंड मार देता अभी। आप लेना बस। Hey, बंदा I वैसा। need a drop. Link आहा break. टमाटर बड़े मजेदार। उफ अब मैं ए पे ऑफ चलाऊंगा। मैं वही सोच रहा हूँ क्या कर रहे थे। कुल्लड़ लस्सी पी रहे थे। अरे ओए तो अल्ट मार दियो ना। कुल्हड़ पिज्जा पिज़्ज़ा। आर्केड भाई आपके लिए अल्ट कर रहा हूँ, कह रहा सीधी अल्ट मार देना यहाँ से। I will rip the light from them. मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बस। यार बट मैं तो मिड को ऑफ लगाने आया था। नोई बी तो मार दे यार अल्ट यार, इसको कर दे। Blinding. मार दे सोबा, मार दे ठीक है 2 किल। अरे यार, अरे फक व्हाट द फक। अरे यार Spike down B. छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा।
मेन बोथ दोनों मेन में एक One 87 enemy remaining. 80 टैग है 80 टैग लास्ट बचा लिया यार बच गया Shot that. ये ले गॉड प्रोवाइड गॉड जा रहा हूँ भाई सो भाई हील दे दो वो हील दे इसको यार योरू को योर भाई आओ मार मत कर यार हील तो बच गया गंदा भाई तीरंदाज आती नहीं भाई तीरंदाजी नहीं आती इसको मिड से आएगा देख के आजा डोर बंद ये ले अर्जित भाई और ब्रा उतार कर हैं हैं और ब्रा उतार रही है बाजी आए आपकी ब्रा उतर रही है बाजी ओ नहीं पाजी मैं पहनी नहीं आज ऐसे थोड़ा रिलैक्स फील होने का मन था तो मैंने आज अपनी ब्रा पहनी नहीं मैंने सोचा आपके मुंह पे बांध दूं फिर आपके साथ बीडीएसएम भी तो करना है ओ सॉरी मैं पर्सनल में कुछ लिखता हूँ रिप्लाई दे देना बाद में ओके शुपा जी मैं देखता हूँ थोड़ी देर में Shadows traveling. कहाँ आया कवर आज मैं भी फेंकूं यार Cover going out. और ले रहे हैं बी का ये कौन चला गया ओए स्पाइक ड्रॉप फर्स्ट पे कहाँ से मेरा Grounded. My ult's ready. ओए 120 सोवा 120 ट्री से आएगा रेना बॉटम मिड प्री ए प्लांट Blocking sight. सोवा 120 है ए यार 120 पे टटी कर दी एक गोली भी नहीं लगी 120 Stay नाइस down. One enemy remaining. ओ नाइस वन ओ भाई ऑफ Last round in क्रैश the हो गया half. दे दो थैंक यू ये ले मैं सारी बंदूकें खरीद लूंगा गाइस एक एक बंदूक उठा के एक किल हो जाए मजा आ जाए क्या कह रहे हो इसकी माँ की चूत भाई क्या वाइड चली गई है फक यार एक्सपेक्ट नहीं किया मैंने बड़े भाई बहुत वाइड चली गई यार आराम की दीनी मैं जिंदा हूँ हाँ अबे मैं आ रहा हूँ I know exactly where. गन पड़ी है मार्केट में देख ले दो गन ड्रॉप कर रखी है मार्केट के राइट साइड में जिगल मार जा राइट पे दो फैंटम माइंड ना दिया ओ पैंच ये देख रहे हो ये आ रहे हैं पैंच नाइस शॉट मार दिया आराम One जाते enemy remaining. डिफॉल्ट होल्ड कर सकता बी पे बी होल्ड कर ये 148 है कैंसिल मैं यही है अबे गन लगा के फेंक के मारो ओए शॉटगन मारियो मर जाएगा Spike planted. तो ऐसे नहीं चलते मारो चलते ड्रोन से ऊपर के लमाओ डेड हो गया भाई ये तो अरे ड्रोन कर भाई Reloading. द्रोणाचार्य You failed. गन फेंक गिर दी थी साढ़े चैट मैंने अब पढ़ी है तेरी गन फेंक वाली मार भाई Revealing area. Switching sides. Match point. टारगेट भाई गन फेंक दूं या मैं वैसी बहन जो 4 गन्ने खरीदी थी वहां पे वो एक ही वाइड पीक पे मर गया I need this. खुद तोड़ते रहेंगे ओए जाना मैं छोड़ता आता हूं ना यार Need healing. स्पाइक रह गया भाई जेट भाई स्पाइक लाएंगे No. वाह यार मुझ पर छोड़ो ना स्पाइक वाह यार जेट भाई No. क्रेजी हो आप तो Hey, टमाटर बड़े के पास वह टमाटर spikes here. यूर भाई टीवी करूंगा यहाँ पे Here. भाई Tell that to get up. चलो मैं टीवी करता हूँ फिर पिक करना मैं तो यहां हूं यार भी करूंगा ऐसे ही ये Turret out. करते हैं ऐसे Cover going out. Revealing area. Shadows traveling. भाई दोनों ट्रिप तोड़ी भाई मैंने मादरचोद बंदे अंदर नहीं आ रहे Spike down A. भाई मैं आया One round. साइफर को दोनों ट्रिप मेन पे थी गाइस साइफर को 97 हेडशॉट मारा मैंने
भाई दोनों ट्रिप मेन पे थी, मैं दोनों ट्रिप तोड़ी पर बेंच इतने में माहौल बना दिया उन्होंने पीक करके। यार शिट शिट यार 13-0 जीतना था। हाँ, एक है कितने? अरे दोनों ट्रिप मेन पे थी, दोनों तोड़ी मैंने। है ना, वही बोल रहा था। ए, आओ भाई फोर्स करें। यार 100 प्लेन भी Killed. वाओ रेसा से तो लमाउडेड कर दिया मैंने आरएनजी पे। 101 गोए अमन कैन ओमन 1 एचपी है। बस स्मोक दियो मिड का। आ रहा है राइट पे स्पॉन पे था स्पॉन पे। Carrier is dead. ओए Spike मारनो down में। A. अरे बड़ा खत्म है तू तो। Last player. मेरे पीछे आ गया। क्या देख अरे लिया? मादर भगत तेरे लिए स्मोक मारने के लिए रुका था। ये मार देता पहले पीक करके। मिड का बॉटम मिड का स्मोक मांगा भाई I got तुमने। the spike. अच्छा उनकी आवाज अच्छा मेरे को नहीं आ रही है उनकी आवाज। अब इन चूतियों ने बॉटम मिड का स्मोक मांगा तो मैं रुक गया, नहीं तो मैं पहले स्पॉन पीक कर देता। भाई देखो तुम्हारी खुद की गलती से मैं कहाँ मरे। जाऊँ तुम बताओ। कोई निकाल यार। Blocking sight. वॉइस वो हो गया ग्लिच 30 seconds left. कड़िच। अबे यार इन्होंने खुद बॉटम मिड का स्मोक मांगा तब करके मेरे को रुकना पड़ा, नहीं तो मैं पहले पीक कर दे रहा था। इसको देख कड़ेच को लठा ये रिस्पॉन्स से मरा। 10 seconds left. अरे यार ये वाला बॉटम मिड का स्मोक ना मांगते, मैं पहले पीक करके पकड़ लेता उसको, तो मेरे को रुकना पड़ गया। बहुत देर बाद आया था वहाँ पे। अरे नहीं मैं यहाँ रुक गया ना, फिर मेरे को लगा ऊपर आएगा क्योंकि वो यहाँ से निकल चुका था। टीम मार के ऊपर ही आया वो। बाद में आया ना बेंचो, जब मर गए तुम। अबे नहीं यार ऐसा नहीं है भाई यार ची हो गया, तो ची हो गया, ची हो गया। कड़ेच को लठा अगले राउंड का रख लो भाई, अगले राउंड का भाई रख लो। क्यों फोर्स कर रहे हो? अगले राउंड का हाँ रख अगले राउंड का भाई तुम भी लो। आओ। हाँ बस ठीक, बी चलो चलो। ए पे साउंड करके आ रहे हैं फिर। Scanning ahead. कर दे तो बिना स्मोक के घुस गया माई हुआ। Cover going out. अबे यार ओए स्मोक दे दे भाई मांगेगा, मैंने बोला भाई। हाँ यार हाय वो हाय एरिस मिल गई अब मेरे मैं रोटेशन पे मरूंगा। जल्दी एरिस मिल गई मेरे मैं टीपी करके आया भाई, मैं नहीं रिस्क ले रहा। Shadows traveling. ओमन तो 1 एचपी है। हाँ अच्छा उनका Light planted. ठीक है लैम्बो टेबल can be flanking. Okay, careful. Flank. Shadows traveling. मैं क्या कर रहा है एक सिटी एक में एक मिड है एक सीटी वो सॉरी मेन। और रिक्स लेन बोले को दोनों Turbocharged. दोनों बोथ साइड One enemy remaining. Team Ace. जी भाई Attackers Die. win. Some boots. टीमर है क्या House है of यार? यस सर। स्ट्रीमर है क्या? चलो भाई मैं चलता हूँ तो खेलो आए तू खेलो आई मीन यू खेलो आ रहा है इजियो तेरे साथ डुओ करने आए डर लग रहा मुझे, डर लग रहा बिग नहीं बॉस। भाई, 3 एंट्री है मेरी और पॉजिटिव केडी पे हूँ मैं जेन्युइन ये दोनों बहुत बढ़िया खेले भाई, अपना जेट और योरू क्रेजी मचा दिया भाई। हाँ तो तेरी सारी बातें हाँ पर भी क्या कहेगी ये। Match found.
the beginning. I am the end. Match found. गई 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 DX भाई आप फिर आ गए यार। अरे भाई तुम्हारी स्क्रीन देख रहा था भाई। अरे तुम डू कर रहे थे ना? हाँ वो कर पता। हाँ नाइस भाई। I am the beginning. I am the end. पानी बोल रहा हूँ मेरी पानी बोल। कड़े चुकुला ठा जय सार्किट बाबू कड़े चुकुला ठा। अभी एक डॉज हो गया मैच उसमें वो हीरो आया था एक अभी पिछली गेम वो मैच बच गया मच्छर मायू का। तो अभी एक हीरो आया था कह रहा आई एम थ्रोइंग फ्रॉम इमॉर्टल टू आयरन सो इफ यू वांट यू कैन डॉज। थंबनेल तो लगाया नहीं अभी लगाऊंगा ना अभी लगा दूं क्या अभी लगा देता हूँ मैं 1 मिनट दे। WhatsApp what Do not let them plant that अरे spike. एक बार मैं Radioactive WhatsApp और explosions YouTube are स्टूडियो दोनों खोल दिया ठीक है। अगर मैं फट गया तो बचा लियो बता दियो। ओए मैं तुझे क्यों स्ट्रीम स्नाइप कर रहा हूँ भाई? वाह यार कह रहा मैं तुझे क्यों स्ट्रीम स्नाइप कर रहा हूँ। इसको एडिट करेंगे। हाँ वैलो खोल के बाय कर लेते हैं ग्राउंड फिर करता हूँ थंबनेल अपडेट। किधर गया अरे मैच हाँ तेज बहुत चल रहा भाई मेरा लैपटॉप। cover going out. Yeah. Lights up. Reloading. चल यार Shadows traveling. मेरे से देख के One enemy remaining. They're concussed. ओह नाइस। अबे नाइस नहीं हो रहा है यार। Reloading. It is finished. Reloading. Feel their panic डाउनलोड rising. करना है Drive और it अबे तेरी into चैट them. नहीं खुल रही यार कड़े साढ़े। अबे यार मादर चोद इसकी भैंस की टू मेरा व्हाट्सएप क्यों चूज जाता है यार। एक मिनट भाई बाय कर लूं पहले। I will be their nightmare. मैच बाय 3 बंदों ने बाय 2 बंदों ने बाय नहीं किया। Cover going out. No charges. भाई जी Shadows traveling. दोनों बी में One enemy remaining. क्रिएट की है मुक में होगी। नाइस
Everyone note down your observations, then let's run it again. No. हाँ खोली, अब जाके खोली सारी चैट। डीसी भेजू क्या? नहीं नहीं, खुद की बस 1 मिनट। स्मोक्स बाय कर लो। एक क्रॉस, 2 क्रॉस। Go cook. स्मोक में थी यार, fuck। और डीप स्मोक। हेवन स्मोक में हेवन। अरे भाई Last player standing. बजा One down. 6 I feel something over there. Can't place it. Like us, but different. अरे वेंडल्स की देना कोई। ये थोड़ा स्किन का यार है टॉप। कर इधर दिया इधर change। थोड़ी सी पीछे आ गए। थैंक यू तुम में से लास्ट में सोवा कौन था? नहीं सोवा कोई भी नहीं था यहाँ, चला गया वो। लगे क्या? नहीं यार Placing ये smoke. तो गलत बात है। Decoy. क्या हो गया भाई, पसंद आ गया था क्या? लाइल Cover going out. एक क्रॉस। को बचा ले ओए। Blinded. Blinded. आ जाओ बचा लो। अरे वो खुद को फ्लैश कर रहा है तो बचा लो। Reloading. Time to hunt. Cover going out. Spike down. साइफर A. है ऊपर। हेवन ड्रैगन। ऊपर ही है। नहीं करना था। One enemy remaining. अभी जा रहा हूँ सीटी। नहीं मत जा चल नहीं मैं जाऊंगा। यार बचा लो मुझे। ये क्या आर्गुमेंट है, मैं जाऊंगा। बचा लो मुझे करवा। यार मैं तो वेंट्स बैठ रहा हूँ, ठीक है। आप ट्रॉली में डाल सकते हैं। मेन पे स्मोक ठीक है डाला। अच्छा तूने अरे छोड़ दे मैं दूसरी साइड जा रहा हूँ। तू होल्ड कर लिया यहाँ पे। ठीक है। स्पाइक तो गया। 30 seconds left. अरे जाने दो, जहाँ जा रहे हैं मार देंगे। मैं बहुत स्क्रीन ये सही। फिर Ah, turret down. रुक जाओ हेवन है, के हेवन है। जाकर डिले डाल दे भाई। 10 seconds इसको left. मेरी याद क्यों आ रही है? पता नहीं भाई। तेरे 100 में। Bomb grenade out. They're all dead? I have more tests. अरे भाई तेरे को याद कर रहा है अर्गड़ भाई, देख ले। ये फॉर यू भाई, ये फॉर यू। Yeah. Thanks. I need this. स्काई बाय करेगा? Thank you. Hey. Don't overthink it. That's my job. No. No. Hey. No, there. Hey. No. We can Shadows. कुछ स्मोक कर दिया मैंने। Spike down. B. हील है? ये क्या था भाई? भाई One मार दे। enemy remaining. भाई मेन। अरे मेन कहता रहा हूँ। A. भाई इधर आ भाई, सब्सक्राइब करो भाई काफी। ओके। Look, hey. भाई उनकी जेट ने हक दिया। मेरे को भी जाने दो। उनकी जेट ने हक दिया मेरे पे। No. भाई रिकॉन फैंटम तो है, रिकॉन फैंटम तो है। ओए तेरे से स्मोक मांगूंगा Help a एकदम, है girl ना? out, would ya? हाँ डन। वेंडल ओमन। I need this. जेट डैश करती है, देखिए। स्मोक का कॉल जल्दी दियो। ठीक है यार। स्मोक का कॉल जल्दी दियो अगर चाहिए होगा।
दियो डाल दिया। मिड स्मोक डाल रहा हूँ। अरे फक में फ्लैश कैसे हुआ? Feeling safe. मैं फ्लैश कैसे हो गया? यहाँ फ्लैश मारा उसने। भाई तुम लोग क्या क्या Safe over there. भाई बैठे पड़े हैं, वो बैठे पड़े हैं, तीनों बंदे बैठे पड़े हैं आराम से। Too easy. रेना साइड है। भाई साथ में चलते हैं ना। चल। गन लेने दे। Spike planted. ओए 140 अरे यार 50 हील हुई होगी। स्टेयर थी 140। Time to jump. यार मैं मिनिमम देखते हुए डिंक मारा, पता है उसको। मैं देख नहीं रहा था स्क्रीन पे। देखियो राइट देखियो। सिटी आएगी प्रॉब्लम। वो आगे साइड आगे साइड आगे देना। देना साइड। One enemy Nice. remaining. मैंने Last कहा player standing. मैं चिल ओवर हील हुआ। वही है ना डिफॉल्ट टैप कर पीक ले नहीं भाई यार क्यों मैं चूतड़ है क्या रेना अपना। ओए तीन बंदे यहाँ बैठे पड़े हैं, देख रहे मरते भाई नहीं आ सकते थे ना, स्मोक ऑफ करके ब्रीच फ्लैश मार रहा है, वो यूटिल मार रहा है भाई। No. आफ्टर शॉक यहाँ मारा था। अरे बाबू आफ्टर शॉक वगैरह आया था उसका, फ्लैश में उसने दोबारा मार रहा। वेंट से ही मारा था। स्टन आया था वेंट्स में। मैं बक्की पे खेल रहे हो। Time for a Field test. ये पे क्या Cover going out. Yeah. Not bad. सही में आ जाओ। Cutting through. जेट ऊपर है, हेवन पे वन हेवन। Spike planted. मैं रुक के अल्ट खोलता हूँ साइड पे जाके ना। I'll handle this. एक मेन है। Many enemies, eh? Shadows Hey, guys. traveling. Enemy spotted, eh? Stay in sight. Looking for me? Reloading. One enemy remaining. बचा लो। इजी बॉयज। भाई पैरानोया बढ़िया था यार। यस सर। इसको थोड़ी पता है कब से ओमन खेल रहा हूँ मैं। वो स्मोक मत किया कर एंड साइड एंट्री में स्मोक है। वो स्मोक मत किया कर एंड साइड एंट्री का स्मोक कर ए पे है। अच्छा ये वाला कह रहा है क्या? अरे नहीं वो योरू एग्रो खेलने गया था तो कर रहा था मैं वो। अरे वो प्यारा स्मोक है, अगर कोई उससे सपोर्ट पे खेले बहुत प्यारा स्मोक है वो। शॉल्टी खरीद लेते हैं गाइस। गाइस मेन या हेवन वाली लाइन पे स्टन आएगा, देख के थोड़ा उस हिसाब से खेलना। मैं हाँ यार। Cover going out. Enemy spotted. A. ओए दो मिनट है। मिड स्मोक कर रहा हूँ। Shadows traveling. अबे हटा ले इसमें क्या। Blinding. भाई यार मैं ज्यादा क्लोज चला गया, वो शिफ्ट करके नीचे उतर। फक एक घुस गए। ब्लाइंड थी यार, वो ब्लाइंड थी मादर चो। कम ऑन ब्रो, विद थ्रोइंग नाउ। मैं जो उसकी शेरिफ से मरे हैं दो लोग, वो गंदे मरे। Spike planted. Swarm grenade out. Swarm grenade out. अरे वो बाय नहीं है। Feeling sight. साइड देख कर, साइड देख। Cutting their vision. One enemy remaining. ओ ये रहा स्मोक में। पकड़। My turn. नाइस, बढ़िया राउंड। Oh no, you don't deserve my inventions. अच्छा खेले। Remember, your weapon is only. वो स्मोक जब आगे स्लो खेल रहे हैं। हाँ वो तो है ही है। अब जैसे लास्ट राउंड स्लो था काफी, एक बंदा यहाँ था, 2 मिनट थे, तो अब वो बढ़िया था स्मोक। भाई अब इनिशियल मेरे को 2 सेकंड में जेट डैश का नहीं इन्फो देंगे तो भाई वो तो मैं तो स्मोक भाई डिफॉल्ट उस हिसाब से कर रहा था ना। वो देखना केजी की साइड पे खेल रहे सारे। मैं साइड पे खेल रहा हूँ। सब है वो
ब्रीचल आएगा, ब्रीचल आएगा। हैव अ फीलिंग ब्रीचल आएगा। मिड ब्रीच, ओके। Cover going मिड तो out. भी हो रहा शायद। स्मोक के राइट पे गैप है। कुछ नहीं हो रहा मिड टू भी। स्मोक के राइट पे गैप है मेरे मिड वाले में। भाई योरू तू अपने टिक्के खेलेगा नहीं खेलेगा? नहीं यार नहीं। जेट है। चुन्नी में खेल रहा हूँ थोड़ा आराम से, गेम खेल रहा हूँ मैं। हेलो, अरे सॉरी ये मिल गया उनको शायद। वेंट हो सकता है। आ गया भाई, 3 कॉल। Spike planted. Last player standing. रैंप साउंड आ रहा है। कोई दो रैंप सेव कर ले करना है। जेट बहुत कुत्ती है उनकी। राम राम लाडर क्या ले। योरू तेरे को पुश करना है तो मिड खेल ब्रो। मैं जब ब्रिम खेलता फाइट हूँ से है ना मिड खेल। एक और वहाँ एंट्री push एक कर दे। रैंप साइड पे बैठ मैं? जाता हूँ। अच्छा हाँ आजा भाई। भाई ये देना यार। ओए स्मोक मांगूंगा तेरे से यार एकदम, है ना? किधर चाहिए किधर वाला? अच्छा मिड वाला। ओके ओके ओके। तू क्या साउंड सुनने देना। कॉल दियो डाल दूँ। कोई साउंड तो नहीं है। Cover going out. साइड है, फ्लैश तो साइड। चल पैरानॉया मार रहा हूँ। Stealing sight. Charges. एक एचपी है। One enemy remaining. Spike no. down A. एवन होगा मिड बुट से आ रहा होगा ये। फ्लैश। एवन देखा। अल्ट उसको Heaven दूर smoke से कर रहा हूँ। चाहिए। Shadows traveling. नाइस वन, गुड राउंड। All right. भाई ईमो बढ़ी है भाई पे। एपिसोड 9 अभी कौन सा एपिसोड चल रहा है जो अभी इसी एपिसोड का है I क्या? need a drop. यस भाई। हेलो आदि भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। मैं जब हम खेलते हैं तो ओपोनेंट प्रो बन जाते हैं, हमारे टीम भाई, के लिए वो ड्रॉप नूब। मांगे भाई। अरे ऐसे ही होता है कोई बात नहीं। रेना ड्रॉप मांग ले भाई। रेना भाई बाय मांग लो। अरे मैच में तो शील्ड भी पिछले राउंड की है। हाँ मांगो रेना भाई मांगो। मांग ही नहीं रहा भाई। अरे हो गया Get out of my way. पैर में। Shadows traveling. Blinding. साइड के साइड। चोद कितना गंदा whip है, कितना गंदा whip। Safe Spike teleport. planted. Time to jump. Last player standing. अरे कौन कहाँ है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक साइड है। Placing alarm bot killed my bot. Team Ace. नहीं यार छी भाई, क्या हग रहा हूँ मैं। कम ऑन Last round before the switch. चल खेल रहे Spend अपन। your money now. वैंडल उठाना वाला बैड डिसीजन मार्केट। मांग ले, मेरे को जल्द दिला दे। Help a girl out. Need a drop. Thank you. कुछ ले लेता हूँ शॉर्टी मैच। कोई स्मोक मांगूंगा यार, है ना? हाँ रन कौन सा आगे वाला चाहिए, क्लोज वाला चाहिए? क्लोज वाला वो फास्ट आती है जेट। हाँ अगर मतलब चाहिए को बताऊंगा, रुक जा। हाँ ओके बी वाह भाई। स्मोक कर रहा हूँ। Cover going out. Watch them. बहुत इंस्टेंट मारा बैंक के लॉर्ड ने। मैंने किया था अल्ट को। साइड बैक साइड ब्लाइंड है बैक साइड वाले। Spike और- down B. One enemy remaining. मेन तो शायद। अबे वो हेवन नाइस Initiated. भाई मेरा अल्ट का इंस्टेंट तोड़ा मादर वागत Switching ने। sides.
हाँ वही शेरिफ से बड़ा गंदा मारा उसने। अरे मेरे को वहां पे फैंटम होते ना मार देता, मैं वैंडल लेके जो गलती करी ना। हाँ पुश तो आ सकता है, लड़की एक बंदे को जाना चाहिए था इन्फो के लिए कि पुश आ रहा नहीं आ रहा। ब्रीच जो टिल फट रही है मेरी, और तो सब ठीक है। Need healing. Need healing. Do you smell? अरे पिटोगे तो मेरे पास आ जाना, हील दे दूंगा। मरना मत पूरा। ठीक है भाई। Cutting through. Cover going out. Shadows traveling. Enemy spotted. Reloading. ठीक है One enemy मैं क्यों गन गिर रहा हूँ, कहाँ है मैं गन कहाँ है? मैं जो भाई मेरे पैरों में एक स्किन थी, मैं स्किन उठाने के चक्कर में गन गिर रहा था, ठीक है? Planted. मैंने जी दबाया है ना। Reloading. यार मेरे पैर में गन पड़ी थी आर्केड, Trust each other and we'll be fine. किसी की गन गिरी, वो थी क्या कहते हैं, जीनोफैंग थी। रुक मैं देखता हूँ, जीनोफैंग थी पक्का। Need healing. जिनने स्काई ने उठाई मेरे पैरों से जीनोफैंग, मैंने जी दबाया था, मैं गन मिल जाएगी। मैं नहीं भाई। जीनोफैंग नहीं मिली भाई। यहाँ टीपी करूंगा। Time to jump. रुक जा वो। Hunt. अरे ब्लॉक नहीं। Get concussed. ये लो मारो, अरे Placing sentry. लेफ्ट राइट भाई ये मेरे साथ नहीं Spike down घुसते, B. निकल गए भाई। Last player standing. Out. अरे यार स्काई भाई फ्लैश पहले कॉल दे दो ना बस एक, कि फ्लैशिंग। अरे डब्ल्यू हो गया एकदम से, Won't happen again. तो घुसना ही चाहिए था। अरे हाँ भाई मैं पहले घुस गया आपके फ्लैश से। Yeah. मैं बैठ यूरू भाई ने फ्लैश मारा था ना, मुझे लगा अंदर ही होंगे, डॉज करके अरे बस। यार ये लेफ्ट वाला स्पॉट नहीं हुआ यार, ये ना यार है ना। हाँ कोई बात Cross fire नहीं, था। अनलकी हो गया, Yeah. कोई नहीं। साइफर है उस साइड पे, देख के जाना। Yeah. तो स्लो खेलते हैं बिल्कुल। मैं स्पाइक लेके मिड आ गया हूँ मस्त। मिड हो गया स्मोक। अबे Decoy. Hey, I need healing. Enemy spotted. I need Hey. healing. चलिए भाई। प्लीज वॉक होल्ड करो। Traveling. Reyna killed. I have the spike. लैंड था कर दिया भाई। ब्रीच किया वहाँ। Enemy spotted. Enemy spotted. A. आजा भी आजा। Cover going out. वो पैच क्यों कूदा मैं? Alarm bot out. हेवन का प्लांट दे रहा हूँ, लेट हेवन आ जाना मस्त। ए प्लेयर है। Miles ready. Spike planted. There. There. अरे मैं मारता रहना। नाइस। गन से गन इन दिखी मैच। Won't happen नाइस again. यार केजी, बढ़िया राउंड। What do you need? केजे भाई ने मस्त यहाँ पे रेना भी मारी, ऊपर हेवन पे वो ग्लोव भी मारी भाई, क्रेजी मचा दिया। नॉर्मल गंजी होता ले ले ब्रो। No. Gun here. Gun here. स्लो ही खेलो, निकलता राउंड। 2-1 Cutting through. ऐसे रे। Decoy. Shadows traveling. Shadows traveling. Stealing sight. ऊपर रैंप ऊपर रैंप।
70 किलो सब देख रहा हूँ Plant is back. Spike planted. सीटी भाई, सीटी से गांड पे गोली। पास आएगा बस वो लेफ्ट राइट दोनों से एस्टन। अरे यार सीटी से 80 मार गया मेरे को यार। बे Fuck। भाई कीजिए व्हाट द फक भाई। मैं होल्ड करता निकाल रहा था मैं। ये मुझे लगा स्पेक्टर है यार। भूल गया बुलडॉग के हाथ में। भाई बुलडॉग का जज बना दिया भाई। I survived obliteration. I will survive them. अबे यार मेरा एक मैं स्मोक थोड़ा भाई कीजिए और उठा लियो, अल्ट आ जाएगी इधर। प्लांट वेंच कोई और करे ना, मेरा टाइम ले पहले निकाल अरे यार दूंगा। पूरी साइड क्लियर थी, यहाँ से लेके यहाँ आते बस यहाँ बंदे थे। अब ब्लाइंड मार रहा था मैं, ब्लाइंड मारा मैंने। मतलब वो 50% साइट नहीं है वो ऊपर वाला हाँ तो मुझे लग रहा है खाली होगी ना, बस तुम्हें 5 बंदों की साइड देखनी थी। अरे वो छोड़ ना, ऊपर पैरानोइड की कोशिश करियो यार ना। हाँ ठीक है राम पर ना मैं Yeah. लो है और बता रहा हूँ अल्ट कर रहा हूँ। ब्लाइंड जिंदा बचो जिंदा बचो जिंदा बचो। नाइस वन। एक और हेवन। डेड। सेफ किल मैं बना रहा हूँ। तेरा प्लांट है, लेट आ ठीक है, गई, मैंने लेट आ एक गई। सीटी मेरे को पूरा वेट कर, लेट आ। One enemy remaining. Last player standing. अरे यार फक में तो थोड़ा अब तो डिफ्यूज कर देगा ओए। हाफ हो गए Placing swarm grenade. Swarm grenade out. स्पैम भाई। हो गया मतलब वो कर दिया उसने इतने में। My burden. ग्लो का रियलाइज नहीं हुआ, बस ग्लो का रियलाइज नहीं हुआ। स्मोक आ जाएगा रे। Won't happen again. ग्लो काम मेरे हेवन पे मारी थी मैंने। I need a drop. कम ऑन, मेरे को पीक कर लेना चाहिए था वहां पे। मैं थोड़ा Thanks. मैं था मेरे पे आएगा पीक। क्या अजीब सा ही था, मैं अजीब ही बैठा था। यहाँ बैठना चाहिए था, बैठ रहा था। सामने वो यस मैं Cypher अल्ट है। कर रहा हूँ। हाँ आई ट्राई टू टेक साइफर। That's my job. चलेगा। Time to shadows. Get out of my way. Watch them run. कैमरा Blinding. बैक साइड है, डब्बे के पीछे जाऊं Turret out. बॉम्ब लेके आया। भाई हेवन देख लो। I know exactly. बॉम्ब लेने गया था ब्रो, थोड़ा जरूरी था। अरे यार बस मुझे कहते साइड में यार। आड़े पे क्या फाइट यार। देख कर है, राइट आ गया क्लोज, एक मेन आ रहा है। देख लेना। Cover going out. अरे हक दिया मैं। फक हेवन दो ड्रॉप स्मोक में है। Precise. कुत्ते की तरह मार, कुत्ते की तरह। पीछे आ रही, पीछे आ गई। नाइस क्लो था ही नहीं। ब्यूटीफुल। और वहीं है साइड पे बी जा सकता है इजी। देख ले सुबह खेलने दे। बढ़िया खेल गया। 30 seconds left. भाई क्या खेला है, क्या खेला है। Placing sentry. भाई झूठ बोल दिया हमने है ना यार। Spikes down. Alarm bot out. वो भाई असली स्कैम आर्टिस्ट। अरे मैच से हाइड हो जा ना, मेन से हाइड नहीं है ये, मेन से हाइड नहीं है ये। भाई ये मेन से मरेगा यार, पर नहीं आएगा वो क्योंकि वो हाँ Target destroyed. Found them. Killed my bot. भाई मैं मैं कहता हूँ सॉरी। एंटी रे चल लास्ट मोमेंट हो गया, कोई नहीं। थोड़ा सा ये यहाँ भी बैठता ना इधर से, ये उसको पूरा वॉक अप करके आना पड़ता, बहुत क्रेजी एंगल हो जाता।
ठीक है अनलकी हो गया। मैं बहुत हग्गा किया भाई, वो क्यों क्या स्प्रे था वो मादरचोद, इतना टट्टी लैंडी स्प्रे। them to strike. Need a यार drop. बेल्ट मार सकता हूँ लेकिन तुम फायदा उठाओगे क्या? फायदा Reloading. Hey. हम ब्लाइंड जहाँ पे तेरे को बंदा दिखेगा मैं ब्लाइंड दे दूंगा। और ब्लाइंड अबे हाँ यार ब्लाइंड कहाँ गया मेरा? ये ले Yeah. चल। कन का सकता उसका वो Cutting हाँ through. ब्लाइंड दे दूंगा मैं, तू चल आगे मार। I'll handle this. Here. ब्लाइंड है। Many enemies. तीन रोटेट करें रोटेट अब मेरे ऊपर Reloading. Gun here. सेफ प्लांट कर रहा हूँ। हाइड हाइड हाइड। Spike planted. Last player भाई standing. पीक नहीं है। अरे मैं आपके अच्छा ये सेफ प्लांट है। Placing swarm grenade. फोड़ फोड़ फोड़। Swarm grenade out. रेडी की हुआ। Turret down. ओए My ultimate is ready. अरे यार बाद में लग कर ले भाई यार, टीम मर जा रही है। तो या तो थोड़ा स्लो करो भाई, अगर वो लर्क कर रहा तो मैं नहीं घुसता अरे ना सुनो, फिर। सुनो, इतनी जल्दी प्लान मत करो। अगर प्लान करो तो सिर्फ टाइम के लिए करो, फाइट मत करो यहाँ पे ना इस जगह पे। पीक दोगे तो मर जाओगे। अरे तो यार बिन बताए लर्क कर रहे हैं यार, क्या करें हम? I got money. Need some. Need a drop. साइट बहुत जल्दी मिल जा रही है यार, अपने यार। को। साइट मिल गई थी ना बाबू, तो प्लांट करना ही था। थोड़ा स्लो खेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Yeah. भाई मेरा ब्लाइंड इतना प्यारा। हाँ दो बंदे अंधे हुए थे। साउंड मत दे यार। Hey. Hey. आ जाओ। Back soon. I got the spike. स्नाइपर होगा तक पे। There. Cover going out. मत दे, अरे मत दे यार, अरे। आफ्टर गेट मारते। हाँ कर देता। आ गया। Cover the charges. एक हेवन है, हेवन हाँ आउट है शायद साइड पे। केविन स्मोक में एक तो Gun here. जाओ साइड में, साइड में। One enemy सिटी remaining. देखो प्लीज आके। जिगल कर रहा हूँ भाई। Shadows traveling. Fake teleport. Time to jump. फ्लैंक कोई है क्या, कुछ है? वो है भाई, एनिमी है। भाई बकचोदी करने दे रहा है यार। Cover going out. नाइस। कह रहा फ्लैंक कोई है क्या? मैं क्या एनिमी है भाई। जो जेट पे हगा किया और जेट ने जो मुझ पे हगा किया, देखा? We going this time? Remember what? No. दोनों बराबर ही हैं। वो भी अग्गू, मैं भी अग्गू। पर उनकी जेट तो टॉप फ्रैगर है और मैं तो बॉटम फ्रैगर हूँ, फिर भी अग्गू। शी Placing alarm bot. I am everywhere. I'm lurking. अल्ट करता हूँ गाइस, अल्ट करता हूँ। Time to jump. रुक जा अल्ट करने दो, अल्ट करने दो मस्त। Initiated. ऑन द टाइम ऑन द ऐसे इको था, नहीं करनी थी। Shadows. कॉर्नर बाबू बच गया। Anyone else? Shadows traveling. You're done. तेरे में स्पाइक। भाई बैक साइड। अरे यार भाई क्या क्लियर कर रहे हो भाई, 3 बंदे अंदर जाके। Taken out. क्या जाट नहीं क्लियर करते ये मादरचोद। योरू साला इतना Kevin. Hawk out. Fake teleport. Blinded. One enemy remaining. हेवन लास्ट। My ult's ready. नाइस राउंड। Sorry. भाई योरू This इतना was हगू taken. भाई, अगर अल्ट किया है तो अल्ट होने तो मतलब Match point. यहाँ से अभी फिर से मरते हैं इसके एंगल पे। बच गए। Play that whistle. कुछ तो क्रेजी है भाई। आर्गन मैच शुरू हो गया क्या अभी? हाँ चल इसके बाद तो मैच ही देखनी। Cower. Run.
मैं आवाज मारूं यार है ना? Time to jump. But I'll handle this. landing in. मारूं यार कुछ Reyna killed. एक ऊपर आफ्टर Enemy spotted here. डेड सीटी स्मोक कर रहा हूँ 1 सेकंड. Shadows traveling. Stealing sight. 80 Spike down B. नाइस बाय फ्री फायर क्या है? एक अंडर ऊपर साइड One enemy remaining. Attackers win. GG. Bye bye. Have a nice day. GG हो गया भाई, मजा आ गया. गुड गेम बढ़िया खेल. एसूस भी आ गया. एसूस केजे भाई ने अच्छा खेला. लर हैंडशॉट थोड़ा नीचे था मैं, पर ठीक है. उनकी साइड से खेल रहा था मैं, थोड़ा उनकी टीम की तरफ से खेल रहा था मैं. गोली वाले बाबा. अरे भाई देखिए फ्लैट 3 तक नहीं है. कितना डी रैंक हो सकता है भाई व्यक्ति? फ्लैट 3 नहीं, मैं मानता ही नहीं. कितना डी रैंक तो नहीं. आ गए देखें, वो शुरू हो गया यू. ट्विच कहाँ है? ट्विच So one-sided, I think, as that last year's indicates. Yeah, Okay, and BLG all-time versus record is Valorant. 4-2, but different rosters, different Sure. players, so on and so forth. But this stage is going to be very different, Mel. You know this. You know, it doesn't matter how many times you face off against each other regionally. There's just something about the global stage that makes these players play differently. And what it is about the global stage is the chance that opportunities you get to play against other teams that aren't from your region. You can learn so much, and it can give you a new perspective on the game, things that you aren't used to seeing, and problem solving for those things that can prove really actionable and really useful when you do rematch against your domestic opponents. For sure, and coming into this rematch now, I think that Let's Wolves have go, actually let's fixed go, a lot of the let's go, issues that were plaguing them in that 0-3 loss versus BLG. You know, playing a lot of these slow rounds, which we have seen, but they were really struggling working against the clock. I also don't think Juicy was playing to his normal capability. A lot of his walk-up lurks were just being hard read from BLG. He's played a lot better here on the master stage, so I don't think this is going to be anything close to a 3-0 type situation. Yeah, and Billy is not the same Billy as before. We see some familiar faces, but they're looking really, really solid. Both of these teams, in fact, have already surprised us. Yeah, and I feel like we kind of have to owe a lot of it to the coaching on Billy, right? I feel like he has really done a lot for this team, and I can notice a lot of strategical improvements from the last time I've seen him on the global stage. So really big shout out to the coaching staff on Billy. Yeah, and I think it's really important to have that coaching staff making sure that their game plans are staying fresh when you're coming into a regional matchup. You've got all these player tendencies that Wolves are going to be aware of, right? When YZ comes out on stage for the first time and is just running down all these teams around the world, that's maybe a little bit less expected. But like you're saying, Wolves are going to be prepared, so they're going to have to keep things fresh. And how much do you read into both of their games versus Sen, Ender? Because they had to both play against the same team. I mean, honestly, like, it's hard to say, right? Because I actually think I was very impressed by Wolves even in the 0-2 loss versus I think both teams put up very similar like performances in terms of actually challenging Sen, especially when it came to Wolves playing their attacking halves versus Sentinels. So even though BLG, you could argue that it was stronger versus Sentinels, I still have them pretty neck and neck. Yeah, I mean, I kind of use Sentinels here as a metric just because, you know, we saw Billy play them when they had already played Wolves, and I think that kind of shows the first match is always jitters for everyone, and so I do put a lot of stock in that second matchup more than anything, and me personally, I guess I'll lean a little bit more towards Billy just because it went the distance. Yeah, and speaking of that matchup, we actually spoke with K9 about the loss against Sentinels in this Omen player moment. 因为其实这个结果多少还是有一点点低落吧，我觉得对队友有一点点亏欠，有点愧疚吧。然后我觉得是在我们预期之内的吧，今天他们的表现。老大强队其实能想得到他们在进攻的时候的协同，包括控图能打得特别好吧。然后我觉得他们确实在桑塞的这张地图上面的进攻打得让我们有一些措手不及吧。因为其实赛前我有说过，就是
在大师赛上证明自己的机会其实不多，我们要珍惜好每个就是来之不易的机会。我们应该会就是调整好自己的心态，全力就是准备好下一场比赛吧。That's what BLG are working with in this post plan. John is readying a pop of this flash. Russia moves in. Oh my goodness! Again, that is ungodly. 我这一次大师赛确实是他们第一次登场，他们的表现也非常的好吧。然后我身为就是在队伍里待得比他们久的算哥哥吧。然后我觉得不管游戏内游戏外，其实他们的自我调节能力都非常好吧。然后我们整个团队也在一起帮助他们，因为我们其实打到现在，整个队伍其实还没有打到最热的时候吧。所以我觉得真正进入那个状态的时候，我们再看吧。然后我们也是就是想着一起进步嘛，一起打好这个大师赛。Now, if K9 is the big brother of this squad, YZ is probably the godfather, Mel, of Billy. I don't think anyone doesn't kind of expect or know what he brings to the squad. I mean, bro just kind of called him Unk in a way, like a subtweet. But yeah, I mean, this guy, we are familiar with this face now. He's been to several global events and we've seen his aggression. And yet somehow, even though I've seen it several times, I'm still shocked by how much he gets away with. It's like murder. It's a completely fearless play style, right? He's going to be able to rifle, he's going to be able to use the up. He's like walking forward into tight angles with an operator towards defense spawn and still winning the fights. Come on. Yeah, and we talk about this every time we see them. You gotta shut him down. And how can he even realistically be shut down? That's the ultimate question, right? Because when I'm looking at this matchup in front of us, the last time they faced off, YZ was up 17 first kills to 6 first deaths. It was a complete difference in the server. And if we're seeing that similar level of performance, it's a Billy run away with it. Well, let's move on to their opponent, however. Wolves, somebody that has already impressed us as well. And the team, Ender, that eliminated Team Heretics. Yeah, really impressive stuff from Team Wolves. I think every time they've jumped into the server, I've just loved what I'm seeing from them. Again, they, on their attacking side, like to play a lot of these slower rounds, play a slower macro style that is built around the really powerful individual talent on this team. It's really a testament to the level of macro they play at to be able to call against an IGL like Boo. Even though Team Heritage doesn't have the most crazy mid-rounds or situations like that, and they do have a lot of firepower, but still, you know, going head-to-head, toe-to-toe with that, someone who's so experienced at calling on the international stage is such a treat. Yeah, I almost see him as like a mini Nat, you know, the emotional leader, the guy in the front. Of course, that is Sufat, baby, the IGL of Wars. He's been such a standout personality, and Jen Lee managed to catch up with him ahead of this match. Hello everyone, Jen Lee here with Sufat BB and also Echo for translation. Now Sufat BB, you and Billy, you guys are familiar with each other. So what would it mean for you to be able to beat a fellow CN team to advance to the playoffs? 其实碎费 BB 你们跟 BLG 是非常非常熟悉的对手了。那对于你而言的话，可能要击败你的兄弟队伍，然后去挺过瑞士轮进入到淘汰赛，意味是什么样的呢？其实我们不管对手是谁，我们都会做好自己，专注好每一把比赛吧。Actually, no matter who we face, we just want to lock in our matchup and try our best to win. Okay, lock in. Good luck today. He's definitely going to be locked in, maybe standing up as well, maybe screaming some obscenities on the other side. But two of the lesser, you know, more calm, cool, collected players, and will be Russia and Spring. What a exciting head-to-head. Oh yeah, these are two of, if not the best smokes players in the Swiss stage so far. A combination of just incredible play, especially from Russia on this Harbor pick on Icebox. It's hard to frag out on Harbor on any map, but he is putting up comparable numbers next to YZ in the server. It's so fun. You kind of just see him dump all of his util and just become a rifle at that point. He's like, finally, I've been unleashed. I don't have to use util anymore. I've done all my waves. Now I can shoot back. And I mean, it's working for him. Is there one that you think has what it takes to overcome the other? Who do you favor in this matchup, Mel? I mean, I feel like the obvious answer is Spring, but we do see him on that lurk roll so much, so I'm kind of wanting to look at Russia as like a primary controller, really. I'm really interested to see what he brings because it's such a close head-to-head. I mean, these stats could not get closer. No, not at all, but I think the way that they sort of frag out is a little bit different because you're going to see Russia with the team a lot. He's not going to do a lot of work, but he's getting like
3Ks consistently. Like, he can dominate a site on a hit, in a post plant, all of these things. Where Spring, again, way more individual type player, playing the Viper on a lot of maps, so solo anchoring sites, and also going to be very effective on the lurks. He might be my favorite Harbor player of all time. Is that? All Yeah, time? genuinely all time. Dang. Yeah. Okay, I that's absolutely- pretty high. High I love remarks. his Harbor so much. And of course, this will also be a very familiar matchup for Russia. And our very own Jen managed to catch his insight on Wolves a little bit earlier. Hey guys, it's Jen with Russia and also Vera for translation. Now Russia, the last time you faced the Wolves, you guys came out on top, but it seems like Wolves have improved a lot in Masters. So what are your expectations for today? 上一次面对到狼队是 BOG 获胜了嘛，但是狼队在来到多伦多大师赛之后，好像进步了非常多，所以你们对于今天的比赛有什么样的期待呢？我觉得狼队确实进步了非常多，但是我们也进步了很多，所以我希望今天可以给观众带来一个精彩的比赛。So Wolves, they indeed made a lot of progress coming to Masters Toronto, but so do we. So what matters is that I hope we can deliver a good match today for all the audience. Okay, thank you very much. Can't wait to see it. They have both improved a lot already. Oh, but ये only one of them translator can कौन make है? it, पता नहीं भाई, मैं to फोन चला रहा हूँ, मैंने playoffs. देखा. And it's time for the results of our MasterCard fan poll because we asked you which one of our squads did you think was going to make playoffs, and you, 53.2% of you, said Wolves. I mean, it's close, but Wolves taking it here sort of, I think, speaks to how much work they've done on the Toronto stage so far, right? I think they've actually won over a lot of fans. Their close game against Sentinels with taking down Heretics. I really like what this team has shown us. I really feel like they've absorbed a lot of the Team Heretics fans at this point. Surely, if they're going to take them down, the team that did it to them, it makes total sense. But I just couldn't be more excited. I feel like it's going to be so close. It's going to be such a head-to-head matchup. And I'm honestly expecting a little bit of grungy street Valorant at times just because there's so many mind games in the rematch. And also, they've learned so much here already. Yeah, the vibes are going to be really important as well. You know, we've even heard some of these players talk about how we had to work so much on hyping each other up, making sure everyone's comfortable. And I know Sufat said that Lysol was super down on himself and he had to try and pull him out of a negative mindset. And that's going to be important on the day, especially, Mel, if you start losing, you know? And I think that's a testament to Sufat's leadership, the fact that he saw that and he's like, hey, this is what I need out of you. He's trying to bring him out onto the stage. And what better time than today to do it against your fellow Chinese brethren on the stage to knock them out, but for your team to go forward. Team Liquid, Mel? Sorry, I just saw the... Okay. You couldn't pick, so you had to choose the NCT China logo? Yes, that makes sense. Because, I mean, one of them is guaranteed to make it. I had to cop out. Yeah, but one of them's You're also allowed. guaranteed to lose, so... Yeah, that's life. Yeah, you know, it's true. It's true. Honestly, I really like Wolves' chances here. I think compared to the last matchup, I'm expecting Juicy to play much better. I'm also expecting a ton of late round situations, and that is where my guy Spring is going to be showing up in a big way. Yeah, you guys were in different directions, so I'm excited for this Has head-to-head. my heart, though. They have my Yeah, I can't wait to see who's going to be right because BLG, Wolves, PRX, and Liquid have already overcome every challenge to make it this far. And if you are in the building, you are about to witness the final fight for playoffs. Day 5 of Masters Toronto starts right here, right now. Nuts' arrival heralds victory for Team Liquid. 1-1 in the tournament. Unfortunately, we're going to be facing our friends, PRX. It feels like they are kicking things into that next gear, on pace to make the playoffs. So many international events, we've been on the same tournament and we never faced each other. I knew that this moment was going to happen one day. I wanted both of us to go to the playoffs. But on the next match, do or die. We don't really care who we're gonna play versus. There is no more second chances, and I don't wanna go home. So I guess I need to take you out.
The most important thing against them, you cannot let them play their own game, and you need to मार्केट में force क्या हो गया? your own रैमा चोली ऑर्डर किए भाई, तेरे को कैसे पता? हाँ, ये हो PRX गया। traditionally not afraid to get weird. If PRX is playing at their best, and if another team is scared of us, we are doing something right. I didn't come here to play one match. Let the better team win. Wolves now find themselves at match point. Here in the Great White North, Wolves are the apex predator. 我们一开始的目标到现在也是一样，就是想打好我们自己的东西，展示好我们的队伍的实力给大家看。City are back in the Masters playoffs. Billy made a serious go at it. 然后作为一个队伍里打得比较久的人，没有打出很好的表现，确实就更让人难以接受吧。我觉得我们应该会就是调整好自己的心态，全力就是准备好下一场比赛吧。因为我经常跟他们说，因为我的 character 我是 in game leader 嘛，我是指挥嘛，所以我会跟大家说，就是有我的声音在，就是不用管任何的东西，执行好我们的东西，站起来，一起站起来，就是大家可以再打得再放一点，再兴奋一点的话，我们就会打得更好。这个就是我们狼队的能量。就是在大师赛上证明自己的机会其实不多，我们要争取好每个就是来之不易的机会。我也相信我们大家也可以一起调整过来，扛过这一次所谓的生死战吧。百分百信心，我们一定要拿下这一场比赛进入8强。就是对我不会想就是我很害怕要回去啊，或者我一定要去晋级。我们不管面对任何的队伍，都会像我们狼队的口号一样 ，Fear nothing。Very well, but there's only room for one of them at playoffs. The gloves are coming off today. They absolutely are. We got BCTCN stage 1.5 in the house right now to decide who is going to be moving forward, and the Omen map select comes on through. We're going to be starting things off on Ascent now. Yeah, and I love watching Ascent. Like I was saying in the matchups yesterday, it's really a map of who can make the least mistakes. Really fundamental Valorant going to get played here, so that's a great first map to start on, and also going to Split for the second. Yeah, Split will definitely be fun to see in terms of what we've seen, especially with Wolves liking that map and going for a lot of these slow plays, the lurks. But in terms of Ascent being in the pool, I just love that immediately we're getting a test map for our duelist players in the server. And it's so interesting because the last time they faced each other, they didn't want to go to Ascent. Ascent was map 5. Right. We didn't even get to see it. And Icebox gets banned this time around as well. You gotta think about maybe there's some game plans, but also the fact that they haven't played in so long. I know they did play against each other, but they had to wait the longest before arriving to Masters Toronto. It's very true. All these things going through their heads, but I don't know. I think I'd be banning Icebox too if Lucius Harbor was an option to play against. Especially considering the performance against Sentinel, it makes total complete sense. On Ascent here, if it was map 5 and the last time they saw each other, and now picking it into map 1, you have to wonder, what are these teams going to pull out? Especially Billy, the team that picks the map. Are we going to see a comp difference? Are we going to see a new player take over that normally doesn't? Anything could happen here on the international stage. Yeah, especially when you have two teams with such a history facing off against each other on the domestic stage. We were talking about it a little bit yesterday with Pacific rematches, but there are so many extra layers of mind games and understandings and playing to those tendencies that you expect from your opposition. And we don't really even have to worry about what they're going to play because they never adopted any Tejo things on this map. There's no many things that they need to change, and Billy have been stupidly dominant if you look at their record on Ascent in the past. Yeah, absolutely lights out, and it makes sense, right? When you've got a guy like YZ that's going to be playing into the server. I stand by it. I think Ascent is just the test map for your Jet player, for your Duelist player. It really is the map where I think your individual skill expression shines more than any other. And the YZ and Juicy matchup, especially that Duelist matchup that we're all looking towards. And I kind of have to wonder, you know, with the history behind Nev and Juicy having played together before, yes, it was years ago, but knowing those Duelist teams, even that can shine, the smallest of details can make or break the difference. Yeah, and if there's one thing that BLG are going to know about Wolves is that on all the maps they play, really, they love taking mid control because they want to make sure they're always keeping their options open for mid-round pivots. This time, Wolves are going to be starting things over on the defense side, so that won't come into play until later. This is the comp that we expect. They are so dominant here. In fact, their win streak is crazy at this point, but Wolves know this. They know how to play against this comp. At this point, they've had experience into it, but I wonder if they're going to make some changes.
the Neon is something that's so unorthodox in a sense, something that Bilibili are familiar with, but something that the rest of us really aren't. We really don't see this, especially in Americas. This is something that's completely different, and I wonder if that will shift their focus maybe towards A main control. Although their mid control is strong, I equally believe that A main is something that Wolves is gonna have to shut down. Yeah, 100%, because, you know, if Bilibili Gaming are just able to just run exec plays with YZ's Neon, you're just not going to be able to really stop this guy from getting into your site. Again, Bilibili Gaming have been very successful when playing post-plant, so don't let them on your site. This match will be the definition of friendly fire. And speaking of fire, bringing the heat in the caster booth, it is Uber and Wyatt. This is the 9th time that Wolves and Bilibili have faced off in the history of their rosters. But this one, of course, has the stakes ratcheted up to 11. They've got to go against each other. Two teams intimately familiar with one another for a spot in the playoffs. So either make it to our next phase of play or go home empty-handed. It was just during that qualifying run for both these teams that they exchanged clean sweep victories. It was Wolves that knocked Bilibili into that lower bracket in their own qualifying game, where then BLG had to defeat EDG, the all-time best team from the region, to even make it here. It's been volatile affairs from both of them. These teams experience high highs and sometimes low lows because they play a risky play style. But both of them at this tournament, on an individual level, have players firing on all cylinders. When you're talking about Spring, when you're talking about YZ, these guys have been absolutely phenomenal. You know, we highlighted Juicy on multiple occasions, starting on the defense side of Ascent. He'll be on that Yoru. It's a risk to pick Ascent because you are giving your opponents that choice of side, and naturally, Wolves say, we will start on the defense side. We will try and build that big lead with this double Sentinel comp to try and lock you out of the map. It's bold from Bilibili to pick this into Wolves, who last played this comp. They know they have to go up against a powerhouse on defense on an already defense-sided map. So how many rounds will it require for Bilibili on this attack to be able to switch over to that second half, be able to close the game out on their pick? We saw Wolves be pretty slow in that game against Sentinels, especially working the map on Lotus, for example, and others, and taking a long time to start to make a move. But even from their coach in the press conference, they've said this change of meta, this move away from the Tejo, is actually allowed Sufat to call some more up-tempo rounds. That's why we saw this unleashed Wolves against Heretics. It's fast-paced play. They got in their face constantly. So we are watching two teams in the middle of an evolution now in the crucible of this tournament. Everything on the line here. It's been rare. We've had two teams from China in the playoffs bracket. No one expected Wolves to be in this position. And they might be able to make it against all odds, defying all of those expectations here. Time to descend into beautiful, inscrutable Chinese Valorant, folks. Make some noise, Toronto. Let's get this one started. Let's go, match starting. Early you have BLG all stacked up, headed towards this B site. There is one kill trip towards Logs with two defensive players entrenched in the site, ready to anchor. Starting to clear some of that Sentinel util. They've gotten their way into this B site. Why are you trying to play from behind this cyber cage? But K9 is dealt with Juicy. That's a play towards mid. Now, there's less of a timer on Bilibili. Awareness, of course, of a playthrough market. They've got to get going, and YZ wastes no time touching on down. Can't play off the flash that comes onto the defenders. Wolves are stalwart here on this pistol. Levius is trapped here at Switch. Spring will step up to dispatch him. And all things considered, that's a pretty clean start. Beautiful anchoring. YU connecting some YZ great ने shots. हत्या रे YZ Swinging वहाँ out मार from देते उसको तो निकल गया था राउंड back on that right side. Crucially, Subat denies YZ. Those two players in tandem. Now YU also kind of ensuring with that swing out that no one could trade onto Subat, who was wide out in the open. Stupefies. Fnatic vibes. Okay, respect it. The timing. Is, he's spoken about how much he admires some of these top-tier IGL's mainstays. Valorant boaster two of the best that he was acknowledging earlier. He hopes to join their ranks. Getting into playoffs is a huge next step in that plan. And now I do want to talk about the importance of winning the pistol round here on defense with this Wolves comp, because the operator is pivotal
to getting this double Sensi look rolling. Get it in the hands of your Yoru, post up in different positions early, and then try and route the attackers, force them to want to avoid the op, and then run into all of that stack. Funnel them into the util. Yeah, you want them to be running into the trips, and it's going to be so dangerous for YZ. Playing Neon against 4 tripwires could be an agonizing experience. Double Sentinel compositions. Definitely have what it takes to slow that Neon down, provide that stopping power. 0 Point does reveal some defenders here, but nothing out of the ordinary as far as Bilibili are concerned. But with 40 seconds on the ticker, they've got to make a decision. I see them already prioritizing, trying to get some orbs to Neff. You are going to want that null command against the comp Wolves are running. 30 seconds Get those left. trips deactivated so you can try to get a clean exec later in this half. The stack up towards that heaven side as Juicy takes first contact, knows now. The Bilibili are trying to push up into upper. He's going to have to work them down. Juicy tries to fall back off the line. Relay forces it back to a degree, and YZ is dealt with, but this is good trading for the attackers. Oh bhai, kya round bhai. Syufat has the chance to intervene. But Bilibili disperse themselves around the sides, and even though K9 gets the drop on Syufat, he can't convert. Bhai, crazy flash. Timing to play off of it. 1 health, 1 singular point of health. Syufat, I like that. Shot. He's on the edge of it. Rusia with a solitary point of health. Now looks to challenge. Shock darts expended. Standing ahead. No connection for Syufat. He himself is low, and that's Rusia. Bhai, 1 HP clutch Rusia bhai. What the fuck? दोनों शॉक डार्ट कैसे मिस कर सकता भाई वो? How on earth have they gotten away with that? वही भाई. A little play in the 2 versus 2. That underhanded flash up from Neff and the exact timing. Rusha had worked through window to swing out with a classic. That was a lovely play. भाई की legend बहुत मारा था. Minimal amount of options that they इनने had main in that पे hold situation. किया है पूरा जब तक वो Where are the यहाँ trades से in the jump heaven नहीं किया. fight? Where are the shots? Nothing is connecting from Wolves. The relay bolt forced Juicy away there. And Bilibili got to take these, XP1 scenarios all across the map. Worked the map to get rid of that util early as well. Very quick hit over towards the B side already starting to unfold. YU Syufat dealt with YZ. Able to get this Spectre involved. Juicy's dealt with it Speedway now. Oh भाई, ये क्या प्यारा था रे. That's a YZ moment. Right click, right click, एक right click, YZ dead. I might go for more anti-eco kills. 7 more than he Oh needs. भाई, YZ भी नहीं मरा भाई. Shit. Pretty effortless there from BLG. Impressive shot from YU, but no real economic damage done. We were just talking about the importance of getting the economy rolling for Wolves so they can get to an operator. इसका मतलब है हम noob हैं. VCT में भी throwers होते हैं. Yes. Cannot believe that they've wrangled the game back immediately in this fashion. अच्छा हम noob नहीं है. VCT भाई मैं थोड़ा वो नहीं अगली लाइन में आ गया तो मैं नहीं पढ़ा ही नहीं मैंने. My bad, बाबू. My bad. Stupid big economy on account of just winning that anti-eco. It doesn't even feel like they're going up against opponents. This is a full buy. वो डाल देता हूँ. Pull डाल देता हूँ कि who's gonna win वाला. Prospects for Juicy just yet. दूसरा. Posted pretty far forward towards the mid part of the map, but has to get cracked dink down. मार दिया With YZ dinked down. Phantom ही कहते. वो आई wouldn't get आगे. आगे तेरे भाई आगे. Picked up that Odin, which is still strong on Chat the वाले map. उसको expand कर देना. हाँ वही good point. Those changes towards B main earlier in the year, but there are still some Yes. paper mache walls. अरे नहीं पता क्या मैंने OBS ही खोला हुआ डायरेक्ट. मैं खुद मैच OBS पे ही देख रहा हूँ. YZ's sticking to that तो left करके मैंने side उस wall, वाली स्क्रीन पे वो किया हुआ था. protecting himself against potential spam from Syufat. Syufat not shoulder peeking this. He's waiting off another form of info gain. Does have Juicy watching from an off angle. So, भाई मेरे को feeling आ रही है अभी spam शुरू करें मरेगा. Absolutely perfectly. And there's a refresh of the dark cover in B main, so Bilibili don't walk up B yet. That's now lacking their space creator when they want to go for an execute. Some of those trips have been dealt with a bit of that defensive utility. They're still so spread across the map though, BLG. K9 is trying to really sell this presence on B as they slowly creep towards A, but they still have to deal with a couple of deadlock trips. There are multiple Wolves players there. वेव कर दी भाई भी आगे डे. आगे भाई सही कह रहे हो. हम लोग नहीं है VCT में भी throwers है भाई. Gotta respect how close K9 was, but Juicy at least gets involved. Oh भाई crazy. Here from main, that A presence has been neutralized in the dying seconds of the round. There's a plant here from Bilibili.
how are they still winning these 2v2 fights? कैसे हो There's गया भाई ये? very little time left. They're pressured to run into the site. Juicy has multiple flashes to try and get out of this dark 2v2 cover as soon as the side volley तो expires. But BLG, they're playing Hello. anti, shouldn't get blinded up. ना टीम पे रोक देते 2 कर देते यहाँ पे. Foray here from Tree. Juicy makes a bit of noise, but the door is shut. They've split up. He has to break it. Door is down, but it's time that has been bled off the clock. Levius shrugs off the flash, is ready to take the fight. The second one comes in, and Juicy runs into his line. I saw the veteran on the side. भाई clutch. Gives it a tap. And he delivers. भाई मैंने बोल रहा था मैंने राउंड से पहले बोल दिया clutch है. Lysol's had his fair share of the last couple of days. But in भाई his मेरे fourth को feeling आ रही consecutive है global, मारेगा. he delivers a stunning round like that. He said in the Crazy, press conference that he's just blocking out the criticism. His team is still behind him. He still has that self-belief. He comes up in a round of the utmost importance. I can't believe that BLG were able to get that so close. It was bizarre. Late in the round, they got so spread across the map. Look at how little time there was. Multiple anchors on the site. And it feels like Wolves coming in a little bit cold right now with the aim. But then Lysol makes me eat my words at the end there. That was a disgusting snapshot. But हम किसकी साइड है? पाजी हम गुड गेम प्ले की साइड है. आप किसको सपोर्ट कर रहे हो आर्केड पाजी? आप वो बता दो, मैं दूसरी की साइड हो जाता हूँ. मेरे को तो पर्सनली फीलिंग आ रही है लाइजर भाई ने भी जैसे मारा है. You can see right now तो they've got YU थोड़ा वुल्स वाली साइड में ऐसे ज्यादा लीन ऑन करना चाहूँगा. when you're facing down a null command. Dangerous here. Hunter's Fury now coming out from Sufat. He knows there's action over towards mid. Why is he trying to dodge away from those blasts? Levius that was handled on the B side. He just walked into main on his own. Lysol turns the flash and there's trade potential, but it's not necessary. Lysol is having one. Last couple of rounds. Big impact. Enough of the chat online criticism. He's stepping up with trying to even things up. That spring caught a low Genuine. There's another potential double up for the defenders here, though. Wang Yu is going to be. What is this? Okay, Annihilation drawn out. Why is he trying to play ahead of it? Gets rid of Lysol, but can he save his compatriot? Oh, Rushia. It's too late to save him for the cocoon. Wyatt has to play through 3. Has the spike to hand at least. The time is not on his side, Wyatt. Where will he attempt to go, or at this point? Home. Probably just save, yeah. Take a stroll right down there. Like and tell. Keep this rifle into the next. As you mentioned, BLG, they had that economic base left. that you get just from winning the anti-eco early, which has applied so much pressure to Wolves, just knowing coming into every single round that their economy is hanging in the balance. It's on the line. They could get eco'd at any, or put on an eco at any time. BLG just uncomfortable. It's a solo walk up from Levius there in main. Good trade architecture set up here. Wasn't necessary in the end. Little jump swing. Got away with it. Yeah, okay. We are limbering up. Okay, next time I saw with a bit of feeling. Yeah. With a bit more. I need some more movement out there. You know what I'm saying? The VOD review Sentinels. Get some tips and tricks from Zelsis. Just point at him. You just point. You're around 6 now. It is still Billy. The ability to buy a lot of ultimates in hand. Just a little disconnected. Let's go, I can't blame him. He's happy to try to take these fights when he has the gate crash to get away. To be fair, he was close to the kill on YZ. Like that with Alright, here comes the null command. Hit coming through. Try to get the kill on Rusha. I picked the wrong player to try and collapse on, though. YZ instantly is there. Rushia bailed out of having to go 1 versus 2. Great execution and pretty cheaply done. Just the null command committed here by Billy. Can sit back on a post plant with a Hunt's Fury and a whole lot else to play off of now, especially with lockdown being earned. That was the right pivot attempt from Wolves to get a couple players in main so you could try to isolate the one guy on that split in the for the 4-1 hit, but Arusha crucially just wins out that duel. For me, one of the players who has stepped up the most from watching the playoff run into Toronto. Okay, Zilfat probably doesn't want to swing on this one. Firing squad looking straight at him. And Billy get an important attack side round just as their economy was starting to founder.
unfortunately, too, in that moment. I think Lysor was pushed up kind of close to B main on the what I minimap. think So it is, right? when the null command was used, it actually guys, थोड़ा so सा झूले में those निकला trap हुआ wires है. that he had set over towards A weren't actually going off. अच्छा, डंडा That's allowed BLG डंडा बोल के खड़ा हो गया. Let देख get डेडलॉक into the का. site for free. Could have Arjun, slowed I them am down a trying to bit, do maybe something helped good with that fight that Wolves took in main, but not going to be the case. This is going to force them into a timeout here. It's a real red flag show to Wolves is, of course, they really want to stack up these defense side rounds. That's naturally why they choose to start on that side of the कहाँ जा रहा है? घूमने निकला हूँ मार्केट भाई. puts them in a very चलो. odd economical position. They win these rounds when they do. अरे मैं तो मेरा गंदा बैठ दिख रहा है. Two, maybe one sort of phantom in My play. बैट दिखने लग गया है. Now this has really knocked them down. They do have a dimensional drift of Juicy's to try and play around. Who's been quite good sort of playing that solo weaker side. Saw him get that pick up on Levius on that B side early, but then that last round, just to walk up on mid, pretty standard stuff, but a lot of guns trained on him by Billy. No chance for a trade to come in from Covey. I would definitely want to give Coach Fade over on Wolves his flowers. There were many moments so far in their series they've had where they've gone to a timeout and he's given them the right adjustment. You know, I think of even that first game on Split against Sen where they couldn't get anything done on their defensive side and then they go on a run after this timeout. He's given them some great adjustments. Now here, I'm just looking at the economy for Wolves. I would be absolutely stunned. No पंगे. Off on the next gun अबे ये कुछ तो crazy हो रहा है That's why आर्केड. he's just got the classic. With an off in hand last round, Juicy likely would have been out of hand. मैं अपनी वीडियो के रखो ये जो वो होता है ना source मूवी नहीं हिला नहीं पा रहा है. Source delete करके दोबारा ऐड करूँ क्या एक बार? Still has 3.7, so I think you're right. अरे मेरे को मैं सोच रहा था मिनी मैप भी दिख जाएगा स्क्रीन पे तो मैं अपनी स्क्रीन लगा के राइट साइड में कर रहा था. Listen. वो बहनचोद हो ही नहीं रही. For Wolves is Lysor. If he's waking up and everyone else can get into that form that they've been in, specifically Spring and Juicy, then we're talking about an even more dangerous Wolves squad. Undoubtedly the key to the game here for Wolves. YZ gets very far up on site very early. Spring trying to get onto the site, but he has to walk through a fragment. Takes a bunch of damage on the way in. YU playing out from tree. spam. Going down, they're lit up here by this over util. Wolves taking hug लो बहनचोद hug लो. Spikes loose out in front of K9. He's got 3 guys 1v3 3 sheriff available है. Dimensional drift just to confirm. Yes, K9 is here. Wolves set up to close the net. Oh भाई this is a nightmare. अब देखियो ट्रिपल स्विंग चेक करियो. K9 still with a decent amount of health. Oh my god. Again, misery. This for time, K9. and this time from Wolves. Such patient play off heaven. Spring, I think, tries to dive in a little bit early there, Wyatt. Caught in some of that KO util, but video capture it's the payoff from Silfat's video capture device. Util gets them in there. Pop flashes out of the smoke as well, coming from Juicy. Video capture device. Recon. And you can see even this time being wasted and players distracted from BLG because we're still trying to deal with trips that are on the site. The cages are making things awkward as well. And you see YZ's just preoccupied breaking stuff in the corner. We're already into the next one. Oh my word. And Juicy picked up the gets punished. Unrecoverable for YZ, but you were right. That save in the last round from Lysor. Definitely trending towards an early op into the hands of the Yoru. And don't even end up needing that cash when they just recover a bunch of rifles. The eco round put BLG in a pretty horrific economic situation for the first time in this half. Lost the pistol, but then immediately won that eco of their own. I wonder what triggered the use of this barrier here from Lysor. Might have just been arbitrarily thrown out, so he doesn't have much longer to stand. It will be cleared anyway. Caught YZ wants to go for it. Relay bomb comes in. Dangerous now. Hunter's Fury for Lysor. Retired. Oh भाई बचाया YZ को. Looking for some connection off this overdrive. But oh भाई. Spring's gonna be there. Spring भाई what the fuck? Comes down and a Billy are hampered. Down to 2. Look at this now with their Sentinel down. Pay attention to why he's all the way back to A main. This is going to be a multi-pronged retake. BLG know they need to get proactive, but they're punished for it. They had to go for it, try and get some more extremity control of this A side, but eventually the Wolves hunt them down.
Bilibili off a decent start, trading, getting the op अब loose, हल्का करना शुरू कर make दिया the है। pitch over towards A and are decimated. Both teams really went for some great little plays there towards Cat. That was some impressive stuff, to be honest. Again, I like that Wolves, when they're recognizing when these splits are coming in, that they need to just be active on one side of it to catch a player off. That was YZ. He was paranoid up, but then he sends in the relay. भाई ये क्या था? ये क्या kill मिला इसको? Fury used to save him, kill Lysor when he's stunned. That is just some lightning fast awareness of how to take advantage of the ults and abilities that they have. That was fantastic. Again, Wolves, their economy is burgeoning at this point. They're throwing another op to Juicy. He went 1 for 1. That was a little greedy. Probably could have just gone out with the one. Lockdown for Levy is still being held onto. We'll see decent spots to place it, but into a Hunter's Fury round, potentially. You've got to account for that server ultimate. I believe they did get the 0 point onto Juicy in mid, so they know about where this operator is at, and they're going to use this lockdown to try and clear everyone out of B. Still, look at the amount of tripwires littered across this site. The shocks aren't actually clearing any of that utility here from the Sentinels, Wyatt. So now Sufac can sit back, go for a spray. It's the rest of BLG, they can't get a swing way at all. Target भाई मैं बोल ही रहा था भाई वो जीतेगी पर तेरी वजह से मुझे BLG बोलना पड़ गया साढ़े Bold to try and get in there with the भाई मेल्ट कर दिया है उसने ओडिन से ऊपर से एसेंट पे भाई ओडिन तो पहुंचती है There's the grab net that goes down, connects with a couple players, I believe, or at least forces them to get out the way, and then Wolves just flood back in. Lysor is on one, by the way. Another big round, multi-kill, 3K. But we got to talk about it. There's a massive timing issue there for Bilibili. They, use that Omen ult to get onto the site. That's always the plan. But Rushi is so far ahead of his team because they don't account for multiple sonic sensors, a one-way cyber cage in B main, and the fact they're getting sprayed down by a node as they try and push out. So there's a massive gap in spacing. And it's just the solo planter for Bilibili on the site. So far, we've seen them be so good wide at working the map, using the time in the round to passively clear some of that Sentinel util without offering up anything. This time they run headlong into it. You just can't be doing that against this comp. They were finding success when they were, as you mentioned, taking it a little bit slower and then going for some splits onto the sites. Just a straight up B main rush. I get it. They feel like we have the lockdown, we can force everyone out and then get into the site. They just didn't calculate for the fact that they would be stuck in choke. The lockdown would expire and that would give time for Wolves to flood. Sound sensor up. They just didn't realize that there would be such an open window for them to get back in because they would just be absolutely stuffed. Going for rushes like this against the double Senti comp, such a gamble. Such a gamble. They come up so short. And these floods for Wolves behind Sufat's utility have been sublime so far. They are terrifying on those retakes. Wide Kamlu बन गया. Humbled somewhat. Forced down to a bit of wide जो है wide Kamlu. With a bit of a variation. Oh, भाई Lysor भाई. Further back, but it's pinged out by the looks of things. भाई Lysor भाई Lysor just takes him out of the game instantly. मैं बोल रहा हूँ भाई. Wide Intuition guiding him there. Kamlu, no, wide loop. For mid info, pretty standard stuff. Juicy is rotated to pick up towards Tree. They've really got their eyes on everything. There's such a deep trip in B main that had to be cleared as well. Bilibili do remove both of the trap wires from the map. Better pace this time for Bilibili. Diligent clearing of this Sentinel stall and info utility. But even still, with Rusha down, having to hit a site without being able to obscure any angles. No smokes left. Brutal for them. Contacting to an offline is always dangerous in that situation too, but Juicy doesn't land the shot. He's going to be forced back as well by the 0 point. Annihilation popped here by Lysor. Oh my god, man. They opt to back out. They're going straight to B. Juicy catches them on the rotate to market. Again, those lack of smokes, just making it a nightmare to play against this operator. There's been a From the Shadows backside entrenched in Spring with Sufat. And now Spring is having to get और मैं जो spam मार रहा था आगे बीच में आ गया. To pulse to the beholder and K-Knight has got to go for it. Caution to the wind thrown. Sufat
Brings a stabilizing aspect to 7 defense side rounds. What an advantage that is for, you know, gotten by Lysor, just finding that spam kill early on. That essentially feels like it just ends the round. You're trying to rotate around Ascent against an AWP. Without smokes. You're cooked in mid. You're so cooked. There's almost guaranteed that Juicy was going to have another chance to take contact somewhere on the map. He makes a good rotation to mid. And then this is just it's a very haggard sort of last-ditch attempt to go towards the B side. The round is basically won very early on. You're sure Lysor doesn't get a kill without Annihilation, but it just pushes them into B. Force BLG's hand. We're on the full buy now, but it's left them with some awkward weaponry. Specifically, you're looking at Neff right now. They're trying to break this trap in mid. We're going to talk about Neff because those null commands are pretty pivotal if you want to play that fast hit style against double Senti. Neff has not been developing those ultimates. Juicy pushed up in B main, left, and now look at YU's positioning. Has this deep trip that he likes to place again. Cleared. And then Juicy has pivoted over towards A. They have control of A main because of the barrier mesh. This is the same spot Juicy held last round and he missed the shot. Don't expect that to happen again. The setup from Lysor now is so good. Flash is crucial to get Juicy out of there. Lysor wants to fight, could get back to actually help. Lysor didn't want to give up the space. Eventually, though, he has to. Juicy just takes a further back line. Relay bolt's going to be respected, and here comes YZ to collect. The operator taken loose. Lysor steps up and only gets the one at Spring. Moves out onto the side. Got to respect the fragment, at least gets his pound of flesh. This puts Wolves now. Is Sufat in a position to make use of this recon Odin spam में खाएगा ये बता रहा हूँ मैं Odin spam खाएगा Odin spam में हेल वाले को लेगा ये try and kill the planter in this situation. Doesn't want to. They're definitely going for this. He's the danger player. Their money is out of control. Eyes on the Sova. Why you can, that'll be clear. Oh भाई ये खेल oh भाई नहीं has forced K-Knight out of the open somewhat. Bolt gonna be cleared. It's a ping, and Russia is handled. Sufat trying to find K-Knight in that direction. He's considering even diving in for this one. Confirms his location. It's K-Knight v Sufat. भाई मैंने बोला था मैंने just बोला Sufat जाएगा danger, but no time for a defuse. टाइम नहीं रहा बहन जो राउंड क्रेजिंग मारा with bragging rights and nothing more. मारा अच्छा पर बच गए. Going to keep that Odin. The kills were pretty sick from Wolves. They really are able to make the most of this util that they've got. That recon again gets so much value. Neither player able to break it, so YU gets the kills. But this moment from YZ was really the pivotal one for the attackers. Juicy didn't have a gate crash to escape. YZ perfectly placed that relay ball to punish him. Wolves looking a little different now with Lysor brimming with his confidence. Look at how he keeps playing forward in trees, determined to actually try and take these fights. Juicy still has the op to hand, but the protocols from Billy for dealing with that op in Yoru last round were pretty much perfect. Control of B main. I will say Max watching कितनी गई है मेरी. Great job of breaking the Sponge. in this. Yeah. इतना तो मैं डिवाइस लगा के छोड़ देता था. So much money. Last round of the half. What the fuck? What a time. Gate crash expired, so needs to refresh it. Still an opportunity to take that contact peak, but I don't know how aggressive Levius intends to be here. Juicy might end up walking into his line. That'll mean the Tyrant can take contact for him. Inching ever closer. Neither player wanting to blink first. It is a stalemate over at B main. Check back in with that one. Levius gets out. Okay, why is he caught inside it? Something sensible by the looks of things, but a relay bot catches Lysor in main. Off the line in B. No encounter there, but Rushi has dealt with him. That's your controller down. Midway through the round, Levius eventually wins that encounter. That's the Yoru dropped, and YU's trying to rotate him, but K-Knight is already there. Billy have done enough to get this B plant. That was such a fast maneuver from BLG to get over to this B site. That was a moment again where they were lacking smokes from Rusha, no dark cover to protect them when they had to cross through mid. But K-Knight wins that duel and Levius cracks the site open. What a high impact kill on that lurk. 200's Furies in the pocket for both sides. Okay, here comes the attack side one first. K-Knight looking to scout, see where this retake might originate from. He's found nothing.
Suifat wants to try and light up with a recon. टाइटल में गर्ल गेमर लिख दे अबे भोसड़ी This के is looking dangerous. Already get hit. Lysor handled those springs, trying to get ahead of the action. It's all on Suifat now. Standout player. Oh, I slide मारते हुए हेडशॉट मार रहे rounds. And if we get to the end of the half, Billy. सारे गेमर गर्ल्स को मैं लिख दूं टाइटल में पर जब आएंगे लौंडे लाड़ लटकाते हुए फिर क्या करूंगा This composition on भाई फिर उन्हें गेम बोलने खड़ी करूंगा they've really done a great job. YZ and Suifat headlining the fight so far between these two. It's a 2-round gap heading into the second half. Ascent, win and advance, lose and go home. We'll be back after this. यार किड भाई बॉन्ड दिखा वो देखे ना वो ਜਦੋਂ ਕੋਈ पंजाबी कस्टमर आ जाए ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ बूंद खड़ी करेगा सर आप क्या बूंद बूंद करते रहते हैं मुझे आ रहे चक्कर मैं चला सोने बहुत गर्मी ओके गुड नाइट बुलू बाय बाय In this first map, we've got your Coinbase econ report for you. A couple of players we really want to highlight as individuals that are getting max value out of every credit they spend. That is obviously what our econ rating is designed to display, just how efficient you are with your purchases. Why is he someone worth talking about here? I think why has big impact, has the performance you expect as Neon on this Ascent attack side. It's always interesting to me to see YZ on attack with the econ report because he's so crazy aggro. He's usually getting a lot of kills and dying a lot, so he's rebuying a lot. But in this game, and in many we've seen before, he's still getting enough value out of everything he's spending because he's getting so many great opening kills that his econ report is always still looking good despite his crazy aggro playstyle. He actually has the least number of deaths on his team, so less of those rebuys being required. And he's been a big part of being able to dig Juicy out of some of those entrenched off positions where he's trying to take contact. They played around it very well, and as a result, Juicy has a quieter defense side on this Yori. It's really the first time in this entire tournament that Juicy and Spring are the ones who you're going to need to activate to win out this game. Lysor playing so well, IGL, Sufa doing it all individually and leading the team here. Intentions of going to this B side early from Wolves. Big damage taken by Lysor early, but it's YQ pushing down Speedway. Look at the pace here from Wolves. We talked about them adapting to go a bit more up-tempo. This attack side pistol exemplifies that. Nap just caught red-handed. Util in his grasp, and YZ takes a little bit too long to find that kill, allows Spring a third. And now he's going to have to do it in a 1v4. We said his name, and Spring has appeared in this round. He gets a pivotal 3K. That paranoia connecting for an easy kill on lane to open things up feels absolutely impossible for YZ here. There's no way this should be winnable. Right, they'll be starting to hound at YZ. In the next few moments, and he knows he has neither the time nor the wherewithal to clear out Wolves. And there's the pistol picked up by the attack side. And even in just this first round, you're going to see something that will become a consistent theme if Wolves are able to get into the sites pretty much, you know, I'm not going to say for free, but if they can get into the sites easily and then get all of the sensible utility down, Deadlock will thrive on attack
when she's alive, she's in the site, you can get that barrier mesh, which is usually going to be used at the door, which it was in that round. You get your sonic sensors placed as well. Those are the situations where she's going to be high impact on attack, or syncing up some of those grav nets. And normally the double sentinel composition in the past with Jet was pretty flashlight and had to use that controller util to take map space, but we know that Juicy comes packing a couple of flashes. Billy have opted for a pretty far forward B main presence. Maybe look towards mid. Control this space with these more appropriate longer range weapons as Juicy draws a bead on YZ's approximate location. Here. Wolves just opting to take things nice and slow, absorb any potential early aggression that may have come from the BLG side, but they're playing fairly spread at the moment, not going for a gamble stack. Does K-Knight dare to push ahead of an owl drone if it comes out? Cam, cleared. K-Knight trying to back off. It's going to get a little bit uncomfortable for him. Oh, Barty, he and Levius take an absolute beating. Now, of course, that smoke over towards that CT side, and we're going to see the walls explode out of B main. Gravnet looks like it did catch up one or more players. And there it is, Juicy eventually catches Neff. 30 seconds left. Cutting them off there. Just going to call for the rest of the team to maneuver towards this A side. Only Rusha. Stuck at door right now. Are they going to check this? Yes, they do. YU. So the Ghost player YU. The opener in the pistol round looked great there. YZ belatedly gets to the party. Wolves now distribute 3 players towards that A main direction, leaving Juicy in the site for this expected retake. But what is there to be done? Billy realized it's going to be pretty hard to get any traction in a situation like this. So they sit back, contemplate. Start a game plan for these upcoming rounds. They did invest into a couple sheriffs, which is of note. We'll see how that affects their buy. Oh, we get to the what a first timing. round. Oh, that is Bloody brilliant. Shot for Sufat. No one watching his back. Lysol trapped here. Was. No way. Lysol completes the kill contract. Levy's with the drop on them though. This has gotten a bit ugly for Wolves. From an economic standpoint, not nearly as clean as they wanted. That is a bizarre way to try and exit the round. Things getting so scrambled for Wolves, not playing together, trying to get out tree really late. No one watching the flank that was wide open. Sufat was, for a time, watching towards that gelato direction, but like we said, it's a YZ catch a timing on him. It's a stranger Red Bull clutch, I will admit. Because the way was paved early by Wolves in this round. One enemy remaining. Well, BLG are going to be happy with that. What could have been a pretty solid bonus round buy has dwindled to a tragic one with a Bucky, a couple pistols. Let's see if Juicy can do something with this Guardian. Gravnet, they want to catch someone early in B main. Looks like they want to accelerate too, but the Mollies will keep them at bay temporarily. K-Knight caught here by the paranoia and up by Logs, and here comes Wolves again with his weaker bonus buy. Need to make something happen. Levius with a quick spray down for 2. YZ faces down the Bucky and comes off arguably second best. And it's a gun recovered by Spring. No info on where Russia is though. Every knows he can look over towards spawn side and he's a higgledy-piggledy little bonus. Oh, weird buy for them. Everyone stood up after that. I can't blame them. It was a cool B-site execute. Even with the Bucky of Spring teleport into that dark cover while they're swinging out. Juicy gets one trade there, you full blind. One enemy remaining. And then at sort of the very end there, Sufat continuing his reign of terror on this map, swings out into the I mean, there's just no good reason they should be winning that, but they connect some sick shots. And it's hilarious with Spring teleporting it with a Bucky. I couldn't agree more. I could not agree more. And this is now, this is dangerous for Billy. That's the round where they want to start to build that defense side momentum, but this gets Wolves to 10 rounds. And a robust economy to boot. I'm still a little bit stunned that they won that. Remember when Billy took all their guns away on round 2 because Wolves kind of tossed, and they still win with that really bad bonus buy? It's like 2 ghosts, a Bucky, Spectres in there. Bizarre. Absolutely bizarre scenes, but a fast hit to B that, frankly, Billy just aren't able to respond to adequately. And yeah,
They flash themselves up through the smoke. Neff tries to get involved out from defense side spawn. Only able to find the one after Levius kind of paves the way. Sprays down 2 with a Vandal. They can't springboard off of that into a strong position, and now it's for an outlaw there for YU, maybe reconsidering. But in general, the weaponry is looking pretty darn good. Might be an outlaw for Juicy. Yes. For a fairly significant buy out of this, but the, bonus cash, or rather round loss bonus, is pretty out of control right now, so BLG can afford to get a fair half buy into this. Recon going to clear close mid, broken by YZ, and they're actually going to leave Levius posted up really deep right there. Just an alarm bot to catch this. K9 trying to play on it. Juicy takes that contact, it's going to be traded out. Good enough for Wolves for now. Shrug off the relay bolt, and they're into this B site. No smoke over towards defense side though. Something YZ could capitalize on, and here comes the overdrive. He takes a lot of damage in that encounter, but takes YU off the map. Still 3 rifles active for Wolves, and they've got Sufat on the side for a plant. Here comes that controller util now. That was such a strange cage from YU. It helped the other team more than it helped him. Double flank coming right now through B main. Wolves are fully pivoted towards the site. They could get overwhelmed. This is dangerous, but Spring! Sonic Sensor there in market, I think forced Rushia back. He couldn't get involved in Spring. He's on for 4. 2 bloody goods! And Billy with that awkward buy. Yeah, we're up. We're on our feet. Blood is flowing. And Wolves are 2 rounds away from stealing Billy's map pick. Spring started so low on defense, but has accelerated to 100 miles per hour on attack. He's now tied for the most kills on Wolves. Can't believe he was able to get that double spray down. The players rushing out of B main together. Feels like nothing can go wrong for Wolves, even when it starts. When you start seeing them just on the precipice of disaster after YU just goes down to YZ with the weird cage play. All right, Billy, they're on their full buy now after that half. Cutting through. Might be the last best chance here to stabilize in this map. They've well and truly lost control. Now they're playing catch up. Juicy patient on this, suppressed as he was. Flashes into tree, Gay crash out. Neff's not able to find him. Juicy barely takes any damage there as well. So as all that utility gets right back to the pack in B main. Drone going to clear things out close. They know that they're safe to start moving into the site. YZ, he wants to fight right now. Relay bolt will cause some serious delay. A lot of stall util coming out here. Wolves might need to reconsider. In the past, they've stuck too close to that first plan A they've had and been unable to adapt, but here, they're going to pivot away from B with the insert of YU left behind. But YZ sees him cross mid. He can't do anything about it, though. Spring had popped that from the shadows to go to A main. Wolves are keeping their options open. That has fully insulted the entire team from BLG. They've bought it. They've all gone to heaven. What a call from Sufat, pivoting back to B now. Free open sight. 5 pairs of ankles snapped clean off with these map rotations. Billy limping to respond, but they're caught outside the map, and YU fells knife through market. And now he just needs to get out of dodge, get back into B main. Spike is being planted by Sufat, means the Hunter's Fury is ready to go when the retake is coming in. They need to get YU here. Great reposition from Juicy. He's gonna hold the cross, try and protect his teammate. YU tucked. Surely's heard some of this. Oh, Juicy falls back. He Hunter's Fury. Oh, what a shot! YZ slides on in, immediately decapitated. Sufat, he wants some information, so the Hunter's Fury comes out, and Rushia was caught as he made his way down. 2v2 now, Levis. Looks like he was caught up inside that Sonic Sensor, though, and Lyso has a grab net where that came from. Now to play off this slowing util. Levius and Neff, Pime, not on their side. They have to make a move. A tap on the spike, and Sufat tries to deliver. He'll cut Neff down to 34, and Lyso just needs to be patient. No time for BLG. And that's map point for Wolves. They've done it again. What a mid-round call from Sufat. That from the shadows that was used to get Spring over into Wine. It looks like they're going to peel off, but they leave the Cypher insert in B main. They kept their options open. They pivot back to the open site. Sufat gets the Hunter's Fury with the spike down. What a round, what a beautiful call. He is putting on an Ascent masterclass right now, still topping the board for his team. He's putting work in with the kills. Billy hemorrhaging as a result.
No round wins on this defense side. No chance to breathe, to stabilize, to take stock of things. Again, they're thrown into it as Wolves are knocking on the door of A. Here comes a dimensional drift, going to get all the information on the site for Wolves. They are fully stacked up, wanting to get through A main. How do BLG respond? Do they stay entrenched? He's sticking it. Rushi there does get the ping. He knows that Wolves are up on him, but how is he going to get some breathing room here? Juicy just overloads it. Brute force solution to the problem. I don't even know how he killed Sufa. All right, Wolves routed because of that lockdown, having to pivot back. YZ is deep on the map right now, push through. What do Wolves do? It looks like they want to just cut noise and try and re-hit into A. Dark cover is going to cut off Levius. Does he want to get active? Does he want to try to find a kill here? Knight doesn't have recon. He can't light this up for Levius. He's going to have to be flying blind, literally shooting in the dark. Spring gets off the plant now, aware that there's a player caught inside his wall. Levius has got nowhere to go. He's stuck there. He's boxed. He can't even move. And it's on YZ for the game. For the map pick of Billy, they won 13-4 against Wolves last time they played. But this is a different Wolves, a different pace, a different gear, a different level. They are just playing with an effortlessness on this attack. They look fantastic right now. Brutal stuff, YZ. Dispatched! And Wolves with the answer. Gauntlet thrown at Billy. You want to pick this map? Fine. We'll not give you any attack side rounds. And bear in mind, the last time these two teams faced in that lower final in their qualifying run, it was a sweep 3-0 for BLG. And here Wolves have swung right back, stealing away their map pick. We're going to step away for a moment. Up next, Yinsu and our analyst desk are going to break down this map number 1 of Ascent and set our sights on our second map of Split. सबको ला दो तुम पुलिस वाला क्यों दिया था ला इसको और करना ये बहुत करना हटो बहुत खराब मारता मुझे ब्लॉक करवा दो सब कवर करना पड़ेगा चल कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है
कंप्लीट तो राउंड करना है। ओके अरे लॉक लगा रहा है यार, कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। जहाँ से कोई कुछ आइडिया है ये बस। जो हमारे लेना था मुझे कोई बात दो मिनट और वेट करता हूँ भाई, रिप्लाई करते हैं तो ठीक है, निकलते हैं। अगले लेवल क्या है लेवल मेरा क्या बाकी आवाज नहीं आ रही है, तुमने बोल हाय बोल नहीं दिया हो तो पॉइंट ठीक है। अब लगा ले बेटा तू। बहुत परेशान बहुत ही ज्यादा फास्ट ला रहा था। भाई मैसेज देख क्यों नहीं रहा है? तो बात भाई को कुछ कर दिया हमने। यहाँ चलते हैं अपन गेमिंग वाले सेक्शन पे। वैलो वाले गेमर्स देखते हैं भाई। वॉच पार्टी फेमस लोग ये क्रेजी लग रहा है भाई, डेंजर भाई भाई। साहब आपने मेरे पे टारगेट लगा रखा है। फुफू की फोन पे कभी कोई इतना नहीं हंसा है भाई। अरे दौड़ते दौड़ते बड़ा काम कर रहा हूँ, पर नाइफ होने के लिए ऐसा थोड़ा ना भैया यार, दौड़ते दौड़ते आ जाओगे। कमल गेमिंग वेलकम टू स्ट्रीम। कमल भाई क्या हाल है? कैसे हो भाई, कहाँ से हो आप? कमल भाई आए भाई, कमल भाई आ गए। कमाल ही कर देंगे अब कमल भाई तो, कमाल। ए, किसी का पीछे से नाइफ आ रहा था। बाद में महसूस हुआ मुझे। बनी को हेड लगा था, मुंडी यूं ही
बड़े भाई आप बताओ कैसे हो? मैं तो भाई जिंदा हूँ बस यार, आई एम जस्ट अलाइव, आई एम एस। थैंक यू बनी फॉर द लवली एस। यो वेलकम, मैं बहुत अच्छी हूँ ना, मैं गेम छोड़ने जा रहा हूँ। नहीं ऐसा मत करो, बस ऐसा करके आप हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। अनइंस्टॉल नहीं करूंगी। इस बार हुआ था लोगों। ओह शॉट नहीं, आप मेरे डिप्रेशन में और चीज़ ऐड कर रहे हो। कुछ remaining. ओह नाइस। ओह थैंक गॉड, चल गए। काओ। चलते चलते मार रहे मुझे। ओह माय फकिंग गॉड। पार्टी व्हाई नॉट हैड? नहीं रहना नहीं। अरे भाई कोई नहीं, इट्स ओके। आठ HP भाई। बनी पीछे। 8 HP पे 2 मारती हो भाई। कॉन्गो on 2K subs XE। Thank you brother, thank you so much। I avenged you। Yes। Girl power। बनी पीछे। Fuck off। Oh my god। क्या स्लाइव भाई क्या? I can sense it bro। जॉर्ड पीपल गेम नहीं छोड़ते, जॉर्ड पीपल गेम फिनिश करते हैं, है ना? इधर। कमल भाई क्या हाल है और बताओ? ये कौन है? बनी है क्या? बनी तो सोवा है, सोवा तुम्हारा फेवरेट। तो भाई तुम चीज करें। अरे यार ये अब बनी है क्या? One kill remaining. अरे रुको, लास्ट किल मेरा होना चाहिए। इधर आओ। खाओ पनीर भाई। पनीर क्लासिक से मार रहा है, क्लासिक से। पनीर अपने घटिया सब्जी है। RNG works baby। इधर क्या होता है? बी में मर के ये बास क्लैप निकाल रहा है, क्लिप निकालना है, कल शॉट डालेगा। हो सकता है कस्टम क्लिप्स। हेलो डिस्कॉर्ड पे बैठो आज। अरे वो गलती बैठा हुआ था मैं, बस यूं ही निकलना भूल गया। मैच स्टार्ट हुआ क्या? चलो एक कॉम्प पिक हो गया। They just lock it in. Yeah, so it is what we're gonna see. How much map control can they gain with this? Because that's what Coach Bale was talking about. Well, I think similar actually to. How you all doing? Come up with something new. Match found. I'm in live race from last match. Hello नींबू, कैसा नींबू? कौन नहीं छोड़ रहा है आपको इतना? Thanks for the sub man। दीपू वाह ये क्या हुआ? अगर हिंदुइज्म फॉलो करने वाले को हिंदू बोलते हैं तो बुद्धिज्म को फॉलो करने वालों को बुद्धू बोलेंगे। इसमें नहीं हेडलाइन चाहिए, वो बोले गाना नहीं है ना 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 ना। गुड वन। जी ये गिव अवे क्या है? कुछ गिव अवे का है कुछ सीन, बट इसने अभी अंडर में डाल दिया। ये मैंने डाला है, किसी और ने डाला। आई टेल डिस्कॉर्ड पे, डोंट वरी। साला बैक ऑफ कर रहा है, गिव अवे से बैक ऑफ कर रहा है। देख हां, और जो मैंने इसकी एकदम से फट गई साले की एकदम। 1K पे बैक ऑफ कर दिया था मैंने, 1K पे गिव अवे करूंगा नहीं करा था। ले क्राई अबाउट इट वॉम्प अब गिव अवे तो यार स्पर्श ड्राइव फिटना था ना, आपने शॉट्स आ जाती मेरी, आपने तो उल्टा पीट दिया। आप फिटते और मैं वहां कहता कि देखो आई किल्ड दिस नूब यूट्यूबर ऐसे करके। ऑलराइट मैं गिव अवे के लिए नहीं आया। अरे नहीं, चिल है उसके लिए आया भी तो ठीक है, कोई नहीं। आई अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो गो एट सम प्लेसेस गिव अवे के लिए, यूज्ड टू, अब तो नहीं, क्योंकि अब मुझे बिलीव है कि मुझे गिव अवे नहीं मिलने वाला। Send out that prowler, feign some presence as
Sufa IGL remains inserted dark cover in B main. Walk down from YZ solo in mid. This is dangerous. He could get caught. Oh, the timing was pretty good from Spring just after the clear had come from the Trailblazer. But YZ at least is able to react to complete the kill. That instant dink just gets Spring. The hip punch couldn't actually get his crosshair back on him. K-Knight spots up the other two. That's a very weak YU. Susceptible to the nade. Has to get out of the way. Just going to damage up Live Sword. 30 seconds remaining on the clock. The entirety of BLG are here. Wolves low. They are beaten back black and blue by some of this util exchange across the map. Are they going to go for it? Levioso's waiting for them. Into his clutches falls YU. Juicy though does finally get rid of that 10 HP YZ in heaven. But Rushia simply steps up in his stead. Spike loose. Classy little right click. 10 seconds left. That's the round. Put away. Things just getting entirely disconnected for Wolves. I imagine at some point they wanted to try to get back through vents on account of their IGL Sufa just still being entrenched on B, working his way there. They'd like to have pivoted back, but BLG just had the full stack rotation over to A, denying them with a Viper wall, that nade keeping them at bay. Crucially, YZ finds the opener. This is the map. The last time these two teams faced off, it was in the qualifying game to Toronto. Wolves took it. And the BLG, they got the revenge in that lower final. It was a clean sweep, 3-0. They know how to beat Wolves, but do they know how to beat them on this map? Even Sentinel struggled with this attack side from Wolves, but they got to dictate the pace. Marshall's shot, YZ spraying him off wildly. Haphazard has to back away. Catches YU though, as he steps a little too far. YZ got that painful elimination. Pretty devastating impact from the duelist on ramps. Leaves Wolves down to their last two players. Scavenging the Marshall. Spring inside his poison orb is hoping for a pot shot. And he's got nothing to see as it clears. No fuel. Double stacked up on BLG. They should make light work of this situation, and they do. They're dropping a couple players. YZ was happy to take several engagements towards ramp, get very close to that showstopper. 2 orbs away, very early into this half. And to put this map in context a little bit more, White, just as, you know, BLG have gotten off to a great start. Not a good map for them historically. In China, they got 13-1 by Trace. They lost to this very Wolves team 13-8 in that upper bracket semi. So historically it's not favored them, but this is the perfect start to turn the tides. This is going to take everything they've got left in the tank. YZ going to need to put on an all-star performance to make it back to the playoffs. He knows what it takes. He's been there before. So is K-Knight. Against a Wolves team trying to make this kind of run for the very first time. He's got an audio issue down on his stage. He rectified momentarily. Just the run. I mean, there's a lot of history between these two teams. We definitely delved into that at the start of this game. But the fact that BLG, in order to get here to Toronto, had to take the hardest route, the highest climb. They had to dispatch easy. Considering how not so long ago they stood at the top of the world. That speaks volumes about the depth that's starting to develop. In this game, and we're going to see much more Chinese Valorant with 2. हरामी तो ट्विच वाले भी होते हैं। मेरे ट्विच पे नहीं आता, गाने में जाने tearing up the entire ट्विच पे वो वाईटी पे आता है। हाँ, यूट्यूब पे आता। ट्विच पे वो सीन नहीं है, गाने को बजा दो, PRX में करिए ट्विच पे 2-4 बार स्ट्रीम। मस्त गाने में जाके बैठा होता मैं। Ain't no way, but my humble king. ट्विच पे कोई बकचोदी नहीं है, यूट्यूब पे ही है। Awaits us later on this week, but for now, let us deal with the smorgasbord in front of us. Heading to the first buy for Wolves as Billy want to secure a tight little bonus. A few SMGs for Billy. They'd love to get close up some of these angles. They've got fair control over towards B main. Levius keeping Wolves back towards mid engagement from YU, and
YZ thinks better of taking that. Just collects the orb happily, one away from the showstopper. Keep your eyes on that. If he can find a kill somewhere, things get scrappy. He could win this round for the team. Solid reception there though by Knight. Trading evenly other defenders. And leaves only Sufat, the one to emerge from the dust cloud in mid. Now needs to kind of wait for his teammates on the extremities to give him a little bit more of an inkling where the remainers of Billy are arranged. YZ is currently pressing up towards A main, if you look at that on the mini-map. That's going to keep BLG interested towards timing. This side of the map. Wow, they're rotating through mid right now. YU just catches the first and Sufat turns around. Billy getting way too happy to explore on the map. 30 seconds left. And that call instead to explore the extremities further, but to bolster that mid presence for Wolves pays off beautifully. It sees YU emerge on the perfect timing to unsync them. This leaves YZ in a position, paint shell still at hand. Sufat relatively low. It's a big ask for even the best in this situation. I count YZ among them. He too feels that discretion might be the better part of valor here. Wyatt, they have to fight another day. He did full invest into the Phantom this round, so certainly wants to keep that. Has the lowest credits on the team due to the investment. Billy just doing way too much in the mid round there. Way too much. And maybe it's a nervousness about knowing the A side of the map is slightly weaker. It's just YZ sat in there in heaven. Instead of sort of rotating through spawn to the back part of the map, they think that they're safe with, two players crossing mid together, and in theory you'd be considered reasonable for that decision. It blows up in their face though. BLG headed to their full buy. These are some good trades back and forth. Levy is popping out of that smoke to get the second. Sufat the exact same. Things even. I mean, Sufat has to respond very quickly to that call from YU. Just in time. Really just serving themselves up. Here's the full buy from BLG. Max investment. Still, it's this showstopper that YZ is on the precipice of collecting. He is playing over towards ramp right now, solo. Wolves, no emphasis on mid. They wanted to pressure towards B main early. And now Sufat wants to ensure that no one will be walking down. Certainly aware that that's the kind of play YZ will be absolutely happy to make. There is a very large amount of utility to play through as attackers on this A side. Wolves, we saw them, with the double sentinel composition. Billy played into that well, sort of clearing it slowly. Now they're in a position where they've got to do something much the same. They have that ramp position, but they're not convinced. They don't see anything to play off of. And YZ was drawn out of mid back to sort of reinforce this position. So mid's a little weaker now as a result. And that might be Wolves finding a golden opportunity to capitalize there. They are taking their time pivoting back towards mid. YU had thrown a really deep trip towards A heaven, so at least we'll know if anyone's walking up on that side of the map. But the defensive cam is getting info there. Things are starting to increase with the tempo. Juicy is getting into vents right now. We'll take an engagement. Oh, what is that target? Brutal! Showstopper immediately developed, and Lysol is just tucked on the corner. YZ getting away with everything there. Levis is pushed up now. Net closing on Sufat is able to deal with YZ, but time wasn't there anyway for Wolves. It would have been a struggle for them to get anywhere on the map after that. A little bit too slow, a little bit too awkward. YU just wants to try and keep his gun. Can't blame him. Brutal stuff. YZ pops up yet again to the detriment of the attackers. It's just going to have Juicy sick to his stomach. Just milliseconds away from him getting an easy kill with YZ on the boat. It's an early timeout call from Fade. This was the map I called out earlier when he was going for timeouts. Had significant impact. Moments where Wolves began to go on runs against Sentinels, kept that map so close. Almost had the most unlikely upset win to open the tournament for them. So the dynamic, the last time we saw Wolves, for example, on this split map, with a lot of action over towards B, right? Sentinels really wanted to push in, take the B main control. They were trying to set Zekken up. Spring was finding really good opportunities actually just to win straight up duels against that Sentinels Yoru. Here though, Wolves have not been emphasizing that B part of the map really at all.
We've seen Spring try and get that poison orb far forward, sort of past that B main choke, but there's been no fighting for that part of the map at all yet. Mostly that early probe towards A and then pivot up mid. Wolves definitely feeling like it's time for a bit of a change. Spring's lurks were so high impact. He was absolutely ruling B main. He was finding timing windows to go deep into the site so Wolves could pivot late. They love the late pivots on this map. Absolutely love them. And Billy knowing that, just need to not overcommit to rotates. That's what Sen were falling for often, because you just wouldn't expect Wolves to pivot back to B with the low time remaining that they do. How common they actually, will opt to do that on rounds. Not so much of the pace that we saw from Wolves against Heretics more recently, though. This has definitely been more methodical. Looks like B was the call, in fact. Just going to throw up that poison cloud so Sufat can likely get onto this orb. It's just one away from the knife. Oh, love to have that, but we're spring down there. That crazy position on top of the wall, Rushi had the perfect location there to punish that poison orb. Found a gap just above it. And this is where Wolves have looked to struggle a bit. That slow momentum, converting those 4v5s has been really challenging for them. This is interesting. That's a unique double face. Juicy wins a 1v1 against YZ in mid in the meantime. That's going to be a boost, no doubt about it. Juicy's Neff, there's no opportunity for a swing. Levius remain hidden. So Juicy is claimed. YU lingers in mid though, wants to take this fight. Really trying to get into heaven, I think, with some burst of momentum. And Lysol opens up an opportunity at the B side. That is massive. Now it's K-Knight, who doesn't quite know really if the plan is to stick to B, but Lysol's going to reveal the intent of Wolves now. YU wants to keep this Cypher as busy as possible for as long as possible. And the shot to the bread basket will take the round away. Wolves gotta feel good. And that's a 4v5 conversion we were saying that was sorely missing. Heroic play from YU in mid. Juicy gets that initial 1v1 kill here against YZ. What a snap as well. I mean, I like the idea, swinging while the Trailblazer is running out, but the snap is sickening. He called out the importance of that 1v1 win with YU taking his time. Such high impact. So how do you build up this foundation? Not a buy here for Wolves. The look towards B this time paid off, albeit not in the way we thought it would. There was a mid opportunity that was capitalized on. There's a drift here through sewer though from Wolves. Early presence shown in mid by Juicy sends out that. Well, now they've worked their way towards A. Fully YZ is posted up close with the judge. Prowler sees it. Position defeated. YZ has to try and leave it. Boombo in his way. Showstopper though didn't find much. Still a quick push here from Wolves. Looking for that ramp control now. Post nightfall. K-Knight there. Oh, the spray through the cyber cage is sublime. Levius also to his right can assist Juicy. You can't account for those. You can't count on them. That's given Wolves another way into the round. They want to press forward. Juicy wants to break the crosshairs a little bit ahead of the rest of the pack, but Nev goes back in, wants to find that kill, and now YZ caught with the judge alone, tucked in hell. No chance to make good use of this weapon in this round, and even here it's all with its long range. Cal wins. And Rushi's going to step in 1v3 with a little bit of alacrity. Juicy's head but from below. देखते हैं. And now Wolves, ahead of steam that we're looking for on this attack side, starting to build. Great use to close angle. They suspected a judge might be waiting. Juicy is turning up right now. भाई Gets the TL जीत गई ना. PRX पार्टी भी जो गंदी करूँगा मैं. That is so high risk, and he is शूट कर रुला दूँगा इतनी बेइज्जती करूँगा. Wolves had no other options by the way. They had no map control elsewhere. For all they know, players could be pushed down mid, wrapping them. They have to commit forward. They can feel themselves potentially being encircled, but they win out all the duels. Peak, of course, just with a ghost on this, Eco, Spring, back to doing what we know best from him on this split map, which is just playing the main, taking it over. This time, Rushi, though, steps pretty far forward. You can see where the main peak went down.
Spring on a passive line is able to find an easy I kill. know exactly where. Juicy, man, I'm getting excited about him, White. He's been able to find these opportunities in a 4 versus 5 to give Wolves away into the round. Now they get a rare situation where they start from the front. You can see how much better they look here. Levy's on the line, but shows his gun barrel, and Spring cuts them down one after another. Spring by is easy B take for Wolves. Spring by is good as done. Juicy maybe hoping he can be the one to get a couple of these kills. Get even closer to that showstopper. He's nearing just 2 away right now. Oh भाई आ सकता है ऐसा आ सकता है. It's a gun recovered. Spring by is करो. Spring now with YZ being low, getting topped up here. दोनों है भाई, बहुत possible है. अबे यार. Costly for Wolves, but with multiple Three consecutive round wins. बहुत possible है इसका. Got a bit of bank, a bit of cushion. It's only a stinger that Neff would Exits निकाल देगा. एक exit तो आएगा. Seconds, I think, to pick up this rifle, and Juicy does not want to allow for that. At some point, Wolves have to get out of dodge. They've got to get off the site. Juicy checks it. It's not good enough. Neff finds him flash, eventually handle. And Wolves get 2 players out. Costly, yes, but these attack rounds don't come easy, as we've just seen already. A fair amount of damage to keep Wolves' economy somewhat honest, but it is Juicy getting the kills and dying. Now having the showstopper for this, they're going to have the Viper's Pit because Spring is starting to keep up. He's started to find these kills in B main. Collect orbs via the kills he's getting. So now the Extremity very alone on a lot of these rounds, and Op would definitely help him in a situation like that. And he is going to pick it up. See where he decides to post up B main, so likely hoping to just deal with Spring if that Viper, who has been an absolute nuisance, decides to continue to contact push up. All right, round number 8 coming at you. Isolate and Wolves here already a map in their back pocket. Thinking ahead perhaps just a little to what playoffs would mean. Here's that mid Viper's Pit. An operator to that B extremity. Just like we drew it up. WhatsApp देखो. Lovius able to play देखना बाबू एक मिनट. Unbreakable trip as well, which is even more of a nuisance in the pit. Prowler going into it. No way. देख के बताओ कैसा लग रहा है ये. Through this, going to force the Viper away. This pit is going to drop. There's absolutely zero chance Levius will be getting back into that. It's full vents control for Wolves. Intentions of splitting onto A, it's looking like. But they can slow things down. They don't need to right now. Going back to what they love to do on split. Towards A. Go for website बना रहा ना split top की. This whole approach to the round for Wolves is तब ये PC में देखो PC में और genuine लग रहा है. Over on B. PC में देखो PC में looks like Billy, they want to explore. They feel like they need to get some more. The timing on the cam is so unlucky for YU. And off that double push, now Wolves, they want to accelerate, hoping that the B site is going to be about us वाला page check करना. Operator still here. उसे जाने से लगाई है मेरा साथ है. I spoke too soon. YZ gets the action he was hoping for in this round. Rushia on the side, anchors in there. YZ get another one with the op, and Juicy has a round collapse. Oh man, chod भाई पागल हो गया. Okay, Levius here should be unseated somewhat, but can hold his ground and convert. So you think they make the right choice and they deal with the Viper's Pit at the start of the round. They end up getting forced after this exploration down ramp onto B, where YZ is patiently awaiting them. That is a good little adaptation out of the timeout as well in the mid-round to try to punish one of the solo players on the extremities. The Wolves have been so happy to play 1-3-1s, commit very heavily with the pack towards mid. It was a little unlucky for YU with that timing. Save round. Billy happy to pick that up. Still maintaining operator for YZ. Angle down mid right now. हमारी वो खरीद रहे हैं ना मर्च खरीद रहे हैं ना हम तो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं बन चुकी है हाँ वो तूने भी तो खरीदी थी बेची तो थी तूने शायद वो बहुत पहले वाली थी वो तो जब क्या नाम है दिसंबर की थी विंटर अभी समर वाली आ रही है टी-शर्ट्स And now giving up vent, they want to take space elsewhere. उसमें मेरे को हेल्प चाहिए होगी बता देना मेरे को ठीक है क्योंकि दो ही प्रोडक्ट है तब एक पे बना के कोई फायदा नहीं है अपने को क्या था ये Bizarre round, absolutely ridiculous. अरे मैं कहता कि
वेबसाइट पे हमको 2 ही वो बेचनी है टी शर्ट, है ना? तो API से डाटा लेने का कोई फायदा नहीं है। एक क्या नाम है जो स्टैटिक डाटा वाला होता है, प्रॉप्स होता है, उसमें ही क्या नाम है 2 वो बना के स्टैटिक डाटा को मैप करवा दूंगा। मेन दिक्कत रहेगी, मेन दिक्कत ये है कि जो पेमेंट गेटवे हम लगाएंगे उसके अंदर वैल्यू कैसे पुट करूं, वो वहाँ पे मेरे को दिक्कत आएगी। जो ये पेमेंट गेटवे होगा उसमें हर एक टी शर्ट का अलग अलग प्राइस है। ब्लैक वाली 1000 की होगी, व्हाइट वाली 950 समथिंग कुछ, या फिर दोनों ही 1000 की होगी। तब पेमेंट गेटवे को लगाना पड़ेगा ना, प्राइस लगाना पड़ेगा कि बंदा सीधा लास्ट में चेकआउट करे तो सीधा पे का हो जाए, लाइक 1000 रुपये अपने आप ही हो जाए, पेड हो जाए। एक काम करियो, शॉपिफाई वगैरह का क्लोन देखियो, शॉपिफाई के क्लोन बनाए होंगे ना, उसमें मिल जाएगा अपने को। क्या तो ये होगा ना, शॉपिफाई से मेरे को रीडायरेक्ट करवाना पड़ेगा शॉपिफाई। हाँ वैसे भी तो कर सकते हैं, क्या शॉपिफाई में फिर स्टोर बनाओ, फिर दोनों को डोमेन देके उनको लाइव करो, बहुत पड़ जाएगा ना। मेरे को ऐसा आइडिया नहीं भाई, देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी इसकी। पूछना अगर कोई तब तो होगा ना ऑफिस में, as a member of a large and in charge four-head club, I would never. ये डाटाबेस तो बनना तो है, क्योंकि बंदों का एड्रेस लेना होगा, वो डाटाबेस में स्टोर होगा, वो सब तो मैं देख लूंगा। The A side, Billy have fully invested into this. That's left K-Knight rather with a lesser gun, just the Stinger playing backside B with a full kill trip setup. Definitely more tentative looks from मेरी सारी स्क्रीन शेयर थी, none of them लगी थी साइड टीसी पे, audacious. तेरे साइड बनने से पहले लीक हो जाती है। There it is, Juicy on the on. Then again, he makes the opening. Gets caught out by Neff. Surely some follow-up is there, and at least Wolves are able to trade somewhat efficiently into this A side. That was a slow trade. Juicy getting a little bit disconnected from YU, who needed to win that duel and does come up. BLG, do they risk this? They need to find a kill somewhere, but Spring on this lurk timing. Their economy in the balance. It's teetering, and this time Spring has the timing. Rolls are reversed, and Spring delivers for Flying 2. Nice handled all too comfortably. Wolves extend that lead to 2. BLG were hoping to find him alone back in A main. Not expecting a late wrap through the vent all the way back through ramp. This is not the kind of lurk that Spring has gone for. Yeah, in this half. Typically was just coming from A main. Oh! Oh, the heel turn. He's too quick with it. Now BLG, they are relegated to a bad bye. Things feel like they're beginning to get completely out of hand. Spring has gotten another Viper's pit for a post plan. They're nearing the nightfall, nearing the showstopper. You know, a couple collected orbs, kills for the right players, spike plant for the right guy, and there could just be a sick array of ultimates for the last buy round in this half. Deny Billy from getting more than 4, unless they can come up with something. Last thing for Billy. Bullshit pushed up too far in B main, and Spring ended up just taking 3 easy kills as he leisurely walked onto that side. This time it's a more passive, more patient start, but now we have an encounter brewing amid these smokes. Spring hardly takes any damage though. That's a gun advantage here, but exacerbated once more. History repeats itself. Spring a little bit low, but he's done the most. Distributing catnip. What the fuck, why Spring like this? The Knight has to step up, try and stop the bleeding. It's not बहुत प्यारा मारा भाई Spring ने nice shots रे. No doubt. Easy One के of the best players on this Swiss stage. When we watched him online during the run to get here, sometimes volatile because of his willingness to just take fights on lurks, on defense, play a lot of offense. He loves to take a duel. But when he's playing like this, he just looks like a god among men. He had games like that online.
But मैं when तो he म्यूट had करके छोड़ दी misses, that was putting the rest of the squad in That's tough why I positions, feel trying to recover. He has been ले, so बुरा मान गया। consistent बुरा मान in गया, this बुरा Swiss मान गया। stage. I mean, if he plays like this against some of the other top teams, which I mean, to be fair, he already has. It feels like the sky is the Swing by limit for 4K. this guy. What a debut! Swing on the by national 4K, stage. भाई। Cleans up another Tipo Braga ही कहते The हैं। spray control for that second kill in heaven while getting Wait, T-Rex बाजी real ID से आओ। that's mental. 14-8 right now. There's that first encounter. सीरीज तो आएगा PRX का मैच है भाई। रात को आएगा। जो बीमार है भाई। That level of purchase. अच्छा चैट पे है क्या? Once he dropped down, he heard it coming. मैं सोच रहा हूँ पूछता हूँ उसको टेक्स्ट करता हूँ Whereas WhatsApp elsewhere, there पूछता wasn't हूँ a आएगा whole lot रात to do. को। बीमार है भाई वो Rest of बीमार Wolves है on the A जुई side. Shame. That map one, it was in terms of the क्या ये fragging coming बहुत ये down ग्लास वो to कॉफी पी जाते हैं ये Lysor, खेलते खेलते unlikely में। hero, stepped up on the deadlock, IGL Supat, but now we're back to what we expected. भाई मेरा मैच छोड़ना मेरा तो QC फोकस में and मैं Spring पीना भाई। putting in भाई वो work. focus करने के लिए They have a पी रहे हैं। showstopper and a pit again. Just use that first raise ult to get into a site. Viper's pit to try to close things out. Supat draws some attention towards mid, send out the मुझे तो Prowler, मिलती है breaks ऑफिस the में boom ब्लैक bar. Here ब्लैक comes कॉफी भाई the 2 aggression टाइम। towards A. Juicy needs to clean up. He's out of the open. Just before the cyber cage came down, Juicy gets into the site without being picked up. And Bracey is just entrenched here at Rem and can't get out. Caught up Rashid, nice timing. Zulfat dealt with it, now it's Juicy. क्या Deep चल as he रहा है भाई is, ये क्या चल रहा है ये just दोनों? got the ping on Rashid's location and takes the challenge. He needs to get another one. And अरे Juicy Juicy The wide swing. He waited years to get onto this stage. क्या है भाई ये And he जूसी? is putting on an absolute show. Star What the player fuck, for man? Wolves. Dominant half on attack here. Again, they are so sick on this map. what a way to send yourself कुछ into भी the break. chaos चला है भाई कुछ भी chaos Then चला है rounds अभी। like this, Red Bull clutch for Juicy. Feels like he's got that main character energy right now भाई for इनका वो Wolves. देखते हो आप? इन्हें And it's देखते हो history कितना काम repeating रहता है itself. भाई। 8-4 scorelines all the same for Wolves against Sentinels. A great attack side. Have they shored up some of their weaknesses on the defense side? That's something Coach Fade, who's feeling good right now, I'm sure, has to start thinking about as we look towards them taking an opportunity to qualify for those playoffs. More to come here after the break. It's a crazy split and a 4-round lead for Wolves. Crazy. You might have heard I'm going through a little upgrade with my tax. So when Verizon announced that everyone gets a free phone on any plan, pain-free, count me in. कितना मजा आएगा भाई? अपन 10 बंदे ऐसे ही आमने सामने बैठे पड़े हैं। Full Try and high beat it. I'll give you a sec. rise off. ये अलग है अलग लेवल का है पता है मैं तो YouTube पे रैंडम ऐसे रैंडम लोगों की स्ट्रीमों पे जा जा के हाय हाय हेलो कर रहा था मस्त यहाँ गेमिंग सेक्शन में जाके मस्त लाइव बैठे लोग टीम व्यूइंग आ रही है भाई हाय लोग देते हैं लाइक करते सी यू प्ले कॉम्पी ब्रो ओके मैडम जी ओके दीदी Defenders win. हेलो 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 आवाज आ रही एक नहीं जना ही रहते ही में गाइस चैट पे तो कहना चाहेगा तो आ जाओ हालांकि उसकी किल्स मेरे से एक ही ज्यादा हूँ मुझसे चैट्स पे से कोई आ सकता है तो आ जाओ गाइस फटाफट आ जाओ कॉम्पी खेलने के लिए हमारे हाथ तरस रहे हैं दिल में कुछ हो रहा है हमें धक धक टाइप हालांकि तो लड़कियां बैठी है उससे ज्यादा धक धक होती है बट फिर भी बेसिकली एक तो दीदी है तो उसको देख के ज्यादा धक धक नहीं होगी पर दूसरी को देख के ज्यादा होती है सो चैट्स पे से कोई आना चाहेगा यस और नो लास्ट कॉल स्ट्रीम लगा रखी तो क्या कर रहा है कह रहा है एक तो चैट पे दीदी है पर दूसरी को देख के धक उसको देख के थोड़ी कम धक धक होगी पर वो लड़की है इसलिए दिल में धक धक होगी कुछ तो बकचोदी कर रहा है भाई बढ़िया वो आके गाली गलौज करेगा तुमको उठा निकाल लो उसको लाइक बट देखना वो गाली गलौज करेगा और मैं म्यूट कर दूंगा उसको हेलो बोलो फ्लैट का बंदा है भाई हाय व्हाट्स अप भाई आवाज आ रही है
अरे पक्का पूरी आ रही है। What's up भाई, एकदम ठीक हूँ मैं, तू बता। एकदम आ रही, एकदम जोर से आ रही। ठीक हूँ। हेलो। सोलो कर लो आप। हाँ बोलना बोलना। क्या अरे बोल रहा था कि ये रेस भाई प्लेट का है। हाँ तो बुला लो, पर वो गाली गलौज करेगा, टॉक्सिसिटी करेगा और कुछ नहीं। बुला लो, तुमको चाहिए तो बुला लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी उससे बात नहीं करूंगा और उसको म्यूट कर दूंगा। कॉम्पी खेलना है तो प्लेट वो हाँ तो बुला लो ना, मैंने कहा मना किया, बुला लो ना। पर प्लेट पर खेल नहीं पाएंगे उसके साथ। क्या हाल चाल भाई? एकदम ठीक हाल चाल। यहाँ पे सब हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। तू भी सुना, तेरा क्या हाल चाल? फ्रेंड्स अगर लाइफ में हो तो यार बेस्ट ही रहता है हाल चाल, सिंपल सी बात है। देखो क्या करना है, जल्दी बताओ, एस्केलेशन चले भाई। फ्लैट का दिक्कत तो अपने को होगी फिर कॉम्पी में। वो तो वही बोल रहा हूँ ना, वही बोल रहा हूँ ना। फिर देख लो अभी तुमको क्या करना है, तुम सब बताओ। मैं सारे ऑप्शंस दे दिए तुमको। बढ़िया भाई बढ़िया, गुड, बढ़िया ही होना चाहिए लाइफ में। गाइस वो लोग क्या कर रहा है, उसने अभी रिक्वेस्ट तो डाल के रखी है और वैसे आई गेस तो चला भी गया। किधर है वो? चलो फिर एस्केलेशन में गायब हो गया। चलो फिर एस्केलेशन गाइस। वेलकम है व्यूअर्स को, वेलकम है गाइस। डू लाइक शेयर हमारी बातें, अगर आपको हमारी बातें गेमिंग पसंद आ रही है तो ऑल्सो डू चेक आउट माय अदर पेजेस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीमिंग। चलो एंजॉय स्ट्रीमिंग, हैव अ नाइस स्ट्रीम। मैं चलता हूँ भाई, तेरे को भी हैव अ ग्रेट डे। अगर तू स्ट्रीम करता है तो हैव अ नाइस स्ट्रीम। एंड आप सोलो कर लो। सोलो करूंगा तो इन सबको भगाना सही थोड़ा है। वो दीदी ऐसे नहीं करते, ऑलवेज प्ले विद एवरीवन। जब तक लोग नहीं आ रहे तब तक सोलो करो, इट्स बेस्ट। बट जब लोग आते हैं तो उनको ऐसे बोल ही सकते हैं ना कि मेरे को सोलो। चलो ये स्टार्ट होगा। चलो Coming up, BLG have needed him most. Guiding light. Pretty informative. As far as BLG are concerned, there is a massive push up for Wolves, and it's about to get even more massive. As Neff wasted very little time in heading the other side of the map, away from the center. Damage. Paranoia, they're really trying to push this. This might be a quick one, folks. I must wait a moment. Poison's off. A cancel called on this push, though. Yeah, they are going to fall back. I mean, once YZ is able to tuck around the corner to safety, Juicy by 1 HP. they feel like let's go elsewhere. Let's gamble stack towards A, I think. It looks like they want to rotate, just figuring that, hey, we showed a lot, we paranoiaed, we haunted, we swung out. Surely they just go over to this A side, right? They kind of hesitated for a moment, though, and that is going to allow BLG to get into the site before Wolves can actually, kind of make this foray. Okay, from elbow. K93. बच गए भाई। क्या crazy jump out था भाई। बलात्कार हुआ है बंदे का। Orb for a player on Billy. Oh, good. Jump out करके एक बंदे को जो पेला है। He did it. It was a cool little attempt from Wolves. They throw out that haunt. If it gets broken, the paranoia बंदे ने भाई swing out of the उम्मीद ही dark छोड़ दी cover. होगी कि मैं The बचूंगा। positions from Billy here were उसका POV देखना है भाई, वैसे का POV दिखाओ। trying to play around exactly like that. नहीं दूंगा Able to just pivot यार over नहीं to the दिखाएंगे। side, rotate दिखाया back. तो हल्का सा। Could, who are now on the full उछल चुके थे dive. बंदे बाहर को। Strong bonus for Billy. चारों एक साथ कूदे हैं भाई। Weaponry to play with, YZ with the best among them. Phantom in hand, Flash to get information towards Ramp so we can try to take some space. Cam broken as well. Safety on the cross for the rest of कैमरा the अच्छा team. लगाया था भाई वो। क्या बहुत crazy था भाई बोल। Trailblazers, something known Billy in this matchup have access to. Looking to clear their way up ramp and also reveal the trap wire. That is cleared. And again, we'd like this from Billy on Ascent too. Good early moves, clearing that util, not fully committing to any part of the map. They've left themselves an insert in Levius towards that A side as they want to go work mid. Bot to clear out male. Information now on Spring, who drops back. This is still good. BLG अटैक में कर लेगी, देख लेना। For Billy. Forces to spring away. With that attention on mid-weight, is this a timing for Levius? Of damage, and here's the execute onto the B site. Juicy from Rafter, fully blinded. Shrugs it off though. Just around a corner is K-Knight. Blast back thrown out to disrupt potentially Lysor. Gets his in the back of the site and Juicy's now tucked. He's able just to swoop around the corner. It's evading him. So nice from Billy. Very clean. Securing this bonus means that we might have ourselves an even game out here. That's why you try and go for this. Can he find a first kill? He's going to have to break this tripwire. Give up his positioning, swing out. Too many players able to face him. I love the pathing.
from BLG on that round. The early pressure on ramp. They leave the insert. Then from there, they go back to mid. They're set up in a 1-3-1. They fake like, hey, we could be getting into vent, but we're also throwing the boom bot into mail. So when they actually go people's main, attention is just having to be drawn from so many players in different locations. You have Juicy scared about them coming through mail. It's a great burst out of main with all of their players. That was a great round from BLG. Really impressive stuff. And it's put Wolves on an ego. And it feels like just deja vu from the Sen game. They start slow on this defensive half. They lose the pistol. They get bonused. Same exact story. Coming alive not a moment too soon, BLG. Already starting to think about potential of Pearl to come up. Last time these two teams played on this map, it was not a good showing from Billy. 4 rounds. Very, very soft. This time though, they know what's on the line. They know just how deep they need to dig, rather. By default. तब एक चेंज होता है तब पूरा डाटाबेस इन सब से चेंज हो जाता है वो here for Wolves. Sulfat crossing mid at a time in that course. अरे ले जाइए यार तेरे को मना नहीं कर रहा मैं मना नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ बस करेगा तो प्रॉब्लम ध्यान में चलाइए all the way into A was running around as well, so he's calling it too. Wolves definitely or rather BLG should be अरे मम्मी ये लोग लेके आ गए थे मैं तो आगे वो मैंने वो कर दिया था आम रोटी it's safe and late round run. What the fuck? Enough to make this easy on round 16. What the fuck is that called? Would be shocked if they take too much damage here, but don't want to speak too soon. Spring and Juicy do have sheriffs. Even at this point. Wolves need round wins on the board. 10 seconds left. Alright, well, cat's out the bag now for Wolves. Again, against a team like Billy, you can never sort of second guess. They do like to make those moves and reveal themselves pretty late into a round. Yeah, only Sheriff's brought up, but now with the attackers fully entrenched, Hank in the A side, they're armed to the teeth. Wolves know there's just no outcome. Well, result on them really taking a round win from here. Set up what you can. It's a rifle for Young Spring. उसका क्या सीन है जो आर्केड बोल रहा है? Another kill for the board, sitting at a 4-18 right now. It's a question of like what the plan should be going forward for Wolves. This early action hasn't exactly been fruitful. There we go. Just Spring, of course, with the rifle in hand, who opts not to perish to the spike. So even game now, folks. 4 rounds in a row picked up for Billy. Building very nicely off a pistol win into a bonus win. Whereas Wolves have been a little absent. Haven't really been able to unravel things. And we've seen when the pace of the game gets taken away from them, they have at times struggled to assert themselves. That is more Josh than I could ever handle. I don't need that many. That is a full thrower team of sideshows. One is enough. One is enough. Billy. और TX पर क्या हाल है? 1-2-2 slow prod towards mid right now. YZ. TX पर was so Really expecting some देखते नहीं हो भाई आज trap play, which is set up towards B main. To be fair, there's a paranoia sees. वो खा रहा है क्या हो गया? Juicy to capitalize off of. Nade as well. Turn to this point, but Juicy was the one क्या करोगे इतना मोटा शरीर लेके जब? They had a rough start to this map. तूसा जुकाम फैल गया. They were often in 4v5 using a player early in the round. Juicy was still able to, just by brute force, create an opportunity into the map. And credit to the rest of them, they did convert on those. All events just taken for free. Some good map control right now for BLG. Dark cover is thrown really deep in heaven so they can get in here. K-Knight grouping up with them, making their presence known so they can just pivot back through vent, get into mid, go for a B split. Look at how they pulled the rotation. Yeah, Juicy realizes he needs to double back on the side spawn here. Lysor trying to hold the left side of this, but positioning broken his left sides on out. Lysor has to come alive. There might just be enough. Levy's here is bereft of teammates, running out of time. It certainly doesn't have a lot of options at his disposal.
Wolves finally rewarded for their patience, trying not to over-rotate early, even though Juicy was at risk of doing just that. Miscellaneous doesn't have time to plant here, it's done. That really is the key. Both of these teams just playing that slow style on attack, not overcommitting. They are happy to make these late pivots. Love to see Lysor making his mark on this map. We talked about the experience of this guy. Every international event he attended last year. Certainly cannot say the same for the rest of Wolves. They are new to this. Sufa IGL saying it's been his dream to be here. Worked through so much and has arrived on the stage. That has got to feel vindicating. Fashion. Vindicating for Lysor. Again, having such a fantastic showing on Ascent. He was a little bit slow to start here, but that's composure, that's years of experience, that anchoring on that B side. And if Wolves can follow up their slower approach to these defense side rounds with precision and composure like that, they'll have the stopping power against this BLG team. Trying to funnel the orbs over to Neff, get him very close to the Seekers being activated in this round. Set up to play off this unbreakable trip, doubled up. Again, it's just this patience from BLG, which does feel very un-BLG-like. When is YZ just going to run it down and just keep pushing? Yeah, I mean, really haven't seen a whole lot of that. It's the same on Ascent, right? It gets the double Senti comp. In fairness, that kind of requires a bit of a lighter touch. Patient, trying to work the map. They pulled a bunch of early rotation from Wolves in the previous rounds. Levius just walked up and he didn't know there was still so much presence at B. Okay, time to anchor. Yeah, they want to get in. Wow, from the shadows actually popped. Why you getting some assistance with Lysor here? I've got your trail. There's no follow-up for Spring. There's no way to double down on at least secure a trade. Why you good for though? Lysor to the rescue. Just the one this time around, but one might be enough. वो काट गया ना. Down to 33 health for two players. Vatu, a cost him from that heaven side. This would have to be a monumental clutch. Pinged out by the Horde. Juicy comfortably dispatches. Now, that money's starting to bleed down a little bit for Billy. But such a good start to this half means they've been inoculated from this sort of volatility. Can still keep the pressure on with those weapons. But Wolves are getting more comfortable in this slower, more anchor-centric approach. This was great from Lysor to get over to assist YU, who was fully committed to anchoring this site. So even though they got a pick elsewhere and theoretically would have loved to play for a retake with man advantage, that wasn't an option. They needed to help YU. Lysor gets over there with the ult. They double up, anchor so effectively. And now we've got the timeout call. BLG are in serious danger. Wolves getting back into this defensive half, stringing rounds together much earlier than they could against Sentinels. It was, in that game, too little, too late. But here, able to get back in the lead. Close to so many ultimates that could be used on one of these full buy rounds. Applying pressure to Billy. इन लोगों के कोच बैठे कहाँ रहते हैं भाई? A win here against Billy, or at least having to play against them for that spot in playoffs. Bittersweet, I'm sure. All these Chinese teams would love to see one another advance forward, but this region has already well and truly put themselves on the map in the past. In 2024, we know what they're capable of. But even still, Wolves being the team that might advance to playoffs over Billy, shocked many of us. They've shown such determination, grit, and quality of play over the course of this group stage. Still a couple of rounds from that kind of milestone, but I'm sure they're thinking of it. I'm sure they're trying not to, but I'm sure it's there. Out of this timeout, adjustment for Billy. YZ picks up the attack side operator. We saw him do this a lot on Lotus and was finding success. Some crazy multi-kills. Collad kills as well. Okay, well played from Wolves. Just simple nade, one way, get forward, get the orb to Juicy. Showstopper now available. Spring's positioning is actually the variation in this round. Last couple of rounds, Wolves have given up it entirely. Just played right out to the edges of A and B respectively. मोटा हर बार same चीज कर रहा है पता है The real issue with this operator would just be the fact that Wolves have not been giving it BLG anything. They're not offering themselves up. They're content just
playing safe in these sites, waiting for late rounds. I mean, this could be an opportunity. Maybe YZ posts up, catches a jump spot from Lysor. Toxin screen down. Juicy has a showstopper, so Lysor can fall off this line if he's pressured. That's just such a hard shot to hit. Has to swing out and get the reaction time. And now you're just going to get stall utiled. Like, you're just going to have smokes rotated there by Lysor. यार बहुत slow gameplay है भाई on the लोगों back का. this operator by. I could see a situation here where this trip gets broken and then maybe a showstopper comes through. Yep, there it is from Juicy. Can't get it off in time. What the Okay, that's a bit of a miss, no doubt about it. Sealfat, though, sees a golden opportunity to play off that season, gets one, but doesn't expect there to be so many. But it's not to be. और रूशा भाई 2 ले गए हम. There was an opportunity there, a chance to stop Billy in their tracks, but the patience Side खाली कर दी भाई. from the attackers has absolutely paid off. 10 seconds left. And why he's got no business being on that B side of the map. Just a moment away from Juicy likely converting 2 if he was able to get that rocket fired. But Neff was a little bit too quick with the spray down. And Juicy was just hesitant for but a slight moment before popping that showstopper too when he was in the corner. All those little things adding up, spelling disaster for the side of Wolves. They've still got enough money to buy here. We head into the next round, still maintaining the lead, but just barely. Compared to the last time these two teams played on this map, Billy have looked so much better here today. Shadows traveling. Yeah, we've really got to, I think, acknowledge the step up from both sides. I mean, the Ascent gameplay for Wolves is quite years apart from what we saw last time they played Billy with a really very poor showing on that map. Last time out here for Wolves, Billy having expended theirs and then were able to take the round. Even when things looked a bit dire early, this exchange, this is the difference maker. I was waiting to see when this time it would actually be called by Fade, and it's essentially at, you know, give or take a couple rounds, more would ascend, but the exact same juncture in that game where it was very late on the defensive half. And you see the Sufat doesn't expect there to be more than one player in Mailroom. I mean, Wolves are giving up so much of the map that it's pretty hard for them to get current and relevant information. So, you know, things like how many players are stacked up, the fact that there was 3 BLG players in mid, they don't have a mechanism with which to find that. Is broken by Spring, is just going to keep his eyes on B main. If he can find a kill, has that Viper's Pit on this round. That showstopper could be pretty relevant. Why is he trying to open up mid with this op? Juicy this time feels like a more subtle approach to controlling Mailroom, and Heaven might be in order. He doesn't really have anyone to swing off of him. Why is he running forward? What a spray out from Juicy! No one able to trade. Juicy भाई ने चूसा मार दिया भाई. Trying to make something happen. Pushed up with an off. Why is he was out in front of the कर दिया अच्छी. This time Juicy! Oh भाई Juicy भाई पूर के भाई. The flawless for Wolves out of absolutely nowhere. And all of a sudden the mood and the entire room has changed. Juicy out of his seat. Juicy भाई कह रहे मेरा रेजल्ट दिमाग में Brilliant kills. But look at the position they've forced BLG into, what they've had to do to try and take the map.
pushing up on the op on that angle. Just a little movement adjustment keeps the control on the spray to get an instant headshot when Neff tried to swing in. Can feel it, Wolves. They're on the precipice of doing the unthinkable. To some extent, both of these teams written off, but to a seriously greater extent for Wolves. And they are right within touching distance of making it into the playoffs. More so than I think any other international tournament in the past. China is written off here, and yet we're about to get 2 teams in the playoff run. And even before that, we have a rivalry renewed. The 9th matchup between Wolves and Bilibili, one that Bilibili historically have dominated. 6-2 is their record. But more recently, it's this Wolves team that have come of age, that have come alive, and that have developed a new facet to their game. Bilibili grouped here with 3 on the B side. Once again, they don't get offered much early. In fact, Neff's on the receiving end of some shots down mid from Silfat. But a showstopper could be just what the doctor ordered to crack this site open. Spring, decent little intuition, but he's about to back away. The Viper's pit's coming right down. Juicy sees a chance to trade and deals with the raise. Now can turn his attention to the site itself, but it's wayward. Levius holds his ground. Neff low, but still being made use of on the A side to keep a couple Wolves players there. TP though in from Russia to bolster the attack side forces at B. Neural Theft forces Silfat out, and now they know where the fade is playing from. You could see Suvat really wanted to get in, but couldn't find the timing. Neff, patience required. He can't overplay his hand. Just simply existing in the back line, so Wolves know eventually they'll have to deal with this flank. Look at Lyser, the way he has to adjust, just expecting this flank to come at some point. But Neff merely needs to stay alive. Keep them distracted. Lyser. Critics be damned. Finds 2. Tries to open this up, but now 1v2 for the round, and time really not working for him at all. Maybe looking to keep a cap on these guns. Get in there and give it a tap. But unfortunately, his contemporaries fell apart on the site while he tried to hold. Right back to the tit-for-tat rounds we go. Bilibili get their 10th. Spring was playing so close with that pit, so Wisey had the ideal opportunity to catch him out with a showstopper. Short traded out by Juicy, who then tries to make the adjustment. Losing the duel to Levius. Sufat wanted so desperately to get into assist, but just had no chance to do it. I will see you. It's so funny. The reputation, I think, for these 2 teams coming out of the home region was that there was this volatile, fast-paced play, but this is so different. This is really looking like a chess match between our teams. Slow, early to mid-rounds, rotations to pull across the map, and finally these burst executes. Full investment here for Wolves. This could be worth 2 for BLG, but the spam through from Sufat collects onto K Knight. Nightfall ripped through ramps, connecting onto multiple players now. Despite this, Neff still looking for opportunities to get onto the A side proper. Why is he that decay now dissipating? They've shrugged off the Nightfall. And all the while, Wolves that have no reason to get off of this A site. Look at the rest of the map. Still unbreakable trip. Place in mid. And an AWP picked up from Juicy that's controlling B. They give it steadfast. 3 players ready here on A. Right now, they got the perfect coverage. It's up to BLG here to generally manifest an opportunity. Look at this Spring aware. Wants to double up. Play a crossfire with YU. It's going to be rewarded if he holds this. Trap cleared there. Spring into action. The BLG now spikes in mid, but their players are over on the A side of the map. All but unrecoverable, this situation. These people just bide his time. Can trade his life, that's fine. One enemy Wisey pops up and pops right back down. Not the kind of game of whack-a-mole he's looking to play. He's on the wrong side of that arrangement. Still prevails against Spring, but there are other players waiting for him, licking their lips. His Wolves, the scent of blood, they've caught it 1 round away from making it into a Masters Toronto playoffs. Spring just made such an intelligent rotation there into vents after things were slowed down. There was that noise cut from BLG, pivoting to play the cross with YU, expecting that the BLG team would either try to work themselves into a split or at least try to draw some attention back towards mid to get some rotates off that A site. He is prepped, ready, holds the cross. More multi-kills for him, topping the board at 21. It's Wolves on match point.
potentially doing the unthinkable. Juicy locking down B main with this op. Can he find the opening? Camping down, it's K-Knight down already. And yet, Billy still determined to look for something here at B. Why you overextend, showstopper, why is he? Oh, he gets tracked by Juicy. Now he can fall back onto the side, still with this op in hand. Neural Theft revealing the BLG are all about this B side hit, and so Juicy finds yet another. 3 kills with the op in this round. And he knows, he feels the weight of consequence on his shoulders. He knows how close Wolves are to completing a miracle run here through groups. Just one more step. Naf low, Viper's bit up here for Levius. They've at least got that to work with the Billy. They're fully committed. Still no spike plant. Levius has not found a window in order to deploy that. And F is looking for a timing, a way out. Light Sword deals with him. And it's on Levius now, all on the Viper, who still hasn't found a chance to plant. And it just so happens if you dare a dance with the Wolves, you might just get bitched. A second team from China in our Masters Toronto playoffs. Juicy with an unreal play on the final round. Waited years to just be able to play in the VCT at all. Couldn't get a spot in Pacific. The home region has to go over to China. Joins this Wolves team who go on an unlikely run to even qualify for Toronto. That was Sufat's dream. And now they're taking it even further. He said today, he doesn't fear not advancing. He doesn't fear elimination. And they came out swinging. Silfat says, all I've been through in the last 7 years, it has been tough. No one knows what it's taken him yet. Every time he stepped on this stage, it's been with a smile. He stood up, he clowned around. हिंदी बोल, सबटाइटल नहीं आ रहे। Yo, what is up? What's up? क्या बोल रही है भाई? ये चिंतन ताता। मैंने तो म्यूट कर रखा है, मैं तो अभी नॉर्मल यूट्यूब खोल के कुछ देखने लगा था। Planted.
Last player standing. यहाँ छुपी हुई भाई ये क्या हो रहा है भाई प्लांट कोई बताओ तो सही से भाई किसी ने नहीं बोला क्या प्लांट हो रहा है Adapt or die! हो गया भाई जे हो गया Attackers win. बोल रहा था माल क्या क्या मतलब हाल चाल भाई बढ़िया बढ़िया भाई तू सुना दे क्या हाल है भाई के तो मेरे को एमवीपी कैसे मिल गया Today, we're gonna install a turbocharger. 17 of them. This is actually gonna suck, but mostly for my fabrication team. Because I have jury duty. Doesn't take that jury long. duty this week. I gotta say. Oh boy, what the fuck is this? अरे नहीं मैं YouTube पे वीडियो देख रहा था That was fun. सारा Look at his टर्बो लगा रहा है offense. ट्रक He's में still good right here. If you He's good. stand up, you're in the 30. Look, it's all. It is quite clear to me that we have a significant power shortage. If you're not familiar with mechanical terms, a turbocharger, basically what it does through nuclear reactions, it supplements your oil with a fuel feed, inverts the crankshaft, upgrades the pulley springs. But if I'm simplifying it, it just pushes more air in. That's a big turbo too. It is actually. Why do you write Cowboy Killer on it? Because there's a truck in the truck game named Cowboy. Are you serious? And that's the Cowboy Killer right there. Yeah, I'm serious. Okay, we have some new wheels and tires from Custom Offsets to install on the truck today. Custom Offsets is the world's largest leading supplier of wheels and tires. I'm proud to announce. We're back. What the f? Can you clean this mess up? I think it would help if you could work from here. I'm guessing it makes 600 now. I'm guessing it will be making around 20 to 30,000 after we're done. All right, What got the- it. Appreciate it, bro. Yeah, cool. Before we put all 17 turbos on, we need to see how much power the truck is currently making. Okay, 397 horsepower is not bad, but what about a billion? सामान फेंक जा रहे थे Stop! Stop! I think we're all done. I now present to all the 17 turbocharged Dodge Cummins. I had some notes that I took for this video. Make jokes about a whistling diesel. Talk about political views. Obviously, this is going to affect the drivability of the truck. We have brought in a diesel performance expert. Diesel performance expert, Bruce Wilson.
What are we predicting happens? I'm guessing one of two things. It makes like 1,000 more horsepower or 20,000 more horsepower. Or it doesn't run. We have endometriosis lines. Those are braided. It's like easier way to say that. Okay. In 5. Oh my God. 4. Watch it not even run. 3. I should keep my foot to the floor when this starts. 2. 1. Just start it already. The ignition is on. Now I will turn it the rest of the way in 5, 4, Can't even get out. 3, 2, Dude. 1.5. Wait. Point 1. I'm rotating the key to the second accessory position. I'm gonna begin applying pressure to the key. Point 9. They ain't spinning. It runs. None of them are spinning. You're not supposed to yet. I hear them sucking in air. Yeah. It's under load. Oh, we got one. It's trying. They're spinning. He said they're spinning, yeah. You can hear it. Look, it's making boost. Oh my God. Dude. Oh my God. Oh, yeah. Look at the smoke. Oh my God. We made like 15 PSI immediately. भाई ये क्या है? सारा टर्बो लगाया है उसने ट्रक में. Oh, yeah. Hello? No, someone's been shot in the head and I'm... The truck is what needs wash. Dude, you're just making a mess. Hey, are we coming on the bathroom? Wow. Oh no. I accidentally. Anyways. Wow. Oh no. I accidentally parked my Cybertruck right here. I hope a very fast tire doesn't hit it. Oh my God. Hold up, this is the wrong durability test. I'm not going to show you guys what it did. You'll have to see that in the Cybertruck durability test. Tax return season is here, so use your tax return for a set of wheels. That's what I did when I got my first set of wheels from them. They offer in-house financing, so you don't have to pay for them. You can buy them with $0, just saying. I have these brand new Archon forged wheels to go on our truck. The jack is still under the back. Yeah, it's definitely... Oh no! We cut a brake line. You idiot! That's really great. Of course, that's our last. I'm here with Jeremy at Only Motorsports, and they have the world's most insane shop ever. When you're calibrating it, I would just be careful because the second you put it in drive, at an idle, it builds 100,000 pounds of boost. So 100,000. So we need to drive in reverse? I would honestly dyno with it off. Get in third gear, get it up to speed in the third gear, about 2,500 RPMs, and then just hold it at 2,500 until I can change the gear ratio to match. Just blow some shit up. Wait, what was that? What did he... Wait. Just make the most sense of it. Yeah, that's what we were going to do. That's gonna be. Do you guys have another bottle? We do both. Can we do? Can we all? Can we? PRX versus TL में 12.5 है बाबू 12.5 था. 4 bottles of nitrous into an 18 turbo truck. Okay, so the truck made like 17 quadrillion horsepower. More nitrous. So we gained power. There's a very large truck show going on outside. We have the 18 turbo truck ready to go. We're gonna get everybody's reactions. Everyone's walking over. Everyone. They want you to do a burnout, Cody. More throttle, more throttle. It's building, it's building, it's building. Takes a bit.
अरे बेंच ये जो पटने वाली वो लगा दे रहा है। We got a fire! Cody, we're on fire! अरे बेंच legit आ Cody, it got a little hot, man. भाई बियर डाल दी। It took like 10 seconds to light up, but when it did, that has to be like the best footage ever. No way! Is that Whistling Diesel? No fucking way! What on earth? Best filmer in the world right here. Damn right, yeah. Yeah, how about that? Oh my god! I've never walked by him. Oh, look. Oh! We're gonna do one more. Let's go, let's go, let's go. This thing's gonna blow! Yeah. Oh no! Oh, it's hot, dude. Uh-oh. How hot is it? Sign this Yes. for me. Oh my god, bro. Look at the oil. Those little ones had to have been like over speed, bro. Yeah. I can feel the heat just like dumping off of this. Yeah. Oh, we broke it in. I think once we did that, all the turbos just wanted to spin so easy. Yeah. This was spinning on its own and it didn't do that when we first started it. Like Yeah, no, none of them would it's spin. just and idling. then they were kind of just... Yeah. Shout out to our fabricator team. Holy crap. I told him, I was like, I would have designed it way differently. I had a lot of tips and tricks for him. I said, man, you should have routed it differently. But he figured it out. It works. The fact that it has normal levels of power with all this is wild. That should not work at all. Thank you all for watching. I hope you hated the stupid video. I hope you unsubscribe, and I hate you. That's the outro. You can't put that in the outro. I have gone a whole video without breaking No. Why is that possible? I looked at it. Alright, welcome to Cody's repair shop. भाई अभी ये 10 मिलियन बुगाटी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करेगा भाई। बहुत चोट देगा भाई बुगाटी की। आई एम डैम श्योर। इसने पहले भी एक दो गाड़ी कर रखा है जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, बहुत क्रेजी। जो भाई डम्बेस्ट ड्राइवर एवर देखेंगे क्या? Putting jet engine in my mini truck. ये नहीं मानता भाई। Today we're here in Osaka, Japan to dive headfirst into the world of underground street racing. Specifically, Kanjo Racer. But Japan's legal system is no joke. 指定暴力団山口組参加組織。今の時代ではちょっとあまり日本の至る所にカメラが Some critics have referred to their system as hostage justice, with Japan's conviction rate exceeding over 99%. So what makes these drivers risk so much? And what the hell's a Kanjazoku? だから SNS でめっちゃ見てると普通の一般道からなのでもう逃げれないんです We're going to uncover exactly what goes into building these cars, the strategy the police forces use to catch their targets, and by the end, if I play my cards right, I'll earn a seat to ride on the legendary Kanjo loop myself. Today we're here in Osaka and we're hunting Kanjo Civics. Welcome to Donut. I've known about Osaka's Kanjo racers for some time, but to us in the West, they've always been shrouded in mystery. When I was a young boy, there's only one time the experience in the Kanjo, the Bozo, super crazy, incredible. Teams of the craziest Honda builds tearing through the streets of Osaka. Because two-lane freeway, driving in a five-lane Civic. 2 lanes. 2 lanes. But 5 Civics. 5 Civic. Listen, these guys, they don't talk openly, they don't name names, and they definitely don't share secrets with just anyone. Is there anything like that here Only in Tokyo? Osaka, yeah. Only Osaka. So if we want to see the real Kanjo scene, we'll have to dig deep. Showed up. Whoa. Yo. Hey, what's up? This is insane. There's Civics everywhere. There's a 400R down there. My cup. What? Yeah. Hardcore.
There's Lamborghinis down there. I saw GT3. Oh, I had no fucking idea. We were like, oh, there'll be like 5 cars maybe. We hoped to make a connection with the locals that would get us closer to the Kanjizoku. Hey, we're gonna run the loop later. Will we see you out there? No? No? You said no. Now, that didn't exactly work out how I planned, but we did notice there was a lot of Civics. If we wanted to find our racers, it might be a good idea to find a shop that specializes in Hondas. All right, so now we're here at Zero Fighter, which is probably one of the biggest Honda tuning shops in Japan. They have their own paint booth and they track prep a lot of customer cars. And rumor has it, some of these guys might know some people who drive the Kanjo loop. My name is Daisuke Hayashi, Kaisha Zero Fighter. Thank you for having us. We brought you a present for you and the team. Hi, thank you, arigato, thank you very much. There you go. Hey, Kentucky, oh, KFC present for you. For you. Yeah. Zero Fighter is a shop built upon decades of experience on the Kanjo and the circuit. While they don't race the Kanjo themselves anymore, they still build cars for locals, no questions asked. 2018年、その前からここにショップを置いたのが2018年から。My car, my car, Chevy. I like Chevy. There are Hondas everywhere. भाई मुझे जापान इसलिए तो पसंद है भाई गाड़ियों और एनिमे. We can't say if these cars are built for the track, street, or both, but to understand why they're built like this, it's important to know the origins of the Kanjizoku first. The Kanjo racers, or Kanjizoku, emerged in Osaka in the 1980s. Japan's automotive golden era was just starting. It gave birth to the fastest Hondas at the time. The developments made for circuit racing found their way to the streets, where drivers honed and tested their cars. The street scene was booming. When do you think Kanjo racing actually started? 91年. We spoke to a retired Kanjizoku who wished to remain anonymous. 名前売るために感情やっぱ上がってるから、もともとチームいろんなチーム感情族のチームがあるから。By the early 90s, Kanjizoku were in full force. まあステッカー貼ってなかったら上がられへんっていうとこもあって昔は。昔は鍵抜かれてポンって上から。彼はめっちゃみんなバトル。バトルやけどやっぱり大きい車の方が速いから。Why do you like the Civic? 動きやすごく素直に動く。乗ってて楽しい。エンジンが大好き、ホンダの。The Civic wasn't as fast as its more powerful Japanese counterparts like the Nissan Skyline or Toyota Supra, but it was lightweight, high revving, and perfect for weaving through highway traffic while evading the police. 小学校6年とかやけど、まあその時はほとんどスカイライン。ということは車がめっちゃ多い時に上がってるから、そしたらみんなやっぱシビックとかの方がすり抜けしやすいっていうか。The Kanjizoku and their Civics soon became the dominating force on the Osaka highways. The three most popular Civic chassis that Kanjo racers are known for using are the EF, EG, and EK. This is a perfect example of what a Kanjizoku Civic might be. Luxurious. It's got no interior. The driver's seat in a precarious position, and this racing net, which may or may not block the driver's face. Now, a lot of these cars run the B series engine, varying from the B6 to the B18. The good thing about these engines is you can swap out parts. It's kind of like one big Lego. A lot of these cars run different wheels from SSR TCs to NKF1s and even T37s. Really doesn't matter. They all look really good, but my favorite is the SSR Type C. But what really makes the Kanjo the exhaust. Do you have a lot of customers who run the Kanjo? そうそう、一緒。両方もいるし、一緒の人もいるし。で、感情もサーキットも結局もう20年近いね。何回かちょっと遊び半分でそんなに。And just like we expected, their lips were sealed, bounded by a code of honor, like a fight club, but for Civics. Unfortunately for us, that means we still don't have a ride on the Kanjo.
I've heard a lot of people telling me I need to try out this carbonated milk called cow piss soda. I'm gonna give it a shot. That's actually pretty good. But I'm not just thirsty for carbonated cow milk. I'm thirsty for Hondas. So we came to Ascendant to talk to the shop owner and see what he knows about Kanjo street racers in the area. アスランの代表の谷吉高です。お願いします。僕がそのホンダのディーラーで勤めてたからそれがあるかな。EK9 とかもこれが新車だった時。There's a reason why these Civics have so much in common with a car you would see at a racetrack. From 1981 to 1999, Honda hosted the Civic one-make race. The style and racing pedigree has been passed down for decades and is still an inspiration for many Honda drivers in Osaka. While the series was disbanded, shops like Zero Fighter and Aslan still run their own Civic one-make challenges for enthusiasts to enter, fostering the future of grassroots motorsport. レコードホルダーの車でもちょっとリフト上がったままだけど10年ぐらいかけてちょっとずつこの形に。All right, so this car holds the front-wheel drive record at Tsukuba. Pretty cool. Well, I'm gonna go ride on the loop. Do you have any words of advice for me? 別の人に聞いた方がいいと思う。もう詳しくない。感情族に対して詳しくない。語ると嘘に聞こえる。僕が感情族じゃないから。そうやね。感情のその例えばテンプルレーシングとか、まだこのゲットワイルドとかもそれ大阪ループクレイジー感情族のステッカーだから、そういう友達はいてるから。こんなことがあったみたいよみたいな話はできるかな。It's beginning to dawn on me how difficult finding these drivers really is. But it makes sense because they're trying to stay ahead of an ever-evolving police force that's hell-bent on making change. Coloring. The livery. Coloring. Yeah. It's wild. Do you like M&Ms? Yeah. What's your favorite color M&M? Orange. I like the green one. だから当時は数がすごく多かったんで、やっぱり警察も手に負えない状態。でも今は数が少ないし、やっぱり最新のシステム、警察のシステムがすごく。Over the years, authorities have intensified crackdowns, installing AI-driven surveillance cameras, undercover officers, and mobile speed traps to stamp out the illegal races. 感情走ったらってことね。アドバイス。まあでもやっぱり今はもちろんカメラ、もうとりあえず日本の至る所にカメラが普通の一般道からなのでもう逃げれないです。昔は多分それでカメラでナンバープレートから探し出すとかが多かった。Another tool police have deployed is the Orbis Speed Monitoring System. This device uses GPS signal from devices in your car to track your speed. 調査本部が解散するまで電源切ってるんだ。だから家に帰らんと電源切ったら GPS で飛んでくるやんか、携帯で。だから電源落としたまま。With the rollout of new technology, including AI facial recognition software and GPS tracking, sometimes the police don't even need to chase you. They'll just quietly build a case digitally and then show up at your door in the middle of the night. They can track your device's GPS from a street race to your house and use AI to match your biometrics, like your ears, from camera footage to your social media photos. Critics in Japan have said, in today's society, where the advanced digital technology and the internet are widely used, extracting the individual's unique information from images of the whole body and face makes it possible to collect and record behavioral history without consent. But I'll let you decide if the safety benefits outweigh the loss of privacy. Still, the severity has made Kanjo racers extremely hard to find. やりたい放題にやってた感じはあるね。好きなことを好きな時に走って、今は少なくなってきてるのはやっぱりその厳しくなってきたり、人の目のだって今日暴走しに行くよとか走りに行くよ。Some Kanjo racing teams have abandoned the loop altogether, but we were fortunate enough to meet a group of drivers who've chosen a different home turf. Take care of me. Let's have fun. The Kanjo races have evolved into running the local tow roads as well. My balls are rattling.
All right, so tonight, we're not on the loop. We're actually going to the mountains to go see what some of these Civics can do in their natural environment. Mountain racing is dangerous, but these guys wait to go out after 2 a.m. when the roads are mostly empty of the public. It's honestly very interesting to see the disposition of outlaw street racers who are trying to be courteous of others. It wakes you up! The cold mountain air and the buzzing from the swarm of Civics was nothing short of intoxicating. On our way down the mountain, we ran into some sort of law enforcement. The group took off, and I was split from the rest of the donut team. So, yeah, I think we were evading some sort of enforcement, and now we're in what looks like a car wash parking lot. Yeah, we're off the main road for sure. Did you see Jimmy in the... I thought I saw him in there. I'm using Google Translate to the best of my ability. Yeah, I'm just gonna wait for the other guys and see where we go. Now, I want to be clear. We're not condoning anything you see here today. We are simply journalists with an intention to film, understand, and archive a time and scene as we find it. I think it's important that stuff like this is documented. From the moment we landed in Osaka, we had one goal: to ride and document the Kanjo Loop with a team. And when we least expected it, our fixers Lucas and John received a call from someone who won't be named, a man in the Shadow Realm, and secured me a spot on a Kanjo run. So we're here on the side of the road with a couple guys. We're outside a pachinko shop. We just got the go-ahead. I'll see you on the other side, brother. All right. Hello, boss-san. Oh. Whoa. All right, identity protected. All right, so I'm here with my buddy Jason Voorhees. We're entering the Kanjo Loop now. Whoa, warming up the tires. My buddy Alex was filming in the Civic behind me. Kanjo. 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 That's where we're going, Kanjo. Whoa! Camera. Oh my God. This is nothing like the C1. Hello. हेलो हाँ जी भाजी किदा पाजी तो गुद्दी लाल हो रही PRX स्टार्ट हो गया क्या मैच? मैंने देखा ही नहीं मैच। ओ भाई मैच स्टार्ट हो गया लोल। मेरे को 12:30 शुरू होना है। Really opens things up. I mean, Kiko. 3-1 ओ भाई जिंग भाई गुस्से में हो गया। MasterCard cryptic पाजी confirms सेकंड मैच होता है पहले मैच के हिसाब sparing themselves some blushes from the previous 3 rounds. अगर पहला मैच जल्दी खत्म तो दूसरा जल्दी लग That's about right for PRX. लगा Why शुरू save होगा when you थोड़ा have उसी टाइम के 100 अराउंड credits विकास and 0 को credits कर रहे between your होंगे। 2 last players when you have rifles? नहीं, Maybe just go through ध्यान नहीं दिया opportunities like this. मैं लगाओ ना मस्त I mean, गड्डियां it's गुड़ियां just देखने। the PRX way. And you just have to ride the wave. गड्डी That's देख रहे usually थे mine serial मजा आ first. रहा था। Kiko just dead to right to that point with 6 HP. Able to take down the full health Kiko there. पाजी आपको आज परमिशन मिल गई क्या राइट वालों से वॉच पार्टी के लिए? पाजी पिछली वीडियो ब्लॉक नहीं हुई थी आपकी पिछली स्ट्रीम? नहीं पाजी वो उसमें गाने गुने का कॉपीराइट था वो। PRX players, Oh. I feel like the rest of this round should be a bit more breezy. This is
That's what you need from something. You need that operator to come alive. Worldwide just shifting around from A to B. First 2 kills, Kiko will be able to answer one back. Look to make a run of this, try to make it as costly as possible. Slow up the और ये lyrics but पूरा मान रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। और हो गया। Something on the angle. क्या चल रहा है, सही चल रहा है। और बाजी बस कान पे हवा लगा के खेल रहा हूँ। This is what you really need. The game plan for PRX in the first round hasn't changed to now. It's just they're converting on these opening kills. They're getting that advantage, whether it be Patman, Sheriff, or here was something. भाई बचा कमो। That's really what they need to get going. Gotta find those man advantages on the defender side. Don't let Team Liquid get to those close plants. They are going to. Twitch पे लगा रखा है, but मैंने अभी चलाया ना। No matter how good your retakes are, you have some options now. You could play for retakes because you've got some of the ult to do so. As PRX, ults for Team Liquid as well. Penny को नहीं खिलाया Liquid ने. Send it right off the rip with the dimensional drift. Out there. Nets आ गया। Sixth man था ना serial को खिला के। कल भी तो इसी को खिलाया serial को। कल थोड़ी खिलाया था serial, कल नहीं खिलाया। कल खिलाया था मैं। Dealt with there, Patatek. They fall. The Nightfall's going to be committed. To avoid that. Too certain, but there you go. That's all the confirmation you need. A gun barrel going to be spotted. Showstopper not able to find it. The defuse being held. There you go. Itself looking for a bit more. We'll just be met with death, and suddenly we are tied up 3-3. That's a huge win for PRX. And their aggression here as Team Liquid is trying to get the spike planted. What wins them the round. Devai sacrifices himself for the cause. The Catman and बाजी यार अल्लाह यार बाजी यार इतना बोल दिया ना, अब गुस्सा आ गया मेरे को। At Devai's heels. Something there to clean it up at the end. That's what they need. Disrupt Team Liquid on those timings. And that's where you're going to start winning the round. Plenty of cash out for PRX. That's just going to be invested here in mid. Playing back around the corner, obviously don't have to be concerned about Showstopper as something peeks in, Cyril's holding the angle, but something finds the headshot. भाई मैसेज नहीं देखा आपने मेरा जो मैंने सीरियस को गाली लिखी आपको पर्सनल डीएम पे Check out. TP's going around him. Spots it out, just trying to clear it. So potentially a vulnerability here, but it looks like Forsaken is going to sprint over to go ahead and deal with it. By Nets, That's good. That really opens up the map a bit more for them. Something holding the line at B. They can lean more towards A now, and they know it. It's going to be a bit of a fake attempt here, a 2-2 split for Team Liquid on this attack to try to get it going. यार ये बंदा मेरे को बहुत डरा था भाई Haven't got to be taken out, and with that elimination, they say, okay, just try to send it across. Back off of this now. Thank you, buddy. There's going to be no, still committing to this rotation towards the A site. As Jing going to get timing by Nats. 30 seconds Brings it now into a 3v3. Dimensional drift available for something. They try to go for the retake, but Forsaken filling the site. Gets that full blind onto Kiko. Nats now dealt with. And Patatek. DK पे सिर्फ 30 HP कम होती है ना? Go for the save. The smoke dissipating time, not going to be on his side. Gets the spot onto something. Forsaken will be there for the cleanup. DK, yes. PRX now 4 rounds consecutive. They get themselves into the lead. और कुछ तो नहीं होता ना DK में? गोल से आधी HP हो जाती है और गोल है तो 1 HP हो जाती है. Unassailable. Forsaken finds a really big kill there from screens. And then repositions away from the paint shells that was coming his way. It makes Kiko pay. Gets a 3K to boot. That's going to ring out a time out from Team Liquid. Nets बोलेगा परसों आया उस सालों आज घर भेज दिया. Try to figure out what the heck is going on because it looked great to start and then all of a sudden PRX just got into gear. Let's see if they opt to go for any kind of half buy here, maybe a stinger purchase for the team. वो नीचे वाले वो तो लोअर ब्रैकेट में नहीं जाएंगे क्या? अबे लोअर ब्रैकेट ही है. Elimination qualification match है. For Kiko about to be back online for his second and a half. But the pit for Nats similarly right there. One shot. I am little bit confused. That's going to be a little bit interesting because we've seen PRX be pretty aggressive towards the orbs early. So trying to get to one of those extra ults that can maybe be around change. एक advancing थी और दूसरी कौन सी थी? It's something you have to be talking about, I assume.
एक तो जो 4 क्वालिफाई करेगी वो तो एडवांसिंग में जाएगी, एडवांसिंग में जाएगी, बाकी कहाँ जाएगी? तीन चलेंगी है भाजी, 3 बाहर होगी, 3 चलेगी है, इनमें से एक जाएगी एक बार। सेंटिनल, जेनजी और वोल्स चलेगी है, बाकी 3 बाहर होगी, MIB और TH और वो। जी मेरे PKMs में 2 तो बाहर हो गए, एक क्वालिफाई करिए वॉल्स। मेरे भी। आपकी तो सैन क्वालिफाई करिए ना? MIB और TH बाहर में तो Sees at the ready. PRX भी जा सकती है। भाई हेरिटेज की इजी बात हुई है, वो तो एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। Just waiting out the clone here. Trying to see if they get भाई पैनी को लाना चाहिए था भाई, their way. गलती कर दी इन्होंने। Crash set, cleared, flash. Does go through, sees gonna be back there. A bit delayed from the nade. Get the spot out here on the Kiko. They want to try to flash him out. अरे बैचो जिंग भाई, जिंग भाई। Weapon gonna be upgraded. Shows up online for Kiko. Suddenly this round, it might have just turned on its head if he can isolate. बाजी लास्ट में 1v2 बचा है। Showstopper could all be लास्ट तो guaranteed. पाजी पे रोटेट कर रहा है। वही दिख रहा पाजी, वही दिख रहा, वही देख रहा। बाजी बहुत बहुत पीछे चल रहे हैं, हमेशा आप ही पीछे क्यों रहते हैं बाजी? कोई बात नहीं पाजी, पीछे से मारेंगे आपकी। बाजी मैं आर्केड नहीं हूँ, ठीक है ना? अच्छा, तो आगे से मरवाओगे आप? He's gonna have that ult on right now. आगे तो लन है। Try to play together. भाई खुद ही दबाओगे फिर अब आप। यार Showstopper immediately going to be set. They can try to wait this out. Does buy a decent amount of time. What the fuck? Out of the dimensional drift taken down. Kiko holding on. And oh boy! It's a Red Bull clutch from Kiko. Sad हो गया तो। As Team Liquid tie us up. Sad हो गया T-Rex भाजी। Trying to figure Sad हो गया out T-Rex how they भाजी। can work around that angle that Kiko's holding. Sad तो हुआ। They just can't quite find the opportunity. Pulls the showstopper. Great time. Lamau dead हो गया भाई, Lamau dead हो Coming गया। out of the dimensional drift into an area where Kiko can get the rocket to land and fall right back to the safety of cover. And Divide left in that 1v1. बाजी इसको अर्ड पीछे नहीं खोल लीजिए थी अपनी काफी। And that is a nice round for second Team Liquid. They are going to have a couple more ults as well. You're talking about that cycle. You've got a pit and a cosmic divide. जिंग भाई आराम से गुस्सा नहीं। Aggressive space, trying to find a catch here on the Nats. Just going to go ahead and scoop up that orb. 2 charges away from a showstopper as something clears out the gate crash here at backside. Ultimate bait for now. Another one going to be sent though, and Divide, perfect position for Kiko again. Absolutely destructive. भाई crazy हो रहा। 2 quick kills. Something's positioned now. Oh भाई तीसरा ले गया। The 3K for him. Player advantage. TP. In the hands of 4 second by TP. जो पीछे TP करता है यार। Opposite side of the pillar. Forsaken just cycling these smokes as Jing gets himself up into heaven, catches the glimpse of one. Boy. Cannot find the kill. Nor a lick of damage. तेरा वाईपी है कोक। Out of backside, Forsaken avoiding the haunt. ओए round भाई crazy. Almost bad. Quickly playing off his fallen teammates. PRX will establish a lead. This is beautiful coordination here हाँ between पीछे निकल Forsaken गया and ना। Jing. Never overcommitting. मैं तो टीएल के साथ हूँ भाई। Forsaken doing a good job. घंटा जीताऊँ मैं ये TPing into चाइनीजों को। Chinese? Dodging the haunt. Indonesian? Of his own, and they have no idea that he's going to be so close to stop that plant. Jing hits a real क्या ये banger there फायदा है on कि सब serial. एक ही तो हैं ये नेपाली वेपाली सब। Right there for that crossfire, dropping down right as Forsaken wants to swing. बट कॉम अलग हो जाती है बस। Absolutely beautiful work between those two. Long-time teammates. Still neck and neck though here between these two squads. बाजी आपके सामने जापानीज, कोरियन, चाइनीज, इंडोनेशियन, फिलिपिन सब खड़े कर दो। नेपाली रह गए भाई। हाँ नेपाली, असमीज सब खड़े कर दूंगा ना, पहचान नहीं पाओगे कौन क्या है। ईको भाई डर्टी हो रहे भाई। This is going to be Liquid just pumping the भाई brakes and देख starting to explore जापानीज तो ब्लर होगी। Cutting across now through the sewer. Batman on a walkabout. He will end up behind them, but ठीक है भाई समझ गया। the read. They're not making any noise. तुझे रीजन पता है वो ब्लर क्यों करते हैं? एरी होती है ना। देखने लायक ही नहीं है भाई। नहीं नहीं उनके छोटे होते हैं तो वो शर्माते हैं दिखाने से। बट ब्लर तो नीचे का होता है भाई। तब नीचे का तो छोटा होता है।
Seems serial classic at hand. Going to be the first point of contact. He's going to try to get अच्छा ओ कीको हीरो वेंडर लेकर आया है backstab coming through. Just disrespecting this is Forsaken first point, but he thought that he finished the kill. आगे दिया On the camera, doesn't it? Something quickly trades it back. ए जिंग की यूसी होती रहती है ये टीरेक्स का आइडल है ना थोड़ी इंस्पायर्ड है ओए मौज ऊपर एम now with a ghost. Something up on the Raptors will be able to find him. Lead now stretched. Yeah, this is so crucial here that Patman finds that timing on the lurk. He has been so good at that, especially on Icebox in this event. Showing you that he can open it up on different maps. That creates that extra angle. पाजी यूसी को सबरोजा क्यों बोलते हैं? पाजी पहले सबरोजा खेला करता था रेज और उसकी बैच एक अल्ट में कनेक्ट होती थी तो रोजा अल्ट उस पे नाम मिल गया भाई को रोजा अल्ट तो बहुत फेमस होगी भाई और लेजिट काउंटडाउन होता था भाई उसके स्ट्रीम पे उस टाइम पे पहले जब अल्ट मारेगा यूसी रोजा तो अब तो टीरेक्स बोलना पड़ेगा टीरेक्स अल्ट होगी भाई जैसे आर्केड डैश फेमस है ना हमारे बीच में ऐसे टीरेक्स अल्ट भी फेमस करना पड़ेगा भाई टीरेक्स रोजा Who's next? Dimensional drift to start. Camo pushing forward, trying to get the scout out. That's a spot onto something. Tries to go for the exit, but he is just not out at all. Why they're in the hall? Jing, he's out looking nuts. Nightfall now, avoided by one. A catch on to two. They have to backpedal and give it the off investment. They might just look the same. Find one. Jing going to be taken down here in mid, but the rest of the team refills the space. The spike now stranded. अस्त्रा है अभी तो जिंदा ऑफ शॉट फायर नहीं बच गया भाई स्पेस ही दे दी मैन चेकर ले लो मैन स्पाइक क्या कर लो now saying okay you guys can grab that spike कीको जिंदा है बाजी एक किल पे अल्ट भी आने वाली है maybe PRX guesses wrong a bit on which site but भाई देख लो स्पेस दे रहा है जो कितने रिस्पेक्ट दे रहे हैं पहले भी अभी निकाल दिया था ना राउंड they know where it's at but you can see this may actually just be a save. Oh, save. Players rolls apart with just 18 seconds remaining. अरे PRX सेव कर रही है लो PRX कहां सेव कर रही है very poor spot moment here for Team Liquid. 10 seconds left. With 50 creds on Camo. Need these carried over weapons to find some impact. एक टाइम को फनाटिक को बोलेगा तो छोड़ भी दूंगा मैं PRX को कैसे बोल रहा है ऐसे T-Rex पाजी कह रहे हैं You're going to have some pretty nice ults though for Team Liquid. You're going to have a showstopper. You're going to have a nightfall. T-Rex तो बेचारा आलू भुजिया खा रहा होगा बैठ के आलू भुजिया You most likely have a showstopper. You're one away. So there's a good chance that Kiko's going to find it. Great read there by something. Still had time on the ult as well. It's just thought he was safe. Yeah. Just a misread. Might have been something that PRX noticed in Avad. That's where he likes to get out of that. मैच देखने के बाद ऐसा फील होता है कि भाई अभी मैच में उतरूंगा और 5-6 किल करके आ जाऊंगा 5-6 किल मतलब एस लेके एक राउंड में जोर से है ना सीरियस तेरे को भी लगता है ना फुदू है साले तू पूरे तेरा पापा ही ए कूल तो है भाई तू वेलकम टू द स्ट्रीम कैसे हो भाई भाई आज हुआ ऑफिस होता है सीरियस ऐसा जोक मैंने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बोल दिया वैसे मैं अब चिढ़ा रहता हूँ ऑफिस में ठीक है तब ये बात हो रही थी वेबसाइट की बात हो रही थी कुछ वेबसाइट छुट्टी पड़ी है मैं मजे लेता हूँ ऑफिस में बैठ के कि फ्रंट एंड डेवलपर हूँ क्या ही करूंगा मैं बैक एंड में है ना तो मैं ऐसे ही घूम रहा था ऑफिस के अंदर ही तब मैनेजर इन सब के साथ बैठा पड़ा था मैं तब वो प्रोजेक्ट मैनेजर आके कहता है ये मेरे कजन जैसा है मैं कहा अच्छा कैसे दोनों चूतिया मैं कहा अच्छा सुन मैं कहा अच्छा मतलब आपका पूरा खानदान ही चूतिया है भाई किलस गया वो बट मेरे को एक बात बता भाई जब एसी है तुम्हारे ऑफिस में हाँ फिर हवा तो तेरे से दूर ही रखते होंगे सारे वाओ क्या जोक मारा है यार क्या जोक मारा है ला भाई ये ले जज का ये
That's able to fight back for one, but Jing gets himself a third and something cleans up the rest. 8-4 at the half. PRX with one hell of a recovery. Crazy to think that Team Liquid only got one round after winning the bonus, and PRX came storming back on their defender side. Good position to be in here for PRX. भाई मेरे को फैम Valorant का फैम टाइटल मिल गया यार, क्या करूँ इसका मैं बंद में डालूँ? भाई ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? बताओ आपको जब पता है जवाब क्या होगा? सीधे डाल लो क्या? डबल कट के तेरे को दे देता हूँ एक, पता? सीरियस भाई पहुंच जाते हो आप? भाई चारों टॉपिक वही ना, अरे वो है ना इजी टारगेट है ना भाई फिर। अच्छा पाजी आप खुद को इजी टारगेट समझते हो? अरे यार पाजी अभी इसको बोल नहीं सकता ना, फिर बुरा मान जाता है। सीरियस देख, तूने खुद के बेइज्जती खुद करी ली। जो ताजपुर ठीक है विलेज है, वो ताजपुर का रहने वाला है। मैं तेरा पापा बन के खुद को बेइज्जती मानता हूं भाई। नीरज बवानिया है, तो बवाना उसका गांव है। क्रेजी सेट कर दिया यार तुमने ये बोल के तो यार। अपने साथ कि जैसे हाँ मेरे कच्चे की ली होगी, आगे सुखा दो यार। जेल में बहुत चीजें स्मगल होती है, नहीं होती, तिहाड़ में होती है। हाँ स्मगलिंग तिहाड़ के अंदर भी है। कुछ नशे के ऑब्जेक्ट्स ये करते हैं, हार्ड ड्रग्स करते हैं बॉडी कैविटी में। जैसे एयरपोर्ट्स पे आप देखते हैं स्मगलिंग, उसको स्वेलो करेंगे पॉलिथीन के अंदर डाल के, फिर या तो वॉमिट करते हैं या पॉटी के थ्रू निकालते हैं उसको, फिर कंज्यूम करते हैं। चाइनीज मॉडल है, इतना बड़ा फोन होता है, इतना सा सिर्फ आपके कान में घुस जाएगा, सिर्फ इतना फोन होगा। तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसने 3-4 फोन वो यार मैंने गलती कर दी, मेरे को शादी में जाना चाहिए था यार टीरेक्स भाई की भाई की। तो हमें उसको एडमिट कराना पड़ा, ऑपरेशन सर्जरी से उसके पेट से खून बाहर निकाला। जैसा आप भी बोल रहे हो ना, नाक के अंदर ब्लेड रख लेंगे। पाजी आपके अंदर ब्लेड कैसे आ जाता? सर्जिकल ब्लेड जो होता है वो सही कह रहा है। हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां से दिल्ली वाले इसमें तो एक्सपर्ट होते ही हैं। रखेंगे टिल्लू तो उसका नाम है, लेकिन जो ताजपुर विलेज है पाजी एक हाथ में तो खिंड जाता है। पाजी पहला पकड़ तो सकते, पकड़ तो लेते मेरे को। पाजी फिर आपको मेरा थोड़ा बैकग्राउंड पता नहीं है। तेज भागते थे लेकिन अभी तो मोटे हो रखे हो, अभी तो अरे भाई मोटा है तो क्या हुआ, कैनन बॉल की तरह गोल गोल घूम के आ जाएगा तेरे पे। बैंटन की घड़ी भी होगी इनके पास तो। कैनन बॉल बोल दिया भाई, सीरियस इनके पास तो बैंटन की घड़ी भी होगी। नहीं पाजी ऐसे घूम जाते हैं, एक ही एजेंट बन पाते हैं ना। लंटन है भाई, लंटन है भाई। अरे स्टैन नहीं कर पाए होंगे ये, एलियन ही भाग जाता होगा। चलो मोटे लव यू टीरेक्स बाजी यार। अजी आज मेरे पास शक्ति नहीं है लड़ने के लिए, नहीं तो मैं आपको ठंडा कब का कर देता। क्यों मारते हो इतनी मुट्ठी जब सही नहीं जाती तो? मुट्ठी तो आज भी मारूंगा, भोसड़ी को भले भी मारो। मुट्ठी तो बुखार हटता भाई। मुट्ठी निकालेगा बुखार मार के। ईट से ईट क्या था वो? ईट से ईट बजती है, कौन क्या बजती है? भाई टीरेक्स की मुट्ठी बजती है सिर्फ, और कुछ नहीं बजता। जिंगू भाई लेट्स गो डब्ल्यू, तेरी पैड भी किधर चला दो। पिट गया, सिंग लगा। पूरी टीम पीछे कहाँ भागी भाई, एकदम ही इंस्टेंट। अरे ये तो अच्छा अपनी टीम भी तो डब्ल्यू गेमिंग ही है, ऐसा ही डब्ल्यू होता है। ये तो भाजी हमारी लॉबी की तरह नहीं है जो मैं अंदर घुस के मर जाता हूँ, 4 भाग जाते हैं। वही मैं बोल रहा था। मतलब हम इंस्पायर्ड बाय PRX हैं। वो तो शुरू से ही है। मैं तो हूँ पाजी, इनका पता नहीं। पाजी हम भी तो हैं, देखो पीछे भागे ना इतना तेज। वापिस नहीं आते ना, अरे वापिस भी आ गए। और पाजी मरते सेम ऐसे ही हैं, मरते सेम ऐसे हैं। हाँ सही कह रहे हो भाई, ऐसे कुछ नहीं बोलना पाजी, मरते ऐसे ही हैं हम भी। डिफेंस में वो लोग बहन के लोड़े हैं भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। नेट्स भाई बैठे ना कुत्ते के पिल्ले। अभी तो सोच वो एक्टिवेट भी नहीं हुआ। हाँ अभी तो शुरू हुआ है राउंड। मैं तो ये देख रहा हूं दवाई नहीं, बैटरी टेक भाई गलत चीज है भाई ये आदमी। भाई ये बड़े मैच का प्लेयर है बैटरी टेक भोसड़ी का। हाँ वही टाइम टू टाइम पटी रहती है भाई इससे। माइंड ब्रेक भाई देखियो, इसने जो 1 FPS मारा था ना भाई, याद है कितने से? KO वाला
1 HP is last season. Once again with a Spectre. Heretic से खेला था जब वो मिनी वो नहीं आया ये लगाने के Again, Forsaken both can take it down very दूसरे मास्टर की बात है जिसमें जंग जीती अरे जिंग भैया दो डिस्क खेला था और पैटी टेक खेला था साथ सपोर्ट pulling off a thrifty from here, looking nigh impossible. That being said, Batman does. दो weapon recover हो गए, दो weapon outlaw. Kiko will find the final 2 shots. A couple weapons going to be lost here. Still going to be closing out the anti-eco. Mall में आया दो weapon तो गिरे जो. So stalwart, just holding the line. With that Spectre. वैसे अपना कोटू कहाँ है कोटू? Trying to make something happen. Enemy remaining. And an outlaw cleans it up and टेबल तोड़ कभी तो मजे लेते हैं यार हम सीरियस और मैं मिलके वरना हम एक दूसरे के मजे लेते रहते हैं क्यों सीरियस किसके मजे ले रहा तू भाई आपके और क्या भाई पर ये स्मोक क्या है मुझे ये स्मोक समझ नहीं आ रहा फॉरसेकन भाई मजे क्या है भाई भाई फॉरसेकन भाई का स्मोक काफी क्रेजी सा है समझ नहीं आ रहा वेंट से तो सब दिख रहा है होगा पाजी कुछ क्या ही इतना दिमाग लगा रहे हो छोड़ो ना मैच देखने में फोकस करो अरे यार ये बहन चोद पैटी टेक साला ओह नाइस गार्डियन से स्पैम खेल रहा था concern about a potential late flank here, but भाई 4 सेकंड की पोजीशन बहुत प्यारी है everyone on PRX यार पहले पीक क्यों लेना है यार डबल पीक होएगा तो हां ये डबल पीक नाइस ग्रेट ये ले मैन नाइस बैंक चोद बैटमैन सीरियल भाई ने अपनी रेड तो कर दिया भाई एक ही मिला भाई बैटमैन होगा भाई सीरियस लैपटॉप ठीक हुआ क्या लैपटॉप ठीक हुआ तेरा हां हो गया क्या दिक्कत आ रही थी फैन खराब हुआ था अबे इनका वो है ना स्पॉन्सर वैलोरेंट वालों का आई बाय पावर वाला वो अबे तक तू फैन तो तू खुद भी लगा सकता था बे PRX वारंटी के अंदर फ्री है ना भाई इनका वो है ना एसूस मारते हैं आई बाय पावर एस वगैरह बोलते हैं ना मैं जो भाई अभी वहां गया हुआ था कॉस्ट को करके है वहां पे मिले पड़े हुए थे मैच आई बाय पावर वाले पीसीस भेज रहा भाई मेरे को 40-60 था उसमें मैच वाह यार भैया से बोल देते ना रखने पर पाजी अगर पीसी वाला देखे ना तो 40 50 और 40 60 में ज्यादा फर्क नहीं है 40-60 अच्छा है हाँ अच्छे बट इतना फर्क नहीं है कि जितना प्राइस में डिफरेंस है भाई 40-50 बेकार है मतलब बाकियों से 40-50 तो ऐसी लाइन से है शुक्र है मैंने 40-60 ले लिया very least not going to go barreling into this B site quite just yet कोई ना गाइस create a bit of a crunch here maybe कुछ टाइम बाद सब कुछ सही हो जाएगा try what they did on that pistol कुछ round टाइम again. बाद फिर T-Rex वापस Ascendant पे बोलेगा इस बार Ascendant आएगा तुम्हारा भाई लास्ट एक्ट में Just do. like both points have it we're going to connect 1-to-1 अरे इस बार तो इमोर्टल कर दूंगा मैं लास्ट टाइम में टाइप में as Jin goes barreling forward able to find the headshot something covering fire cleaning up two man arriving peeking वो something भाई Batman now left to his own devices spots out the enemy Yoro flush him out the prowler firming presence from the other player let's go भाई मैंने जो हारे जा रहे हैं surrounded Team Liquid deny double digits here from PRX Yeah, I think PRX here getting a little rotate नहीं करा था भाई PRX इस बार नहीं है शायद वो स्पॉन्सर just could have gone for this hit एक बार रेड बुल है पाजी नहीं वो आई बाय पावर करके है ना वो पीसी वगैरह कस्टमाइज बिल्ड करते हैं वो सब भाई रेड बुल का नाम मत ले बे रेड बुल ने हमको बैन कर रखा है साइलेंट छपरी Sting भी तो Sting PRX executes down on that side of the map you're going to be down onto a weaker buy for Sting PRX outlaw for something ओए T-Rex बाजी Sting हुआ good for Jing मैं सच्ची में पता कमल पाजी हम बैन है उस रेड बुल से
going to be जिंग a भाई colossal थोड़ा win. आराम Doesn't से manage to find गुस्सा nets at क्यों all. कर रहे हो? अरे मतलब हम मतलब स्पिट टॉप वाले हाँ पता है मुझे समझ गया मैं Into mid, and it's just a firing squad for Nats and Patty to take advantage of. Spike मैं now. वही सोचूं यार, सीरियस और उस्तोला Here in the center. मैं अपने लिए हम बोल रहे हैं। नहीं नहीं भाई Players. उसको स्पिट टॉप के लिए बोल रहा मेरे को समझ आ गया था This is a heavy stack. उई Does get the hit on the Patty deck to take him low, but Nats on the creep forward, catches the buy off guard. भाई ये Team दल्ला Liquid नेट within अब touching बाहर distance, निकलवाएगा just ये one निकलवाएगा round साला। tying things up. Curious to see if this is where we PRX बाजी नहीं हो रहा क्या ये दल्ला मैट्स आपको भी दिखी रहा बाजी नहीं हो रहा बाजी टीरेक्स बाजी तो ऐसे नहीं कर पा रहे समझो भाई भाई रियल शॉट चला maybe this is one of those ones where you need to just say, hey, समथिंग नहीं मिस we need to करता go at वहाँ का him. लोड़ा We need to come out with some confidence. करा ना We've लास्ट got the dimensional drift, so we can go for Aim a big in set किया play वो off the rip. ये ओप आउट फायरिंग किया वो बहुत ही एम तो Got किया Team फायर Liquid out of किया the round before it even really starts. भाई एलियन वेयर स्पॉन्सर करते Paper हैं X इनको classic. टीएल को ना हाँ You know, they're trying to work the map. भाई यार मैं पहले ना They're एलियन trying वेयर to भी find सोच their रहा था moments, but against बट वो this महंगे बहुत हैं Nats अच्छा हुआ नहीं लिया बहुत बेकार है भाई they're एलियन reading वेयर it every step of the way. They're not finding कैसे? value when they need to. बहुत उसके लाइक सर्विस सेंटर है ना बहुत बेकार है They call their first timeout. Not able to close लाइक out तेरा the round. Economy एक स्टार्टिंग का एक साल अच्छा चलेगा and Liquid is एक साल भी ज्यादा बोल दिया 6 या 8 महीने में ही काम दिखाना चालू कर देता है सारे एलियन लैपटॉप में नहीं हाल है the cosmic divide 3 नहीं बाजी एलियन मेरे को बहुत गंदा है लाइक उसका सर्विस सेंटर इतना ज्यादा गंदा है ना भाई लाइक कुछ भी हो ना पीसी में कुछ भी खराब हुआ है आपका वाईफाई कार्ड खराब हो गया ना मदरबोर्ड चेंज Absolutely. This is maybe यही रहता है उनका मदरबोर्ड चेंज तो भाई जो मदरबोर्ड के पार्ट है वो तो मदरबोर्ड ही चेंज होंगे भाई वो रिप्लेस नहीं करते हैं some of those alt cycles. अबे वाईफाई कार्ड में क्या तेरा वो चेंज होता है बे मदरबोर्ड पूरा अरे तो भाई मदरबोर्ड पे ही लगा होता है ना भाई fighting here हाँ around तो B. मदरबोर्ड वो सारे भाई लैपटॉप ही मदरबोर्ड ही देखो करने बोलेंगे अगर वाईफाई कार्ड खराब होने के बाद तुम पूरा मदरबोर्ड चेंज कर रहे हो तो बेवकूफ हो पहले जो 200 रुपए की वो आती है स्टिक वाईफाई वाली खरीद तो लगाओ पहन जो मजे मारो Prowler cleared something about the अरे spot नहीं out. यार मेरे पास Everyone know doesn't एचपी का लैपटॉप था ना पहले वाला ओ उसका यूसी वाईफाई यूसी down Camo भाई with ये 2. काम Something still creeping forward. He had just patted that completely off guard. नाइस भाई निकाल दिया वो Started यूसी हो गया rotation. He बच is गए nearby. भाई नेट सर्विस वाला डर ही लगता है मानी थ्री में तो नहीं हुआ था फैंटम लगा के आ जाता है वो बहुत भाई सही में फैंटम मैच क्या है उसकी प्रिज्म फैंटम Well, Jing has a प्रिज्म ही है ना तो नेट्स फैंटम बोलते हैं peek around. प्रिज्म फैंटम Glimpse onto one as Snakebite goes bounding forward, but something can just ride the इस rope. कॉन्टैक्ट पे निकलेगा देखिए ये नहीं है भाई On the right Yeah, side, because he- does have the kill. Paper X, the timeout works. भाई डिवाई भाई दे कॉन्टैक्ट पे कितना प्यारा कॉन्टैक्ट पे पिक किए हो But I love this from Paper X. They get a little भाई ये bit पहले निकल गया भाई they're able to sneak Forsaken around to another position where Team Liquid isn't कांटेक्ट ready वाला for तो it. वो था लास्ट गेम में सोलो ट्रिप बार टूटते ही पी वहाँ तो ऐसे ही होता है भाई ये रशियन रैंड है ना ये वॉच पार्टी कब से करने लग गए ऐसी है भाजी क्लाउड जी भाई आओ डिस्कॉर्ड हाउस आपको भी आना आ जाओ आप भी डीसी बैठे हैं कौन है और क्लाउड जी But a lot to consider for Paper X in this आ जाओ round. भाई Prowler sees nothing. Flash forward into the gate crash. Attack headshot through the बैंड लगा पेल्टक भाई डैमेज हो गया ये ले बैंड की टू भाई बेटे जिंगी कह रहे Nat's gonna be हैं spotted. नेट्स Jing not gonna go for the chase. नेट्स भाई कोसड़ी ना कड्डी तेज है Just swing in from behind, finds that pin. उसी देख नेट्स ए ओए बच गया बच गया ADS'd in. What an angle. Cleans up the Viper. Player भाई क्या advantage टीपी now. मारता है भाई कैसे Inside of मारता है Paper X. देखता कहीं और है टीपी कहीं और मार रहा है And you've been able to find that मारते घूमना kill on a Forsaken had Nats not gotten taken भाई, अरे down. वही ना अब उसके कैमरा एंगल में वो Convinced पोजीशन the दिख ही नहीं Vulcans पाती in जहाँ पे this, उसने running टीपी for the मारा है times अभी of this. But ये डब्ल्यूटीपी मारता it's है gonna have और to ये be the सेव call कर to रहे हैं save वाओ because the economy is just not in a काम कर रहा था position. थोड़ा ओके ओके Team करो Liquid करो have to करो just sit back and watch as Paper अरे X क्या करोगे get काम up to करके 11. यार 12 बज This गया is a छोड़ो tremendous entry here by Jing with his showstopper. तू notice period पे है ना? Value नहीं in taking Camo out of the round. That's that dimensional drift for the retake gone. That's a bunch of तो तू चिड़ा चिड़ा क्यों रहता है भाई ऑफिस में भाई नोटिस पीरियड पे तो खुश रहते हैं लोग क्या बात कर रहे हो अरे नहीं ये ऐसे बोल रहा है ऑफिस ना वाले इसकी बंड में उंगली देते हैं इसलिए चिड़ा चिड़ा है भाजी बाजी ये तो सच बोल दिया बोल 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 उस तो ले I have no words to say
जेन्युइन फैक्ट्स हो गया। अरे यार इस बार टीरेक्स रोजा नहीं हुआ यार। टीरेक्स रोजा ठीक है। टीरेक्स भाई सुन लिया, टीरेक्स रोजा नाम रख दिया इन्होंने। भाई आज हम बच गए, वरना आज हम 2 बजे रात के निकलते ऑफिस से, वेबसाइट ही फट गई थी हमारी। भाजी काहे मरवाते? मैं नहीं मरवाता, ये बैकएंड की टीम वाले हैं ना, वो मरवाते हैं, मैं तो फ्रंट एंड हूँ। तू तो वो डिजिटल मार्केटर नहीं था क्या? रोल स्विच कर दिया ना, मेरा रोल स्विच कर दिया। मैं भी ऐसे करता हूँ भाई, मैं पियोन की नौकरी लग जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं सीधा वो स्विच करा लूंगा। डेवलपर रख लो, डेवलपर रख लो। सही है यार। तेरे को मतलब सीरियस एक बात बताऊं, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आती ही नहीं थी, मैं तो ऐसे ही चला गया था, पता नहीं मेरा कैसे हो गया। डिजिटल मार्केटिंग का तो कुछ होता ही नहीं। 3 से 4 सवाल पूछे मेरे से कि एसईओ कितने टाइप के होते हैं, मैंने बता दिए। तुम कौन सा करते हो? मैं ऑन पेज करता हूँ। अच्छा, ऑन पेज में कितना H1 होते हैं? एक H1 होता है। अच्छा, एक काम करो, कल से आ जाना। मतलब कंपनी टट्टी है। जिला फार्मेसी है बेटा। मैंने नाम नहीं सुना। जिला तो परिषद हो गए। क्या हो गए? जिला तो परिषद हो गए। सॉरी नहीं, जिला नहीं, जिलैब, जिला फार्मेसी। तेरी वेड़ी भाजी 1-2 सिट्राजिन के पत्ते भिजवा दो। भाजी वेबसाइट तो फटी पड़ी है, कहाँ से भिजवाएगा? नहीं, ठीक हो गई ना, ठीक हो गई, ठीक हो गई। ऑर्डर कर लो, बैंगलोर में भी है, मेरा नाम ले लेना। अच्छा 2 चप्पल और मार के भागेगा वो। वही ना। भाई कहाँ चला गया ये? वो बच भी गया। इनका मैच आ रहा है, देखने में मजा। लास्ट मैच किसका था? वुल्वरीन और BLG। यस यस भाई वुल्वरीन। सॉरी, वुल्फ। ओह बॉय वाइड स्विंग भाई। कमलू ये तो मेरे वाला था। ओह भाई बड़ा बहुत प्यारा स्विंग था भाई। कोई प्लांट आज नहीं करेंगे क्या? अबे थोड़ा पिक मिलने के बाद रुक जाते ना, हल्का सा वेंचर राउंड आ सकता था इनका, बच गए। जी भाई जो समथिंग भाई निकले हैं वाइड। And that is a difference maker in that round. And Patman couldn't convert on the pull off of the spike plant previously. This time he's good for it. And that's got Dubai fired up. भाई ये मोनिएट और ये दोनों बैठे बाय बाय लगते होते थे। जिनके साथ चला जाएंगे अभी तक वो भी साइकिल के हिसाब से ही खेल रहा था, पीछे नहीं बैठा हुआ था एकदम। ओह बॉय फ्री किल दे दिया उनको यार। भाई डबल पी कितना बढ़िया आया। अरे पर यार क्या मो भाई ओए कैसे बच गया? ये आती है। ओह भाई पिक भी ले गया भाई। वो अबे कहां जा भाई नेट्स भाई क्या कर रहे हैं? भाई पाजी आपको उसको लगाना कि वो बंदा जो टैप किया है उसको थोड़ी पता था ऊपर। नेट्स भाई मस्त किल कर रहा था छज्जे में बैठा। इसको लगा एक ने स्टिक कर दिया। भाई नेट्स ऊपर छज्जे में बैठा चिल मार रहा था। भाई यहाँ पे ये 1 HP में दूसरा ले गया ना, पहले 2 लेके गया है ये। हाँ मुझे लगा एक और लेके गया। नेट्स भाई कुछ हो रहा। Still a smile on his face, still feeling. ये कौन है? You have to suspect that Alex is not feeling the same way backstage. जिंग ये? He gambled a bit. जिंगी भाई। भगवान। Right there and then, but कोई बात नहीं बाजी। भाई तू एलेक्स कोच को जिंग तो नहीं समझता था? नहीं नहीं।
Just a question. for PRX. अबे टीपी चेक करी। मेरे हिसाब से वो टीपी पर ही अंदर जानी चाहिए थी वेंट के। Yeah, judge at that range, not going to do a whole lot of anything. Backs away, just get the paint shell out. So for his boldness, Jing does get rewarded. हे भगवान कल बारिश करवा दो यार, मजा आ जाएगा। Paint shells out of that, so it's a lot of impact util on a retake. देख साला cheap. That's on a timing. PRX has taken control. मत जाना भाई, मत जाना बाहर, मत जाना प्लीज, साइड में मत जाना। जाएगा भाई, होल्ड ही कर रहे था। अच्छा, मैं क्या पैंचो खाना खाने क्यों मत जाना भाई? अरे तेरी को वही अरे विनेबल अरे यार मेरे को लगा नेट स्नेल कर दी। वो फेक क्लोन कर रहा है। भाई what the fuck भाई, what the fuck भाई, what the fuck? Team Liquid are making a go of this. Unbelievable. The fake clone. भाई गलत था भाई ये। The confidence to do that in that moment. Unbelievable. It's such a gamble, because if it's anybody else other than the Viper, they likely try to clear it. But Divide doesn't want to give the position away. They don't want to shoot at it. And he actually managed to pull it off on an international stage. Nice! He's fake clone! That is so damn smart. Now you've got PRX on an भाई eco. को आ गया। One away from a dimensional drift, couple away from a showstopper. The ult cycle looking decent for both teams actually. The Gangster Paranoia already committed and भाई बैट टेक भाई। ओए गलत भाई, what the fuck भाई, दो गोली का। विनेबल है, कर सकता है। बॉब सीधा बैटमैन। मेन चला जाए ना, अगर क्रॉस करके मजा आ जाए। नहीं निकलेगा, मेन तो नहीं निकलेगा, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की मेन निकलेगा। उसको इन्फो ही नहीं है। Clutches in Pacific. He can do it. Toxins going up. बैठा तो सही है, बैठा सही है। Double push forward out of the elbow. Swings in, is good for one. Cannot get the other. Serial survives, as does Liquid. We're now one round away from taking this into OT. And this is going to be a wild. नहीं यार। कितनी फट रही है? बहुत। There are going to be a bunch of ults in play. आज मैं सील दूं आगे? थोड़ा दर्द कम हो जाएगा भाई। Striking, being a difference maker on that Yoru once again. Nice! They've got a real chance. Absolutely. अरे टीरेक्स पर ही तो आप हो। Talk about this round if you've got a set play. अरे यार ये तो टीरेक्स से तो पतला है ये। Now's the time to cash in. चुप कर। ओ लकड़ी साले। दोनों के दोनों डेड हो जाएंगे भाई। पाजी बटका बोले तो आप डेड हो जाओगे। पाजी आपको पता है टीरेक्स पाजी, अगर गलती से भागते समय आप गिर गए, एक तो ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता होता है ना, वो सपाट हो सकता है, पता है आपको? इतने मोटे हो आप। सपाट रास्ता हुआ फिर ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा। नहीं सपाट रास्ते होते हैं। मैं भाग तो लेता हूँ ना भाई, आप तो भागते उड़ जाते हो। तब वो एक वो है ना, मेरिट है, एडवांटेज है मेरे पास, भागते भागते उड़ जाऊंगा। आप भागते भागते दब जाओगे। फिर होगा बैंगलोर में आया भूकंप। गेस द स्कोर भाई, गेस द स्कोर, गेस द फाइनल स्कोर। 12-12 फाइनल स्कोर बोल रहा हूँ। 17-15 बाजी जीत रहा है, जीत रहा है बाजी इसमें, इस राउंड में। 13-11 लेट्स गो 13-11। Info gathering mission here for himself. Spotted anything there. Nat's able to back away fast enough. Running out of time, but the A site open, so won't get punished, but also doesn't spot out anyone at all, including Kingo. Showstopper now invested as Jinx flying out of his head.
Flick bench भाई 17-15 सही बोल रहा था ना मैं। ओ भाई crazy भाई crazy था। Team Liquid 4 rounds in a row to send it to overtime. And it comes off of an ace. The dimensional drift doesn't see a thing. All of Team Liquid is hitting yes, guys. and it isn't Boy, quickly enough by PRX to do anything about it. Jing tries to blast back ahead of the showstopper. Couldn't get high enough. The ups weren't there. Unbelievable scenes here in Toronto. And he effectively does. अब देखियो पाजी 2024 वाली PRX दिख रही है? पैट मैं बोल रहा था पैट भाई उठेंगे अभी। Here on the defense. 2024 वाली दिखी ना PRX पाजी आपको? Liquid are going to look to try to make this a very quick OT. Double push down in towards सारे अंदर चश्मे चुप हो जा तू ही पिटेगा। ओ खिंड जाएगा साले एक थप्पड़ में। पिट जाएगा वो क्या था ये? ट्रिपल पीक भाई नेट्स भाई कुत्ते हैं भाई। नहीं नहीं अरे भाई अरे अच्छा PRX की अटैकिंग चल रही है क्या? डिफेंडिंग तो भाई मिड पुश क्यों कर रहे हैं प्लान? हम बहुत ठीक है डाउन है दो प्लेयर पुश करके पिक निकालने का ट्राई कर रहे थे। पाजी ब्रेन डेड है पाजी ये। जी पाजी आप भी प्ले नहीं समझ आया जिसको। Team Liquid is going to bring to bear. यार मेरे बेटे को ऐसा ना बोलो यार कमल पाजी। Sorry पाजी। A crash forward divide. भाई Rush forward, catch them off guard, but there's just too many players inside. They haven't lost anyone. Batman now. Need ace clutch. Can only take the first Too much to ask भाई, too much to ask. 4 सेकंड या समथिंग बैठे होते एक बार को एक्सपेक्ट भी कर लेते भाई निकल सकता है। Now there's one away from stealing PRX's map pick. Kill right there from Patty Tech. That prowler maybe enough to kind of. ए भाई मेरे को पता है ना मेरे को। There's 3 players there. भाई जो 3 बंदे बैठे हैं इतना फनी था तो। वो सब ठीक है पाजी मेरे को पता है क्या लगता है कि ये T-Rex ही नजर लगाता है सबसे ज्यादा। भाई अभी तूने बोला था कि समथिंग मिस नहीं करता शॉट। अभी इधर समथिंग करेगा पूरी टीम पिल गई है। भाई सबसे पहले मिला था समथिंग। To extend this OT divide. ऑपरेटर और आउटलो का बोला था मैंने सुनते क्या होगा? हाँ तो ऑपरेटर ही थी उस पे समथिंग पे फुदू। पाजी तो आया कहाँ था वो? हैं? ओपन में आके खड़ा था वो। ओ बेंचोद भाई जी जी is still able to clean up one. Showstopper going to be locked. बेंचोद भाई। On for an ace of his own. साडी रेज नो भी आ रहा है around the corner. Utilize the smoke here against him, pushes forward in case the angle's going to be from screens, but here's the drop. Swings in, looks for it, denied. Serial now. नहीं भाई मत कर पीक मत कर प्लीज। To its end, but Forsaken says no. 13 to 13. और रह गया। This OT will continue. रह गया बच गए। Unbelievable. मैं तो टीएल के साइड हूँ लेकिन। पाजी बैन आप मार रहे हो मैं मारूं। या मारो। आपको बम दो दो। सीरियस देख ले मत कर। Particular screen before. And that showstopper on point. भाई 4 सेकंड की गांड फटी हुई थी। पर अगर यही सेम स्मोक ये यहाँ पे डिफॉल्ट पे लगा या मेन पे लगा के उठाता। हाय क्या देख लिया मैंने छी 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 छी। Chance for PRX to try to retake the lead. Liquid wanting to stop that from happening. Orb does get taken. कहाँ जा रहा है 4 सेकंड? इसको पता नहीं ऐसी इधर ही है। चाहेगा नहीं वो। Spam damage there with that judge. पहले भी फेल चुका है ना एक बार ऐसे नेट्स को। Catch them off guard later.
मेरे को लगा यूरो पे पीछे से कोई मार रहा है। बहुत बढ़िया बैठा फॉर सेकंड बी का पूरा कंट्रोल है उस पे, पर बाकी दो अंडे ले रहे हैं बी पे। जो दे मिल गया फ्री, ये देखिए अभी समथिंग फिर मर जाएगा ओवर। पीछे देख बोचड़ी के। अबे ये तूने देखा उसने कैसे डिटेक्ट किया क्लोन है, बीच में खड़ा हो गया उसके, अगर असली बंदा होता बच जाता उसमें। भाई यार क्या खेलते हैं भाई ये लोग, पूरा मैच छोड़ दिया चूतियों ने। भाई मेन वाले बंदे ने इतना बढ़िया दिमाग लगाया था ना क्लोन वाले प्ले पे। They have to know. There's not much that they can do about it here for the moment. They're thinking about the turn back and there. पर पाजी वो बड़ा रिस्की प्ले था अगर दिमाग लगा। Last one standing. Did damage. 1v2. इसे निकल जाएगा फोर्स से, दवाई ले जाएगा। दवाई नहीं ले जाएगा। भाजी हेवन का प्लांट है, लेफ्ट क्यों देखेगा अगला? हेवन एक्सपेक्ट कर रहा था दोनों को। भाजी कॉर्नर तो क्लियर करेगा ही ना यार, कैसी बात कर रहे हो? भाजी वो एसेंडेंट में नहीं है ना? जी भाजी डायमंड से ऊपर होता। वही तो बोल रहा हूँ। पता नहीं मेरे को टारगेट क्यों करते हैं सारे। अजी जो सबसे ज्यादा चिढ़ता है सबसे ज्यादा टारगेट वही होता। ओए चिड़ कुछ नहीं था साले, एक मुक्का मारूंगा। चिढ़ गया। ओए मेरे बेटे को मत फालतू बोलो, मुझे बोलो यार। अरे भाई तेरे को मैं कुछ बोल दूंगा फिर तू ग्रुप में गालियां लिखने लग जाएगा। कैप्स लॉक ऑन करके ये भी बोल। वो तो मैं लिखूंगा ना, तो रिप्लाई मैं दूंगा ना। देखो भाई जाओ। See what ends up coming to fruition here. Is Kiko about to drop 30 with one more kill? This could be a real boon. भाई गांटिका के बैट एक राउंड बैट नहीं सकते क्या ये मैच डिफेंड पे? अब फिर देखिए पुश करेंगे डिफेंड पे। भाई हर साल का इनका यही है बैंड, जो पूरी रीड होती है सामने वाले को, फिर भी जाना बोल रहे हैं। हां मैं वही बोल रहा हूं, टिका लो ना एक राउंड बोल। You've got a real chance to close it out in this round. अब तो जाना ही पड़ेगा ना अटैक। With an advantage, PRX would absolutely be kicking themselves. They can't get through here. भाई ये जो मिड वाला एंगल छोड़ा है इन्होंने भाई, सब तो गलत काम था वो तरीके। तो अकेला बंदा तुम एक हिलवा रहे हो, ऊपर से मिड भी छोड़ दिया। Little bit of noise made there. जाके बताओ यार, कोच बन जाओ टीरेक्स वाली उनका, एक काम करो। Noise, no contact from that ramp heaven. पहले खुद तो ठीक हो जाए। एक और का कोच ऑलरेडी भाई। डब्ल्यू गेम towards the ramp. तभी ये हाल है। Gives it away. टट्टे लोगों को कैरी करना पड़ता है, KamluOG हो गया ऐसे। हाँ एक स्टोला नाम का भी बंदा है ना, उसको भी कैरी करना पड़ता है। आपसे बेटर खेल ले तो शर्म कर लो। स्टोला द हार्ड स्कोपर पाजी, जब मेरा 50 FPS भी नहीं आते थे उस पे, मैं तब भी अच्छा ही खेलता हूं। रहने दो भाई। तब भाई गया। आपके पास 1,70,000 का पीसी है, लैपटॉप बोले भाई, पीसी बोल के बेइज्जती मत करो पीसीओ की। हाँ उसमें आपके 60 FPS आते हैं। उससे पहले मेरे पास दूसरा लैपटॉप था। अच्छा मेरे 40-50 FPS आते थे ऐसे, 45 को भी ऐसे। और उसमें भी मैं आर्केड को कैरी करता था, और ये कमलू को भी बड़े को मानेगा नहीं अब चल दिया। एलन बोसडी के Liquid trying to get impatient here. Lobbing. ओ भाई क्या बढ़िया फ्लैश मैच। अरे यार बाय स्कोर प्रेडिक्शन गलत हो गई गाइस, स्कोर प्रेडिक्शन गलत हो गया। What a comeback here for Team Liquid. 12-8 भाई, 12-8 से कमबैक। In the overtime rounds. Unbelievable. ये साली चीनी राउंड बैन की लोडिंग है। चीनी रशियन could be kicking themselves a bit. Sunset going to be coming up next, and it's a must win. Team Liquid दवाई से नहीं हो रहा है क्या?
that's where we're messing up, boys. We are not taking responsibility. They poking something into gamble somewhere. They full gambling right now defense. They leaving भाई क्या प्यारा क्या प्यारी रीड थी भाई. Take responsibility and we need. That's what we were good at yesterday, boys, and we're not doing that right now. Come here, you saw now a lot of people. Where is your tip? You can just fall back. And also on the fight, we need to say what we're on the fight. Fight left, fight right. Everyone need to step up on that, okay? Everyone. भाई क्या प्यारी कॉल थी. कह रहा तुम कहीं ना कहीं गैम्बल करेंगे ही करेंगे मैं. तो तुम खेलो बस. अरे 4 साल से सेम प्ले स्टाइल खेलेंगे तो भाई लोग रीड तो करेंगे. आदि भाई छी भेज रहे चैट पे. छी. आदि भाई दैट्स अ बॉय. आद्विक भाई आद्विक भाई. सोना के मुंह में डाल दो. और ये माउस लेने की सोच रहा हूँ मैं. ले लूँ क्या? देख लो भाई, डाल तो दूर से ना हो, बाकी तो कोई भी ले लूंगा. भाई शेप अजीब है, देख लो जाएगा. PRX पाजी चेक करना एक बार. Red Bull gives you one. आपकी बुंड में देना ना भाई, मैं क्यों चेक करूँ आपकी. अरे तो खोल के तो तू ही देखेगा ना, वो पीछे से थोड़ी देख सकता है. अरे भाई ये भाई सीरियस भाई घूम के सीप लगा गया भाई डायरेक्ट. चलता है भाई. बढ़िया था सीरियस भाई. मजा आया. PRX भाई सारे सब आपके मार रहे हैं भाई. अरे अब तो माउस दबाना पड़ेगा. इसमें मार रहे वाला क्या था भाई. 4 लगाता हूँ तो एक मेरे को भी तो लग रही है. I don't wanna go home, so I guess I need to take road. अबे बड़े हुए आगे दिया. स्टेटमेंट तो ऐसे देते हैं मैंने. Always YouTube खोलेंगे. ओए क्या हो गया? गेको. हाँ. Alright, Shan. Lip trying to get up. Oh boy. No. Whoa, hey now. Yeah, patience. Like my 16-year-old trying to parallel park. Alright, Lip trying to get away. Easy there, hyper shot. Whoa, there you go. Alright. Just a little something. Ooh, that's not a good place to be, man. Ooh, alright. Now you first flip. You can drive inverted. It's just not as good, right? Correct. Yeah, you can see she's having a hard time. She's looking for somewhere to flip off of. Maybe she should flip off flip. Yeah. Or that. You know, or hey, up onto the upper deck and jump right off. All right, Shan. Lip trying to get up. Oh boy. No. Whoa, hey now. Yeah, patience. Like my 16-year-old trying to parallel park. Alright, Lip trying to get away. Easy there, hyper shot. Whoa, there you go. Alright. Just a little something. Ooh, that's not a good place to be, man. Ooh, alright. Now you first flip. This is what the iPhone 17 Air will look like. It drives the dummies of the entire iPhone 17 series, and there are some big changes. These are the new Pro variants, and these will get a new 48-megapixel telephoto camera, this whole new camera island design, which, wait a minute, we've seen this somewhere, right? Now this is the iPhone 17, and this will look exactly like the 16, but this is where things get interesting. This is what the new iPhone 17 Air will look like, and this will be the thinnest iPhone ever. Just look at the difference. And this reminds me of the iPhone 6 days with its crazy thin frame, camera, and hopefully no bend gate. The big news though is that all the new iPhones, even the base iPhone 17, will finally get 120Hz LTPO OLED display. भाई वो देखा और किसी ने तैम्बा को मुंबई ने जो एंचल बुंड पाड़ी ऑस्ट्रेलिया की. Chipsets, you know the usuals. Now the pricing shouldn't really change because Apple is trying to make all of these iPhones here in India. But 212 रन का ऑल आउट. this is what the iPhone पर खुद के भी 4 17 पिल Air गए will उनके. look like. It drives the dummies of the entire iPhone. That's good. Hello, welcome to the stream भाई. बैटिंग तो अभी बहुत बढ़िया है. अरुण राज भाई, welcome to the stream. कैसे हो? I'm
your host Yingsu, and I'm bringing you guys a treat. Joining Ender and I for this post map is a very special guest. You've seen him here in Americas. You've seen him here over in EMEA, but it's actually a Toronto loco, Koala Noob. Thank you for joining us. Thank you for having me. Now you played against Team Liquid, just a couple times. I don't want to, revisit any trauma, but on Split in particular, did you expect this comeback from them? How did they win this match? Yeah, I mean, I saw how PRX were playing. Team Liquid play a very default style type of game. You kind of want to shake things up against a team like that with the double duelist. And PRX unfortunately weren't doing that. If you don't mind, how can Team Liquid to come back here? Yeah, and honestly, how did you get the permission for the watch party? Bro, the fun fact, I did. Pistol rounds, even though their attack half initially was dreadful. Apart from the anti-bonus, My permission to इंसान लोगों को चाहिए. Other rifle round, but got so many of those rounds. तभी ना पूछे आप साइड में घुस जाते हो. Yeah, I mean, look at the scoreboard right here. Keiko, this guy absolutely popped off. पाजी अब आपके बस का नहीं है तो फिर 300 मेरे को ACS, जाना. played out of his mind, and he was a big factor in why Liquid came back here. मैं तो सोने जा रही नहीं हो रहा क्या लिखने आई थी अबे नालायक मैं तो कर भी नहीं रहा PRX से नहीं हो रहा ये लिख दो PRX से नहीं हो रहा ऐसा लिख दो able to find the right answers when it came to their own attacking side, even though I felt like क्या मिलता है इतनी टीम को सपोर्ट करके on the map pretty consistently. They weren't running नहीं पाजी इनको पता बात वो है फनी बात वो है इनको पता है क्या दिक्कत है फिर भी नहीं सही करते कह रहे जीतेंगे ऐसे जीतेंगे नहीं जीतते positions, right? Yeah, I mean, PRX. They were able to get some space. They didn't even call it. There was one round where he fade-eyed A, fake TP'd, and all of a sudden they're going to hit B when there's 4 players on Liquid towards B. They just know it's a fake, and I feel like it's not getting calmed. Yeah, it becomes an even bigger issue when Kiko starts hitting up towards the end of the game, right? Gets the ace in that round, consistently a problem for the team. PRX kept going to these floor hits on the A site, not finding themselves able to get control over A heaven, and that came down to the fact I think Jing a few times died entering up into heaven, and they kind of gave up on that area of the map. And even when they were splitting in, they were still having timings where Team Liquid were taking it through a smoke, shooting them in the back. It felt like they were always getting picked off and not even looking at members of TL. And it's time for an EMEA special, a fake Yoru clone from Camo here in the this brings us back, right? यहाँ पे गेम चली जाती पूरी की पूरी अगर ये वेंचर मार देता गोली मार देता इसको. I mean, these EU players got balls. They just are not scared to do this. This is insane respect to Camo. This is something I always wanted to do on Navi. I haven't, but the fact that he's able to do this and pull this off on the international stage and actually pull Liquid into this comeback is just something super special, and they'll always remember this. The worst part is he doesn't even have clone in the inventory. He'd already used it in the round, and they didn't realize it. It is brutal. It just slips away, and that was the start of the snowball, because after that comes the Kiko ace. It comes round and round. It comes क्या crazy fake clone था यार पर solve their attack. वहीं गेम आ जाती भाई गोली मार देते तो. That's gotta shake you, right, a little bit. That's when you're 12-9 up and you lose the whole map because of that one play Koala Noob. Very difficult to regain your composure. Yeah, I mean, it's something that the IGL has to actually just rally the troops back up. Guys, it happens. But what if you don't have an IGL? I don't have an answer. I've never experienced then it's harder to rally the troops. I feel like their mental must have been just destroyed from something like that. And then when they got to overtime, always shoot the clone, bro. Just spiraling in their head. It's what do you do? सरिका जी काश ये भी आपकी तरह फ्लैट में होते तो ये भी गोली मार देते क्लोन को. पर वही दिक्कत है ना इंटरनेशनल स्टेज पे बैठने की. समझ रहे हो? Sorry. Just kidding. Jokes. Nax was using his rifle walls on the defensive side. It seems like their opposition was never able to get full over the B side because of the way it divvied up the site. I love to hear what Coach Alex has to say ahead of Sunset. So take a look at this. भाई इसकी बिंदी लगा के आई है यार देख रहे हो इसको. Hello everyone, Jen Lee here with Coach Alex. Alex, we were Alex very क्या excited बोलेंगे to see the clash of styles. Of course, Team Liquid bringing सिखाना पड़ेगा इनको सही बात है ना आता ही नहीं इनको. So what were some things that you emphasized coming into today's series against Team Liquid, and what do you think you need to fix heading into Sunset? Yeah, I think they've been playing Split for a while, so we kind of knew how they were going to play. We wanted to attack the B, and also I think they had a really good game plan going. They wanted to make sure that they tried to stop our random aggression. So I think it was a nice clash of ideas.
What was the other part of the question? What do you think you need to fix? Yeah, we need to play our game. I think we try to reinvent the wheel a bit too much. Normally we'll be a little bit more free, and I'm hoping that this Sunset game will be a lot better. Thank you and good luck. If we read into what PRX ran, you know, in some tournaments as of late, when it comes to the Sunset, would you like to see them bring the Sage, Koala? I think it's something that'll shake Liquid up a little bit. I don't think they probably faced Sage really at all on that map, and it's they've had pretty decent results with it in the past. I think इनको टिप बता दो मेरे से तो वैसे भी नहीं हो रहा I think PRX might actually win if they get there. I mean, I think a lot of people are going to look at the अरे first अपनी map and tips think दे दो PRX इनको should have taken लोग that इनको one. गोली नहीं To मार be रही honest, बराबर से and I actually like the Sage as a stylistic matchup to how TL play, especially like on the attacking side of things, because usually, again, like I was talking about earlier, TL place a really heavy premium on always maintaining back site control on B with their Viper setup. The Sage comp, PRX often don't even care about taking back site because they just put down walls, they give them the free plant so they can play in that box front side, play back towards main. So they're not even going to worry about it. We get it, we get it. मैं story games पे Liquid have to look out for now. ये भी ठीक है I mean, A control is going to be probably a very important thing on PRX's CT side, but they're on attack. Something by Zoa, ठीक है भाई genuine Nats is going to have to maybe change up how he plays. They don't really like to fight back. Sage आ रही भाई दवाई की Sage. genuine बढ़िया बढ़िया Shaking it up, maybe fighting B main a little bit more in the early game. You have the Neon, you can भाई really win that game भाई crazy हो गया तो खत्म हो जाएगा मैं बता रहा हूँ अभी खत्म हो जाएगा because coming back in with a comp like this is something that's going to be दल्ला है very ना taxing का if they want to refight A. So that's going to be very important for PRX जब भी वाइपर लेता है मुझे डर लगने लग जाता है and Liquid have to really pay attention to the way तो भाई ये भी तो साला वाइपर वाले मैप चूज करते हैं मैप भी वैसे चूज करते हैं जिसमें वाइपर ना चले तो भाई वही एंजल अपने अकॉर्डिंग खिलाएगा मैच Alrighty, do or die time here for PRX. घुस जाते हैं स्क्रीन में Team Liquid's map pick of सर क्या तुम Sunset. स्टोरी मोड वाली कौन सी गेम खेलती हो बढ़िया वाली बढ़िया गेम बताओ Talking about it, they have been good at this map, but this is a very different look. And मैं तो पाजी IRL स्टोरी खेलता हूँ लैपटॉप चलता ही नहीं कुछ स्टोरी वो सुनाती है कुछ स्टोरी वो सुनाती है कुछ मैं सुनाता हूँ बाकी देखो मैं कुछ ऑफेंसिव बोलना चाहूंगा पर मैं रहने देता हूँ अच्छा नहीं लगेगा पाजी उसको स्टोरी मोड गेम नहीं बोलते उसको कुछ और बोलते हैं बस इतना बोल देता हूँ मैं बोलूं नहीं उस तो पाजी उतना ही बोलते हैं जितना अच्छा लगे इसके बाद बदतमीजी हो जाती है बस तभी मैंने परमिशन लिया जी जी भाई ये क्या शॉट मारा बे ये क्या शॉट था क्या कीको का है सारा टीरेक्स पाजी एनएच के क्या रुक जा साढ़े रुक जा साढ़े टीरेक्स से ज्यादा बज रहा है तो टीरेक्स नहीं बजता इतना तो भाई रुक जा ऐसे ही है PRX मैंने क्या बोला था बोला तो था सही बात है बजो सॉरी पाजी मुझे तिल्ली चाहिए थी उसके बाद मैं आँख खुद लगा दूंगा साउंड तो आ गया होगा Crossfire set up for the reposition, clears the dart, gets the ping reveal. अरे भाई बॉल बना दी बच गया देखते कहाँ है फिर मैं क्या कर लिया भाई 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 क्लीन मार रहे हैं भाई क्लीन भाई कीको ने जो दो वो निकाले था तीसरा भी मेरे ख्याल टीपी करके निकाला है वो बॉक्स के ऊपर टीपी किया था शायद नॉट श्योर PRX has been struggling in that department since their very first match. Everybody struggled against Genji. हाँ बॉक्स के ऊपर था मैं वही बोल रहा हूँ पाजी जो पहले दो पिक थे वो पिक थे तीसरे वाला तो था वो तो ऑफ गार्ड था चलो पाजी चलो and you know they just tried to challenge Kiko again and he's just too hot right now. You know the confidence still there for PRX but the mechanics on the side of Team Liquid currently. The momentum on the side of Team Liquid. Game लाजिंग को भाई मस्त. Only a sheriff bought up by Patman is the only purchase to speak of here. यार वैल्यू नहीं रहा काउंटर वो खेल लेते हैं. अरे काउंटर प्लेग टेल्स खेला अभी सेकंड खेलूंगी. लास्ट ऑफ अस भी खेलूंगी. टॉम रेडर बहुत प्यारी है यार.
लास्ट ऑफ अस खेल रहे हैं ना, बहुत प्यारे गेम है भाई, बहुत प्यारे गेम। टॉम रेडर तो मैंने खत्म करी हुई है, एक मैंने अपनी स्ट्रीम पे खत्म करी हुई है मैंने। ये देखिए सोवा 2 खाएगा। भाई कीको भी ये देख ऊपर चढ़ा हुआ है ये। ओह 3 खा गया। अरे पैटी टेक भाई। क्या भाई गन भी नहीं ले। अरे भाई गलत भाई गलत। Team Liquid start things off 2-0. Yeah, they're just playing bend but don't break there. साले गन के चक्कर में गए बड़े। A little bit extra space. That smoke's blooming. Able to find one, but they come barreling through, trying to see if they can overwhelm that angle. Man, oh man, PRX has been really firm in some of those holds. वाइपर ही क्या थे? Shut down early parts of the round for PRX sometimes, just on his own angles that he's taking, finding tons of value. Nats is even going to scoop up an Odin here. Going out. Oh my god. Hefty investment. भाई नेट्स पे अभी भी 2500 कैसे बढ़े? Could certainly pay off. भाई क्या होगा ना पिछले राउंड। नाइस शॉट। Racing across the site. No way to play off that tripwire. In fact, the counter spam. वही साइड से Anticipation of the peak does manage to find zero. पैटमैन साले राइट देख ले। Patman on this lurk. May be able to find the timing here if he cuts into his tiles. Wall now dropping, but it's going to be Kadatek who actually turns around, finds it with the Bulldog, upgrades to the Vandal. थोड़ा डिप बीच में बटा भाई ट्रैश कर गया। अच्छा Paranoia going to be sent, but cleaned up as they work their way. पीछे होगी साली टीम पीछे होगी। नाइस। एक ही गन गिरी है चलो। Get themselves on the board. Yeah, you can see so much of PRX's game plan here is to try to punish these A holds. And they do a great job on the opener, finding Camo out in the open right before they make contact with the trip. And Jing gets up on that box, puts it to good use. Gotta look for some of those cheeky walls as well, where they're gonna boost PRX players into spots you're not ready for with that Sage. This time Team Liquid, understanding PRX's game plan, gonna make a change. And Relabel dissuades PRX from committing. I think that's wise. You gotta know there's some kind of क्या शॉट डरता है? Right outside of A main. And you're starting to take a little bit of space in the mid, claim a little bit of map control for yourselves. Here. Think about going. भाई ये तो मेरा सेटअप कॉपी कर रहा है भाई। Looking for the crosses. सही बात है भाई, सही बात है। Change the size of the map. You're gonna use a smoke there in mid. Patty Tech has पाजी अभी VCT में कॉपीराइट स्ट्राइक कराता हूँ, ये ब्लॉक मारता हूँ। जेन्युइन भाई कराओ ब्रो। YouTube पे तो नहीं कर देख रहे ना आप? नहीं। हाँ चलो ठीक है, YouTube वाला बंद करा देता हूँ। To try to strike off of. Deploying drone. So this is the drone. At the moment, Team Liquid not really biting on this bait. भाई वो उसने ड्रोन फंसाया हुआ इसने तोड़ा ही नहीं। Shock darts both going to be committed. Clears out the tripwire. Camo going to be holding close at the ready. Here is Jing. Cannot sprint fast enough. He gets taken down. बड़ा दौड़ेगा भाई। Set up here over towards Ali. अला एल्बो अभी भी नहीं क्लियर किया, देखना लेन वाला मरेगा। मार दिया। बैटमैन भाई। ओह नाइस। In towards backside. ओह भाई। The classic Moniac play. Oh भाई। Legit भाई classic Moniac play। हंसना फोर्स देखना हंस रहा साला। Something about Sage with this team. They always try to break the maps. Team Liquid going to be going for a save. PRX. Flawless fashion. दिल बना रहा भाई, दिल बना रहा। Yeah, it's really important for PRX to get a good start here on this attacker's side. पिट जाए ऊपर से तो। नहीं वहाँ कवर है वो, कवर में है। Spot. I said flawless fashion. ये लेवेंचो। They're coming out on top. Lose a player, but take everything out of the hands of Team Liquid. Much better way to go 2-2. Absolutely worth. Map 3 आ रहा। Map 3 आ रहा, map 3 आ रहा। Coming into this next round, great entry by पनौती मत लगा, बढ़िया चुप होकर बैठे थे। to set him up. अरे मैं क्यों पनौती लगाऊँ? मेरी हिम्मत है। Nicely handled. Yep, there you go. PRX Classico. They're gonna find these weird Sage walls. Whether it be just boosting someone up there, TPing on top of it, Jing Blast packing up with it. A lot of different options.
Guardian for Patty Tech, Sheriff's otherwise. Oh boy, that's fine. Players working their way across the tiles. Spot anything, so should चार बंदे जा रहे हैं भोसड़ी के भाई. potentially have an opportunity to punish Patman, who is alone on this side of the map, slowly creeping forward. Patman ही है उधर. Maybe. आज ये पैटमैन देख ले इन तीनों को. All going to come down to these timings. Turned around, faced in towards B main. Noise not. कोई और नहीं यार. Given. Patman looking like he's not going to be able to find the flank of all flanks. Wait कर दो ना एक को. Clustered up. Smoke could be cycled in. They're actually going to backpedal a little bit. Now starting to register that there might be a player behind. ये देखो भाई. देख भाई बैटमैन फुद्दू. गन रिकवर होगी. चलो बैन दिलन. मरने हैं ना बाकी सारे. Recon. एक भाई. कैद हुआ. Doesn't want to do it again. This time is able to go ahead and back away. Vandal potentially here for the catches. Jing gonna go sprinting forward. अभी भी पीक में नहीं गया यार. एक और मिल जाता. Will retain their weapons. Forsaken's like, fool me once, shame on me. Fool me again. यार बैटमैन. Then it's definitely my गलत एंगल देख रहा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है. PRX, 3 in a row. हमेशा बैटमैन के साथ टाइमिंग हो रही है. Patty Tech does have a Hunter's Fury. Still sitting on device. Nats Resurrection नहीं if है ना. necessary. Nats का तो खाता ही नहीं होला बैन के लड़ेगा अच्छा होगा. It's been a lot of early. तो देखा पाजी अभी हरामी हरकतें शुरू करेगा वो देखना. Lining up the bulk of their forces. Wow, PRX gonna leave something on his own over there. Has to get out. Clear the dart. Little backpedal the rest of the team. Maybe very swift themselves in onto this site. एक ही लगा रखी है. एक ही होगी. बाय नहीं होगा. Immediately having to backpedal. बाय तो सेव करा था उसने तो. अबे अच्छा दूसरी ट्रिप देख कहाँ स्पॉन भी भाई. रीटेक वाली ट्रिप. बढ़िया एग्जीक्यूट. वो चौधर. एक मिड डोर एक बैक साइड रीटेक. अभी लगाई है उसने. पहले नहीं दिया. बाद में लगाई. लेट लगाई. ये ले. Camera frantically just sending out a dart, hoping to find a hit, but comes up shy. Fury now committed to Patman. He's the first one to fall. Patman भर दिया. Oh why Nats भाई. That's fine Zach. Looking for a little bit more, but they're all falling to the wayside. Nats drift कर. Oh भाई crazy round भाई. Crazy fucking round. Team Liquid retake it into the pit. T-Rex ने पहले ही बोल दिया था good round. अरे बहन चोदू पहले एल्टी को मार दिया भाई. कैसे बोला? अरे बहन चोदू. T-Rex भैया तेरे को पहले नहीं बोला तो चुप ही रहा कर भाई. Oh भाई क्या किल था. They're able to punish him so quickly, right? Using that Hunter's Fury. अरे फोर्सेकन ने उसने मारा था क्या? समथिंग नहीं. नहीं समथिंग में क्यों मारना है? सोवाल्ट उनके सोवा ने मारा था. Beautifully set up, beautifully thought out. पैटी टेक का था भाई अल्ट तो. वो क्यों मारेगा बहनचोद. You have the overdrive for Camo. TP forward into the smoke there at mid. Forsaken. Oh? What the fuck? Oh भाई Nats भाई ने पकड़ लिया. Heard the maneuver. Just managed to find that kill. Turn over the top there at market. गैप है. ओए बच के और छोड़ दिया भाई. एंड पे छोड़ दिया भाई. एक बार ले जाता नहीं तो वहां पे. On this linger here at mid. भाई रोटेट देखिए स्पॉन से रोटेट कर रहे हैं भाई. अजय हमारी टीम की तरह थोड़ी है. अब मैं क्या करूं. ओ भाई. अच्छा उसने मारा है. किको ने मारा है. हां वो तो उछल ही रहा था. वो कैमो तो पैच फ्री फायर. अला सब कुछ गलत हो रहा है वेंचर. पुश कर करके मर जाते हैं अपने बंदे. चलो भाई तुम खेल नहीं रहे. बोली कि से कैसे करूं. सो जाती हूँ. अरे ठीक है. गुड नाइट. बाय बाय. Trying to get a little too tricky, to be honest. You know, with this teleport from Forsaken, you're not fooling Nats. You're not fooling him. He is one of the smartest players on the planet. One enemy remaining. Game sense is incredible.
And they still haven't found an opportunity to use the res on some of these holds. They're really just kind of trying to take fights, trying to be proactive on some of these defenses, and Patman is getting just destroyed on these lurks. So all of this is really making it difficult for PRX. Why the bricks are crumbling, why the tracks not getting laid anymore. PRX पाजी यार love you यार तने. पाजी ये बताओ आप BCD की कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो? कोई सी भी नहीं पाजी. Fantastic भाई, fantastic. ज्ञानडू क्यों बनते हो पाजी फिर? मुझे पाजी फर्क नहीं पड़ता. वाओ पाजी. आपको फर्क नहीं पड़ता पाजी, वाओ यार. ना पाजी मैंने पहनना ही नहीं. वो ज्ञानडू वाला वाई हटाना ही पड़ेगा वो. पाजी मेरी फेवरेट टीम तो फैनेटिक है. भले ही वो हारे जीते. डुएलिस्ट का क्या नाम है? हाँ चुता है उसका डुएलिस्ट भाई. बस ये लवड़े सपोर्टर देख लो भाई. मैं प्लेयर सपोर्ट नहीं करता. मैं पाजी प्लेयर वाला सीन है. टीम को सपोर्ट कुछ नहीं है पर ज्ञान देना है. ये तो देखो पता होना चाहिए. साले एटलीस्ट प्लेयरों के नाम तो याद रख ले. फैनेटिक करके बजता ना सर वो टीम का पता ही नहीं. ओह बढ़िया शॉट है. प्रेस तोड़ने के लिए बहुत प्यारा शॉट है ये. तोड़ को सिखाओ भाई. कोड़ा ज्ञान ही देता बस. Tucked there into the smoke, see if they can find anything with the drone. Oh भाई. Oh उठा ली भाई उसने. Call on the tripwire, very nicely done here from Serial. Oh भाई टाइमिंग देख रहा है. ये ले भाई. Shell's gonna make it a little bit more difficult as they do get cleared out. He's still gonna be here at backside though. Put up some damage, but getting ping revealed to Hunter's Cherry. He's just completely contained into the corner and Jing is. भाई मुझे लगा उसने नहीं देखा. A little bit more, the wall gonna be raised here in their faces. Tries to break down one of the segments, and that forces Forsaken to not. T-Rex Rosa. Haditech still alive, still able to find some impact here. Spike gets planted. PRX should be favored in this position. Team Liquid are going to look to reroute that script, but Nat swiftly are going to be dealt with here through the smokes. Not able to find one. Player standing. What the fuck भाई. A bit costly as two भाई 30 HP में दो खा रहा है. Back in the timeout, tie things up 4-4. Just looks like they're shoring up these post plants. But PRX fan के लिए पटाटी टैग है. Make sure everyone knows what their job is here. Nice Hunter's Fury to set up Jing. ये बढ़िया मारा. You know they're there. You know you backed them off. That's giving you the ability to be ready for that entry. Fast lane goes up. Just start spraying through. Get a couple kills on the entry. And now things starting to go a little bit more back in PRX's direction after that timeout. Much needed. Still sitting on the res. Have the neural theft and of course Camo's lightning fingers, but until he seemingly wants to go on an eco or finds his moment, hasn't opted to pop him just yet. But Camo's been doing a great job being bait for his team. हर बार सेम प्ले कर रहे हैं उन्होंने पूरा रीड कर रखा है. This time situated just up above. नहीं इस पर वापस गए हैं. He's pushing in. And yeah, he's pushing in and now इनको कुछ वो ही नहीं है. heavy flash and Snake bite to try to flush him out into the open. Works a treat. Serial able to collect. Hard angle. Oh my god, is absolutely gorgeous. What a response from Liquid. भाई कुछ है ही नहीं. इकलौता इनिशिएटर है. वो उधर भेज दे रहे हैं और ना कोई फ्लैश है कुछ में के लिए. मैं तो मरोगे. बेसिक को अगर ये बेसिक W भी करे तो भी निकल जाएगा उसमें. साथ में भाई एक रिकॉन मरवाओ बेंचो. You can do weird stuff like maybe use the wall to block off one side, but you know it's just. कहने तोड़ पहन दिलन. मेरे लग रहा पैटमैन कलर निकल नहीं रहा तो करके समथिंग गया था. PRX just doesn't have great options, you know, unless they can win these early scrums. आए ना वही मैच जो जी. Quickly backpedaling here since the smoke is going to be paranoid. आए ना वो जो मैं बोल रहा हूँ easy right. Sake is still able to find the shots. मैं जो मस्त रिकॉर्ड मारो W करो. Serial slowly making his way through, so PRX looking to match aggression with aggression here.
Trade back around, double face forward. बच गया भाई, लग गया था स्प्रे ट्रांसफर अभी ऑलमोस्ट. Keep things very tight knit, 5 to 5. वाइड स्विंग ही कहते हैं. वाइट स्टिंग क्या, वाइट स्टिंग वाला था पिन नहीं गया भाई, पर स्टिल भाई वो उसकी वजह से ही भाई गया है वो क्रॉसर. साथ ही खड़ा रहता दोनों मरते. पर ऑलमोस्ट खा गया था इसको डिवाइड को. Classic PRX style. Back into another Hunter's Fury though. मैं दिल से चाहता हूँ कि PRX जीते. Real opportunity to use the res. He's just been sitting on it. भाजी इतना आपका मुझे बदलाव कैसे हो गया था? लेकिन मन है. मन तो टीम लिक्विड के साथ ही है. और मैं अपने मन से चलता हूँ. ओए अग्गू भाई अग्गू. वो थी मादिलान. हाय हाय. Pit available now for the Viper. अरे यार चिंगू भी तो मर गया. Just the second spare. ओए Goes to the TP, but it gets cancelled, and he's immediately right back into his demise. The wheels coming off a bit here, it would seem. Two wheels on the bus go ये कम round बहुत and जल्दी है भाई, ये दो खाएगा अभी. To get that. Oh, there it is. Okay, finally does. क्लियर हो रहा है ये. नहीं पता तो बहनचोद वही है. Needed the other players to already be in position. हो रहा क्लियर. 20 HP pops the क्लियर हो रहा है भाई, ये भाई पता ही है. ये ले नाइस. डॉलर करें वो मार दिया. एक और भाई अगर एक समझ के नहीं यार take him out of the equation. भाई एक और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वो लर्क. Through the back side of the A site. They don't know where Patman went. तो भाई कहाँ देख रहा भोसड़ी के मरेगा. देख ले देख लो. Perfectly poised. Serial. भाई बहुत लेट एक्सपेक्ट करा भाई. अरे नहीं बॉल अप थी ना. बॉल अप वॉल डाउन की कॉल पे देखा उसने. नहीं पाजी पहले भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उसको. उसने एक पैटमैन ने ही छोड़ दिया था और वो भी एक्सपेक्ट नहीं. अबे नहीं वो उन्होंने दोनों ने ये मेन वाला एंगल छोड़ रखा था ना, तो उनको था कि घूम के आ गया होगा अगर हो सकता है. Trying to get him hyped, trying to get him back into this. Why? Up 6 to 5, 7 to 5 would be fantastic, and Camo a little bit frustrated there. कमो का यूसी हो गया ना, कमो बेचारा सैड हो गया. बच गया. And on a neon, you already say, okay, probably. ही लगी वीरे साडे कोलो ही लगी. कह रही लगी. Yeah, some work done. भाई कमो भाई टिक जाओ. कमो भाई ना टिक रहे. बच गया पैटमैन जस्ट. अबे अगदीस. ओ भाई भर दिया भर दी भाई भाई. एस चाहिए. अबे हटो मैच प्लांट कोई और करो मैच एस जान दो. नाइस है. अच्छा मारा सही. To try to retake. Stop PRX. Worked lower and lower down to 25. It's back around to serial. भाई मैं कह रहा था भाई खुला छोड़ दो जरा सा. एस जान दो. ट्रिपल पिक. ओ मैच भाई. Offset. Devi gets a 4K. PRX hits 7 at the half. Devi struggled on split, but comes up huge. भाई सारे वाइड स्विंग वाले पर रखे थे. भाई मैच एक पूरा वाइड निकलता है, छोटू से पिक करता है दूसरा. ये देखियो. Across the lobby, 7-5 PRX in the lead at the half, but Pistols have not been kind to them. So Team Liquid certainly are not out of this yet. We'll see you guys on the other side of halftime. Esports is a $2 billion industry now, but it all started in dingy basements and cramped living rooms. From how the pros train to how the money flows, this G2 and MasterCard series breaks it all down. 12 episodes. अभी मास्टर चल रहा है ना. यस
Yes. हैप्पी रियलाइजेशन भाई। ए चुप करना चूतिए। अबे छोड़ यार, क्या ही बोलूं तेरे को। कुछ मत बोल। लौड़े तो पक्का नमूना है। जो बोलता है वही होता है। वाह कुछ। अरे कर दी लड़कियों वाली बात। जो बोलता है वही होता है। ये जैसे दिखा देता है ये कि राजस्थान के स्कूलों में कितने वैक चीजें होती थी भाई। साले वैंग करके तेरे मुंह पे स्प्रे मार दूंगा। डैम ब्रो। लड़की है तू? लड़की है तू जो स्प्रे मारेगा है? भाई रखा हुआ है अगले ने पेपर स्प्रे, तो क्या वही मारेगा? क्या पेपर बात स्प्रे तो लड़कियां रखती है ना भाई। तो पाजी रखा है अगले ने, समझो आप। आजकल जमाना खराब है भाई। तेरे जैसे गेम ही घूमते होते हैं। अरे गाना लगा रहा हूँ बोट में, ठीक है? हाँ कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ। म्यूट कर लो। ठीक है। 7-5 PRX here in the lead for the moment. Team Liquid going to be looking to turn that around. First, we'll go ahead and take a look at गाने से कौन सा इनका पेट बदल देगा? भाई मेरा तो रिपीट पे बज रहा है फरेबी और ये मदिरा, पैंच रिपीट पे बज रहे हैं दोनों। आजी मदिरा आए क्या बोल भाई? आगे रास्ता बचा के भाई फरेबी का वो जो वो वाला पार्ट है, डैन 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 बाजी वो जो नई वो किचन वाली जो इन्होंने वीडियो डाली है उसमें तो और भी क्रेजी है। वही क्रेजी वीडियो बनाई भाई, स्टेप मार रहे हैं उस पे भाई। किसकी अबे फरेबी की वीडियो आई है ना। अच्छा तो भाई किचन में वैसे खड़े स्टेप मार रहे हैं, डैन 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 डैन। बढ़िया भाई लिटरली। लेकिन ये है रफ्तार के गले में सच्ची में कंप्रेसर है भाई, जो चिल्लाता है वो। भाई कितनी पुसी भाई, मैप कंट्रोल है इसके पास जाट का। बच गए भाई, बच गए। मेरा दिल ले गया, मेरा जीत गया। Try to make a go of this now by himself. Five will swoop in from the side. PRX will find their first pistol win here of the series. Stretch that lead by. यहाँ पे मैं आग देता हूँ। Wanted to see it get a bit weird in this. भाई जंप पीक में हेडशॉट बने हैं। Forsaken there, catching Camo, trying to go for the relay ball in the air. चलते मारा जिंग भाई। Absolutely disgusting. They needed that, and that's got them on their feet. Not something that we see very often. Sheriff in hand, Kiko. PRX not going to be a full commitment here to the purchases. Patman will just have. भाई गाना रट चुका हूँ भाई मैं पूरा। ओ जिंग भाई। ओह मारा है बे बढ़िया। One casualty. PRX overall themselves a very clean anti-eco. Huge for PRX's momentum, for their confidence. That's 5 in a row now. Going back to the other half. That crossfire. That's why get time अब तो नीचे करने का भाई। Liquid does have the addition of the relay bolt to try to clear these angles. But you know, both of them are going to have to find their timings, be really sharp on those entry shots. Team Liquid's turn to try to make a go of that. Seems like they want to fight. They want to try to just get this orb here for Jing. One away from a showstopper now. And he's got a phantom. He's one of the ones with a rifle. So certainly doable. They're stacking through mid. They're taking a look. And Team Liquid trying to obscure their numbers. That's blocking through here, but there's heavy presence in mid. ला भाई 4 सेकंड। Numbers advantage ends up winning out. Jing dead. Weapon ability recovers. Forsaken off screen. He pitches in from behind. Works his way. ला भाई 4 सेकंड ही कह दे। भाई क्रेजी तीन मार गया। No idea what hit him.
अरे किसी ने सीधे मौत का D&D गाना सुना है? हाँ। ये D&D है क्या है? अब तो हाँ हट गया ना, D&D। अब नहीं है शायद। नहीं नहीं अरे वो उनके साथ है, रैन जैक्स क्लिफर के साथ है उसका। मुझे याद नहीं आ रहा। जिसमें ये है C4 इग्नाइट। He TP'd past the tripwire initially so that he didn't reveal I his was presence. thinking some other song, but no. And that is going to bring out an immediate timeout from Team Liquid after they lose the bonus on their attacker's side. What in the world was that? For every chaotic, messy, crazy play that Precision goes for, that push up, that TP into पर मैंने जो ए पे एटलीस्ट अगर वही होना था, होल्ड नहीं कर रहा था, सब ये ट्रिप बाय डालनी थी मैंच। ना ट्रिप डाली ना किसने होल्ड किया। मस्त ले गए पुश करके। कहाँ पे? यहीं जहाँ पुश किया फॉर्सेकन ने। अच्छा ए पे यार इस ये सनसेट में ए भी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ पार्टी। Run back 5 just to tie it up. Yeah, I mean, and it looked like it was going to kind of be. अरे वहाँ पे ट्रिप होती या फिर अगर बंदा होता तो नहीं हो रहा था भाई कुछ। To try to get Jing the show stop. नहीं पाजी, फॉर्सेकन था वो तो टीपी मार के आया था। पर पाजी साउंड आती यहीं तो खड़े थे मिड पे, बहुत दूर छोड़ते। It's all just to buy attention and time. साउंड आती है पाजी, बहर नहीं है। It's something no other team on the planet. भाई इस गाने का मेलोडिक फ्लो क्या ही प्यारा है भाई। बहुत प्यारा है। बॉय पीक देखो, पीक चेक करो। Now they're going to try to maybe for a little bit of a high-low setup. Spam through. भाई एक गए हैं। क्या ही बरसा था भाई। At the front of B. I'm out of here. Patman's there, but not a lot he can do here. Goes down, but yeah, Paranoia going to be sent. Just has to play back. Three side. Stingers on the opposite side. Spike planted. Will prove deadly. Oh, no, nice. It doesn't even matter. What the fuck, भाई? भाई ये क्या बरसा भाई। पूरा फ्लो देख रहे हैं। Massacres them here, denying any opportunity. Atman भाई, nice. Good awareness. Flawless. I was like, man, this might be a चलो little भाई tricky. ऐसा कुछ गाना बना दो यार क्रेजी से। Got stingers, they're getting into the post plant. No, पाजी। forget it. Spike planted. The Batman. भाई उस 24 घंटे रह गए। Just insane stuff. कल गाना आ रहा है भाई फाइनली। फिर तो उस तोला देगा सबको भाई, मजा आएगा। शाउट आउट की बात कर रहे हैं। यस। बाकी आपको बोल चाहिए तो आपको तो दे ही देगा भाई। मैं ये नहीं हूँ यार। भाई सारे भाई भर के शेयर कर देना ठीक है। स्टोरी सब जगह लगाना। तेरे लिए मैं अपने 24 में इंस्टा वो करूँगा भाई। लाइव स्ट्रीम पे गाना बजाना, इंट्रो आउट्रो में सब जगह बजाना गाना। ओ भाई निकाल लिया। वही राउंड आ गया। नेट्स भाई केरल को भी नहीं जान दे रहे पैचो। पाजी कॉपीराइट तो नहीं पड़ेगा। नहीं कॉपीराइट नहीं आएगा, ऑफ कर रखा है मैंने कॉपीराइट का। मैं अभी कमलू खींच के रखता हूँ। क्या? अच्छा मैं तो म्यूट किया हुआ है। अरे स्ट्रीम पे इसका गाना चलाइए। अच्छा अबे उस पे तो आएगा ही। नहीं आएगा, कॉपीराइट मैंने ऑफ कर रखा है। ओह अच्छा कॉपीराइट नहीं मारता कॉपीराइट। वो तो चल अगर तू आए, वो तो YouTube भेजता है कॉपीराइट, वो तो अगर आएगा भी वो तो एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ एक्सेप्ट वगैरह कर सकते हो। नहीं वैसे भी नहीं आएगा, मैंने कॉपीराइट कंटेंट अपना ऑफ कर रखा है। अच्छा कि लाइक कोई भी यूज कर सकता है, बट इस गाने के बाद से मैं चालू कर दूंगा। भाई वैसे एक बात देख लेना भाई, वो तेरे गाने पे कोई और कॉपीराइट ना रखे। कैरी मिनाटी के साथ हुआ था। हाँ पता है, वो गाने का नहीं होता, वो बीट का होता है। बीट पे कॉपीराइट लग जाते हैं ना। ओ भाई चलो मार दिया। ओए बच गया भाई जी। मर गया जिंग। अरे वो पैंचो मेरा लैग मारा भाई, वो बच गया था मेरी स्क्रीन पे। क्लियर करा। Spot on the serial, but doesn't see anyone else. This deep lurk here from Kiko. दिख गया। Slowly drifting back. Kiko looking to push forward. नहीं भाई। Space. PRX isn't really reading this. They weren't aware that there were two players.
स्टैक कर रहे हैं बस भाई ये बैटमैन बैठा है भाई। एक तो खाएगा बैटमैन, उसकी कोई नहीं है मैच। बैठा भी बहुत प्यारी जगह है। वो आ गया साइड के अंदर आके पुदू बैठा है बढ़िया। अरे ये हर बार ऐसे ही करता था, लेके चुल्ली मचती है। बैठ के टिक टिक बैठा है जो निकाल तो दिया। बढ़िया बढ़िया। वो करा मैं एक तो खाना ही था इसमें। भाई अब मजा आ गया, डिसाइडर मैप है। प्लान तो करेगा ही नेट्स की वैन की। ओ भाई अबे जगह ही नहीं और कहीं प्लांट करने की वहां पे पेट में। हैकर थोड़ी वो कूद के भगा ना, हैकर थोड़ी है कूद के भगा नहीं। अरे नहीं, और वो प्लांट स्पॉट ही वही बचा है उसके पास, और कोई प्लांट स्पॉट ही था। किया तो टैप करते ही तो गोली चलाई। अरे वो 8 सेकंड बचे हैं, स्पाइक दिख रही पता है उसको, वो उठा के भगा है पूरे फुटा है। कैम करेगा कोई भी वहां। हां तो वो तो भाई दिल जीत लिया भाई इतनी भाई ने। दवाई पाओ भाई, दवाई पाओ। काड़ा लाना एक और काड़ा केड़ा लाया जाए। हेलो भाई कल वो PRX जेंजी वाला मैच था ना जो। हेलो उसमें पहला जो मैच था उसके अंदर भाई वो अगर एसेंट वाला वो भाई कमबैक तो अच्छा कर लिया था उन्होंने। हेलो भाई फोन आया गाना भाई प्रेडिक्ट अच्छा यार। और Bro, actually, Ella, you didn't watch the game, and we won one-sided, by the way. मैं लिक्विड पे नजर लगाता हूँ, मैं लिक्विड पे। हेलो Actually, Ella, you didn't watch the game. पाजी यार क्या गाना लगाया यार। प्रणव गेमिंग वाइटी। पाजी जैसी तबीयत वैसा गाना। पाजी कुछ नजर के लिए कुछ नहीं सुनूंगा। Yeah, I can hear you, bro. What's up? पाजी गुरनजर भाई इसका वो तेरे बाजो शर्ली सेठी के साथ तेरे बाजो कोई नहीं मेरा। यार रील बनानी है, रील शूट करनी है मेरे को पता है भाई क्या गाना था भाई। Thank you so much भाई। गाने सुन रहा हूँ क्या ही बंदा है। हाँ क्या बोल रहे थे? नहीं मेरे को आपका बहुत रिकमेंडेशन मिला था। अच्छा शॉर्ट्स में ये वो पूरा। ओह क्रेजी भाई, मैं शॉर्ट्स इतना डालता नहीं, बट या क्रेजी आप जो शायद पुराने वाले देखे रहेंगे। हाँ तो मेरे को जो आप नाइट मार्केट में ये करते हो ना, हाँ जो आप बोलते हो वो आ जाता है बाद में, आपको फटका पड़ता है। हाँ तो वो देखकर ठीक है इस बार आपको लाइक सपोर्ट करेंगे करके। लव यू मेरे भाई प्रणव गाना भाई। सुनाता रुको, तुमने नहीं सुना होगा ये गाना। कसम चड्डी फट गई थी, लेकिन लव यू भाई। थैंक यू सो मच भाई। गाना नहीं है या छोड़ो, तुम्हें पसंद नहीं होगा, आएगा छोड़ो। लाइक इट्स नॉट अ सॉन्ग, इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। एक्चुअली थैंक यू सो मच। लाइक जब मैं डिमोटिवेट होता हूँ ना, मैं ये गाना हमेशा सुनता हूँ। बट मैं अभी सुनाऊंगा तुमको दूसरा। PRX पाजी स्ट्रीम देखना एक बार। एक सेकंड फोन साइड में रख दिया था। Crazy comeback after what happened on map 1. You gotta give it to PRX to keep their composure. Yeah, it seemed very clear that they made madness in this game. Map 1, it felt like it got stolen away from them, losing pistols, losing to a Euro. मैं देख रहा हूँ बहुत ठीक है, मैं देख रहा हूँ। Map strong first half and बढ़िया था यार भाई, एक बार दोबारा। Yeah, I mean this could have literally just been a 2-0 for PRX. Like they're playing insane right now. I mean, like everybody's hitting shots. Like they're not scared to fight into liquid. And you were very close on stage. Was the usage of the sage what you expected? वो लिख देना चूते की जगह पापा लिख दे, पापा है ये।
trying to like stop the Neon because Neons love to like take A space, but it actually was just like bunkering into the B site, and PRX just doing what they do best. They're just fighting, getting in your face. They're not scared to make these like crazy plays against you. Yeah, we did go back to beta a little bit, or the first time PRX ran this comp, drawing the heart up there. Oh my God. But yeah, playing some of those fun boost angles where you can see the rotates coming in, the players from shop. We also had Divide boosting up on his wall in mid on the defensive side with the operator in his hands. I think overall he just played a phenomenal game, even outside of the stage. भाई 10 बंदों ने मुझे रिपोर्ट किया, पता है इस बात पे आज तक बैन नहीं हुआ मैं। ये हो जाएगा बैन करना बता रहा हूँ। Selling drugs and other illegal goods. And this round especially, it's the end of the first half, it's what gives them the advantage. Even though they'd lost a player early, he's there for the res and then just fearlessly taking every single fight. And you can see maybe a degree of uncomfortability from Liquid, right? They couldn't find an answer to this. Yeah, I think Liquid were approaching it really wrong. Like they noticed that they were fighting A every round, but like you gotta take some mid control. You have to like make the rotates happen because they start on mid. PRX very heavy. And Store दिखा मेरे store दिखा. Fighting into them right away, which is exactly what they want. Like it's just gonna be worse. Career दिखाइए अपना career दिखाइए. Try to make them like tax like a lot of util out. Like it just. भाई बना कैसे हुआ था Diamond 1 में? लाल है. Yeah, I think we also ended up seeing पूरा ठेला लाल है. just winning out the important rounds. I'm thinking ये गाना round सुनो. 15, which is their bonus. They were in an aggro. देखा तूने इसको कैसे गाड़ी भाई क्या करे गंदा सा इन्होंने राइट में ले रही है ये कब हो गया? ऐसे ही तो होता है ये आज अपडेट आया ना, ये ऐसे छोटे छोटे कर दिए इन्होंने बैनर्स। बढ़िया गाना है। राइट में क्यों लेके आ रही हो? अभी टकरा जाते ना अपन। वही ना, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या बिल्कुल भी? ट्रैफिक रूल ना पता हो तो ज्यादा ज्ञान मत। लेफ्ट का इंडिकेटर मैंने इसलिए दिया कि तुम लेफ्ट से चली जाओ और मैं राइट को जा रही हूँ। सिंपल। वाह भैया, ये हाल है। हैं? A few moments later. अच्छा, मैं ऑफिस में जाऊँगा। भाई अब ये दुनिया हमारे लिए सेफ नहीं है भाई। हम लड़कों को बाहर नहीं निकलना चाहिए घर से बिल्कुल भी नहीं भाई। अपनी जान प्यारी है तो घर पे रहो। इतने सारे ट्रैफिक रूल्स आ रहे हैं रोज रोज, हमें हमारे ऑफिस में अभी ना कैंपस प्लेसमेंट होने वाली है अगले साल शुरू। नए ऑफिस में कैंपस प्लेसमेंट तो घर पे ही बैठो, वही अच्छा है हमारे लिए। हाँ। अच्छा ऑफिस के देखा तूने इसको? ऑफिस के अंदर लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट में ले रही है। अबे यार तो समझ लेना। कंपनी यार, कंपनी कैंपस वो कर रही है। अरे तो पाजी आप हैगा सीजीसी जो पढ़दा है कोई तेरा? नहीं पाजी, आप कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू नहीं होते क्या? यस पाजी, बीच में रिसेशन आ गया था ना, तो अभी दोबारा से कैंपस प्लेसमेंट शुरू होने वाली है अगले से। ओह ऐसा। कॉलेजों में अगर कोई पढ़ता है इस टाइम फाइनल ईयर में तो उनके चांसेस है। लोरो तो जोरो है पर वो बेंगलोर नहीं है। अरे पर ऐसे कॉलेजों में जाते हैं ना, सीयू जैसे। भाई हग रहा हूँ। सीयू में तो जाएंगे पक्का। सीयू से अगर कोई हुआ तो सीयू के चांसेस बहुत ज्यादा। अगर थोड़ा अच्छा खासा हुआ तो मैं थोड़ा बोल भी दूंगा। ये बंदा थोड़ा इसका देख लेना एक बार, ऐसा समझ रहा हूँ। क्योंकि अभी हमारा ना सेटिंग प्लान, मतलब हम ऐसे बैठे रहते थे ना खुले कहीं भी किसी बेंच पे भी। अभी थोड़ा मैनेज करके एक साइड बिठा दिया हमें, बीच की पूरी रो खाली करवा दी कैंपस प्लेसमेंट के जो बच्चे हैं उनके लिए। मेरी जगह चेंज हो गई है, कितनी प्यारी जगह थी, सारा दिन फोन चला। अभी भी ठीक ही है पर वो उतना कंफर्ट नहीं है, अभी थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा। कहाँ गया? What's the issues and gaps we have in the team? What do we need to work on? Because watching from the different perspective is always good. I was a bit stressed when they were playing, especially from time to time. वर्क फ्रॉम लूंगा भाजी, तभी तो ठीक नहीं है। अगर ठीक होगा तो चला जाऊंगा।
Team Liquid, they are running a 6-man roster. अभी सिट्राजिन ली थी सुबह, ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, अभी दोबारा नहीं लूँगा यार। मतलब हफ्ते में खाली काफी रहती है। अबे नहीं, लो। ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। Challengers, I face him in scrims. Like he is a very aggressive. He's a very मैं good दवाइयाँ खाता ही नहीं player. हूँ। And this makes me wonder. They're going to Lotus. They अरे the Deadlock Cypher Matejo. बड़ा हार रहा है, मैं बंद कर रहा Penny's coming in, so I'm वो wondering start हो if गया he's मैच going बस to होने duelist, वाला। and maybe Camo's going to go on to like maybe a chamber. Yeah, could be possible. आके बैठ गए That's what they were doing, right? Penny, Jet, Chamber of Camo. The other world we could live in is a double duelist look. You know, I mean, we've seen like teams like T1 playing the ISO and things like that, but it kind of seems to me like the last comp TL was playing on this map was off the wall and strange, and we could maybe just see it flip the complete other direction in terms of aggro. And is that the best use of Penny? You think you have to just stick him on a duelist in this sort of scenario? I mean, he's had a little bit of off rolls on other teams like his flex, but to be honest, like, Penny के stats भी दिखा रहे, Penny वापस है क्या? I think he's gonna get a lot of impact with it, and if they go अरे मैं Discord आ गया। PRX, they like to play the किसकी जगह बहुत गंदा है। so अबे अब किसकी जगह खेल रहा है? seeing very high like Serial की high जगह। aggressiveness like matchup. It's gonna be awesome to watch. It's also just such a wild world we're living in right now, where Team Liquid पिछले मैच में पैनी खेला था, मैं बताता रहा हूँ, सीरियल बैठा हुआ था। नहीं अभी जब कल मैच हुआ था जो वो था एलिमिनेशन में वो हाँ पहले मैच पे पैनी खेला था। पहले नहीं दूसरे वाला अभी जो कल हुआ था, कल वाले में ये कल नहीं खेला। हाँ कल की बात कर रहा हूँ। नहीं बाबू कल नहीं खेला पैनी, कल सीरियल खेला शायद। यार मेरे ख्याल से पैनी खेला यार, पैनी तो मेन रोलिस्ट था। अरे नहीं कल नहीं खेला, कल नहीं खेला, तभी तो बोल रहे थे कि आउट कल इसको पूछ रहे हैं नेट आउट विद आउट 6 मैन ये वो। With Lohan even saying they didn't even कल नहीं खेला। That's it. Nats and Penny have scrimmed together one time. Yeah, and was it a Lotus map? I don't खेला think यार so. पाजी There's कल। a very real world where this is one of the आइस बॉक्स में पैनी खेला है, सनसेट में सीरियल खेला है। अच्छा वो मैप के हिसाब से बिठा रहे हैं मैन के लड़े। like that should be like मैन के लड़े। वो जेट बहुत अच्छी खेलता ना पैनी। And he's been on the जेट वाले मैप master को उसको बुला stage लेते before, Demon One है क्या? Is gonna get to this guy way back in the day with version 1, but now for everything for his new team to try and advance. Yeah, and of course, if you're Serial, you're it's a helpless moment now. You know, you've done what you can do. Yes, सुनो पाजी आप। He's gonna have to watch the rest behind the scenes. And for Nats too, we've spoken Yeah. him so highly. And after that performance on Sunset, you're familiar with the Nats speeches. We need a Nats speech more than ever. Yeah, I mean Nats. ये मेरा बड़ा भाई है। Slow start. To be honest, I don't think it was fully his fault. Like सुनाया हुआ क्या आपने पहले एक सेकंड? He couldn't really. हाँ सुनाया है मैंने। He's known for like these hyper aggro like timings. Like he really needs to do this in this Lotus for Liquid to be like the team that everybody kind of knows them as, because that's really like what Nats is known for. Yeah, there's so much pressure on him individually to find those lurks, as you're saying. Also to call the map, also to bring in a player that's been sitting out the last 2 maps. That's the other thing. Penny hasn't been with he's been with the team between games, but hasn't been with them on stage. He also hasn't been, you know, actually playing, so he's got to stay warm. मैच चालू हो गया क्या? हाँ और क्या? केमो वे खेल रहा। It's really interesting. It's not the like worst thing in the world just because of the Paper X comp. It's kind of like almost a mirror matchup, but it's just like what's their plan with this? Like I feel like does the Waylay, does the Rays work well together? Like are they just gonna do like heavy executes? Like I'm very curious to see how they play around this, especially since they're starting attack. I think versus the Vise in particular, you have 3 different agents that can jump past the wall, jump past the thorns, right, and overwhelm the site. Especially Seaside, I feel like is going to be an area they're going to try to exploit with Yeoman teleports, with Penny and Camo jumping up and over the wall. You can even have a guy like Patty like bait out the wall, get through it, and then have 3 other guys jump over it. Yeah, I think that's the big thing with this comp, right? Like I think what you want to do is kind of like bait all this पाजी ये तलहन क्यों चला दिया यार आपने? as little as possible. Like if you get into a close fight and you can save a lot of एक this, दो गाने अच्छे लगते हैं, बट इसके तो सुन लेता हूँ against the Paper X comp. And for Paper X, they lost map 1 narrowly. Map 2, they managed to bring it back. Surely this is theirs to lose now. Yeah, I mean, they've got to win this first Waylay, I think, of the tournament as well in a do-or-die match, so it's going to be nuts. And there's only 2 people that are going to be more excited than us, of course. One last time today, Achilles and Paperthin. Thank you, Yinsu. Here we go. A Waylay at long last seen here at Masters Toronto. The first time, maybe even the last. The Team Liquid
calling Penny back into the roster, back onto the stage, trusting in this player, trusting in his previous experiences on a Masters stage to be able to close out this series versus PRX. Another interesting thing for Team Liquid here is the tremendous amount of mobility they're going to have. Are they going to be able to have that coordinated well enough? With bringing Penny back in, the desk was talking about how little practice they've been able to put together with him and Nats in the same lineup. They have so much ability to maneuver on this map with the Waylay, with the Raze, with the Omen. Some really good options, but going up against a team that thrives. Quick clear of the cam there as we get into the map. पहले मैच में जो वो एजलिंग कर रहा था उसने हक दिया था ना बीवीएल के सामने to find the opening kill. Orb available here for the take. ये PRX तो बता रहा हूँ टीट है तुम मानते ही नहीं मैं सेंटिनल वाले बड़े लकी हैं बहुत सारी के भाई लकी क्या अच्छा खेले जीते हैं मैच पाजी पर यार इतनी अच्छी किस्मत मैच दोनों इनएक्सपीरियंस टीम सामने आई उनके पाजी तो ये टीएच का एक्सपीरियंस नहीं था पाजी निकाला ना उसी इनएक्सपीरियंस टीम ने टीएच को बाहर पाजी बट पाजी टीएच जी आपकी बातें भी चुताकड़ी होती हैं रहने दो अजी तो बढ़िया खेले जीते आपको नहीं लगता था कि सेंटिनल का जेंजी के साथ पड़ता तो क्या ही मजा आ जाता तो पाजी तो हाँ बड़ी क्रेजी मैच होता भाई ठीक है आई एग्री ओ भाई ब्लाइंड यार पाजी क्रेजी मैच नहीं होता सच बोलो हार जाती भाई ठीक है पर किस्मत देख रहे हो मैं तो चाहता था जब पीआरएक्स जेंजी के साथ लगे दूसरा मैच में मतलब फिर उनको चाइनीज टीम मिली है किस्मत तो है वो चलो लकी तो क्या ही बोल रहे हो गया मैच तो खुद थोड़ी चूज कर रहे बैठ के जो मिला in the pillars area outside of B. They just overwhelm Nats. No hope for him there. The great paranoia from भाई 4 सेकंड को बोलो ओडी निकाल ले तो अच्छा की तरह something with the perfect timing. The haunt reveal onto Patty Tech. भाई वो पहले पिक अगर ऑपोजिट साइड चला जाता ना जो कुछ पुश किए हम 3 मैन फिर से B से वही पे चुदाकड़ हो जाता है इनका इस बार वो यही सोच रहा है कि इस बार फिर से सेम करेंगे Oh my. Yeah, entry coming through. Camo does manage to get on top of Patman to find that elimination, but it's just been a firing squad. Opened up here from PRX. In the corner here is Nats. Manages to make it a little bit more costly. 3 players surviving. PRX close out the anti-eco and move up 2-0. That's a-okay though for PRX. You're able to keep over the 3 big guns that you'd really like to. Guardians and the Bulldog. Outside of that, let's see what they want to buy up into. Patman holding the line nicely. Something swinging through the door. Like the proactivity again from the Yoru. He's already found a couple opportunistic flanks in the pistol and the follow-up for his team. ये क्या कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ प्लेऑफ्स में ना ऐसे सेंट्रल को मिले तगड़ी टीम है जो गुद्दी लाल हो जाए इनके तो मजा आ जाए पाजी जो टीम में पहुंची है सारी अच्छी हैं अब कैसे फटी सी रहती है मैं देखता हूँ पाजी आपको नहीं पाजी सेंट्रल हेटर हो ना तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको बाहर निकलवाऊं पाजी अपनी टीम को पहुंचवा लो पहले दुआ कर लो अपनी टीम के लिए फिलहाल तो पाजी मेरी तो पहले पहुंची हुई है फनाटिक PRX पंचाले अरे ये तो फन के लिए देखता हूँ ना इनको जी बिल्कुल पाजी जिनको दिल से सपोर्ट होता ना पाजी उनको जीतने हारने से फर्क नहीं पड़ता उनकी वो वाली टीम को बाकी जो एक सीरीज ओ वाइड पिक फिर से भाई क्या बकचोदी करिए देखा पीठ दिखा के चल रहा था भाई कम हो क्या बचा है भाई ये पैनिक क्लच कर देगा राउंड जिंक्स करूंगा अब मैं भी ये पैनी एन ने क्या पता है इंपोर्ट है एक पिक मिलने की देर है एक पिक मिल जाए ये फोड़ेंगे मैच नहीं फोड़ा अबे सामने देख बड़वे ओए हगदीस भाई कम कर देगा 1v2 इजी ये ले कम होगा क्लच ये ले बस भाई जिंक्स ही करता रहूंगा अभी हर राउंड देख तू देखो मैं सुपर पावर दिखाऊं अपनी करो शेर कहते हो पाजी नैशी नहीं हूं मैं नैशी तरीका ये देख भाई क्या उछल रहा था डिवाइस मैच पीठ दिखा के उछलने लग गया
ओ भाई भाई मैं तो आपके इमोशंस के साथ बढ़िया खेल जाता हूँ भाई। भाई नैशी तो आप नैशी ऐसी कुछ नहीं। नैशी हो भाजी जब मैं बोल देता हूँ ना भाजी कि आप भागोगे अभी, तो आपके थोड़ा ना सबकॉन्शियस में ऐसा बैठ जाता है कि हाँ अब इसने बोला अब तो भाग भाजी ऐसा नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता हूँ कि अब इसने बोला अब तो बिल्कुल नहीं, अब मैं मारूंगा और इसके आगे बचूंगा, पर तभी हग्गा हो जाता है, समझ रहे हो? पर पाजी मैं कोड़े को कहता हूँ अब तो ये हागेगा और वो क्लच करता है, पर आप नहीं कर पाते, समझ रहे हो? पाजी आप गूंगे रहा करो। नहीं पाजी आपकी मेंटालिटी में फर्क है थोड़ा। अच्छा आदमी हो ना पाजी, मैं सुनता हूँ लोगों की। वो बेशर्म है पूरा मेरी तरफ। बस पाजी कुछ दिन और ये ग्रेटेस्ट कमबैक होगा। यस सर। अगले महीने आईओ सीरियस 6.5 बुद्धि लाल कर दूंगा मेरी। बुद्धि लाल करो पाजी। अब आप इमोर्टल जाओगे, मैं स्टैंडर्ड जाऊंगा। अच्छा सारे डायमंड तक वो खींच के लाए हैं हम। कौन गया? सीरियस चला ही गया क्या? किक कर दिया उस तोले को। आराम ज्यादा है, किक कर दिया होगा। वही क्या एंगल है भाई? ओए ये क्या ऐसा लग रहा था हाथ पे चल रहा उसके। All of Team Liquid is pushed up, ready to try to just rush forward into the side. Saturation not going to hit. Goes up the nose. Finds the punish before the refract can come through. Penalty entry still on top of Jing. Utilizes the stinger. और सेकंड भाई ले गए भाई, आए अंदर किल लेके भाग गए। Swiftly dispatches him. Team Liquid now scrambling. वेले कौन तो भाई नहीं है, बेंच मरने के लिए जाती है वेले तो अंदर। काम ही वही है ना उसका। अबे पर जैसे रेज रूज हो गए जाते वो भी अंदर है मैच सैचल सुचल करके, पर थोड़ा तमीज में खेलते हैं। अरे उनकी सैचल के करते ही वो गन आ जाती है ना हाथ में, उसकी गन ही नहीं आती हाथ में वेले की। वेले तो सिर्फ यूटिल के साथ एजेंट है, यूटिल नहीं है तो वेले डटी है, आके थप्पड़ ही खाएगी सीधे अगर थोड़ा एम रिएक्शन अच्छा है तो। ये नहीं कमलू की तरह 60 FPS पे बैठ के वैन चो घुमाते ही रह जाए। जेन्युइन सही बात है वैन चो। जी जी कुछ तो बात है भाई, कोई तो चीज है भाई, वो समथिंग है भाई, समथिंग है भाई, समथिंग। I can see the comms. You can see the way they're maneuvering on the map. It is so much cleaner, so much crisper than what we saw on Split. है कोई फायदा? यूटिल लगी नहीं उसको, जब तक उसका बच्चा काटा उसको तो उसने भर दिया। गैको चाहिए था भाई, मानते नहीं लोग, पर गैको चाहिए था। गैको या ब्रीच। अबे इस लॉबी में मैच हो गैको के लौड़ा कुछ फायदा नहीं, मैच दिखने से पहले तोड़ते हैं उसका बच्चा। देख वेले की पहली डैश और गैको का बच्चा पैनिक करेगा सामने, या फिर रोमन ब्लाइंड सबसे बेस्ट करता है। तो क्रेजी है ये क्लोज एंगल जिंग भाई क्रेजी हो गए। अल्ट अरे मेरे को लगा अल्ट भरेगा भाई जिंगू, एक बंदा दिखने की दे रहा है, मेरे को लग रहा है अल्ट खोल देगा ये। कांटेक्ट पे मारेगा। हां मेरे को वही दिख रहा है, एक मारेगा ये ले मैच। ओ दो खा गया, पता था कांटेक्ट मैं बोल रहा अल्ट दिखते ही खोलेगा। टीरेक्स रोजा नहीं वाला, लेट्स गो। Continue on their merry way. देखो भाई ऐसा सीन है कि लिक्विड का 0-13 हो ही नहीं सकता भाई, कभी नहीं, समझ रहे भाई? भाई उनने मिस कर दिया वो वाला सैचल मिस कर दिया था ना, पहला वाला ऊपर चढ़ना था, नीचे गिर गया, किल फिर भी लेके आया। माइंड ब्रेक भाई खुश हो रहे असिस्टेंट कोच बन के। माइंड फ्रीक देख रहा है कौन हटता है उसकी जगह लो में। ओह शॉट यार बैटमैन। भाई मैं बताऊं आधा क्रेडिट रिकॉन फैंटम का है और कोई फैंटम नहीं लगती ऐसे।
ओ भाई कॉर्नर बैठा था कॉर्नर। अब नहीं, अब पता है, अब फील्डिंग सेट। रुक जा। He was thinking about it. Up on top of the tree, finds one. Penny will be able to trade it out. बम 4v2. मर गया क्या जिंग? मर गया And a singer, and all that the नहीं bot confirms is yes. कहाँ मर गया? They are still on the other मर side तो of the गया। smoke. जिंग तो मर गया। मैं भी तो ये बोला हाँ मर गया। Try to get an angle. Nats cleans up two. वो नेट तो ले गया। नेट्स भाई के पास नहीं आ रहे भाई, देख रहे हो मैच पीछे भाग गए। आ जा मैच। Well, it is Nats. यार हॉल्ट से कि 3 को मिल गया यार इसको। नेट्स क्लच कर लेगा अभी। ना नहीं हो रहा। Something slows down the approach, waiting for Divide to चीकी get a little भोसड़ी का। closer. नहीं हो रहा। वो मैच 40 HP है, 48 HP है। Around over towards drop, checks in on that side. Nothing going to be spotted. Has the cam, but doesn't want to set it up. सोलो ना जाए तो नहीं हो रहा क्लच। साथ में जाएंगे वो बेंच सोलो ही जा रहा। One of the greats. Never make it onto an international stage, looking to try to get this मार देगा clutch इसको। to keep his team in this series, in this बैक map. साइड ये पता चल गया। Swings in. Oh, चला। shot. आदत ने पूरी साइट ही क्लियर कर ली ना जाके। PRX have the counter curse, and they have a 6. अरे देख रहे हो बाजी, मेरे को समझ में आ रही है चीजें। वाओ भाई। It's just the PRX way there. Just fight for control समझ रहा of the ना? front. बस यही है, ऐसे ही है हो रहा। This opener और from तू लोरा। Belter. Jing keeps pressing, uses that smoke to his advantage. He's very close आप to तो another लोडी हो भाई। showstopper. और आप लैंडी हो। आप आर्केड हो, ये ले, आप दे काउंटर। आप अम्बती राइडू हो, ले। नहीं भाई, वो तो तेरा नाम है भाई, आम टट्टी राइडू। इसने खुद ही नाम याद दिला दिया भाई। Players on their feet. अरे बोलो भाई, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता है भाई, फिर तो बड़े गए शर्मा। अजी आपसे ज्यादा थोड़ी हूँ। पाजी कोई आम टट्टी राइडू बोल दे तो बंदा छत से कूद जाए भाई। पाजी आम टट्टी राइडू आप हो, कूदो। आप भाई, आपका नाम है भाजी। मेरा नाम पाजी, अरे आज स्ट्रीम कर रहे हैं, मैं रिवील नहीं करूंगा। बोल दो पाजी, बोल दो। को नहीं पता ना आम टट्टी राइडू, कमलू को नहीं पता ना क्या है। नो क्रिकेट रेफरेंसेस पाजी। थाला पता है मुझे बस एक। थाला वाला। जो थाल और पाजी देखो, थाला को आपको पता ही है ना कैसा है, और जो थाला की चाटता हो वो बाती राइडू है। ओह अच्छे। काफी बुरा लगा आप दोनों के लिए एक दूसरे को चाट। अजी ये आम टट्टी राइडू है। अजी मेरे को आप दोनों के लिए बुरा लग रहा है। लेट्स गो पाजी। This is going to be a titanic clash. Ults here on the side. ये ले बैठ के Going to be sent out the blind connecting. अरे मैच। अरे पैर में भोसड़ी का 1 HP में मार ही है। The nightfall going forward gets the tag on to Divide. भाई स्पैक्टर दे। ओ भाई। नाइस पहला राउंड आ गया, दरवाजा खोल ले यार, बहन चूत। आ गया पहला राउंड आ गया। Trying to play it slow, play it close. Finds the first. आ गया पहला राउंड आ गया। Something now has arrived. Cage blocks. Finds the आ गया। ओ यार। पहला राउंड आ गया बोला मैंने। Team Liquid will at long last persevere. They get themselves on the board. भाई 4 सेकंड ने गलती कर दी। बहुत बेकार है भाई। हाँ वो गलती थी 4 सेकंड की। क्यों जाना दरवाजे से? दवाई तो मर ही गया था वो, अच्छा खासा एक खा के गया था। Forsaken could win that battle against Kiko, probably goes the other way. But now you're going to be facing a similar situation here as Team Liquid with a ton of ults. You heard it right there from the coach. We're back in the game. Could just be that first step. First of many. Camo at the ready, going to be sending out the conversion. Immediately pushing forward into the smoke. Nothing to be spotted. How long does he want to stick around? ओ भाई भाई ये क्या बेवकूफी थी भाई समथिंग भाई की। उसको पता था स्मोक में ये गई। अरे क्यों करना है स्पैम है? ओ बेंच किंग भाई भाई फिर से 2 मारे बेंच चोद।
भाई ऐसे ही है ना भाई, भाई दूसरी पर पाजी दो टीरेक्स रोजा नहीं हुआ इस बार भी। Not looking to give any breathing room here to Team Liquid. They establish a lead at the half. ये बुरा लग रहा होगा टीरेक्स पाजी, सॉरी यार। अरे मेरे को नहीं लगा बुरा भाई। इसका नाम कहाँ जोड़ रहा, बढ़िया बढ़िया लोग भाई, ये दोनों मार दिए मैच बढ़िया थे। अरे अल्ट में थे ना, दोनों लो थे। पर पड़ा भी बहुत प्यारा, दोनों कवर ही हो गए। अल्ट बहुत बढ़िया थी भाई, टाइमिंग। किसी को लगाओ, किसी को लगाओ। पति ओडिन आ गया, भाई पेनी लो, पेटेक लो, कैमल लो। अरे 4 सेकंड यार, समथिंग है वो। Oh sorry, something, my bad. The tripwire to account for this lurk. जो सॉरी बोले वो गए। Pause. Forsaken still gets a kill. Spammed out. पाजी आपने भी तो सॉरी बोला बे। मैंने कब बोला? जो सॉरी बोले वो गए। बाद ही चालू होगा ना भाई, अब तूने बोला भाई। पाजी मैं अपनी बीवी के लिए गया हूँ। के लिए? बीवी के लिए, बीवी के लिए। तो वही तो उसको लगता है। उसला तो रांड है। ओ सॉरी। उसला भाई मैंने रहता यार। नहीं पाजी मैंने कर दिया, बेटा भी तो मेरा ही है। भाई स्ट्रीम चालू है ना? नहीं है, चलो 1 सेकंड। You want to brawl? You want to run double duelist against PRX? They're down. Well, clearly not getting the memo on that entry. कोई नहीं देख रहा था। भाई ओडिन नहीं है भाई। तीन खाया भाई वो ओडिन से अंदर। Finds the first kill, but Forsaken has just already massacred the entire rest of his team. Spikes down. Cover going out. Pick up the Odin, try to counter spam out, but they're more than ready for that. Liquid can just not catch a break. Would love to try to save the weapon, but has to suspect he's going to be on all sides. Okay, nice. We'll confirm his position. TP in the smoke, pushes out. He will get taken down, makes a solid go of it to be able to find the second elimination, but it is far from a round win. Just in cruise control. Forsaken with his Odin. भाई ये देख 4 सेकंड, 1 Absolutely ridiculous. Oh my word. 2 3। Nas just walks into it. तो फिर क्या ये ओमन अकेला ही 3 जने मार गया? हाँ। Forsaken mow him down. मतलब अपना नहीं, उनका वो टीएल वाला। अल्ट मारा पीछे। अच्छा। अल्ट मारा जा, रोटेट करके आया, याद नहीं। अल्ट मारा। Hasn't gotten much to do. 6 हुक्म के छक्के बन के घूम रहे हैं उनके टॉप पे। No spot out there. Fract used from Camo. Checking to see if Patman was लेट्स भाई परसों आए या चलेंगे घर। actually stacking behind the wall. Top of the door. Divide able to collect. 2 players trying to stay tucked into this side of the game, but it's not going to last very long. बढ़ दिए भाई, जीजी हो गया। ओ भाई व्हाट अ फ्लैश। Camo, the only one left जीजी alive. भाई। Nail the targets. देखो भाई ऐसा ही है भाई, 4 सेकंड का चाहिए एम एंड जो समथिंग की मूवमेंट और जिंग का रेल गेम कंप्लीट As प्लेयर। we go into the last round of this half. This is absolutely just a massacre. They are क्या swarming. मारा भाई, मजा आ गया। दवाई मोटा बैंड का लोड़ा। 4 खाया, दवाई 4 मारे। From a bunch of different angles. चलो पाजी, सेंटिनल सी यू इन प्लेऑफ्स। Whenever they have the opportunity. पहुंच गया आप किस तरह Trying to let them know. अरे देख ले गिद्दा से ऐसे जाते हैं। पाजी अभी ऐसी बाहर भी चल जाते हैं, अभी काउंटर हो जाते तो। Couple ultimates dangerously. पहले मैच में हो गए थे काउंटर, बच गए दूसरे में। Look to try to get themselves at least a 10 and 2. 4 सेकंड में ओडिन मार के मुंह फाड़ दिया। Forsaken backpedaling. Tries to cycle another smoke. It's a tiny little gap. कम्मो की यूटिलिटी खत्म हो जाती है, साला एक बार डैश मार दो। Still comes away with the kill. Convergent paths. अल्ट आया, अभी अल्ट मार देगा ऊपर ये। जाट भर का अल्ट है साले का।
Waits for a little bit longer now, sends it out. 1 by 1 ये ले dodge कर दिया सबने. मार दो. Oh भाई. ये ले दवाई क्लच कर रहा है. Nats is able to find one, but something cleans it up. Oh bench उसके मुंडी ऊपर है आगे बीस. आगे डूई क्या दे? Full HP, looking for the headshot. Spots out the buy, the flash, fly. भागता ही गया. Escorts them forward. 11 to 1. मोटा क्या सोचना भाई? PRX. Oh भाई ट्रैक भाई ट्रैक ऐशिया. भाई ये अंगूठा कौन दिखाता भाई टट्टी बंदा? मेरे को इंटरव्यू सुनना आज. और सेकंड का. एलेक्स तो खुश हो गया होगा भाई आज. Otherwise we will be seeing PRX in the playoffs. We'll take a quick break and see on the other side of halftime. एलेक्स भाई को दिखा दो यार एक बार. ये ले भाई. भाई PRX ऐसे ही नाम भूल गया उसका. We're now back. फिर जिंक आया फिर बहुत तगड़ी हो गई थी टीम उसके बाद. जिंक तो भाई बावड़ा हो रखा होता था भाई. अब तो फिर थोड़ा दब के रहता है. पहले सिर्फ 4 सेकंड ही डोलिस था. फिर इन्होंने जिंक लिया था. फिर जिंक और बैंक आए और ये बाकी सारे थे. माइंड स्प्रिंग और दवाई. फिर बैंक आई को हटाया. फिर समथिंग आया. फिर समथिंग के आने के बाद तो भाई जो 2023 सीजन में कैंड फाड़ दी ना सबकी मजा आ गया. फिर उसके बाद वो गया क्या नाम है जिंग गया अपने आर्मी वाली ड्यूटीज पे. तब इन्होंने मोनियट लिया. वो भी सीजन बढ़िया खेल लिया था ऑलमोस्ट. मोनियट बढ़िया खेलता था भाई. पर मोनियट के बाद से बेंच हम कोई भी बेंच किसी भी उस पर डाल देते. पहले नहीं तो उनका कंट्रोलर फिक्स रहता था. अब बेंच कोई भी कुछ भी खेल रहा है. बेंच जिंग को बेंच वो ओमन दे रहे हैं मैच. Just those players on stage, just Nats, who's been a tremendous leader this year. You can hear it in his voice comms. But here against PRX, this is a team that is flying. आज जैसे जिंक को ज्यादा दिखा रहे हैं ना. All the momentum behind them. मार रहा तो दिखाएंगे जो मारता. नहीं वैसे पाजी फर्स्ट डे भी तो मारा ही था बट इतना नहीं इसको लाइमलाइट. नहीं पाजी आपको पता नहीं था कौन है जी. नहीं फिर जब भी तो बोल रहा हूँ. मेरे को आज पहली बार दिखा है पाजी. वही बोल रहा हूँ ना. जिंगस दिखा ही पहली बार. 5 स्टार है पाजी. 5 स्टार. सबको लाइट देनी पड़ती है उनको एक दिन. Trip right at the front door. Orb grabbed. PRX just barreling in. चलो भाई अब इस बार ना EMA की बेइज्जती करेंगे. पिछली बार EMA वालों ने बहुत बेइज्जती करी थी. 1 टीम रीजन बोल. इस बार ये 1 टीम रीजन है भाई. कीको What the fuck? कीको भाई what the fuck? एस ले लिया उसका. एस छोड़ बेंच राउंड मिल गया. खुश हो गए. Their second round win. God, that was nasty. Just gets a little bit of help from some friends. Oh, by a shot. That one is off of audio. That is crazy. 4 HP here. You know, the PRX players are busy trying to clear out the encroaching players, and they never deal with them. Yeah, that's. साले नु भरोसा ही नहीं हुई जानदा कि उन्होंने क्लच कर लेता. वाह यार. Though for PRX. Oh, certainly a chance to do some damage. Forward tap, forward, trying to see if they get any response here. Cam situated up but above from Nats. Checking for some of that Cypher util. Just trying to clear out whatever they can, but Camera's going to be in a position where you're going to need a deeper smoke. Badges की देखियो util खत्म हो रखी है. To clear it safely. 2-2-1. इसकी समथिंग खरीद है. नहीं वेलेगी मैं बाय है उसका. कैमो की बेंच. ये ले बेंच पेनी भाई. Rewarded with a kill. The peak from Pat attack absolutely monstrous. उठे. Able to find one. अगले राउंड आना साला. Getting the full deep bounce that they were looking for. Nice. Guardian will certainly suffice. मारा. मैं कह रहा हूँ पैनी भाई सेंटिनल तो Liquid
अब बेंच अटैक पे जब थे बेचारों को घर में घुस के था स्पॉन में चढ़ के तो मार रहे थे पैसे निकलने कहा दिए गाना क्या मस्त था भाई पहले राउंड से मैच यही कर रहे थे मैच पहला राउंड बी पुश किया था मैच ऐसा लग रहा था अभी 2 राउंड पहले पुश किया है उन्होंने बी खत्म भी कर दिया मैच Judge in hand here for Jing. Just going to look for an explosive entry. Tripwire cleared. Player going to be noted there. And upper Panatek going to be forced away. Jing sitting over towards door. Boombot does get some damage, but how are you meant to push it? Jing ही कह दे. They all fall to the wayside as a bonus conversion. बोले अगले राउंड आउट सालो. On the cards. Team Liquid. देखते कैसे जाता दवाई वो सड़ी का किल लेने. और लगा बेंच ये के 4 सेकंड में बच गए पीछे से आ गया बेंच ये ले मार चो नट भाई का नट भाई की कास दी नेट्स भाई अब अगले सीजन अगले सीजन वेट आ जाएंगे क्वालीफाई हो गए है ही नहीं ये में अच्छी टीम भी नहीं यही आएंगे दोबारा चौथी टीम अगली बारी बीवीएल आ जाएगी और कौन सी टीम बची है इनके अच्छी है सर नवी भी अच्छा खेले थे इस बार अरे विटैलिटी को भूल ही गया मैं देखो पता विटैलिटी को लोअर ब्रैकेट में नवी ने मार कर दिया डर के भाई काल just the marshal in half armor here for Panatek. Shots are going to have to be insane but instantly Nats भाई ज्यादा खुशी से आगे आ रहे हैं ये ले बैन की तो ये ले बैन getting ready to come through over here at B main. Penny getting the read, turns, finds it, clears it out. यूसी हो गया फाइनली PRX रोजा भाई 2-2 मार रहा था बेंचो तो अब जाके हुआ है एक हरल्ट पे 2-2 भरे भाई इस आदमी ने देखो भाई एम डुअल 4 सेकंड भाई लेट्स गो Paranoia expended. Jing wrapping around the back, looking to try to get this kill. Hasn't cleared him. Notes him now. Finds a shot. Another paint shell going to be built up. Ooh, बच गया. Note him somehow. नेट भी है 36 एचपी ओ बैन देख लिया मत कर ओ बच गया अरे नहीं जाना बैटरी टैग भाई बैटरी टैग Oh boy, this one I think a 3v5 at some point for Team Liquid. जाना बनता ही नहीं था नेट पड़ा था वहीं से मारता हट जाता हूं Yeah, off the rip there. They're still able to fight back. Goodness, something. What a flick. Or Forsaken, excuse me. Unbelievable. क्या मूवी 2 ले गया ना वहां पे जल्दी खत्म करो यार रेडी टू शिप आ गया भाई लेट्स गो चलो चलो जल्दी जी तो पैन दी लाना और नाच रहे हैं वो सड़ी एक पाजी इमेजिन यहाँ से कमबैक हो जाए लेट्स भाई 4-5 मार दें पाजी फैनेटिक तोड़ी है ओ बेंच चुके ले भाई उठ गया उठ जाग गया भाई वो सड़ी के दूसरा है नहीं वो तो काइको ने किया था ना नहीं इसी का था F1 साले पाजी अब तो मानते हो ना काली जुबान कितनी है इसकी मैं तो पहले भी बोलता था 12 राउंड तक जिंक्स किया साले तब जाके PRX जीती है अब मैं फिर उल्टा जिंक्स ही कर रहा हूँ ना चलो भाई ये राउंड भी लिक्विड ही जीतेगी लेट्स गो पाजी अब तो ये तो वही है सेव है मेरे को लग रहा है निकाल देंगे मैच तृप्ति Brothers in arms here, it would seem. Jing bouncing forward. Penny not. आर्टिकल दिया ना नहीं करो उनमें Sends it with a showstopper. हग दिया वो भी वो हग दिया पैंच गए लमाओ डेड ये बच गए हेड पे नहीं कहते will eventually be able to find the target. Patman going to be taken down. भाई 3 गन गिरवा दी इन्होंने इको में और एक अल्ट भी वेस्ट करा दी Not
getting the victory. 6 more chances. और crucial ult waste कराया भाई. Are building momentum, and Alex has had enough. A timeout's going to be called. Yep, this is absolutely the right call here by Alex. Alex I get a fan चुप करके मैं call दे रहा हूँ, call सुनो man. ठीक है बैठो. The reveal right as Jing was bouncing in. The timing. That's here. What can I do? Advantage. What can I say? But yeah. Shit out, la GG. Cut the shit out, GG. Alright. Well. तेरी भैन दी लन कहंदा पोसड़ी दियो. It's going to be another buy coming through here for PRX, but Kami still not in the best position. Some half armors here on 4 of the players, one of them being regen. They do have a steel garden as well as a nightfall of their own to try to utilize and bring this to an end, but they definitely have to start getting concerned about this run back for Team Liquid. Yeah, for sure. It was fun for the first couple of rounds. Now you got to tighten up. Now you got to stop the waterfall here. This is a nice spot. And they have an opportunity. They've got the ults. Just got to find the right game plan. जो 3 ult है. Steel garden भी है, woman ult भी है. भाई imagine ये मैच तीनों ult साथ में combo कर ले, woman ult पीछे मारे मैच उनके मजा आ जाएगा. बहुत crazy हो जाएगा. There is an opt for pad attack. So 4 second भाई ult मार के एक knife दे दो please. Here's it immediately though as he takes a shot over at something. ये ult करके कुछ कूदने वाला भोसड़ी का. मरेगा पैंच है ही नहीं कोई. Batman just poking and prodding, trying to see if he can find anything. ये पैटीटा को ऑपरेटर लगाया. Trying to force pad attack off the angle. Will be able to do so. He's going to reroute. Spike, however, starting to be brought forward in towards B. They're trying to sell a fake at A, and it's seemingly working. Oh. B पेल गए what the fuck. का ही प्लान था. B का ही प्लान था. Oh जिंग भाई. वो तेरी बहन की यही मोमेंट्स पे तो मैं फिदा हूँ भाई. ये ले. ये का प्लान बना दिया. शॉट. अबे ये कम्मो भोसड़ी का इसको क्रिस्पी पड़ा है. शॉट मारा है उसने बहुत प्यारा शॉट मारा. वापस ये नहीं जाना. वापस भी जा रहे. डोर तो तोड़ा ही हुआ है. Try to instill some doubt here. Smoke cycled onto upper once again. Basically tell the story. Spike gets planted. Team Liquid sending 3. Down towards Ulta है भाई, डिवाइस जिंदा है भाई. ओए. डिवाइस भाई ult. Camo with another massive kill round. 3 in the अच्छा टैप के बाद कर रहा है क्या ये? फ्लैश लगी है ना. ult ही नहीं किया. अरे एस भाई कैमो भाई का दूसरा एस. अबे पर क्यों? खत्म था मैच, वहीं खत्म था मैच. 8 सेकंड मैच वहीं निकल जाते. कैमो ने थोड़ी किया था. आइकॉन ने किया था. कैमो ने किया था आई गेस. नहीं उसने करा था. केका ने किया था. कैमो तो योरू खेल रहा था. तो स्प्लिट पे हुआ था ना. अरे सेफ मारा था. ये तेरी भैन दी लन कहना. पर I highly doubt भाई. दिवाई भाई ने पीक क्यों किया वहाँ पे? अल्ट करो खत्म. वो 3 जने एक साथ आ रहे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना. काफी होता है. पहली बच गया 1 HP. Look to try to swing out unless they get rerouted out of A, but they're not encountering any pressure here. Panic नहीं करना. Not going to be ready for how fast he's lurking. Continue to push forward, but yeah, no tripwires obviously with timing. Good timing. गन निकालने यार कहाँ देखता रहता है भाई. उसको थोड़ी पता बाबू वहाँ पर घूम रहा. Everybody from Liquid now getting clustered up, ready to potentially go for a flood retake as Jing's head going to be spotted. TP up and over the बचा हुआ है. Jing does find one, but heading with that paint shell. Able to go ahead and trade it out. Foreskin भाई foreskin. Stinker body है. ओ भाई. Flushed out of drop. The spike still not planted now. Dead and drop. ओ भाई एक और खाया भाई. एक और खाया. The round win is not भाई ये there. थ्रोअर है भाई There's भोसड़ी. nothing fake about this. Team Liquid. Welcome to W Gaming. 5 rounds consecutive. माइनोरी की मूर्ति देख. पड़ी पड़ी है. Wondering when do I चलो pull भाई the लिक्विड trigger भाई on ये that राउंड second जीत और खत्म timeout? कर.
निकोल भाई जीतेंगे। दैट्स भाई 4 मारेगा, नहीं क्या नाम है इसका, कम वो 4 मारेगा और वो 2 मारेगा। तो अभी भाई कुछ ना कुछ अलग करेंगे, एक साइड हिट करेंगे, खत्म करेंगे साथ में, बता रहा हूँ। खत्म कर रहे हैं एक साइड हिट करके साथ में, अलग अलग जा रहे तो नहीं हो रहा मैच। दरवाजा खोल forward, something slides in along the door. Dimensional grip at the ready, sends it. We'll see that this is completely open. Retake करने वाले हैं crazy. Paranoia going to be sent there from Kiko. Not really going to dissuade. ऊपर की कॉल दे दी इसने मार करके. Yoru is able to clear things for them. Oh, quite connecting. Penny भाई, what the fuck? भाई इसने कॉल भी दी थी, समथिंग ने पता ऊपर बैठने की। ओ भाई वही काम किया। अब अल्ट मारा भाई डिवाइन ने तब से लेके अब तक, देख रहा है शॉर्ट ही मैच इसके हाथ में। ट्रिपल पीक होने वाला है, डबल ट्रिपल पीक होने वाला है, बता रहा हूं मैं। ये ले मैन की कर दिया भाई। ओ Can they allow him to divide and conquer the defeat? Kiko's got the kill, Team Liquid. Unthinkably are 3 rounds away from taking this into another overtime. PRX रोजा हो गया फिर से। Team Liquid. पहली बार का पीओ ही दिखा भाई। ओ भाई क्या टाइमिंग पे हटा इसको। भाई समथिंग ने बोल दी थी साफ साफ ये ऊपर है, वो मार करके फिर भी नहीं मैच जो देख के चूतिए। Yeah, you gotta take another time out here as paper. Phantom gonna be in the mix here. PRX बुरा हो रहा है फिलहाल तो। तब साड़ी ये भी तो नहीं आएगी, हर बार सेम ही चीज होगी। सेम साइड हिट करो, खत्म करो मैच। अल्ट भी नहीं आ रहा है किसी का अभी मैच। दो किल पे बैटमैन का अल्ट है, 2 पे 4 सेकंड का। और फार्म करवाओ मैच, बैटमैन को और फार्म करवाओ दोनों। ओ पैटी टेक भाई आराम खोरी कर गए, आराम खोरी कर गए। Hatman dead off the rip. You're being watched. Tap at the spike. Oh, B की call is good. Players very much nearby. Close the gap. Paranoia, however, is a little bit too late. Getting taken down. Penny here around the corner. Spots him. Oh my! ये क्या था? भाई बहरा है क्या समथिंग? नहीं, I guess he was trying to do fake clone maybe, I don't know. भाई पेट थोड़ी दिखाएगा फेक क्लोन में। कूद है भाई, वो फेक क्लोन कैसा है? पता नहीं मैच। हमने लो था क्या? पता नहीं। अब इसको सुना ही नहीं। अबे that might be because वो आगे इसलिए कूदा, हो सकता है जो आगे निकल के मारता दोनों मरते। I don't know. अच्छा हाँ ये कूद रहा है, मैं बोलता ना वो कूदा उसका। अबे वो टीपी के चक्कर में था कि बच जाऊंगा, वहां पे जाऊंगा तो कूद के फ्लैश किया यार। Just how close Penny was going to be. He should have heard the blast pack. Not sure what was going on. Maybe too much comms, maybe too much chatter. Virgin Paths at the ready here. Just gonna be clear on the tripwire for now. फट रही है भाई। अबे चिल कर भाई, जीत जाएगी प्यारे। अबे सेम साइड हिट नहीं कर रहे माइयो बे। Fully rotate. Bye. Inching wider and wider on the peak. Finds the kill. Boombot getting some value. Reposition from Forsaken. TP's out. The opposite side as the convergent paths does get invested. Waits in, finds one, tries to get the line up there on the Penny, but cannot make it happen. ले सकता था यार। He stays alive, maintains वो the स्लो player था। advantage. नहीं था। अरे स्लो था। टीपी क्या बात है? पेनी स्लो था। अच्छा। Clear on the haunt from Nats. Disguises this. And ultimately, it seems like PRX are going to be pushing into the site. This Prowler is not going to check the angle. As something he's looking up, he's looking Bye. Corner ही नहीं clear किया. What the fuck? क्या बात फट रही है और ठीक है जी। ये राउंड अगला। They have to just call to save these 2 weapons. Save तो क्या ही यही 2 वेपन बचा रहे हैं जो है। अगले राउंड निकालने का ट्राई करेंगे फोर्स करके बाकी लोग।
that negative space. पैंचो एक के बाद और क्या कर सकते हैं? एक के बाद 700, एक के बाद 500, एक के बाद 150 रुपया Side of C. ये हंट करने निकला है। On the hunt, absolutely should be. 8 rounds. Defending map कब से हो गया भाई? 10 in the half. Team Liquid. नेट्स जहाँ होता है वहाँ डिफेंड ही होता है। पीक कर दे भाई, अरे सेव करने दिए। कामो एकदम भाई फेयरलेस वन टैप भरे जा रहा जा। ये भाई क्या प्यारा टैप था। I mean, this is just stunning. And think about the comps that these two teams are running. They're both running double duelists, and neither of them could play an attack side. Absolutely insane. ये जो मरा है। We've lost the match. We've lost the match. देखते रह गया, ऊपर कैमरा देखते ही रह गया। Not over yet. We have lost the match. Alex is frustrated. You have a Nightfall to work with. Nightfall. It's gonna need Patman. मैं बता रहा हूँ, करो वैसे, करो वो सोनो, सेम साइड हिट करो, खत्म करो। Just can't believe how this is. Paid ult करो। Nightfall across, able to find 2 TP into the corner. नाट भोसड़ी का जाता ही नहीं छोड़ के साइड कभी। The ultimate safely. Follows the trail. Looks nice. able to flush him. निकल गया। एक और है। बहुत प्यारा पिक। हो गया राउंड। निकल गया। अच्छा डिले करा दिया थोड़ा। किल पे है, जिसका किल आया वहाँ राउंड गया है, बता रहा हूँ मैं। ओ भाई क्या राउंड है। ओ भाई वो डिंग भाई मैं बोल रहा हूँ जिसका पिक आया उसका राउंड है। भोसड़ी का फिर बोर के मारा भाई फिर से। What the fuck भाई? भाई ये बहुत गंदा चोक था भाई, ये बहुत 11-1 से ये कमबैक करा भाई इन्होंने 12-12। ये पिक के बाद नहीं आई, ये पिक इतना प्यारा दे दिया था 4 सेकंड ने नैट्स का, उसके बाद तो राउंड चाहिए था भाई। पर इसको क्यों तोड़ना है घूम के? जो वो खड़ा तो है बंदा वहाँ तोड़ने के लिए। Has thrown away what seemed like an unlosable match. It seemed like it was their game to take. Immediately going into this overtime with a timeout call. अब प्रेशर है उसमें। फाइनल स्कोर फटाफट। It's a timeout call. 17-15 वापस। 14-12 15-13 14-12 पर बताऊंगा नहीं कौन जीतेगी। सेम 15-13 सेम मेरा भी यही 17-15 बताऊंगा नहीं कौन है। भाई बिहार वाले तो आइडिया भी चुराने लगे भाई अब। वाह ब्रदर, 7.5 पहले मैंने ही दिया है भाई। जीतेगा कौन ये नहीं बताऊंगा, ये टीरेक्स ने बोला था भाई। Inside that coach's booth. I can't believe that I'm asking this question once again, but Toronto, are you ready for another OG? भाई पर देखो अनडाउटेडली एलिमिनेशन मैच में बढ़िया मैच दे दिया। वो चुदियापन वो वन साइड करके खत्म हो गया। बढ़िया मैच दे दिया भाई। Team Liquid. ओ भाई नीचे देखियो, हरी लाइन की लड़ी देखियो, मैच राउंड में इनकी टीएल की। पाजी ये दिख रहा है, पहले नहीं दिखा आपको हरे लाइन की डंडी? पाजी तो वो विनेबल गेम थी, खत्म थी वहीं पे गेम, भाग दिया वैन के लड़ो ने। ये बड़ा गंदा आ गया भाई लेकिन, बट जीत जाएगी कोई चिंता नहीं। भाई तू पनौती लगा रहा है, ये साला इसको गाली पड़नी पड़ेगी। तो पाजी अबे जीत जाएगी PRX भाई। चुप होके बैठ जा दल्ले। Outside of B. Sees Nate Admiral ready. One goes before the other. भाई मैं आज मान गया भाई। Not to come through. उसको ना भाई मान गया आज। क्या चीज बाजी? मान गया भाई बस। Stuck in position. भाई PRX जीतेगी भाई, PRX जीतेगी। ये देखो डिफेंड में PRX जीतेगी। Find the headshot. Saturation not going to connect there on the Jinx. He's That's slow. back. Camo going to be dead. That's 1 HP. Thorns immediately pop. The wall still here on the C site. Double entry across Whoa. this one, and Patty Tech wins अब दिया। वही पैडी टेक कुछ भी मार रहा है। बढ़िया समथिंग। साइड में ओ भाई पैडी Playing all alone. Nightfall at the ready.
he will have his suspicions confirmed. Forsaken has repositioned. But to where? It's a guessing game. He's just यार निकल गया यार. Plant नहीं है उसका, waterfall का plant ही नहीं है. No smoke for 15 seconds, but a safe defuse spot here for Forsaken. Drifts out. Fuck! भाई तेरी बहन की. ओ हो गया. Nah, bro, come on, panic shoot हो गया, panic shooting होगी भाई. अरे पैनिस हो गया भाई, पैनिस हो गया. भोसड़ी के चुप हो जा. पैट अटैक भाई का पैनिस हो गया भाई. साला दूसरी टीम की तरफ है. तो मैं तो पैच कब से हूँ. बाजी सेंड मैचेस भूल जाते हो आप फिर ऐसे मोमेंट पे हैं. एशियन जी मैं तो कब से तो आप पैचो मैं चीयर नहीं सुन रहे आप मेरा. हद होगी आपकी. Can't fault him for it at all. No. To get this close and then have PRX take the opening round after you've भाई committed देखो your timeout. चाहे मैं आपकी तरह सेन हेटर नहीं हूँ, मतलब ऐसे मैं PRX हेटर नहीं हूँ, पर मजे पूरे लूंगा आपके. पाजी सेम है पाजी, मैं तो टीएल के साइड ही हूँ स्टार्टिंग से. पाजी अभी अराउंड टीएल जीत जाएगी. चिल करो भाई, PRX जीतेगी. अबे ये बहन के थोड़े सेम साइड क्यों नहीं हिट कर रहे, मुझे बस ये नहीं समझ आ रहा. साथ में जा रहे पिक्स भी मिल रहे हैं पर नहीं, स्प्लिट खेलना है हमें. Gonna see if they can maybe get Jing a couple kills and get him a showstopper to lock this series out. Ammo tucked in. Separated. अबे ये मैच between them. बच गए. Scouted. Clear on the tripwire. A re-wrap here from Patman, joining with the rest of the team who are committing into the A site. Planting full retake, 5v5 retake plan. PRX. Does it all end here? Or does Team Liquid take us the distance and then some? Everyone in position, drop down into the site. Some spam across. Flash पड़ा है. 97 HP between Patrick and Camo. Something holds back here. देख ले cheap साला net. Shells buy some time. The push is coming in. Forsaken collecting two. Divide finding another. Nance has fallen. And it's on. GG guys. Good game bhai, good game. GG. GG. भाई गांड फटी है उसकी शक्ल देख बहन के लड़ो की. कह रहे अभी अड्डा कर दिया था, बच गए बहन जो. एलेक्स मुड़ तोड़ता अभी. रो दिया भाई 4 सेकंड भाई, रो दिया भाई. पाजी टीरेक्स पाजी पहली बार मेरी वो सही होगी, प्रेडिक्शन सही होगी मेरी. साले पाजी 14-12 आपसे पहले बोला था मैं. अरे सबसे पहले मैं ही तो बोला था ये. सबसे पहले मैं बोला था. गुड गेम भाई, गुड गेम भाई. पर गेम में मजा आ गया भाई, गेम में बहुत मजा आ गया. हाँ ठीक है, PRX जीती अच्छी बात है, लेकिन भाई बड़ा हक्का किया है भाई. PRX ने बड़ा हक्का किया है भाई. व्हाट अ गेम भाई, व्हाट अ गेम. मजा आ गया. तेरे गानों पे आ जाऊं क्या? हाँ वो बढ़िया खेली, बढ़िया खेली. कह रहा पैंचो आओ तुम पीछे चलो, बैक स्टेज चलो, तुम्हारी गांड मारूं मैं. जब ही फायर है बैटमैन. कह रहा महादेव चो तुम्हारा हर बार को रखा अगेड़े. 4 सेकंड को ही बुलाते हैं साले, बाकी अंग्रेजी में भाग देते हैं. अब वो आएगी कोरियन, 4 सेकंड में चोरी करके ले जाएगी. मैं तो कह रहा हूँ इस बार ये एलेक्स को ले जाए. मजा आएगा. आ गई. जिंग भाई वो है क्या? जिंग को ले गई भाई. क्यूटी. जिंग क्यूटी. जिंग भाई तो वही लगता है BTS आर्मी का लीडर. I mean, it was like 11-1, so we kind of wanted to make it close, so the fans here have like a good show, so yeah. I mean, even split slipped through your fingers, and even on Lotus, things started to get too tough, right? You know, it's just amazing how you guys were able to pick things up and course correct
especially in that OT as well. So what allowed you guys चलो to भाई do जाओ that? बैक You से know, जाओ was it तुम्हारी the चिट्ठी लगेगी जाओ experience? जाओ Was जाओ it the talks? Or, you know, was it the hunger? इलेक्स इनसे वो में कह गुड दो टीम So, है देखना, I एक think तरफ it's like जिंको a little एक bit तरफ of फोर everything, सेकंड। but I mean, we're all really experienced, so I think we know how to reset properly. So yeah, I think that was the आज तो ट्विटर खोलना डबल बनता है भाई। एमपीवीटी पड़ेगी दोनों को। Speaking of experience, I mean, Team Liquid Oh doubling भाई down on क्रेजी हो गया aggression रे। with Raze and Waylay. I mean, you guys have tried Crazy Waylay game. back in Pacific. Would you say Right? that भाई experience kind of अगर टीएल जीत जाती Wait, sorry again. भाई रो रहे होते हैं ये What रो was your देते भाई reaction? लेजिट रो देते। And do you think your भाई पेपर एक्स experience का of running the ट्वीट Waylay आया है back भाई, in वी Pacific ऑलमोस्ट for a थ्रू little दैट। bit? हाँ वह सही में भाई ऑलमोस्ट थ्रू क्या कर ही दिया ओ डीआरएक्स वैलोरेंट भाई, Waylay, but सेम ब्रो yeah, सेम। we just adapted and yeah, that's it. Right. 11-1 in the first half. Somehow OT. What was going on in the comms? I mean, we told each other like it's not over yet. Just focus. But then I think we were just having too much fun, so we went into OT. All right. Lastly, now we're about to draw for the playoffs. We have coaches from the first seed teams up on the stage. Playoff से draws करेंगे मैन let's go। ओ भाई ओ भाई Please don't pick us. मैं तो कह रहा हूँ सेंटिनल की वैन जो तो बुंड पड़ जाएगा भाई, पहला मैच जीतो नहीं, पहला मैच रीजन यहाँ पे तो रीजन वालों के साथ भी लग जाएगा ना। Oh, okay, you're gonna beat them. All right, thank you very much, Jay. Yes. Congratulations once again. We are gonna beat them. All right, that was Jing with PRX. जिंग भाई शर्मा गया कि क्या करना क्या है हो गया। भाई अगर सेंटिनल को फिर से वोल्स या एक्सएलजी मिली तो मैं बैंड की चूत इनकी गांड फाड़ दूंगा बोतल वालों। I am so sorry for what just happened. चलो वाइड रॉज लेट्स गो क्रेजी होने वाला। We do have the first seed चलो of each region now having a chance to pick their opponent for the first opening matches of the playoffs between Sentinels, Genji, Wolves, and now PRX. So going through from my left to the right, we do have our #1 seed representative from EMEA. It is Fanatics Milan. And for Americas, we have Josh RT from G2. अच्छा ये पिक करेंगे। We have XLG. Huya. अरे नहीं वो मतलब जो भी रैंडम इनकी टीम्स के लिए रैंडम ड्रॉ होंगे शायद। Coach Ewok representing RRQ. And also we're joined by our lovely Victoria that's going to give us the lowdown. अच्छा अभी तो 8 टीमें और बची हुई है। How it works. Yeah, we did the same thing in Master Shanghai last अभी year. तो बोल तो रहा हूँ 4 टीमें पहले से जो एक रैंक वाली पहले क्वालीफाई थी ना प्लेऑफ में। And they're literally going to pick their opponents. अच्छा अभी 4 टीम और आ गई। Fate is quite literally in your hands. We're going to दूसरी start पोजीशन वालों के मैचेस हो गए। second team drawn goes here, third. अभी प्लेऑफ्स में होंगे 8 टीमों के I मैच। think it's super simple, but again, it's all up to you guys. So free for all, just to make sure regional matches are good. Free for all. There's no riot script. Now it's in the hands of the coaches. So without further ado, let's go ahead and pick up the first seed and the first team they'll get to choose. अच्छा फर्स्ट टीम पे ओह अच्छा इनको चॉइस दे रहे हैं। अरे तो ऐसे ही होता है हर बार साले, पहली बार देखा। अबे नहीं ड्रॉ तो मैंने देखे नहीं। क्यों? ओ भाई एक्सेल उसने उठाया भाई अब। भाई क्या लंड किस्मत है भाई सबकी वैन चो सेंटिनल क्यों चाहिए तुम्हें? भोसड़ी वालों पहली बार आए हो। That's for the audience, definitely. I would everyone see the XLG playing Sentinels. I think it's going to be banger. I'm sure the Chinese fans and क्या बोल गए? American fans will be looking forward to that. Please, Victoria, let's go ahead and pick a चूज करनी चाहिए थी उनको ना। हाँ वोल्फ चूज करनी चाहिए थी। चूज करेंगे वो। RRQ. मोनियट भाई। ये बॉल चूज करेगा। फैनेटिक द G2। So an early birthday gift, you get to choose your team. You weren't going to go for PRX? No Pacific Pro. Fnatic the G2. So who did you pick? Who did you pick? I didn't even look. Fnatic Okay. Are you confident about that one? Because remember, there's a lot of fans here that put. Remember in Bangkok? Wolves को लिया। चलो easy ले लिया इन्होंने। They ended up winning the whole thing. Yeah, for sure. It's not like I'm disrespecting them. I'm just saying I'm not playing Pacific right now. Fnatic versus PRX लग रहा है PRX. Respect. So it's a teamwork right now for Pacific.
ये कह रहा पैसिफिक जाए पैंचन पैसिफिक के साथ नहीं करना भाई डोमिनेशन देख रहा है इस बार जैनन टॉप 8 में 3 पैसिफिक बेंच जेनजी होगी यार क्योंकि ये होगी तीनों की तीनों टीम भाई यस सर भाई जेनजी का मेरे को लग रहा है जेनजी की फीलिंग आ रही है मेरे को पेल देगी जेनजी फिर से G2 ओ भाई PRX पक्का PRX शर्त लगा ले I remember a conversation with शर्त लगा ले PRX फट्टू हैं ये लोग it'll have to be PRX. I don't want to sway it. PRX. पता था फट्टू भोसड़ी के जेनजी को बात कौन लगाएगा भाई बनाई की बात छूटेगी And Coach Milan. History repeats itself. मेरे को पता था पिछली बार भी ऐसा हुआ था पता देखो जेनजी को किसी ने हाथ नहीं लगाया था फिर जेनजी मास्टर जीत गई think it's written in the stars. I think it's written in the stars. I know Colin's around here somewhere. Somehow GG dead. I'm sure he's having flashbacks to last year in Shanghai, but all I'm gonna say is different Fnatic. Yeah, different Fnatic for sure. You guys came out with a lot of firepower. Let me just पिछली बार याद है Josh RT here. I'm gonna ask one final question as we go down. Sorry about that. We want to देखो भाई पेपर एक्स ने फाइट करी है सनसेट में लिक्विड ने थ्रो कर दिया था देखा कमलू कुछ भी करो आ जाके सेंटिनल की किस्मत अच्छी निकल ही जाती है तो बाबू उसने थोड़ी दिया है अब तो उसने खुद उठाया सामने से देखो पाजी जिसने भी किया हो बट किस्मत तो देख रहा है तो पाजी क्या हमने थोड़ी किया पाजी देखो आपको एक बंदा लिख रहा है आरआईपी फैनेटिक ओ भाई जेन दिखेंगे भाई जेनजी से गान पड़ती है भाई सबकी भाई जेनजी और टेक्सचर मोटू साला पागल है भाई Come here to follow our goals. सीन ये है कि वो चाइना वर्सेस चाइना नहीं कराना चाह रहे थे एक्सएलजी Repeat whatever he done और before. फिर उसके अलावा सबसे वीक टीम सेंटिनल ही है बट सेंटिनल के सामने भी तो कोई वीक टीम नहीं आई ना भाई Coach Ewok, I want to go here with भाई RQ. वीक टीम तो नहीं है This is भाई actually the first टेबल टॉप international पर है chain चाइना as well outside of lock-in when इस you बार have ही the वीसीटी में आई है automatic प्रीमियर जीत के invitation. So Still what भाई does this टेबल mean for टॉप पर RQ चाइना right now जीत to कर step आई है on the वो stage and how and वो why तो will चलो RQ अभी है win क्या ही कर सकते everything हैं in गैंग उन्होंने आगे ही दिया सारा Process been a long journey, and we're just trying to improve a lot. जैसी Feel like मैंने we're दो really टीमें confident देखी right हैं now, and we're pretty confident to take on any team here. So we're just happy to be here, and also happy to compete, and hopefully we कल can मैच win the whole जैसे thing. कल के This is मैच awesome. क्या है Also, chat, I was expecting, and chat, because I am talking to the camera, I was expecting for this to be more of a trash talk, but everybody's so humble and nice. Is it because of Canada so far? Josh RT, do you have any bad words to say? Not at all. I think this is an insane matchup. I mean, obviously everyone knows that PRX picked us back in Shanghai, and that kind of kicked off our run in कल है Sentinel versus Hopefully, XLG. the story doesn't close there, and that we just keep it going. So track by track, but it will stop with G2 to start in the playoffs. Yeah, pretty much. Awesome. And Coach Milan, you just talked about it a little bit more, but talk me through a little bit more about the Gen G matchup. Sorry. I mean, I think some of the boys, they have history with this team in the first round, so I see it more as a fun challenge. I think if you want to be the best, you got to be able to beat everyone anyway. So I'm not too worried about it. Awesome. If you want to be the best, beat the best. What do we have coming up? What's the schedule going to look like? We don't know yet, but these two matches will be on the same day. These two matches will be on the same day to keep it competitively even. As far as which one's which day, that's going to be decided in the next little bit. So just keep out for socials, all that fun stuff. But either way, it's going to be 2 days of amazing matches. Exactly. As Victoria was mentioning, make sure you follow here the Valorant Esports social because the action will resume on Friday the 13th. Friday the 13th to start the playoffs. So make sure that if you're attending here in Toronto, you are bringing your lucky charms to break all those 9-3 curses. But until then, enjoy the day off, and we'll see you on Friday. Crazy. मजा आएगा भाई मजा आएगा Boy, oh boy, Fnatic वाला मैच we've seen some देखूंगा of these भाई matchups in past global events. भाई देखेंगे तो सभी Fnatic पिटते हुए And joined by अरे वो Fnatic. सब ठीक है Fnatic के एक प्लेयर का नाम तो बता दे फैनेटिक अस्टोला नहीं डुएलिस्ट का बता पोस्टर का तो पता ही होगा वही यार अरे यार पोस्टर नाम बता ये डर के बोलने वाला था भाई पाजी एफएनएस बोल दो प्लीज पाजी एफएनएस बोल दो प्लीज थोड़े दिन पहले बोला एफएनएस बोला फैनेटिक में आ गया एफएनएस What did you make of some of these picks? Because you were saying that, for teams like XLG, going Sorry. first here is a huge माफ कर दे Yeah, I माफ कर दिया getting Sorry.
भाई मैं तो किक मारने वाला था भाई इसने सॉरी बोल Not दिया that I think that they're a weak team, I just think like when you look at like Gen G, the form that they're in right now, G2, like you really want to be a step ahead and be able to like get these easier, maybe not matchups. Yeah, going last. Sorry नहीं बोला इस बार. Looking. But I'm actually curious for a second if you've been like following G2 throughout the year, like how many of their games. सुन रहा है एनालिस्ट टेबल पे सुन रहा है. How closely? मैं तो आज कम कर रखी I थी. mean, they're क्या चल रहा है? also great team. Their teamwork is insane right now, and all of the players can shoot, you know. क्या कह रहा है? But I still believe in my team, so yeah. क्या बोला क्या बोला? I think you kind of manifested this because I saw the video of you पूछने and की Trent, जीतू के the little सामने ऐसे social गांड तो videos, फट गई like ना. you're wearing each other's jerseys, like you're. I think he was like sitting on your knee, you were like sitting on him and stuff like that. So how are the vibes between you guys? You friendly? This is a friendly matchup. चलो भाई बाबा गुड नाइट. ट्रेन जो 3 बजे का ऑफिस है कल. Trent, to be honest, I maybe jog him more. He sat on your knee now. I feel like that's a connection. You cannot. भाई यार well played Yeah, यार. no, it's Liquid quite यार. intimate. Yeah. I hope you don't wreck me. भाई ऑलमोस्ट ले गई थी मैं चुद. निकाल दिया भाई. भाई 11-1 से कमबैक भाई. भाई वही फनेटिक कमबैक हो गया था भाई ये तो. As a person, so yeah. जो फेक कमबैक. बस वही है ना ये फाइनल में था. फिनेटिक ने फाइनल में क्या था? Because it felt like completely you had crushed. फाइनल का अलग प्रेशर क्या हेडफोन पहन के भगाया जो. What happened? I mean, it was 11-1, right? Yeah. I was like this all the time. I was like can't breathe, and I was like shaking, but somehow we almost shocked at the game, guys. But hopefully we just shock here, you know. Oh yeah, this is सही बोला था भाई. ट्विटर देखने में मजे ही बड़े आते हैं भाई. Yes. भाई इसको बोलो छोटा भीम गा दे बाकी सब सफल है हमारा. Best player / team to haven't yet won a trophy globally. Now, like you said, you got post किया है कुछ? You're in form. You're looking kind of scary. You got मेरे को तो ये G2 coming देखना up. कब इंडिया How में VCD confident होगा. are you that you can get this trophy now? I'm 100% confident because I mean every time we learn PRX a lot ने of tweet things, किया. even with Batman. Now I think our role is Lads, good. do not speak to me again. And yeah, I think as a team now we're kind of vibing. We try to like hype as a team and try to like always being positive when we're playing. So yeah, hopefully in playoff we can wreck all the teams here. Yeah, that's good to hear. I have a little bit of a question. So I think internationally you guys always do good against other regions. Like how do you guys just consistently manage to like make the style of play work against like different regions who have like different styles of like comps, different like everything? You guys just always seem to like find that consistency and it just works. How? Well, actually, I mean our team actually, we don't like really think too much about how they play. ये तो सच बोल रहा है. Like, improve ourselves and our team play, मेरे जैसे how we इंग्लिश can बोल make रहा it है better. बीच-बीच में. And like maybe यार नहीं भाई ने एक बात तो सच बोली. कह रही me and my team we don't think too much. कर रहा देख रहा है. Yeah, I mean it makes sense, right? You made it Paji, now Paji. on the Swiss stage. But now that you've been able to play against some of the teams prompt लिख के इसके मुंह पे मारो एक. one seeds are coming out. Like who do you think are the top dogs? पाजी देखो मैं तो अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ बस मैं तुम्हें बोल के दिखाता नहीं हूँ बात अलग है. To go ahead of some of the first seeds. Are you think it justifies पाजी ऐसे थोड़ी सपोर्ट में हो. पाजी मैं यूएस वाले मैनेजर से पाजी फिर पंजाबी में तो बात करता ही नहीं हूँ. I think right now they're और जनरली बात होती है. आज भी शाम को बोल पे होके आया हूँ. Even Genji, they have new player, right? कॉलेज वाले हो रही हैं. Almost like chocolate, but they are US somehow manager always से improving, you know. Yes. So I think they're really looking form right now, and yeah. Are they better than पाजी फिर पूछा देनी है कि थाने ना. XLG and RQ? पाजी बुड्ढा है वो. I believe in Pacific, but I think Genji or RQ both all good. Oh, Genji RQ पता नहीं the मैं best. क्यों फालतू बकवास मार रहा हूँ. सॉरी यार. I mean 3 seeds. पैसे ये देखो भाई यही सही है भाई. Best region sounds like it. I mean, पूछा Pacific, कौन I सी think are टीम बेस्ट है definitively कह the रहा है best region here. But the Sen pick, right? You had XLG, they have that advantage. They can pick whoever they want, and they pick Sentinels. Does that surprise you at all? A little surprised, to be honest. I thought it would be between Sen and Wolves, but I mean Sen I guess showed a little bit of a weaker like group stage. Maybe these teams think that they can like find something to like stop them and like shut them down. So to me it kind of makes sense. I didn't expect them to like regional matchups. It doesn't make sense. But yeah, match I think Sen was like the correct pick. Yeah, I can't wait to see what's going to happen there. But unfortunately, of course, with the results today, we've had to say goodbye to 2 teams, Billy and Team Liquid. What a day we've had. I really didn't think at least it was going to end like this, Chris.
accuracy. It completely turned it on its head. But honestly, I think Billy Gaming, unfortunate for them, they had the regional matchup up against Wolves, a matchup that they had been winning if you look historically, but maybe not adapting as well to the patch, the slow play of Wolves, and ultimately going to be one of the first teams to go back here. भाई वुल्व्स का डुएलिस्ट सिंगापुर का पता है वो जूसी का पता है भाई क्या खेला है वो जूसी तो वो सिंगापुर का ना 4 सेकंड होने के रीजन का बढ़िया खेले डब्ल्यू गेमर है वो भी और बहुत प्यारा खेला वो भी आज लेजेंड प्यारा खेला वो भी Oh, I said low-key I'd reinstall Windows for what? That whiff? Forget about it. I'll be good, trust me. Trust me, calm down. Yeah, I'll fuck with Cherry Sprite. No. मैं प्रॉड बाइक जेट देख रहा हूँ. That shit's fire, bro. रोड भाई अच्छे हैं भाई वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारते भाई. I drink them occasionally, though. Yeah, honestly, we should go be. Already sucks. Mostly water and milk. उसको थोड़ी पता है इंडिया का एक स्ट्रीमर बैठ के उसकी स्ट्रीम चला के बैठ गया है. कल ही मेरी बात हुई थी. मैंने बताया था. जी जी जी. टीरेक्स ने आपके बारे में बताया था. वो बोलता वो लीरेक्स वो मोटीपुंड. जी जी सही बात सही बात. Just yellow, an outlaw. Sorry यार. मोटा लैंड भी था भाई वो नहीं लिया अपने साथ में. Viper was here too. मैं नहीं बोलता यार. Sorry यार. फाइनल आगे हो जाता भाई. पहला मैच ही सेंटिनल का दूसरा PRX. चलो भाजी आप मिलते हैं फ्राइडे को. कल नहीं है क्या? कल ही है भाजी फ्राइडे. आज तो थर्सडे तो खत्म होने वाला हो गया. ले जीटू ने तोड़ा पोस्ट देख उसकी जीटू की. क्या डाली भाई? अबे ओ देखियो उस पे XLG की जगह BLG लिख दिया सालू ने. 11-1 और 12-12 कर दिया जो होता ना. देखी कमलू ब्रैकेट देखी YouTube पे पीछे करके देख. It's the last time. Look, your hair doesn't look as terrible today. I didn't even do anything to my hair either. I just got all that. YouTube gaming. We've also seen all of our other teams qualify. क्या चीज़? Paula, do you think क्या कुछ ट्वीट दिखाएंगे क्या? up against not Billy participating, and I think the other interesting thing is the way the bracket. अरे ये जो वो दिखा रहे हैं ब्रैकेट्स दिखा रहे हैं उसका क्या रहेगा? But for now, let's take a look at the bracket because the draw is set. We know what we're gonna get at the playoffs. Just to remind you guys, the schedule is not set yet. After we take a look at the playoffs bracket from the Swiss one, so make sure you keep your eyes peeled on social media to find out which teams are playing on which days. PRX made it through. They will be going up against our first seeds who've been waiting, watching, anticipating. And I think the other interesting thing is the way the bracket goes, right? Because Forsaken, if you beat G2, they take so सही भी किया सालों में. गलती दिखाई जा रही है. G2 PRX is a crazy match. Then you We're definitely going to miss you. And thank you to you guys for watching. We're going to be back on the 13th, Friday the 13th, to kick everything off with playoffs. Have a lovely rest, and we'll see you then. PRX ने उसको टैग करके बोला G2 को लाया do not speak to me again. हाँ देखा मैंने. अरे वो ना देखना फिर G2 ने पोस्ट किया है 11-1 11-12. G2 को मैं फॉलो ही नहीं करता भाई दो टीम्स को. These two CN teams know each other very well, but there's only room for one of them at playoffs. The gloves are coming off Sorry for the heart attack. Go for a spray. Springs on the drop of Rushia. Where is the rest of BLG? They can't get off Speedway at all. 2-6 Util and BLG disrespected. Fully pivoted towards the side. They could get overwhelmed. This is dangerous, but Spring. Sonic Sensor there in market. I think forced Rushia back. He couldn't get involved in Spring. He's on for 4. Too bloody good. And Wolves with the answer. Gauntlet thrown at Billy.
Juicy needs a clean opening and they get it. Wisey is just entrenched here at ramp and can't get out. Silfat dealt with it now. भाई Juicy, यार deep as he is, just got भाई to 20 over his पता नहीं location आ and रही है take भाई the मैं challenge and needs to get another one. And Juicy, the swing, the wide swing. And he बोल is के तेरे putting को on जॉनी an सिंह देखना है absolute show. Juicy sees a chance to देखो trade and मैच deals with थी the वो race now. देखने He से turns his तो attention to the side itself, but it's Wayward. Levy is Lovers his to ground. enemy. I saw. Finds two. Lion Tries to to open this speak up, but to now me 1v2 for the round and time. Really not working for him at all. Swing off of it. Wisey running forward. What a spray इन्होंने out अपने from इंटरव्यू में Juicy. बोला था ना Wisey was out in front of the कि wave. This time we Juicy will pick plays Sentinel. dividends. अगर आपको कुछ फन देखना होगा तो PRX चुनेंगे. You dare to dance with the wolves. You might just get bit. A second team from China in our Masters चलो भाई, Tournament चलो. playoffs. This तो बहुत हो निकल गया. भाई कब से भाई बोल रहे हैं निकल भाई निकल तुम लो, सब जा ही नहीं क्या? रहे भाई तुम. हम तो बैठे पहले मैं तो ऑफिस से जा नहीं रहा मैं कल. मतलब कल तो गेमिंग होने वाली है ये तो पहले टारगेट है तो कल तो आर्केड फिर बोलेगा भाई आ जाओ भाई पहले खेलते हैं भाई सारे आ जाओ सारे हम तीन ही होंगे तू आएगा आर्केड होगा भाई टीरेक्स भी वर्क फ्रॉम होम पे ही है भाई लैपटॉप भी तो यार हाइलाइट ओ भूल गया था टीरेक्स भाई मैच लेने की कोशिश कर रहा है आपकी जान के देख रहे हो नहीं यार जानबूझ के बता रहा हूँ आपकी दुखती गांड पे हाथ फेर रहा ओए सीरियस मोटी हो गई है मखमल से भाई तू जा रहा है नहीं जा रहा भाई टट्टे भी मोटे हैं मेरे मखमल से चाहिए मुंह में सीरियस को दोगे ना भाई आपको दूंगा ना भाई फिर आप देख लो एक शेयर अभी कर देना दोनों अभी तो सीरियस है भाई सीरियस चल मेरी तरफ से तू ही ले लियो दोनों ठीक है नहीं भाई शेयर करो भाई शेयरिंग इज केयरिंग ऐसी तेरी स्वागत में बीवी भी भेज दियो नहीं लौड़ा ओके सीरियस क्या है तुझे पता है तेरी शादी मुझसे पहले हो चुकी है पता है ना तू राजस्थान से है तब इस हिसाब से तुझे अपनी बीवी मेरे साथ शेयर करनी चाहिए कौन सी वाली भाजी द डिस्ट्रॉयर वाली डिस्ट्रॉयर ले ले भाई तू डिस्ट्रॉयर ले ले भाई डिस्ट्रॉयर ले ले भाई मेरे को चलेगा भाई मैं मूड रख दूंगा देख मैं मूड खींच लेंगे अंदर अरे ये तो डिल्डो है नहीं मैं बताता मैं मुंह ढक दूंगा ठीक है काले कपड़े से क्या ही पता चलता है कौन है मुझे तो होल से मतलब है बोल यार मैं बोलना नहीं चाह रहा भाई मैं बोलने वाला था कुछ ब्रह्मांड है क्या पाजी वो खींच लेगी आपको अंदर सीरियस तूने तो देखी है बताइयो भाई रहने दे भाई छोड़ भाई अरे राम भाई स्ट्रीम कर रहा है भाई चुप रहना भाई तो पकड़ा गया भाई गोप हो गया गोप हो गया भाई गोप सीरियस यार लव यू भाई तने ओ भाई नहीं भाई तू जा भाई तू तने मने मत कर भाई ओ भाई नकली नैनवी पाजी यार प्लीज यार इस गे को किक कर दो भाई पाजी आप कर लो आप पे पावर है अरे पाजी सेव रोल पे मेरे बहन के हां तो किक तो कर ही सकता है अगर मेरे को किक किया डिस्कनेक्ट किया सर्वर से किक बोल रहा हूं तो ग्रुप पे गाली गलौच हो जाएगी आज मैं देखना चाहता हूं करियो डिस्कनेक्ट इसको पाजी मैं लैपटॉप से दूर हूं अरे फोन से कर दे फोन में डिस्कॉर्ड है नहीं कर दिया स्टोलन कर दिया भाई अब तो मजे अब ज्वाइन कैसे करेगा वो कैप्स लॉक कर देता जाएगा सीरियस भाई भोसड़ी के मादरचोद बैन के लोड़े मच्छर की जान कुत्ते के पिल्ले लंड ओए होए नेक्सस की याद आ गई सीरियस निकाल दिया गया
टीरेक्स ने करा, टीरेक्स ने करा, मैंने नहीं करा। ऑडिट लोग देख सकता है तू। मेरा नाम लगा रहा है भाई। मेरे ऑडिट को लोग क्यों देख ले बोला भाई, भाई? तेरे पे इसने पावर है भाई अभी। ओए हाँ मैं इसने वो मेरे को पर्सनल पे मैसेज किया दल्ले कि इसको किक करियो, मैं दूर हूँ। जी यार उस्तोला भाई। मेरी बहन की। मेरी माँ की जो एक काम करो टीरेक्स भाई, आप भी आओ। एक काम करो, तू भी आ। फिर बाजी है, मेरे को तो ना ये उस तोला की वजह से मच्छर भी देख के मारना पड़ता है, कहीं यही ना हो। सही बात, सही बात। ये लो भाजी, उस्तोला को सर्वर डेफन दे दिया मैंने। तो वो हटा सकते हैं खुद। हाँ तो उसको पता ही नहीं चलेगा। वो वो पीसी से है बाजी, आपकी तरह मोबाइल से नहीं है। हाँ तो पाजी जब तक वो उसको समझ आएगी, देखो ना अभी तक नहीं। हाँ भाई क्या कर रहे हैं यार, सीरियस। यार देख, मैं ऑडिट लॉग ही देख रहा था बाबू। एक सेकंड। इसका रोल हटा रहा है भाई, इसका रोल हटा दे। फिर देखता नहीं हूँ। अंडे वनडे संडे जिसने मेरा रोल हटाया। उसका दोस्त उस तोला रंडी। वाह यार, सीरियस यार, तुम कैसे इतना राइम अच्छा बैठाते हो यार, कूल यार। तुम तो बड़े कूल हो, कूल। ये ले 1 मिनट का टाइम आउट। मेरे बेंच उसको समझ नहीं आ रहा होगा हुआ क्या है। अब ऑडिट लोग देखेगा जाके। अब ये परेशान होकर व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख के चला जाएगा। फोन से रोल उड़ाना बड़ा औखा है यार, रोल उड़ा देना भाई इसका। मैं नहीं उड़ा सकता भाई, मेरे पे पंप्स नहीं है। तो सबके तो हटा दिए थे, वो ड्रैग ड्रॉप वाली बकचोदी करते रहते थे, तब हटाए तो थे शायद सबके। ये हटा दी। अभी आएगा, 1 मिनट बाद आएगा। उसको कौन सा पता होगा कि 1 मिनट का टाइम आउट लगा है। लिख के आता है क्या ऐसा कुछ? लिख के आता है, लिख के आता भाई यार, कभी कभी गिटार सीखने का मन करता है। भाई टोनी अब्राहम भाई स्ट्रीम पे है भाई, टोनी भाई को हेलो बोल दो भाई। अरे यार यार पाजी यार, टोनी भाई। तुसी यार आयरन आयरन मैन सेक्रीफाइस क्यों कर देता है अबे यार आगे, पाजी यार। अबे अब्राहम है भाई आगे, टोनी भाई, टोनी अब्राहम भाई। हेलो हेलो पाजी की हाल है थोड़ी उस्ताद जी। बेटा अगर मैंने जैक भाई को बुला लिया ना, जैक तो डैनियल हाँ, बुलाओ बाजी, जैक तो नहीं डैनियल हो नहीं, भाई। जैक को बुला लिया ना, डेविड अच्छा पुत्रा अच्छा 3000 टू सीसी में बाजी आएंगे। 2000 ठीक है, होता है, हेलो। नहीं नहीं, हाँ 2000, सॉरी 3000 कह दिया। वो एडवांस हो चुकी होगी ना अभी तक भाई। अच्छी है, सही बात है, सही बात है। और बताओ टोनी भाई कैसे पाजी हो यार यहाँ आप? पे पाजी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 5 मिनट टाइम आउट, इसका क्या मतलब है? सीरियस लगा के देखो एक बार पता चल जाएगा। बदतमीजी करी जा रहे हैं बैठ के एक दूसरे के साथ। टाइम आउट वाला सिस्टम बढ़िया था ना थोड़ा। ये ले, ये ले, बढ़िया बढ़िया। ये दोस्त तो भाई लगता तो है स्ट्रेंजर अभी। थिंग आने वाली है भाई, बहुत मजा आएगा भाई। नवंबर में आ रही थी हमने ना? तो देखी है स्ट्रेंजर थिंग। हाँ अच्छा हाँ, वो शुक्र है, मेरे मेरा को लगा मेरा मैं तो भी नहीं देखता कुछ। मेरा तो खुद प्लान है, बाबू के साथ देखूंगा भाई की जब। हाँ गया किक कर दिया उसे। नहीं खुद ही गया। वो नाम चेंज कर रहा था बैठ के। तेरे को पता है ये वाला गाना कमलू उसमें लिख रखा है स्टीव ने, जो उसमें है स्ट्रेंजर थिंग वाला। मैंने वो कर रखा स्टीव। है अभी बाबू, म्यूट कर रखा है नाइट बॉट को भी। अच्छा ना तो पढ़ ही सकता और एंड ऑफ बिगनिंग। अच्छा चलो भाई स्ट्रीम करते हैं एंड शेंड, चले क्या आज का हो गया टीरेक्स क्या? मुंह में दे देते अरे लैंड। अरे अरे भाई इतना जोर से क्यों बोल रहा है? लोलू पाजी है। बाजी माइक मुंह में लेने की कोई बात नहीं थी।
लोलू है लोलू। वो तो चलो भाई, मेरी स्ट्रीम पे LL लिखोगे तो वो बढ़िया लिखा आता है। PRX भाई लिखोगे? नहीं सीरियस भाई आप लिख दो प्लीज। अरे म्यूट हो रखा है। अरे सीरियस पाजी को तो सर्वर म्यूट। सर्वर म्यूट किसने दे, तूने दिया क्या? हाँ कर लेगा म्यूट, दूर बैठा होगा। जिसको समझ आएगा म्यूट हो रखा है। नहीं सर्वर म्यूट इसीलिए किया था कि हमारी बात सुनता रहे और बोल ना पाए। भाई ऐसे होता है यहाँ पे ना, आवाज दबाई जाती। सी पे लग रही है बेचारे को। बेचारे ने जोकी म्यूजिक को कर दिया अभी। एक थोड़ी देर गेम खेल ली क्या? अब एक DM खेलते हैं, मजा आएगा। अबे कर दे बंद, सो जा जाके बड़वे। मैं ऑफिस नहीं जा रहा, मैं कल छुट्टी ले रखी है। प्लान्स? हाँ ऐसा तो कोई प्लान नहीं था, पर वैसे छुट्टी लेने का दिल था। हाँ PRX को एलिमिनेट कराने के इरादे थे ना तेरे? नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को मैच देखना था। अरे बोलने लगी फुदू है। फुदू है। चलो भाजी टाइम नाल निकलो जी, मोट मोट भी मारनी है, ले सोना भी है यार। मोट मारो भाई, मोट और मारो। सीरियस भाई थोड़ी हेल्प कर दो आगे मेरे गैंड में अम्ब्रेला देके खोल दो। मैं खोल ले भाई अपनी गैंड में, हमने कोई मना थोड़ी किया भाई, परमिशन क्यों ले रहा तू? घर पे तो जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर खुद के साथ, बस रील बना के डाल दियो। चलो भाई बाय बाय, गुड नाइट। चलो जी गुड नाइट। यहाँ ठीक है, ढंग से पढ़ लिया कर भाई मैसेज। हाँ भाई चलो ओके सॉरी भाई, गुड नाइट। फुदू है बाय। बाय फुदू है। जूस चलो जो होश था वो तो गया, बदन की खुशबू चुराने लगी जादू, जो होश था वो तो गया। आज अभी कितने देर, 2 घंटे हैं अभी तो रीसेट होने में स्टोर, अभी तो टाइम लगेगा। फोन चार्जिंग का हो गया, फोन चार्जिंग का फोन का चार्जर एक्सेसरीज मिलेगा, कॉस्मिक ब्रेक very cute spray खरीद लेते हैं। Match found. Let's go. Hello. Hello. भाई इन्होंने जो UI अजीब सा किया है ना भाई, ये छोटा छोटा करके अजीब लग रहा है। जापानीज झाट, ये झाट लिखना चाह रहा था गाइस, क्या लग रहा तुम्हें? जाट झाट लिखा है, क्योंकि ना इसने झाट लिखा ना इसने जाट लिखा, झाट लिखना चाह रहा था मेरे को लग रहा मोस्ट प्रोबेबली।
कनेक्ट नहीं हुआ duels really nice shot. Hey, little man, pump us up. Let's hear it. Fight! Come on, little homies. Let's get it. अरे वाइड नहीं जा रहा हूँ मैं तो It's good, cuate. I'm good for 3. Hello, welcome to the stream, bro. See ya. Are you on stream? Yo, I push up the button, Kelly. Let's go. Dominating. Let's go. Thank you for subscribing, bro. Welcome to the stream. How you doing? Let's go. La la. Uy, आज कनेक्ट नहीं हो रहा. Vandal family, Vandal. I'll take it. I'm good for 3. Got 4. हाय यार मैं छोड़ना नहीं चाहिए था मुझे एंगल सब बढ़िया था. Cállate. Gotcha. Ouch. Happy gaming. Thank you so much मेरे भाई. और तो भाई आप कहाँ से हो? उठ, सामने से आ गया. सामने से भाई. ऐसे थोड़ी जाने देंगे. उठ, पकड़ लिया. शॉर्टी भी जाऊंगा. वो शॉट ही मार सकता था उसको.
Oh, timing. Lol. Nice shot. Nice shot. Nice shot. Nice shot. 10 kills remaining. Folded. अरे यार मेरे को पता था वही है बग्गी वाला. And you're done. I'm good for 3. Nah. ये स्किल पे कर रहा हूँ हर बार. Five kills remaining. यार नाइस शॉट. दूरी बहुत था. Dominating. One kill remaining. 120. Tung 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 साउल. अरे यार तोड़ो. Hey, not bad. जी कर दिया. I have a nice day लिख रहा था पर इतना टाइप नहीं हुआ मेरे से. XDF कर दिया भाई मैंने. XD लिख रहा था एंड में. बढ़िया. मजा आया मजा आया. कॉम्प खेलने गया एक था. क्या सीन है. आओ भाई. कॉम्पी कहते. आर्केड बाबू का क्या चल रहा है. डी रैंक हुआ नहीं हुआ. आर्केड अरे इतना नीचे कब आ गया ये. Ascendant 2 चल रहा था तो हगू. Match found. काफी अगली है भाई. 7 9. चलो कोई नहीं. हेवन आया गाइस. बढ़िया मैप है. लो चाहिए भाई. ये लो. चलो चलो लेट्स गो. गाइस क्रेजी मचने वाला. गाइस अगर कोई नया है स्ट्रीम में तो हाय हेलो करो यार. ऐसे दूर 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 से बैठे क्या करते हो. बातचीत करो. है कि नहीं. है कि नहीं. है भाई है. बात करो. लाला को लगता हूँ ना पर भी हाँ पर भी क्या करेगी ये. कमलू भैया मैं साइफर. अरे B3 अरे वेलकम टू द स्ट्रीम भाई. प्रिंस भाई कैसे हो आप. ये बताओ क्या हाल चाल है आपके. लाला को लगता हूँ ना पर भी हाँ पर भी क्या कहेगी ये. Dang 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 dang. पूछो अभी लगा देते भैया. बताओ तो सही. That's cool. और डॉज हो गया भाई. डॉज हो गया गाइस. वैसे सस्ती आ रखी है थोड़ी नाइट मार्केट में. पर पैसा नहीं है. इस महीने पैसे नहीं है. तो मैं ले लेता ये. डैम भैया बॉडी तो अच्छी है. अरे अरे थैंक यू सो मच भाई. कोशिश कर रहे हैं भाई बस थोड़ा कि दूर से अगर चलता वहां आऊं तो दिखूं कि हाँ कुछ शरीर है लौंडे का. बहुत है उतना. वही कोशिश है भाई.
इसी कोशिश में जिम चले जाते हैं। फिर मैं क्या, जिम तो जाते ही हैं, थोड़ा फिटनेस की भी चुल है ही है, तो स्ट्रीमिंग में भी घुसा देते हैं इसको कि ऐसा स्ट्रीमर बन जाएंगे जो एकदम ऐसा पुशअप मारता रहता, मतलब ये ना। आप बताओ भाई, प्रिंस भाई आप कहाँ से हो? Match found. क्योंकि मैंने काफी ऐसे थोड़ी बहुत रिसर्च भी करी, मैंने देखा कोई ये काम कर नहीं रहा है ऐसे वर्कआउट के साथ गेमिंग वाला। मैंने कहा ये कर सकते हैं कुछ नया। यू बीट मी बाय 1 सेकेंड। श्राउड भाई, श्राउड भाई है ना भाई, बीट कर दिया एकदम। वेस्ट बंगाल कोलकाता, अरे वाह यार, क्या बात है ब्रो। दैट मीन्स आई एम बेटर। अरे यार ये तो अभी शुरू हो गए। Sage bro, can you take flashes? I want to op. Wow. Plusu, Plusu कर रहा है guys, Plusu। Sage bro फ्लैश लेंगे guys, क्या लगता है, फटाफट बताओ। ले ले bro। मैं भी ओमन खेलता हूँ, नाइस। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। आओ फिर आपको बढ़िया ओमन गेम प्ले, आई ट्राई टू शो यू बढ़िया ओमन गेम प्ले भाई। अरे अनलॉक नहीं है भाई, होल्ड। एक स्मोक्स ले लो गाइस। काकू सॉरी, एक इनिशिएटर। मैं ट्राई करूंगा भाई, फिनिक्स कर लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ, कर लेता हूँ। No. आता नहीं है पहले ही बोल रहा हूँ। नो, आता नहीं है पहले ही बोल रहा हूँ। नो सेंटी कॉम्प गाइस, नो सेंटिनल कॉम्प। कोई सी नहीं गाइस, इजी, लेट्स गो। तो उसके लिरिक्स का शुरू कैसे होता है भाई? गाना, मैं गाना भूल गया, गाना याद करना जरूर। सुप्रीम कैसे शुरू होता है? सुप्रीम लिरिक्स। ब्रो गाइस मैं लिरिक्स निकाल रहा हूँ, एक सेकंड में। गाना गाना मेरे को लिरिक्स नहीं याद आ रहे, देख रहे हो? हाँ मिल गया। जवानी फिरे पीकते वैरिया डी के, पैसा तेला रच के ते काम कर ठीक ने, तू करे नखरे मैं करा टकरे, मूरो दीजे टकरे बना दइए पकरे। अरे ये भी डॉज डॉज हो गया। डॉज हो गया भाई, डॉज हो गया, क्रेजी भाई। वो साला मजे ले रहे थे एक दूसरे की, क्या खेलना क्या नहीं खेलना, ये खेल लगा देता हूँ या छोड़ो, रैंडम पे रहने देते हैं। लगाने का मूड तो है मेरा, लगा ही लेता हूँ, मूड है तो क्यों नहीं। हाँ इसका ये वाला, ये चिपकेगी यार, मुझे लग रहा, ये फीलिंग आ रही है मेरे को, फीलिंग आ रही है मेरे को, ये वाली स्किन चिपकेगी, ये वाला कलर चिपकेगा। नक्टर्नम लगाऊं क्या? नहीं ये फैंटम के साथ पंगे नहीं लेते, फैंटम रिकॉन बेस्ट है, फैंटम के साथ पंगे नहीं लेते। वैंडल के साथ पंगे ले सकते हैं, कुरनामी लगा सकते हैं, या पूकी भी लगा सकते हैं। फैंटम के साथ पंगे चलेंगे भाई, उसके साथ पंगे नहीं चलेंगे। ये भी अच्छी है, मतलब रैंडमाइजर कर रहा हूँ भाई मैं। वैंडल जो आ गई वो खेल लेंगे उससे, वैंडल के साथ पंगे ले लेते हैं, फैंटम के साथ नो पंगे गाइस। एक्सो का लाल रंग चलाऊंगा भाई मैं, एक्सो लाल रंग, लाल रंग का मूड है, लाल रंग चलाएंगे। मिल जाओ भाई मैच। पारो मेरी पारो, इशारों इशारों में बात समझ लेना, दिल के
टुकड़े हजारों बिछड़ने से पहले आज समझ लेना शराबे खत्म दिए सारे जख्म फिर भर ना सके सोने जो न रातें खत्म Becomes में व्यू रिजल्ट सेन गई है अपनी MIBR बाहर होगी TH बाहर होगी ये दो ही बची है भाई क्रेजी ये दो ही है भाई अबे स्कोर क्यों नहीं मिला अभी स्कोर कब आएगा भाई हो तो गए मैचेस बस तो गंदा ही आने वाला स्कोर पर ठीक है फिर पिकअप में भाई MIBR और TH दोनों बार होगी भाई भाई वुल्स जो क्रेजी खेल गई है ना ओमन देखना है कुछ सिखा हाँ कुछ सीखना है देख लेना भाई अभी बस भाई लॉक कर दिया मैंने बदतमीजी करी मैंने भाई के साथ स्टोरी डार्लिंग सूर्य डार्लिंग कर दिया भाई मैंने भाई के साथ सोआ में भी सूर्य डार्लिंग होने वाला है गाइस इसके साथ सोआ भाई लॉक करो प्लेयर 5 भाई लॉक करो बदतमीजी हो जाएगी भाई ये ले भाई ने रेना खाया क्रेजी मैच जो जीरो नो इनिशिएटर ओनली 3 डुलिस्ट अच्छा इनिशिएटर ही तो है वो सॉरी नो सेंटी अगेन मैं थोड़ा अंधा हूँ गाइस माफ करें चलो भाई ये ले सेंटी ले लिया भाई ने बलिदान दिया भाई ने बलिदान दो बार 3 बार एक्चुअली पहले ओमन नहीं मिला फिर सोवा नहीं मिला फिर रेना नहीं मिली क्योंकि 2 डुलिस्ट ऑलरेडी हो गए थे तो भाई ने एंड में बलिदान देके केजे लेना सही समझा चलो गाइस सेन ने आइस भाई वो नहीं यार वो कॉम्प में मजा नहीं आया देखने में मैं ऑनेस्टली बताऊं मेरे को मजा नहीं आया उससे पिछले दिन वाला वो कॉम्प ज्यादा बेटर था नो सेंटी वाला कॉम्प ज्यादा बेटर था भाई जैगन को रेस पे रखना चाहिए था यार रेस बहुत मतलब वैसे एक टूरिस्ट चाहिए था थोड़ा ऐसे पर वो हारे उसकी वजह से ही थे पर ठीक है निकाल दी थी वो मैप डाउन हो गए थे पर ठीक है और धक्का मार रहा वो नहीं चढ़ रहा मेरा माउस क्यों अटक मैं हक दिया 2 बार जब वही तो सेकंड मैच यहाँ खेल लेते हैं ठीक है चलो गाइस लॉक इन आओ भाई वाइपर है नियॉन है उछलती हुई आएगी थोड़ा भी वाला है Wall up में shadows traveling फिर से क्या Get him. here Spike down B. cover going out enemy spotted shot dark One enemy remaining. yellow behind yellow let's go Okay, take a break, guys. Reloading. Watch them run when lit by my sonar. इनिशियल क्रॉस कैसे किया था वो वाइपर और बैक है मेरे पे मैच देखेंगे मैंने बैक कर लो ये राउंड हां सेन का आइस बॉक्स गंदा ही है भाई सही बात है कोशिश किसको मेरे पे है ले लो जैसे Gun here. Turret out.
Cover going out. एक ही था क्या अभी पे? हाँ मेरे को नियॉन दिखी बस। सोवा नियॉन। अरे अपने सो उधर। नहीं मेरा टेस्ट है। मैं ये जा रहा हूँ। Shadows traveling. को ड्रोन कर रहा हूँ मैं इधर से। एक पे रिकॉन। दो ए बेल्ट। आइसो का शील्ड है नाइस। स्मोकिंग है 1 सेकंड। Cover going out. Spike down A. Nice shot. Nice. Oh. I'm reconning behind for you. Right here. Found them. One enemy remaining. 30 seconds left. You spotted him. So. Reloading. I will take back what is mine. शेरिफ चाहिए किसी को? शेरिफ चाहिए किसी को? बढ़िया। दे दो। बट स्टिल जेंजी वर्सेस सेंध में हम सबको पता है कौन भाई। जेंजी भाई तोड़ के रख देगी भाई। जेंजी जितनी स्ट्रॉन्ग टीम है ना, कोई नहीं पिक कर रहा था उसको। अभी देखा तुमने पिक्स देखे थे? कोई पिक ही नहीं कर रहा था भाई। Shot. I'm rotating. Smoking into. Shotgun रहेगा देख के. Cover going out. सो और नियॉन लो है। सो और नियॉन लो है। Spike planted. -100 है दोनों लो है। सोवा लो है। Shadows traveling. Right here. पीछे बाहर निकल फाइट कर। एक सीटी है दोनों उधर ही है। Fight is diffused. सीटी लर्क करके आया। 80 आ गया। गन उठा ले। कोई नहीं बढ़िया। लेट्स गो। वो थोड़ा चौक पे खेलना है यहाँ। हाँ अरे टेक्सचर भाई थोड़े बावले हो जाते हैं भाई खेलते हुए। पता नहीं कुछ तो बकेट दो भाई मुझे। ये शॉर्टी बाय दो। हाँ दे। बी। Shadows traveling. Enemy killed. Enemy spotted A. ये लोग के पीछे। एक पे वॉल भी हुआ है। बढ़िया। बाकी तीनों ए पे। आजा दोनों। ड्रो। मेरी ऑपरेटर ले लो। I don't have a smoke. रेस को आजा। मैं टैरेट रिकॉन इन 5. There they are. No more sofa. Smoking in 1. Shadows traveling. Spike planted. One enemy remaining. Nice, so good. ऑपरेटर उठा ले। हाँ मैं उठा रहा हूँ। ऑप। गन नहीं है मेरे पास। गन है? ले लिया। गन गन हियर। Cool. Nice. Killed it. And them. We definitely PRX का समथिंग का निकाल दिया। वुमेन बाय मिलेगा। Turret out. थैंक्स भाई आज वाला मैच भाई कहीं भी जा सकता था। वो हग दिया था भाई 11-1 से हगा इन्होंने जो किया है। तुम लोग स्लो ही खेलो, उन लोग कुछ भी खेलो। उसके बाद भाई कवर अप हो गया बस किसी तरह वो निकाल दिया इन्होंने एंड मोमेंट। Time for a field test. बी आएंगे वो बी फील हो रहा।
Nice shot. Not smoking for now. Call the smoke का. ए पे वॉल आया एक smoke सब इधर ही आ जाओ प्लीज Shadows traveling. Line change करनी है, line change किया. Nice. हेड पे अंदर है क्या? घुस गए अंदर? नहीं अंदर घुसे 1 minute. Spike down A. तेरे नीचे केजे होगा उन्हें स्पाइक थी ना अपने पे इधर स्पाइक स्पॉटेड Here. Shadows traveling. One enemy remaining. 30 seconds left. नीचे जे ऑफ है उसपे टैग लो हेलो अरे यार 39 easy. Nice बढ़िया. Billy is the next team after Genji, so Sen को actually ये मेरी वाली नहीं है, तू मेरी वाली क्यों नहीं लाया? अरे यार अब वो वुल्स का जैसा प्ले स्टाइल है ना काफी सिमिलर है मतलब जैसे वो खुद खेलते हैं ना अपना सही है भाई सेन जैसे खुद खेलती है ऐसे स्लो लर्क पर वुल्स के भाई बस मुझे मारने के लिए ऑफ लेके आया लास्ट कि भाई मैं 2 बार लास्ट सेकंड के रोटेट्स भाई उनके वुल्स के लास्ट सेकंड रोटेट्स जो है भाई बहुत मैं ये रिकॉन देके भाग जाऊंगा ये पे पीछे Shadows traveling. इसको एक वन वे दे दे अरे ए भेड़चोद मेरे को सप्रेस कर दिया मां की चूत भाई आप अरे भाग ही गए रेस भैया आप बता ही देते आपके लिए तो आया था One enemy remaining. मैं भी मिड पता नहीं नो आइडिया मेरा 5 सेकंड में रिवील है वहीं दिख गया मेन नाइस शॉट बॉय लेट्स गो वो पिंक हेयर वाला बंदा क्या मारता है अरे कौन है पिंक हेयर वाला कौन है कौन सी ऑप है वो पता नहीं यार पिंक हेयर वाला कौन है मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा इंपेरियम जूसी बढ़िया खेल रहा है और लाइजर बहुत प्यारा खेल रहा है लाइजर ही है क्या पिंक वाले वाला आई गेस लाइजर है पता नहीं अरे यार मेरे को लास्ट राउंड अभी होगा मैं जो मेरे को थोड़ा हाथ थोड़ा फ्री करके खेलता था किल था मेरा फ्री का ड्रोन कर रहा है He is smoking in. Call the. It's you and me. डाल दिया. डाल दे. हाँ. बैंड का लोड़ा. Welcome to my world. I saw you. Last player standing. Spike planted. Stealing sight. वो भाग गया आजा आएगा ही नहीं क्या पट्टू भाई Cover going out. अरे वो आइसो ऊपर अरे इसको शील्ड कहाँ से मिली आइसो को अरे नहीं आइसो यहाँ से पाइप से ऊपर आ गया आइसो को शील्ड कैसे मिली अल्ट में अरे अल्ट में मिल जाती भाई अगर किल करे तो अरे तो भाई वो अल्ट में शील्ड लेके आया मेरे सामने हाँ तो शील्ड भाई एबिलिटी है भाई उसकी हेलो बाय देना चेंज हो गया क्या चेंज हो गया जेट भाई बाय देना हाँ जेट बाय दे दो उसको Thank you. पहले शील्ड रहता है उसके बाद भाई मारने से मिलता है हो गया क्या भाई कोई बात नहीं Shadows traveling. ये पे वाला है
ए 2 A 3 A नाइस Smoking again in the second. के लौड़े Shadows traveling. मेरा अल्ट है, मैं अल्ट पे खेल रहा हूँ। रेस तो अकेला है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में पीट करना रेस। लेफ्ट साइड में है मेरे। छोड़ छोड़ उसको आने दे, पुश करेगा तेरे को। ओह शिट, एक ऑपर है। Cover going out. राइट ऑपर है उसमें। अरे ब्लाइंड। और -70 हुआ, -70 हुआ। अपना अल्ट है, रीटेक कर सकते हैं। 30 seconds left. बी पे है। बी पे। Cover going out. Planting. Spike planted. One enemy remaining. लास्ट लो है, -70 हाफ HP है। अरे क्रेजी हो गया। The spike is diffused. मैं इतना सिखा कि आपको जिंदा रहना है पूरा राउंड, फ्यूचर डिपेंड करता है। हाँ मतलब मेन वो चीज भी है, मतलब ऐसे वो है, अगर तेरी अभी जैसे ये लोग भी सही खेल रहे, सही मार रहे सारे, अगर नहीं मार रहे होते तो मैं एक्स्ट्रा एग्रेसिव यहाँ पे मैं ये वाला पीक बहुत ज्यादा करता हूँ। अगर मेरी टीम नहीं मार रही होती, मैं यहाँ पे ये वाला जो मैंने फर्स्ट राउंड पीक ट्राई कर रहा था, मैं वो बहुत करता हूँ। उनका ये वॉल ए पे आया। आई थिंक ए वॉल फेक हो सकता है, इतना जल्दी नहीं देता वो। हाँ मे बी। Shadows traveling. वाइपर अरे भाई Nowhere to run. Right here. मिड नाइस। वाइपर डेड। क्या मिड वाला डेड है। कितने की बी पे है? हां ये के अंदर आ गए, Deploying drone. Spike planted. एक अंडर है। Last player standing. लो है 120। कॉकडार्ट मार सकता है। साइड किसका है वो? अरे वो मिड पे वाइपर यहाँ अपना ऑर्बूर मार के अंदर घुस गई शायद। मिड पे राउंड अच्छा निकाल दी वाइपर उनकी। कर सकते हैं। देख अब ये वही किया ना उनकी वाइपर ने कि अब उसकी टीम से साइट नहीं मिल रही थी तो मिड पे लर्क निकाल के ट्राई किया उसकी वाइपर ने। 2 पिक मिल गए, ऑफ गार्ड था, मेरे को एकदम ऐसे घूम के फ्लिक कनेक्ट नहीं हुआ मेरा। बॉल आया है। It's you and me. आया क्या कोई? मिड से आ रही, मिड से वाइपर। हां देख ड्रोन हो रहा है पे। मेरी गन उठा ले सवा। वाइपर बी पे है। एंटर हो रहा है। आइसो इधर है। कांटेंग यार। Spike planted. अरे यार कम ऑन एम। अंडर टोमेटो हो सकता है। Stay down. हाइड Last player standing. एंटी रे हाइड होता थोड़ा सा निकल जाता एंटी। पर जा तो वो ज्यादा पर। हाँ वो तो स्पाइक से फट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर सकते हो। हमारे वाइपर थोड़ी क्रेजी हो रही है, उनकी वाइपर क्रेजी हो रही है। I survived obliteration. वाइपर वो लर्क कर रहा है बैंड का लौड़ा। हाँ वो वाइपर उनका थोड़ा इनिशियली पकड़ लो, अगर फाइट इनिशियल फाइट लेनी वाइपर से। नहीं फाइट मत लो, ये 2-3 डे हो सकता है। इधर किसी को
वो ट्यूब के नीचे से आता है कि ट्यूब के अंदर से? वो भाई वो थोड़ा मिक्स कर रहा है। अभी एक राउंड ही आया था, नीचे से आया था, लास्ट राउंड बस स्मोक देके भाग गया वापस। Cover going out. Stay in sight. पक रहे फैंटम होती किल था मेरा। वाइपर डेड है बैन का लोड़ा। ये देखो आईसो को 40 लगा। Scanning ahead. साइड पे है ना? हाँ यहाँ तक पाइप्स तक तो था। हाँ है। Last player standing. Got him. पूरा ऑफ करके Spike ले गया। planted. आईसो Satchel out. तूने मेरे पे अकेले पे अल्ट मार दिया। Last round in the half. क्या हो रहा है? क्या गलत हो रहा? अपन है यहाँ पे मेरे अल्ट मार दूं क्या उन पे? रुक। देख लो। पहले दान दे दो। पे देखते हैं। आईसो मिला तो तू गया भाई देख। भी नहीं है यार। जेट भाई बाय देना। Thank you. It's you and me. अरे यार। वाइपर लो है मिड पे। एक हेवन है। दोनों ए पे शायद। Shadows traveling. One enemy remaining. Nice shot, Jet. No charges. भाई गलती से लगा है मेरा, वो इतना एम था नहीं वो। ठीक है भाई कोई ना। डोंट डाई। अगर रोटेट कर रहा करने दो, डोंट डाई। लेफ्ट साइड। Thirty seconds left. ये कौन है? तो अब तक ये पे ही है। वुमेन क्रॉस देख रहे तुम लोग का। ये हिट करेगा। नाइस। Shadows traveling. Switching sides. Strike at their weak points. Whee! For link breaks. पीछे ले। मैं फेक रिकॉन दूं कि सर करेगा कोई? सर करेगा कोई? हाँ कर देता हूँ। स्मोक मैं बॉल फेक देगा रिकॉन दूं क्या पे? कि बी पे येलो पे स्मोक। दे अपन स्लो जाएंगे, 20 स्लो जाएंगे। ठीक है। हाँ एक कम से कम ना। Turret out. केजे। टीम पे आ केजे साथ में। ओके। स्लो जाएंगे, घुस मत पहले, रुक। पुश करने दे सर। आवाज दे रहा अपन ये पे। हां। आवाज मत दे, ए पे आवाज दे। लेट पुश राइट। Cover going out. अरे वाइपर। Cover going out. अरे सब इधर आ गया। वाइपर फ्लैंक है। जा वापस जा दो। बाबू 60 वाइपर 60। आईसो लो है। लो है आईसो। एक और गोल लगी। नाइस। वाइपर 60 है। एक फ्लैंक है। दोनों बोथ है आई गेस बोथ, नॉट श्योर बट बोथ।
क्योंकि एक पे नहीं एक है। One enemy remaining. 60 टैग द लास्ट। क्या तू पीछे रहना उसके येलो के उसके टैरेट। नाइस ब्यूटीफुल राउंड गाइस। हम लोग दोनों ए पे बहुत कीड़ा कर लिया उमेर। हम लोग को उनका वाइपर लर्क कर दिया और अपना केजे का टैरेट ऑफ हो गया क्योंकि उधर था। अरे वही थोड़ा का लर्क का मिस्टेक था। हाँ वही नहीं अरे उसके सोवा ने एक्चुअली क्लियर कर लिया था ड्रोन मार के ना, इतने में यहाँ पे बंदा मर गया अपना। निकलना पड़ा मुझे भी, नहीं तो मैं डायरेक्ट अंदर जा रहा था। डायरेक्ट टाइप उसने क्या वाइपर का वॉल का था? वाइपर का वॉल यही डिफॉल्ट वाला वॉल होता है और अच्छा 410 वाला। मैं बस रिकॉन दे रहा हूँ, उनका नियॉन खेलता है, फिर मैं उधर से ड्रोन मारूंगा नीचे से। रुको रिकॉन। नाइस शॉट। रुको ड्रोन के लिए। मर गए वो। नाइस। मैं स्क्रीन स्मोक कर रहा हूँ। मेरे पास हेवन का स्मोक नहीं है मेरे पास। ब्लाइंड राइट हियर टेक का लाइन का टर्रेट डाउन है। अच्छा आ गया वापस। One enemy remaining. नाइस। This place is nice. Sheriff Not dinner nice is. enough to die in. ये ले ले Let's win मेरे and get out of here. से। रेतर को चाहिए? मिड टर्रेट स्मोक चाहिए क्या? या एक मिड लर्क स्मोक डाल देता हूँ, एक थोड़ा स्लो करना है तो बताओ। इधर ये पुश करता है बेस्ट आईडिया। आता है कोई मिड पे आता है? अरे वो केजे वगैरह घूम ही रही है। वाइपर केजे ये लोग। ओके मैं देखता हूँ, तुम जाओ तुम जाओ। ए फास्ट चलो ना, ए फास्ट चलो। ओके आराम से। हां Placing sentry. Enemy spotted me. टैंक को लेते हैं, 2 लोग हैं। 2 बंदे फ्लैंक में। Grenade. एक अंडर था और एक ट्यूब में डबल पिक किया उसको। Cover going out. शॉट डाउन Cover going out. अरे टप्पू दिख गया। अबे क्लोज राइट यार। Last player standing. Spike down A. Flawless. अरे नहीं रे, ये लर्क स्मोक चाहिए था, मैं वही बोल रहा था। कोई नहीं, अनलकी। We have some beats. ये बेल्ट से ऑफ करता तो आउटलॉ करता तो एक पिक मिल रहा था इसको सोवा का। लेट्स गो टुगेदर। पहले रिवील तोड़ दो और फिर क्लोज रिवील। कोई नेट आ जाओ एक साथ। तुम लोग जल्दी फर्स्ट फ्लैंक आते तो हम लोग साइड ले लेते हैं, फिर Light from them. आ जा जेट। वो रिकॉन तोड़ो। Revealing area. ओके मेरा भी टूटा, क्लोज हो सकता है। रुक मैं ड्रोन देता हूं। अरे ड्रोन का ओ आइसो है और लैंड दे रहा, घुस रहा है तो राइट लेन लैंड है। बैक देख रहा हूं भाई यार घुस जाओ जेट भैया, डैश मार। अरे भाई राइट लेन पूरी। No target left. Last player भाई क्या standing. फट्टू है भाई डुएलिस्ट अपने। मान मेरे को घुसना पड़ेगा, नहीं हो रहा इनसे। वाइपर 70। जेट भाई ये पूरी लाइन ब्लाइंड है, यहाँ लेफ्ट पे एक स्मोक डैश कितना है। लोग खेलना है गाइस, बता दो। वही भाई नहीं तो आइडिया था तब तुम लोग अंदर जाना पड़ेगा। अरे यहाँ पे लेफ्ट पे डिटेक्ट हुआ था ना बॉक्स के पीछे, पूरा ब्लाइंड था, वो पुश ही नहीं किया, डैश ही नहीं मारा भाई। अरे वो फायर खेल रहे ब्रो, नहीं हो सकता। अरे तो कॉल देना भाई, नहीं घुसना तो कॉल दे। वो वॉल के पीछे क्रॉस फायर पे खेल रहे हैं, मैं समझ हर गया। बार उनकी अरे मेरे भाई मैं समझ गया, मैं समझ गया, कॉल दे। तो खेलो, स्प्लिट खेलो, स्लो खेलो आराम से। मिड लर्क स्मोक डाल रहा हूं। Shadows traveling. मैं इधर बैठ रहा हूँ, तो आगे जा सकता है।
105 tagged है KJ 1 HP. Thank Viper A man. Cover going out. B plant हो रहा है. No charges. Women -52. Shadows traveling. Last player यार standing. that was fine. वुमेन -52 है. 25 लगा हुआ है उसको वाइपर को. अपनी वुमेन को लगा है. मोली खोल दे. आ गया. Found them. So swarm grenade out. दूसरी मोली डाल दे. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. अरे वुमेन बढ़िया खेला भाई. मैं क्या करूं वहां पे. मैं जिंदा रहता हूं किसी तरह. निकल रहा है, स्लो निकल रहा है अपना. We won't lose. एक काम करना वुमेन, तू मिड ही जा, 2 बी जाओ 2 ए जाओ. मैं तो कह रहा हूं उधर मांग ले केजे मांग ले भाई, मांग ले बैठ पे खेल लूंगा. Need a drop. 2 लोग उधर जाओ, एक ड्यूलिस्ट उधर जाओ, एक ड्यूलिस्ट इधर हो. साउंड करो. कोई शेरिफ दो मुझे. Cover going out. Placing sentry. ऑपर है. It's you and me. बी चल रहा है. वाइपर डेड है उनकी. बार हां वाइपर ज्यादा चल रही है. डेड है. बी स्मोक दे दो. एक बी स्मोक. हां मैं स्नोमैन का स्मोक डाल रहा हूं. My ult is ready. Shadows traveling. I got the I spike. have this. प्लांट करो यार. अरे ये मत करो भाई, प्लांट कर लो ना कोई भी. अबे अरे उसका अल्ट है भाई. कोई बात. Cover going out. मेरे पास अल्ट है, अपन अल्ट पे खेल सकते हैं. Placing swarm. अल्ट मार दे, अल्ट भी मार सकते हैं. Initiated. Nowhere to run. Flank. अरे Lockdown destroyed. टर्रेट भाई. अरे ऑफ हो गया हमें प्लांट पे ले Alarm गया. bot down. Swarm grenade out. और टैप पे बना रहा हूं. Enemy spotted. येलो पुश. येलो. Watch them run. You thought you were set. Last player standing. हो गया टाइम हो गया बस थोड़ा सा. हो गया. अरे पैंच हाफ और ब्रो यार. Everyone note down your observations, then let's run it again. हाफ हो गया. अभी होगा एग्रेसिव वुमन. लर्क स्मोक का फायदा क्या होता है? लर्क स्मोक यार, अरे मैं यहाँ पे जाऊँ ना जाऊँ, मैं बस एक स्मोक डाल दूँ और मैं जाऊँ या ना जाऊँ उनको पता ही नहीं है मैं आया हूँ नहीं आया हूँ. उनकी वाइपर आ ही रही है हर बार. पुश ही कर रही है वो बस. Cover going out. Placing sentry. क्लोज ऑफ रहेगा देख. ऑपर है पे. I have this spike. 120 वाइपर. Shot down. मिड जाएंगे. मिड चले. Shadows traveling. Last player standing. यार मिड चलेंगे. Silent. ऑपर ए पे. यार ये लोग साला मर ही जा रहे हैं. Scanning ahead. ऐसे थोड़ी लड़ पड़ेगा 5 मिनट पे मर जाएंगे. चालीस सेकंड है. एक पिक मिलेगा. बहुत विनेबल गेम है. $30 seconds left. One enemy remaining. Now for
10 seconds left. अल्ट पे खेल ले अपने, थोड़ा दूर रह के। Spike planted. Deploying drone. शॉक डार्ट है, रिवील है, सब है तेरे पास और एस भी है तेरा। खेल दे इन मार देगा बड़ी। आ गया I am the hunter. Out of charge. पुशिंग PRX। अबे छोड़ देना, बोला तो सही था। एंटी यार, नाइस ट्राई यार, नाइस ट्राई। इतना पैनिक क्यों हो रहा है? अरे यार भाई उसको खेलने देता हूँ, गाली देता हूँ। 10 कॉल तो उसको बता रहा है ये है तेरे पास, खेल लेता हूँ। हो गया बेचारा। अनलकी, कोई बात नहीं। तेरे पास रिकॉन था, डायरेक्ट वो करना ही ना था, रिकॉन डालना था। वो फेक करता, क्या करता, कुछ करता, फिर उसके बाद कर अल्ट। कोई बात नहीं, अनलकी। कोई नहीं भाई, खेला छोड़। अबे साथ चलो। बी फास्ट हिट। मेरा ड्रोन ड्रोन हाँ यहाँ रिवील मार दे, फिर ये वाला ड्रोन निकाल ले। अब यहाँ पे ड्रोन करना यार, देख लो। चलो मेरे को नहीं रुकना भाई, पीक आएगा ऑफ के। ओके कर लो ड्रोन कर लो। माय बैड। Take flight. Welcome to my world. Cover going out. Blinded. अबे ये कॉर्नर। Spike अबे down स्पाइक। B. मरा वाइपर मरा। Need the spike back. I have the spike. अबे यार वो जो पीछे आ क्यों सकता है। टाइम दे रहे हो रोटेट का? वाइपर मिड का ये बैठा होता है यहाँ पे। अबे वाइपर मरा है भाई। बी जाएंगे वापस, चलो। ऑपरेटर पड़ेगी किसी के। बैक स्टेप टर्रेट डाउन है। Turret down. कॉलिंग दे रहा लोग, उसकी कॉलिंग। Spike No down more B. Sova. स्नोमैन ऑफ पे। I have Last player standing. माइनस 8 लो है। Left. One enemy That's remaining. done. ट्रॉली बैक स्टेप। नाइस। Placing swarm grenade. I got swarm grenade out. Can't use that. Look for my shadows, they will hide you. इको करना पड़ेगा अपने को। सुनो मैं बॉयलर का स्मोक मार रहा हूँ, सारे अंडर ट्यूब लगा के रखो। दो बंदे यहाँ ऊपर लगा के रखो। आता ही है मेरे कोई ना कोई फॉर श्योर आ रहा है। They're not equal. मैं यहाँ लगा रखा हूँ। Shadows traveling. Out. It's you and me. ओए मिड पुश हुआ। Spike down mid. मार सकता है रेज़ उसको। चल ले भाई साहब। Last player standing. साथ में कभी पीक नहीं करेंगे बहन के लौड़े, बेटर इकट्ठे हुए हैं भाई। छी यार, इरिटेट हो रहा है अब मेरे को, इरिटेशन हो रही है। ओके फाइनली ओके। वाइपर बंद है। Blocking sight. इनकी वाइपर थोड़ी है क्रेजी। You get a pick. We move in. बी फास्ट चलो ना भाई। वो मैंने इधर स्नोमैन स्मोक मिड का मत। मैं तो डाल ही रहा हूँ भाई। चलो ना तुम चलने वाले तो बनो। चलो भाई, ड्रोन करना है, ड्रोन कर ले पहले। हाँ करो। नॉर्मली बी पे कोई होता ही नहीं है, सब ए पे ही रहते हैं उनके, ए और मिड। बी पे सिर्फ केजे होता है, वो भी क्या होता है उसका इधर डिफॉल्ट पे शॉट डाउट करके उसका पूरा ये निकालूंगा। ये भाई थोड़ा बैठ जाएंगे। Deploying drone. वाइपर है इधर, इसमें येलो पे।
Let me get the ult. Cover going out. Revealing area. Dead. Cover going out. बैक स्टेप देख ले भाई प्लीज एक। हाँ देख रहा क्यों भाई? Spike planted. My ult. Go. You should run. मेरा हाथ घुमाना था यार। Last player standing. अरे क्या करेगा, क्या है? कर ले मैच, एक स्टिक कर गया, सेव कर ले भाई। Match point. सेम कर सकते हैं, आ जाओ। हाँ बी चलो, I'm ulting। भाई सेफ प्लांट भी दे दोगे ना, कोई इशू नहीं है। प्लांट तो दिया मैंने, मैं मर गया उसके बाद साथ ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मैं अगर यहाँ से खड़े होकर यहाँ टीपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ टीपी करता, वो बहुत क्रेजी हो जाता। बी फेक कर सकते हैं हम लोग। तू फेक करना है इसको। Watch them run. Gutted. Shadows traveling. स्नोमैन 1। अरे डाउन है तेरा तुझे ये जड़ बचा के रखना। बचा के स्मोक दिया, पिटी स्मोक दिया क्या तूने? One enemy remaining. बढ़िया Here. ऊपर है Stealing sight. Easy, that's it. Don't stress if I die. अभी क्या करना है? अभी ध्यान से खेलना पड़ेगा गाइस। ये चलो अल्ट है, केजे के अल्ट पे फिर से खेल सकते हैं बी पे। उनका सवाल खेल सकते हैं। बी पे थोड़ा ये है तोड़ना भाई। हाँ यहाँ पे अल्ट चाहिए क्या आपने भाई? यहाँ ये तो केजे का ए पे देख लो बता। बेटर होगा भाई अगर तो लोग बी फेक कर सकते हैं, लोग बी फेक कर सकते हैं, ए फेक कर। मैं ड्रोन कर रहा हूं, मैं नहीं जाऊं, मैं ए फेक कर। हाँ ठीक है राजा एक स्मोक उधर फेंक ए फेक कर रहे हो कि बी फेक कर रहे हो? हाँ बी फेक कर रहा हूँ। अरे हाइड कौन सा हाइड? अबे हाँ ऑपर है। ए फेक कर रहे हैं। वी कैन कर ले बी कर। मैं निकल ही रहा हूँ। It's you and me. मिड पे 1। ओके लेट हिम बी। बढ़िया। स्नोमैन स्मोक कर रहा हूँ। Cover going out. Shadows traveling. प्लांट कर। हाइड्रोस प्लांटिंग फॉर एवरीथिंग। सेव कर लो, पीछे जाओ तुम दोनों पीछे जाओ, मैं इधर खेलूंगा। 3 आराम से। फ्लैंक। भाई Nowhere to run. जल्दी आ। No charges. One enemy remaining. अल्ट है तेरा? बस हाइड। टाइम निकाल। अबे राइट साइड है। लेट्स गो भाई। मिड पे इतना टाइम निकल रहा है। बढ़िया। Switching sides. 112 था भाई। I feel the strain. Block it out, Omen. ओ मादरचोद वाइपर बहुत हरामी है भाई उनका। देख वाइपर ए वॉल है। ए वॉल जेट के लिए भाई रिकॉन वगैरह तोड़ना जेट का। रिकॉन तोड़ेगा? हाँ इधर होता है ना। सो भाई इनिशियल रिकॉन मत देना आप।
जब अंदर घुस रहे होंगे ना जब स्मोक के enter थ्रू, करेगा, हाँ। हाँ वही स्पैम खेलना। पुश पुश स्मोकिंग, नाइस वन। Shadows traveling. ऊपर है क्या, ऊपर है क्या? जाओ, ए हो रहा है, जल्दी जाओ। प्लांटिंग है। एक सेकंड। Spike planted. अबे भाई It's you and me. Last player standing. Blinding. Let go. Come on, bhai, come on. What the fuck are we trying to do? Switching sides. Match point. Remember, your weapon is only a tool. You can't just shoot. You have to think. क्या करना है? Be होल्ड obvious करो, स्लो खेलो, बहुत स्लो खेलो, एकदम स्लो। रुको आने दो बाहर। नहीं होगा रे स्लो पे, समझ नहीं रहा है। मिड पे आएंगे वो बाहर। एक बी पे जाओ ना, बी में जाओ ना। मैं ऊपर चढ़ के ये देख रहा हूँ। ट्यूब साइड रही है, एंगल छोड़ के रही हो। अंडर ट्यूब देखता रहे। अबे ये हाइड, ये क्या हाइड है ये? ऊपर डेड भी। ये आओ गाइस, ये आ सकते हो। ए जाओ, मैं इधर सब दे रहा हूँ। यार -40। Cover going out. आइसो होगा Cover going out. Stealing sight. कॉर्नर क्लियर करना। रेड ले जल्दी भाई। It's you and me. खा ले आइसो को। आ गया भाई। I have the spike. Last player standing. Die. वाइपर मिड पे। 6 गोली। 30 seconds left. Defenders बोला win. 6 गोली। अरे तो क्या करूं भाई? भाग दिए स्लो वाला मिड पे तो छिया कुछ साला ये आने की कॉल देते ए पे साथ के साथ बंदा मर जाता अपना। अनलकी। Viper was very good भाई, Viper भाई was crazy। ये देख भाई 100 ब्लड भाई, इसने भी मारे यहाँ पर, इसने डिफेंड में मारे थे। अटैक पे जो हक्का मचाया भाई, नहीं भाई वो नाइफ अच्छा था। अच्छा वो जो केजे को नाइफ किया था अल्ट करके, हाँ वो तो ओमन मेन फॉर रीजन भाई, रे ओमन मेन फॉर रीजन। यार अटैक में बहुत ऐसे फटी में खेले यार, अटैक में थोड़ा वैसे खेलते ना कि हाँ जैसे डुलिस्ट की तरह खेल रहे हैं। 2 डुलिस्ट थे, दोनों ऐसे खेल रहे थे, दोनों एकदम ऐसे खेल रहे हैं, कोई इनिशिएटर यूटिल नहीं मांग रहे हैं कि यहाँ जाना वहां नहीं यार, ऐसे तो मैच फाउंड। अरे नाइफ का फिनिशर क्यों नहीं होता? अरे नाइफ का फिनिशर पता नहीं भाई नाइफ का ये तो भाई राइट वालों ने रखा है, क्या ही कर सकते हैं उसका। तो चलो बढ़िया गेम था, हगास हो गया थोड़ा सा पर बढ़िया गेम था। वो 1-2 राउंड जब मैं स्पाइक दे के मैं जो खुद ही थोड़ा उस हिसाब से अपने हिसाब से खेलता ना, निकाल देता, मैं गेम ही निकाल देता पक्का। थोड़ी सी यूटिल मेरे को मांगनी चाहिए थी, सुपर ठीक है, बैड गेम।
PRX is where someone says something pithy and we pretend to एक बार tolerate खेलोगे? them. सोच रहा Go हूँ ahead. खेलूं ना खेलूं क्या I'll करूं? wait. Let's kill this competition. हल्की हल्की Futile. Wait, 147. Wow. लगा रे उसको 145 लगा. Obsolete. एक कस्टम वन. हाँ आजा, मैं पार्टी कोड भेजता हूँ. ये ले आजा. कस्टम तो क्या ही मजे मार लेंगे कस्टम में तो. आ जाओ. ये ले. मैं 1 मिनट आया, वॉशरूम जाके आता हूँ मैं. मस्त. ऐसा भी मैं स्ट्रीम में स्नाइप कर रहा हूँ. मेरी खुद के कीबोर्ड की आवाज मेरे पास आएगी. आ गए. मैंने स्ट्रीम ऑफ कर दिया. हेलो. मैं ऑफ कर दूंगा स्ट्रीम. आए. हेलो. हाँ मैं स्ट्रीम ऑफ कर दिया. मेरी खुद की कीबोर्ड की आवाज मेरे कान में बजेगी. हाँ अच्छा वो तो कर दो भाई, वो तो क्या ही सीन है. यस यस. क्या डीएम खेलना है टीडीएम खेलना है ना? ठीक है देखते हैं. क्या डीएम खेलना है टीडीएम लगाऊं? डीडीएम डीएम 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 लगाते हैं भाई. ये लो जी. हम लोग भाई कितने दिन से खेल रहे हो? मैं कितने दिन से भाई? साल पूछो. सालों से, कितने बरसों से, साल पूछो भाई. कितने जमाने से खेल रहे हो? ठीक है ना? नहीं मैं तो भाई मतलब वैसे मैं एपिसोड 1 एक्ट 3 से खेल रहा हूँ. Warm up. नाइस शॉट. क्या बात है. These guns we use are okay, but I will also bring my own. अलीफ भाई द गुड. मार दिया तुझे अलीफ भाई ने. अरे आए. आपका नाम अलीफ है क्या भाई? नहीं. नहीं तुझे चला ले भाई, गन चला ले. I don't think so. मैं थोड़ा मेरा एम हूँ आगासी हो रखा था अभी, तो मैं क्या शेरिफ से थोड़ा सही कर देते हैं.
शेरिफ अच्छा चला ले तो चल भाई सही है। लास्ट मैच सोवा द गोट, अरे भाई आई एम बिग फैन ऑफ हिज, ही इज माय आइडल। अच्छी है। नाइस शॉट। द गोटी, द गोट, ठीक है भाई जैसा आप बोले। नहीं करना था 127। मसाला यहाँ पर Not your best. बैंडेज लगाना। पैंडल लाऊं? यस यस। मारो मारो पैंडल लाता हूँ। ये स्ट्रीम पे नहीं आया ना? क्या? अरे सेंड हिम फ्रेंड रिक्वेस्ट, ही विल लाइक टू गेट कैरिड। अरे यार मेरा कम ही होता है सीन, मतलब ऐसे दोस्त लोग होते हैं मोस्टली। अभी जैसे अभी हम लोग वॉच पार्टी करके फ्री हुए थे। सूर्य डार्लिंग अभी मैच देख रहे थे पेपर एक्स कील का, उसके बाद मैं आ गया खेलने। एम भी गंदा सा ही हो सोचा मर गया। नहीं मेरा एम हिल रखा है थोड़ा, एम हो नहीं पा रहा मुझसे। ओह नाइस शॉट। नहीं भाई आप ब्रॉन्ज नहीं हो ना। ये बात तो शुरू हो गई। नहीं नहीं रहने दो मजे मत करो। रियल रैंक बताओ फटाफट। ये रैंक पे मेरी स्किन्स है, मैं तब से ब्रॉन्ज पे आता हूँ भाई। ट्रैकर लगा के चेक कर ले सकता है तू। अरे भाई आईडी दूसरी होगी, ये बात नहीं रहा। ये मेरी है। मेरा गेम सेंस नहीं है। मेरे दोस्त लोग भी बोलते हैं ऐसे, डायमंड, असेंडेंट, इमॉर्टल भी बोला एम अच्छा है, लेकिन गेम सेंस नहीं है मेरा। वही इसके लिए स्टक। इसीलिए आपका देखना है मेरे को वुमेन गेम प्ले, समझना है। ऐसा क्या? अगर मैं मजाक से हट के बताऊं, गेम सेंस चाहिए भी नहीं भाई उसमें। अपना फ्लैट तक ऐसे ही आ जाते हो। सोलो करेगा ना, एम अच्छा है ना, अपने फ्लैट तक आ जाता है बंदा। अरे यार वाइट जा रहा था। लॉस्ट जस्ट लाइक लिक्विड, कम बैक एंड देन लॉस्ट आइकॉनिक। आयरॉनिक अच्छा है। You lose. तो फनी कर दिया भाई, पर इट वाज लाइक कि पता लग रहा था एलिमिनेशन मैच है, मजा आया। 11-1 से जो कमबैक हुआ भाई वो बहुत प्यारा था। अरे मजे लिए जा रहे हैं। So close. अरे क्राउच करके एम पे आया, फिर मैंने क्राउच छोड़ दिया। नाइस। गोश्त चलाता हूँ थोड़ी, एम सही हो थोड़ा गोश्त पे देखें। नाइस 95। लल एक सेकंड में क्रॉस चेंज करके आया। ये रहा आपके डाला क्रॉस। Do better.
अरे अरे हक दिया हक दिया हक दिया हक दिया। ये जो क्रॉच किया ना भाई आपने बीच में एकदम मजेदार। तूने मेरे को मारा, मतलब आपने मेरे को मारा, तब मेरा जो सर था ना वो ऊपर गया, मेरा एम भी ऊपर चला गया। भाई वो फैंटम वाले हेडशॉट वो भी सेम ही होता भाई। ओए निकला एक हेडशॉट। कनेक्ट नहीं हो रहा है शॉट्स, आज दिन खराब है। आओ आओ आओ। होली शिट, इतना जल्दी मार्शल चलता भी है? बिना स्कोप के चलती है, बिना स्कोप के चला लो। हर बार नहीं होता। एम डिफ तो है, इतना तो नहीं है, आपका भी अच्छा ही है एम तो यार। इससे वॉल बैंग होता। You look just like Tim Lockwood. Tim Lockwood कौन है भाई? Tim Lockwood के जैसा दिखता है। 1 minute remaining. This outlaw नहीं पड़ेगा टाइम से। outlaw लेके आ रहा हूँ जरा सीधा। I don't think so. Holy shit, ये ना सोचा था। Oh, 30 seconds left. अरे कोई बात नहीं भाई। आवाज तो बड़ी कर दिया आपने। उसको मारा था लगन। Nice shot. GG. डीएम खेलना है और यहाँ पे जाना है। टाइम क्या हुआ? टाइम देखें। 4:40 हो गए, लास्ट खेलते हैं। चलो। क्या ये कस्टम खेलना है, सिंपल खेलना था भाई? कस्टम ही खेलते हैं, मजा तो आ रहा है। कुछ सिखा दे सकते हो? सिखा सकते भाई, ऐसे तो क्या ही बताऊं भाई, मैं ऐसे खेलोगे जितना उतना ज्यादा चीजें समझ आएंगी। बात तो सही है वैसे। ये और आप कब से खेल रहे हो, कब से खेलना शुरू किया? मैं शुरू में एक बार खेला था, उसके बाद मेरा गैप आ गया, वो कोविड का गैप आ गया, तो मेरा 2-3 साल बंद था, ठीक है ना। उसके बाद मैं अभी से फिर से खेलना शुरू किया, लाइक पिछले साल के अगस्त के बाद से, नवंबर से। सितंबर नवंबर Warm up. बस वही प्रीएम वाला सीन है। एम में तो वही है कि प्रीएम करने का ट्राई करो, कि एक्सपेक्ट करो यहाँ पे टकला आएगा सामने वाले का। और गेम सेंस में वैसा है कि थोड़ा सा खेलते खेलते सामने वाले दिमाग से सोचो कि इफ यू वर देयर इंस्टेड ऑफ हिम तो तुम क्या करोगे। अच्छा, पीजाई का टोपी मेरे को दिखा, लेकिन क्या ना वो बैकग्राउंड के साथ मिल गया।
अरे अगदीस 106 मेरा वॉल बैंक पड़ी थी आपको? हाँ लगा था वैंडल ले लिया। हाँ जी। ओह अगदीस बॉडी लगा। ओह Why are you running? Why are you running? मैं आया और मैं मरूंगा वैसे। रैंडम से साला बॉडी ही मन लग जाता। हाँ नैरो बूम 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 बूम। वो एक्सपेक्टेड था ये। 2 नैरो के बाद तीसरा वाइड आ रहा है। इतना हिलते क्यों हो आप? अरे तो भाई गोली मार दोगे आप, मैं रुकू रहूंगा तो मैं भी हिलूंगा। ये देखो मेरे को आप मार दोगे ना, ये देखो। अरे तो ट्रैक करना, गोली चलाने से पहले ट्रैक करो फिर गोली चलाओ ना। पहले ट्राई करो, पहले एम उसके ऊपर आए उसके बाद गोली चलाओ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो राइट जाने वाला तो पहले अपना एम हल्का सा राइट खिसका लो उससे जाने से पहले, फिर गोली। ये देखो आधी तो प्री आधा तो प्री एम में निकल जाता भाई गेम। अभी मेरे को पता है, अगर मैं आपको जैसे पता है कि मैं टॉप में आ रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, आपने एम अपना पहले वहां एडजस्ट कर दिया कि मैं ऐसे निकलूंगा और हेडशॉट एंगल पे आएगा, समझ रहे हो? हाँ तो बस वही है, उतने में गेम निकल जाती है भाई। रैंडम से वॉल बंद होता है। मेरे को एक गेम मैकेनिक्स समझ नहीं, सब कुछ समझ रहा हूँ। ओह नाइस, मैं थोड़ा वाइड जाने का ट्राई कर रहा था पर गया निकला ही नहीं। फ्री फायर हाँ तो वही होता। तो वही चीज है। अब जैसे मैं 2 बार अगर फॉर एग्जांपल मैंने वो किया, छोटा छोटा पीक लेके तीसरे में बड़ा पीक लिया, फिर वो चौथी बार पता है मैं आऊंगा, मैं 2 बार ये करूंगा उसके बाद मैं वाइड निकल जाऊंगा, समझ रहा है? तो उसकी जगह मैं वो चीज मैं मिक्स कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये कर दिया मैं एकदम मैंने पहला पीक ही इतना वाइड ले लिया कि तू एक्सपेक्ट ही नहीं करा, समझा? और मैं ये देख ऑफ एंगल पे मैं बैठा हूँ, ये बैठ गया मैं, क्यों करेगा तू एक्सपेक्ट? ऐसे उल्टी सीधी चीजें ट्राई करते रहो बीच बीच में कि कभी ये कर दिया बनना है। हाँ तो कि पता नहीं लगना। अभी जैसे तेरे को पता है कि मैं आऊंगा छोटू सा पीक लूंगा, मैं ऑलरेडी वाइड निकल गया, समझ रहा? ओके ये तो चल फ्री फायर मार दिया मैंने पर ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं मेरे को बाजू दिख गई थी जाते हुए। और बाकी वही है, एम ट्रैक करो उसके बाद गोली चलाओ। ये तो जिगल पे बल्ब होता है हेडशॉट। ये क्या एंगल है? हेड ग्लिच बाबू, हेड ग्लिच एंगल, हेड ग्लिच। मैं वहां नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा। मस्त है। अरे वो मैंने कभी देखा नहीं। वो प्यारा हेडशॉट एंगल है, बहुत प्यारा है। 2-3 और है ऐसे बढ़िया वाले। ये देख एक और दिखा। मैं नहीं खेल रहा ये गेम, मैं नहीं खेल रहा। सॉरी भाई सॉरी। नहीं आज के लिए बहुत हो गया। अरे सॉरी आई। अब्यूज चल रहा है यहाँ पे, बुली चल रहा है यहाँ पे। ऐसा तो कुछ नहीं है। मारो मारो, अरे मारो ट्रैक करो, पहले ट्रैक करो, देखो कहाँ तक जा रहा हूँ। देखो ना। हाँ तो बस मेरे हाथ में जो सिग्नल्स है ना वो ना ऑन ऑफ टाइम प्लीज। हाथ हो गया खत्म। अरे निकालो ना भाई, मार दो भाई, मेरे को मार दो, ले मार दो मेरे को। अरे आओ निकालो। ठीक है निकाल रहा हूँ। हाँ करना है, सर्कल ट्रैक करना है इन लेव्स पे। इट्स टाइम टू हिट द जिम ऑफ वैलोरेंट।
यस ऑफ कोर्स। तो मेरे को पता है तू ना तू एकदम प्रिडिक्टेबल बैठ रहा है। मेरे को देख लिया मैंने, एक एक करके सारे एंगल क्लियर करता हुआ आ गया मैं आगे। अब मुझे पता है उस एंगल के अलावा एंगल बचा कौन सा है। मैं देख मैं यहाँ और तू उस एंगल पे खड़ा है, तुझे भी पता है मुझे भी पता है, और मैं एटलीस्ट वहां पे जिगल कर रहा हूँ जिसमें स्कोप है कि एम मिस होगा। तूने वो देखा था राउंड जिसमें मैंने अल्ट किया था वो अभी? तो मेरे को दिख रहा था यहाँ पे वो ऑप लगा के, यहाँ पे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वो ऑप लगा के खड़ा था मेरे पे, मैं खुलते ही जंप करके साइड हो गया, उसका ऑप का शॉट मिस हुआ, मैं निकल गया वहां से। तो बस वैसे थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होना है। कई बार बोलता हूँ मैं कि मेरे को पता है कोई देख रहा है मेरे को वुमन अल्ट पे, मैं जस्ट अल्ट जैसे ही खुलेगा गोली नहीं चलानी, मेरे को एम हल्का सा एक स्टेप लेना और गोली उसके बाद ये करके फिर गोली चलाऊंगा मैं, समझ रहा? अच्छा समझ रहा हूँ। ओके लेट्स अप्लाई दैट। अभी मेरा एम खराब है इसलिए मैं मरा। नहीं वो तो चल, मेरा थोड़ा प्रैक्टिस करवा दिया तूने इसलिए हुई। बॉडी शॉट्स ये तो ये होता है बीच बीच में मेरा एम साला बॉडी पहुंच जाता है। कुछ गन चलाओ जिससे गन लगे। नाइस। ओ ये लेके आता हूँ, ये ऊट लो। अच्छा अब देखो मैंने ये बॉटम मिड वाला एंगल क्लियर किया, फिर मैंने ये अंडर वाला एंगल क्लियर किया। इतने मेरे को अंडर वाला क्लियर करते हुए आपकी जिगल पे दिख गए आप, समझ रहे हो? तो मैंने फिर एम ऊपर एडजस्ट करा और कर दिया तो ऐसा। ओए लगा, और एक मेरे को लगा एक कनेक्ट हुआ। लॉल एक नाइस। ओ हेलो अरे नाइस 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 नाइस, that was good that was good। तुक्का था अच्छा था फॉल बैंग लगा था मुझे कुछ। 1 minute remaining। कहाँ अरे हगीज कर दिया हगीज। तो बस ये वही है, मैंने ऑप का स्कोप खोला, तू जहाँ खड़ा था तू वहां था ही नहीं। ये प्री एम बहुत प्यारा। चल जी मैं हुई नहीं। अरे मैं भी लेके आया। 30 seconds left। मैंने साउंड दिया, मैं कहा मैं रिलोड कर रहा हूँ, आओ जरा भाई, जरा रुकना, जरा मैसेज आया मेरी स्ट्रीम पे, रुकना जरा रुकना। अच्छा ठीक है 20 सेकंड ही बाकी है। अरे गुड मॉर्निंग। Ten seconds left। अरे Who's up for a debrief? Anyone? No one? चलो ठीक है भाई, जीजीस बाय बाय, आई एम एंडिंग द स्ट्रीम। मिलते हैं। जीजीस बाय बाय। जी